ball. Right arm over the wicket. Manoj will be the striker. This time nothing much to do with the delivery. It's a warm-up delivery of the morning, ball by Iqbal outside the line of off stump, and batter Manoj left the ball rightly so, then wicketkeeper behind the stump did the rest, and first one comes up for team Sri Ram Friends Ramnagar, one without loss of any wicket. Iqbal again, right arm around the wicket. Again ball is just deflected from the legs. No contact with the bat, so leg by call by umpire Ansar, so that one run added. Total 2 on the board, 2 extras, one in the form of a wide, one in the form of a leg bite, 2 without loss of any wicket in the over number. First is in progress. Iqbal operated around the wicket to the right hand batsman. Chetan will be the striker. Chetan. This time he left it. I don't think he will go to get distance, and I think it's going to be a first sixer. The first sixer of the final day in the morning. Chetan hoisting it over, taken an aerial route. Once it looks like ball will go into, but the direction of the wind which is helping that stroke of Chetan going and going. Have a look at it on a replay. 2 fielders of course have had a jump, but not quite able to stop the 6 from the bat of Chetan. It's a good start here from Chetan. The first ball itself, its intention is very clear that he wanted to go for the big shot, and a nice looking lofted drive, and with the direction of the wind he got the distance, and scoreboard numbers on to 8 on the board without loss of any wicket in the over number. First is in progress. Iqbal again bowling with a short run up, keeping one field and a deep long on deep long of deep cow point. One more delivery which is outside the line of off stump, and good comeback here by bowler Iqbal in the negation, so that he bowled little bit outside the line of off stump, and wicketkeeper behind the stump did the rest. Back to bowler Iqbal again bowling around the wicket with a short run up to Chetan. Chetan again, that going to be one more wide. Here is the second wide of this over, and bowler try to bring the ball around the legs of the batter, but rightly so that ball is just going down the leg stump outside the line of leg. So no hesitation from umpire Ansar to signal the white. With that extra score moves on to 9 on the board. Very good start here for Sri Ramnagar from these 2 opening batters. Over the wicket this time, lofted Adam, no need to run for that. One bounce into the fence for 4 runs. Chetan absolutely is got an exquisite placement in the occasion. You know exactly where the fielder is. The fielder is in the deep long off, a straight deep long off, and a little bit wideish long off and long on, so that he got the placements beautifully. With this offered by the bowler Iqbal, and batsman off the front to Chetan drives that one glorious lofted extra cover drive down to the extra cover boundary for 4 runs. So with that boundary score numbers on to 13 without loss of any wicket. Absolutely positive start here from Chetan. Is looking so good in the first over itself. Scored 10 valuable runs in just 3 deliveries. So again Iqbal bowling from the wicket to Chetan. Again the wide delivery outside the run of that stump, and one more extra there. With the extra score moves on to 14 on the board. 14 without loss of any wicket. It's not a good start here from Iqbal, and a shackling start so far. Conceded 14 valuable runs for the opposition. This time going for the cut shot, beautifully ball, good comeback here by Iqbal, and 14 on the board without loss of any wicket. Still one more delivery is left in this over. Chetan, first time he is just missing the ball. Legal delivery which is outside the line of off stump. Chetan, but still he's got 1 6 and a boundary, which is more than enough to get a very good start here for Sri Ramanagara. Right arm round the wicket, bounce. Chetan again went for the drive. This is going to be one more wide, one more extra. Is really struggling. It's a long over there from Iqbal. So one more extra, 15 on the board. 3 wide balls he bowled so far in this over. 4 wide balls in fact, and including 1 boundary and a 6. And 15 on the board. Again nicely driven, but this time he's got a protection in the deep cow point region, so Chetan will go deep the strike for the next over. First over completed. After completion of our first over, Sri Ramnagar, even though they lost the toss and asked by the opposition to bat first, they batted really very well, especially Chetan getting some runs here. 16 without loss of any wicket after completion of first over. ಒಂದು ಓವರಿನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 16ಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಉದ್ದರಿ ನಷ್ಟವಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀ ರಾಮನಗರ
has got a very good start here from for thinking here for the batters. I have to look for some I have to look for some acceleration of run rate, but they got a good start, 16, which is a very good run in the first over for any team. For the latecomers, you are watching BPL 2023, Benjanapadavu Premier League 2023. This is a fifth year cricket tournament which is organized by SFC cricketers Shivaji Nagar Benjanapadavu in this Benjanapadavu Cricket Stadium. And so far it's day number 2 which is just started. And after that, successful day number 1 yesterday with some grand inaugural ceremony of this cricket tournament. And we are into the final day of this cricket tournament. So second over, Rajesh round the wicket, beautifully bowled. Perfect start there from Rajesh, a little bit outside the run of off time. Of course, with is offered there by the bowler, and this time they're going for the run in the form of overthrow. That was a good thinking there by the batter's point of view, just seeing the opportunity there, and they're grabbing the opportunity to come back for the single there. And 17 without loss of any wicket. Sai Ramnagar. They're batting first and batting very well. Rajesh around the wicket. To Manoj, lofted that one. That was a handsome looking drive. That ball is sailing into the wideish long on boundary, into the Shamiana, the top of that Shamiana. And what a magnificent struck there from Manoj. Absolutely terrific shot. Have a look at that one in a replay. Just stand and delivered. Ball is in the slot. And batsman just waiting for the ball, and even the hand grip of Manoj a little bit different. Top end which is coming to the bottom hand goes into the top, and but still I think he's managed to get that 6 quite beautifully down the leg stump. Going to be a one more extra, one more wide there. So 24 on the board. It's not a good going here for team Jaguar Badakabail. Even they won the toss, selected to field first, but it looks like Sai Ramnagar are really wanted to get a huge total here. Rajesh bowls outside the line of leg stump. Again, that going to be one more wide here. This is what you want to see, that discipline from the bowlers. Struggling to get his line and length around the wicket. He balls. Manoj, this is a better line. This is the one line you need to bowl when you're bowling round the wicket, which is pitched in a line which is outside the line of off stump. Just got a deviation outside the line of off stump. The wicketkeeper behind the stump did the rest, and batter just missed it completely from the bat. Good comeback from the bowler's point of view. So 25 without loss of any wicket in the over number 2 is in progress. Rajesh again bowling with a short run up. Was umpire answer right round the wicket. He bowls. This time Manoj lofted at one. Once again it's going to be one more 6. This time as straight as an arrow. Lofted that one over the top of the deep straight long on fielder for the second sixer of Rajesh bat, and altogether this is the third 6 which is came from the opening batters of Sai Ramnagar. They're looking in top. 31 on the board after that 6. Still there is 2 deliveries remaining in this over of Rajesh. One more expensive over is in progress. This time he got that one high, and it's going to be a handsome. The high hand as handsome. Even Manoj played that one very high, but just like I mentioned in the morning, in this particular cricket ground, it's going to be very handy. Because the wind which is really helping that stroke to get the distance. The deep wideish long on fielder tried his level best to pull the ball inside the playing area, but that ball is just going to miss his hand, and got a third 6 for Manoj's bat, and fourth 6 of the innings of Sai Ram. 37 without loss of any wicket. Balled him, cleaned him up, good comeback, but it's what the kind of damage is required in this particular over. Manoj did all the damages before he's back into pavilion. Scored a valuable 18 runs in 5 deliveries with the help of 3 sixes. All the runs which is came from the bat of Manoj is
through 6. And three sixes, 18 runs, and he did a job what he wanted to do for his team. And 2 overs completed after completion of over number 2. And Sairam Ramnagar are looking in a commanding position. It's at 37 for the loss of 1 wicket. So, Bedra Media having a live telecast of this cricket tournament, and one of the most popular YouTube channel having a live telecast of this cricket tournament under the leadership of Irfan Bedra. Of course, one of the most popular and busiest YouTube channel in this particular season. Having more than 92k subscribers, and more than anything else, they got a lot of followers for Bedra Media. And SF cricketers Shivaji Nagar, Benjanapadavu, as they organizing their 5th year cricket tournament in the name of Benjanapadavu Premier League 2023. They wanted to make it a memorable one, so that it got a live telecast of this cricket tournament through Bedra Media YouTube channel. Third over and last over of the innings is coming up. Jabbar brought into attack. He will go into ball around the wicket to Chetan. This time Chetan going for the big shot, appeal for stump out. Umpire says it's not out. And that ball pitched in a line. A little bit the ball is kept low when the batsman is looking for a huge stroke. Missed it completely. And wicketkeeper behind the stump removes the bails, asking square leg umpire Samat for the result. But umpire says batsman is safe. Not a mess done. Jabbar again. Right arm around the wicket he balls. This time outside none of stump. Driven that one. Opportunity for the fielder at deep long off. Chetan is back into pavilion. Both the opening batters are back into pavilion. This time the line which is outside the line of off stump, and he's just reaching for the delivery. That's why that ball didn't went out of the park. And maybe the reason that when you are hitting the ball towards offside region, it's not so easy to get the distance, because of the direction of the wind is not that much of enough to get the distance, and the deep long off fielder takes a catch comfortably. 37 for the loss of 2 wicket, and Jabbar really got a huge wicket from his bowling. The 2 balls and 1 wicket without conceding a run. That means it's a very good start for the last over for team Jaguar Badakabail. So new batter Nisar. Nisar is on strike. Jabbar third time in this over. Around the wicket to the new batter. Deep cover point, deep long off, deep straight long on, and a little bit wideish long on, orthodox deep long on. One at mid wicket. The fielders in the outside the circle. 5 fielders outside the circle, saving the boundaries. Again, that ball pitching outside the non-leg stump, and by call by umpire, misjudgment by the batter in the negation. With that extra score, moves on to 38 for the loss of 2 wicket, and 3 balls remaining in the innings of Sairam Ramnagar. So Jabbar round the wicket, bowling 5th time in this over, of little connection 4th time in this over. Beautifully bowled. That was a perfect line to ball. It will go and test the temperament of the batsman, that kind of deliveries. ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ತಂತ್ರಿ ಪೊಳಲಿ ಸದಸ್ಯರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಮ್ಮುಂಜೆ ಇವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಸಂಘಟಕರ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೋರ್ವ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರು ಪ್ರವೀಣ್ ಜೋಗಿ ಬೆಂಜನಪದವು ಉದ್ಯಮಿಗಳು, ಇವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಕೂಡ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಸಂಘಟಕರ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ನೀಡುತ್ತಾ, ಸೊ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಚ್. Jabbar bowled one more good delivery in the negation. Batsman picked up a single down to deep long on region. With that single score, numbers on to 39 for the loss of 2 wicket in the over number. Last is in progress. The last delivery of their innings is coming up. Nisar has got opportunity to play that last delivery of their innings. Can he able to finish the innings with a big shot? And wait and see. 39 for the loss of 2 wicket. Again, nicely bowled. Ball just deflected from the legs. They're going for the single in the form of
Looks like no signal came from umpire. That means inside edge of the bat. So over number 3 completed. After completion of over number 3, team Sai Ram Friends Ramnagar managed to get 40 valuable runs. And 40 they managed to get in a stipulated 3 overs, and they set a target of 41 to win the match for team Jaguar Badakabail. And wait to see how Jaguar Badakabail will going to get this total in the stipulated 3 overs. It looks like it's a very good score on the board, but the morning condition looks like it's going to be encouragement for the batting team batters, so that it's going to be very interesting when they're going to chase those runs. So meanwhile, before we are going to that innings, I would like to invite young boys Polali as well as Rajeshwari Gorimar, two teams captain, please be reported here immediately for the tossing ceremony. Ali Daimadi, young boys Polali Ago, Rajeshwari Gorimar ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಕೃಷ್ಣ ನಾಯಕರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ನನ್ನ ಚಿಮಿಗೆಗಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. So before the innings will go into start, change in commentary box as well. I would like to invite Mr. Gopi to take over the microphone in our national language, Hindi. And good morning, Gopi, and pleasant morning. Absolutely fantastic weather condition, bright sunny morning, and looks like it's going to be a fantastic day for cricket. And we are hoping for some exciting cricket matches of this final day of this prestigious Benjanapadavu Premier League 2023. It's over to Gopi for the further explanation of the match in our national language, Hindi. Thank you. धन्यवाद सतीश। तो सारे दर्शकों को मैं गोपी यहाँ पर स्वागत करता हूँ। मैच नंबर 1 दूसरे दिन का इस श्रृंखला के अंतर्गत यहाँ पर खेला जाता हुआ बेंजनपदव प्रीमियर लीग 2023 के अंतर्गत। और जहां तक सवाल है, साई राम फ्रेंड्स रामनगर और जैगुआर बड़कबैल के बीच में संघर्ष जारी है। 41 रनों का लक्ष्य 3 ओवर में इस वक्त साई राम फ्रेंड्स रामनगर ने रखा है जैगुआर बड़कबैल के बल्लेबाजों को। 41 द टारगेट सेट बाय Sai Ram Friends Ramnagar for Jaguar Badakabail. 41 they have to score for victory with the required run rate of exactly 13.67 runs per over. They have to score for victory. Quite difficult but not impossible. And as far the big strokes are concerned, the situation for them, they badly required couple of boundary or sixes at this stage at the earlier of their innings, and their innings now going to start. Aris and Rajesh the openers. Meantime the ball is taken by Nitesh, who will start some fresh proceedings from the commentator box. And और पहली गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए नितिन दाहिने हाथ राउंड द विकेट। पहली गेंद, इस बार गेंद को उछालना चाहा, गेंद पहुंची सीधे बल्ले का भीतरी किनारा टकराने के बाद विकेट कीपर के हाथों में रन से बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। तो मैच नंबर 18, मैच नंबर 18th of this tournament is now started just short while ago of this fantastic tournament Benjanapadavu Premier League 2023। और गेंदबाज एक बार फिर से गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए ये गेंद उछालना चाहा, इस वक्त गेंद पहुंची शॉर्ट फाइन लेग पर, रन के लिए 2 कदम आगे जरूर बढ़ा, लेकिन एन मौके पर अपने कदमों को क्रीज पर खींचते हुए सुरक्षित देखा कि गेंद वहां पर फील्ड की जा चुकी है, रन से बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। 2 बेहतर गेंदें इस वक्त नितेश यहां पर फेंक चुके हैं और यहां पर रन कुल मिलाकर नहीं बने। तो जहां तक सवाल है स्कोर का, तो 0 पर स्कोर बोर्ड यहां पर रुक चुका है। और गेंदबाज एक बार फिर से गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट। नितेश अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। एरिस इस वक्त सामना करते हुए नितेश की गेंदों का, और नितेश दाहिने हाथ राउंड द विकेट। ये गेंद एरिस के लिए, इस बार गेंद को उछाला लॉन्ग ऑफ की दिशा में, लेकिन नहीं, गेंद इस वक्त लॉन्ग ऑफ फीडर के द्वारा लपक ली गई है। जस्ट गॉन फॉर अ बिग वन एट द लास्ट मोमेंट, नॉट क्वाइट मिडलिंग इट, एंड the ball after being lost its speed, it taken just inside the fence comfortably. Have a look at this in the replay. और जहां तक सवाल है यहाँ पर विकेट का, तो पहला विकेट गिर चुका है और एरिस की पारी यहाँ पर समाप्त हो चुकी है। नितेश अपना पहला विकेट प्राप्त कर चुके हैं। तो 0 पर पहला विकेट जैगुआर बड़कबैल खो चुका है। और निस्संदेह जहां तक लक्ष्य तक पहुंचने का सवाल है, तो जैसा कि मैं पहले भी फरमा चुका हूं, इस वक्त चौके छक्के ही अब जैगुआर बड़कबैल को अपनी मंजिल तक पहुंचा सकते हैं। 3
डॉट गेंदे खेलने के बाद एरिस पेविलियन वापस लौट चुके हैं। नए बल्लेबाज नंबर 3 बैट्समैन इज नाउ कम्स आउट टू द मिडल। तस्लीम इस वक्त क्रीज पर मौजूद और फील्डिंग में इस वक्त कुछ हद तक जमावट चलती हुई, कोई पावर प्ले नहीं, काफी दूर दूर तक फैला हुआ क्षेत्र रक्षण। इस वक्त लॉन्ग ऑफ, थोड़ा सा वाइडर, लॉन्ग ऑन डीप मिड विकेट, डीप बैकवर्ड स्कोर लेग इस वक्त नॉट ठीक सीमा रेखा के पास और ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई और वाइड का इशारा अंपायर अंसार द्वारा और वाइड के रन के साथ रनों का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो चुका है। जगवर बड़क बैल के लिए 1 रन 1 विकेट के नुकसान पर पहला ओवर यहाँ पर प्रगति पर अंपायर इस वक्त विकेटों को सही करते हुए और फिर से एक बार गेंदबाज नितेश इस वक्त गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए। दाहिने हाथ के बल्लेबाज तस्लीम इस वक्त सामना करने के लिए तैयार और नितेश दाहिने हाथ राउंड द विकेट। ये गेंद इस बार गेंद को ड्राइव कर दिया, नॉट क्वाइट मिड विकेट एट द लास्ट मोमेंट बट ही गॉट अ सिंगल फॉर दैट स्ट्रोक। नहीं, इट्स ऑफ द बैट इन फैक्ट, लेग बाय डिक्लेयर्ड बाय अंपायर and with that leg by run the scoreboard moving up to 2 for the loss of 1 wicket in the over number first in progress. For the first time in this over, Rajesh is now going to face the bowler Nitesh और जहां तक सवाल है गेंदबाजी का तो नितेश इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए। दाहिना राउंड द विकेट, ये गेंद बेहतर गेंद, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक वन, much straighter line and the ball came along the carpet and it went into the hands of wicket keeper after beating the batsman and there is no possibility of any run. Fantastic piece of bowling performance continuing here from नितेश इन दिस ओवर और एक बार फिर से नितेश गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए। दाहिना राउंड द विकेट, ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई, कुछ ज्यादा हद तक ऑफ स्टंप से बाहर की ओर नहीं निकल रही थी और इसी के साथ ओवर नंबर पहले की समाप्ति हो चुकी है। फर्स्ट ओवर कंप्लीटेड एंड आफ्टर फर्स्ट ओवर चेजिंग द ह्यूज टारगेट ऑफ 41 in 3 overs set by side round friends Ramanagar, Jaguar Balakabail made a slower start. In fact, they managed to score only 2 runs on the board for losing 1 wicket after completion of first over and still in overall calculation it's going to be 39 more runs. Now they have to victory in remaining 2 overs. That means in remaining 12 deliveries, the asking run rate is now gone up to exactly 19.5 runs per over. 19.50 runs per over required run rate for them at this situation. Meantime, the next match number 19 of this tournament is now coming up live exclusively right in front of you between Young Boys Polali versus Rajeshwari Gorimar. And because of that, I request the captains of these two teams to please report to the stage immediately for toss procedure. ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಪೊಳಲಿ ಹಾಗೂ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಗೋರೆಮಾರ್ ತಂಡದ ನಾಯಕರಿಗೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಟಾಸ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಘಟಕರೊಂದಿಗೆ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. और नई ओवर की पहले गेंद, इस बार गेंद को उछाला, काफी ऊंचा गेंद, लॉन्ग ऑन फील्डर गेंद के नीचे आते हुए डीप मिड विकेट पर इस कैच को लपक लिया गया है और इसी के साथ ही विकेट यहां पर गिर चुका है। तस्लीम की पारी समाप्त। गेंद को उछाला था जरूर लेकिन यहाँ पर स्ट्रोक्स में इतना पर्याप्त दम नहीं कि गेंद सीमा रेखा को पार कर सके और आखिरकार लॉन्ग ऑन फील्डर ने यहाँ पर डीप मिड विकेट फील्डर ने कहना पड़ेगा यहाँ पर सीमा रेखा के अंदर इस कैच को लपका और इसी के साथ दूसरा विकेट यहाँ पर गिर चुका है। संकट की स्थिति में यहाँ पर नजर आती हुई जागवर बड़कबल 2 रनों पर अपना दूसरा विकेट खो चुका है। और जहां तक इस टूर्नामेंट इस श्रृंखला का सवाल है, बेंजनपदव प्रीमियर लीग 2023 की शानदार प्रगति होती हुई इस श्रृंखला, इस टूर्नामेंट, इस प्रतियोगिता का दूसरा दिन और इस श्रृंखला का शानदार तरीके से आयोजन किया है एसएफसी क्रिकेटर शिवाजी नगर बेंजनपदव ने इस शिवाजी मैदान पर। और जहां तक सवाल है इस श्रृंखला के विजेता का तो 40,000 रुपए और बीपीएल ट्रॉफी दिए जाएंगे इस श्रृंखला के चैंपियन को, जबकि द्वितीय स्थानीय रनर्स अप को दिए जाएंगे 20,000 नगद पुरस्कार और बीपीएल ट्रॉफी 2023। अगली गेंद इस वक्त, दिस टाइम इट्स गॉन ऑल द वे, he's got the distance at the last moment और छक्का यहां पर जुड़ चुका है और बल्लेबाज जो छक्का लगाने वाले इस वक्त अंसार गेंद को इस वक्त उन्होंने उछाला था खूबसूरती के साथ लॉन्ग ऑन सीमा रेखा से बाहर। और जैसा कि मैं पहले भी फरमा चुका, इस वक्त सिर्फ छक्के या चौके इस वक्त जागवर बड़कबैल को इस मैच में वापस ला सकते हैं। 10 गेंदें बाकी है कुल मिलाकर उनकी पारी में और रन से चाहिए इस वक्त 33 टू गेट नाउ फ्रॉम रिमेनिंग 10 बॉल्स। गेंदबाज यह गेंद एक बार फिर से उछालना चाहा, परिवर्तन के तौर पर धीमी गेंद कंपेयरिंग टू द प्रीवियस डिलीवरी और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। रन से इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला, स्कोर इस वक्त रुक चुका है 8 रनों पर 1 विकेट 2 विकेट के नुकसान पर, जबकि दूसरा ओवर उनकी पारी का यहाँ पर प्रगति पर। गेंदबाज निसार गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए ये गेंद एक्स्ट्रा बाउंस, अंतिम क्षण में गेंद टॉप एज पर टकराई, ऑफ साइड पर गई और शॉर्ट कवर पर जब तक गेंद को फील्ड किया जाता 1 रन का इजाफा हो चुका और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 9 रन 2 विकेट के नुकसान पर।
32 रन और चाहिए विजय के लिए। गेंदें बाकी है इस वक्त 8। 32 they have to score for victory in remaining 8 deliveries. Almost 8 fours required in the last 8 deliveries for victory for Jaguar बड़कबैल। गेंदबाज निसार इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए ये गेंद इस बार उछाला, clean hit and it's gone over the fence for a huge one. 6 number 2 came in this innings of Jaguar Badakabail. This time came from the bat of Rajesh. And with that 6, scoreboard is now moving up to 15 for the loss of 2 wicket in the open number, second in progress. तो जहां तक सवाल है इस वक्त स्कोर का, तो 15 रनों पर स्कोर बोर्ड पहुंच चुका। एक गेंद इस वक्त बाकी, 7 balls left and 26 runs more now they have to score for victory. अगली गेंद के लिए तैयार। ये गेंद again this time 2 squarer and he's got the distance for that. 6 number 3 in this over, 21 the score and now last over remaining and 20 runs required. 20 रन चाहिए अंतिम ओवर में और इस मैदान के डायमेंशन को देखते हुए ऐसा कहना पड़ेगा यहाँ पर 20 रनों का लक्ष्य कुछ ज्यादा कठिन नहीं है यहाँ पर, क्योंकि गेंद आसानी के साथ गेंद को इस वक्त डिस्पैच कर रहे हैं बल्लेबाज सीमा रेखा से बाहर। तो अगर 2 या 3 चौके या छक्के इस अंतिम ओवर में गिरते हैं तो निस्संदेह इस मैच में वापस आ सकता है जागवर बड़कबैल। तो यहाँ पर last over remaining 20 runs they have to score for victory. Young boys Polalivel takes over Raja Rajeshwari Goremar, and after Raja Rajeshwari Goremar are won the toss and what the decision they are taking, just we have to wait and see at the situation. अंतिम ओवर का खेल बाकी इस वक्त 20 रन चाहिए विजय के लिए। गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए गेंदबाज धीरज रोबर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। रफ फील्डिंग में जमावट यहाँ पर चलती हुई। मैच नंबर 18 बेंजनापदव प्रीमियर लीग 2023 के अंतर्गत यहाँ पर खेला जाता हुआ, जिसका शानदार तरीके से प्रस्तुति कर चुके हैं एसएफसी बेंजनापदव। और जहाँ तक अपने 5वें वर्षगांठ पर इन द सेलिब्रेशन ऑफ देयर 5 years दे आर ऑर्गेनाइजिंग दिस फैंटास्टिक टूर्नामेंट इन द नेम ऑफ बेंजनापदव प्रीमियर लीग 2023। और इस बीच गेंदबाज की ओर की पहली गेंद, ये गेंद इस बार बेहतर गेंद थी और लगभग दोनों बल्लेबाज एक छोर पर यहाँ पर मौजूद। आसान सा रन आउट होता 1 on strike एंड पर और गेंद सीधे पहुंची थी विकेट कीपर के हाथों में। नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज दौड़ा स्ट्राइकर एंड पर, स्ट्राइकर एंड बल्लेबाज द्वारा कोई रिस्पांस नहीं है और इसी के साथ ही विकेट गिर चुका है। 5 गेंदें बाकी, 20 रन चाहिए। राजेश आउट होकर पेविलियन वापस लौटते हुए। राजेश आउट फॉर 12 इंक्लूडिंग 2 sixes after being playing a good knock for their side. He is back to pavilion and the second wicket lost, third wicket lost in fact for Jaguar Badakabail. 21 for the loss of 3 wickets. ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಶ್ರೀಯುತ ನವೀನ್ ಆಚಾರ್ಯ ಬೆಂಜನಪದವು ಇವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಯತ್ತ ತೆರಳಿ ತಮ್ಮ ಆಸನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಇವರಿಗೆ ಬೆಂಜನಪದವು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2023 ಸಂಘಟಕರ ಹಾಗೂ ಸರ್ವ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ನಾವು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ತಮಗಿದು ಆಧಾರದ ಸ್ವಾಗತಗಳು ಸರ್. तो इस बार विकेट यहां पर गिर चुका है और विकेट नंबर 4 यहां पर गिर चुका है. कंसेक्यूटिव विकेट लॉस फॉर जागवर बड़कबैल and now they are 21 for the loss of 4 wickets. Just 4 balls remaining and 20 runs to score. Almost a last chance now in front of the batsmen of Jaguar बड़कबैल. तो जहां तक सवाल है इस वक्त बल्लेबाज का, तो नए बल्लेबाज इस वक्त क्रीज पर कदम बढ़ाते हुए इकबाल नए बल्लेबाज के रूप में इस वक्त क्रीज पर कदम बढ़ाते हुए और इस वक्त वो सामना करने के लिए तैयार। गेंदबाज धीरज की ओवर की अगली गेंद का 20 runs needed in remaining last 4 deliveries. Almost 3 sixes and a boundary required in the last 4 balls for Jaguar बड़कबैल for victory in fact. पर इस वक्त विकेटों को सही करते हुए और इस बीच गेंदबाज तैयार, दाहिने हाथ ऊपर तक विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए। ये गेंद इस बार गेंद को उछालना चाहा, चूंकि एक्स्ट्रा क्विकर गेंद गेंद पहुंची इस वक्त विकेट कीपर के हाथों में। हालांकि गेंद उनके हाथों से छूटी जरूर है, लेकिन अपने दूसरे प्रयत्न में गेंद को फील्ड करने के बाद लौटाते हुए इस वक्त फील्डर के हाथों में, गेंदबाज के हाथों में रन से इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिलेगा।
3 balls 20 रिक्वायर्ड और गेंदबाज इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट धीरज गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज इकबाल के लिए अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। ये गेंद फुल टॉस, जस्ट चेंज ऑफ पेस, बोल्ड स्लो डिलीवरी और बल्लेबाज ने इस वक्त गेंद को उछालना चाहता और एक्सपेक्टेशन पूर्वानुमान उन्होंने नहीं लगाया था कि गेंद धीमी गति से आएगी। बीट हो गए पूरी तरह और बीट होने के बाद के हाथों में अगली गेंद। इस बार बल्ले का भीतरी किनारा, जस्ट गॉन थ्रू फॉर अ सिंगल नाउ एंड गेट इट कंफर्टेबली एट लास्ट। 22 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट। लास्ट बॉल ऑफ द मैच इज नाउ कमिंग अप। 19 रिक्वायर्ड इन लास्ट बॉल और गेंदबाज धीरज तैयार। ये गेंद बल्लेबाज के लिए गेंद को उछाला पर लेकिन इट्स गॉन टू स्क्वायर। In fact, only a single, and the innings is up. The stipulated overs are completed. So, comprehensive victory by 17 runs for Sairam cricketers. Sairam friends Ramanagar registered a comprehensive victory by 17 runs against Jaguars Badakabail in the match number 18th of this tournament, and with that victory, they bagged the complete points. And so, the next match, Young Boys Polali will take over Raja Rajeshwari Goremark. So, in this match, Raja Rajeshwari Goremara won the toss and won the decision. They are taking, just we have to wait and see, and that match starts within a just short while. As far as Sairam Ramnagar, they registered their fourth victory in this tournament out of their 5 matches played, and now they are played 5 matches. They won 4 and lost 1, in fact, and they finished the table now. So they finished the table with 8 points, and as far as the Jaguar Badakabail is concerned, they finished the table with 4 points, with 2 wins and 3 defeats. And quite difficult to qualify for the playoff of this round for Jaguar Badakabail. It's their qualify will depends on the other matches results. So now, right from this over, every match is will be a 4 overs. ಈ ಪಂದ್ಯದಿಂದ ಪ್ರತಿ ಪಂದ್ಯವು 4 ಓವರ್ಗಳದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಆಡಲಿರುವಂತಹ ತಂಡಗಳ ಆಟಗಾರರು ಗಮನಿಸಬೇಕು. 4 ಓವರ್ಗಳ ಪಂದ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಈ ಪಂದ್ಯದಿಂದ ಪ್ರತಿ ಪಂದ್ಯವು. यंग बॉयज फुलली का सामना इस वक्त होता हुआ राजा राजेश्वरी गोरेमार के साथ, और वो मैच शुरू हो गया यहाँ पर चंद लम्हों बाद। तब तक एक छोटा सा ब्रेक हम लेते हैं, और छोटे से ब्रेक के बाद हम आपके सामने उपस्थित होंगे मेरे काबिल दोस्त अंग्रेजी में सतीश के साथ, जब मैच नंबर 19 की शुरुआत यहाँ पर होगी। धन्यवाद, थैंक यू। In fact, Sairam Ramnagar played 4 matches. They won 3 won and 1 lost. Jaguar Badakabail played 4 matches and they won 2 and lost 2. So Manoj adjudged man of the match. Manoj of Sairam Ramnagar adjudged man of the match for his fantastic knock of 18 runs, including 3 sixes. I request Mr. Manoj, please come, Mr. Manoj of Sairam Ramnagar, please come on to the stage and receive the man of the match award from Mr. Praveen Jogi. Our today's guest will distributing the man of the match award for Mr. Manoj of Sairam because of fantastic knock of 18 runs. Sairam Ramnagar, in fact, and Mr. Praveen Jogi distributing the man of the match award for Manoj. And congratulations for him, and best of luck for the rest of the matches of this tournament. So the next match, Young Boys Polali will take over Raja Rajeshwari Goremar, और एक छोटे से ब्रेक के बाद हम आपके सामने उपस्थित होंगे अंग्रेजी में सतीश के साथ, जब अगले मैच की शुरुआत यहाँ पर होगी। धन्यवाद, थैंक यू।
So thank you very much, Gopi. So back to this back to the match number 2 of the day number 2 and final day of this prestigious Benjanapadavu Premier League, which is proudly organized by SFC cricketers Shivaji Nagar Benjanapadavu. And here we are into the second match, and second match will be played between young boys. Little correction, yes, the match number second will be played between young boys Pallali versus Rajeshwari Goremar. Raja Rajeshwari Goremar, and after winning the toss, captain of Raja Rajeshwari Goremar elected to field first, so that we are waiting for the opening batters of young boys Pallali. Tilak and Dilip are the opening batters, just came into middle. So 4 overs match. Please note that there is a change in number of overs. Format of games. 4 overs match. 2 overs, which will be 1 hour will be the power play. One hour power play. So 1 hour going to be power play, and where you can keep only 2 fielders outside the circle. Deep, wideish long on, and deep long off. The 2 fielders are in the deep. And here is a bowler Ashik bowling his first ball. Beautifully bowled, right on the money, right on the target. Cleaned him up with the beauty. Absolutely perfect one here from Ashik to start with. Tilak not really seeing the line of the delivery. Just wanted to play that one by exposing his stumps. And bowler did a great job to pitching the ball in the right line, a little bit outside the line of off stump, and off cutter. And that ball hits the stumps. A perfect start here for Team Raja Rajeshwari. The log won the toss, and first ball itself, the Ashik produced a very important breakthrough with that perfect off cutter. I request the 12th man, extra player of both the teams, please be reported here immediately. ಎರಡು ತಂಡದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ಲೇಯರ್ ಇತರ ಆಟಗಾರರು ದಯಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ತಂಡದ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಪೊಳಲಿ ತಂಡದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ದಯಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಪೊಳಲಿ ದಯಮಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ಲೇಯರ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಆಟಗಾರರ ಹೆಸರನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಲು, ಆಟಗಾರರ ಹೆಸರನ್ನು ತಿಳಿಸಲು ದಯಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ. ದಿಲೀಪ್, Ashik balls this time. Dilip lofted that one. Handsome looking drive. And that goal gone many a miles down to deep long on for a youth 6. And Ashik this time he bowled that one little bit short with delivery, but the batsman so good to pick that line and length, and length. And Dilip lofted that one down to wideish long on for a youth 6. And with that 6 score, moves on to 7 on the board for the loss of 1 wicket. Dilip, you know exactly it's dealing with a power play over. Need to get some big total, so need to capitalize this power play over. Right arm over the wicket, beautifully balled, perfect one. Wicket keeper behind the stump fails to collect the ball because the ball just deflected from the leg of the batter. So leg by call by umpire. With that leg by score, but moves on to 8 on the board for the loss of 1 wicket in the over number first is in progress. So Harry. This time going for the drive, missing it completely. No ball call by umpire, so that free hit delivery for the batter.
So Yakshit, the striker. The no ball, one more no ball. The overstep no ball this time, and this time they got a single for that, unfortunately. The no ball will go and continue, and the free hit delivery always continue. Again, it continues because of that overstep by the bowler. And the scoreboard numbers on to 11 for the loss of 1 wicket. Ashik, after he got a very good start from the ball with the wicket, then afterwards he fails to continue that line in the remaining deliveries. 4 ball, 11 runs conceded so far. Yakshit is off the mark with the single. Dilip will back on strike now. Ashik, right arm over the wicket balls. Beautifully ball. Went for the big shot. Wicket keeper behind the stump did the rest. This is a line what Ashik need to ball. Dilip wanted to swing that one on the outside region, missing the line completely. Then wicket keeper behind the stump did the rest and back the bowler. Ashik again away from us. Right above the wicket balls. This time he lofted. This time he lofted and going and going and gone a many a miles. This time Dilip not missing the opportunity to dispatch that one. Have a look at that one. Flighted delivery and off the toes, beautifully plays it down to deep wideish long on boundary for a second sixer in this over. And Dilip he picked up his second six. "17 for the loss of 1 wicket. And the over number first which is completed, the valuable 17 runs in first over of the power play. So bowling second over. Jitesh will be the bowler after that power play. He kept one fielder in the mid wicket and one at deep long on and straight long on. Long off. There is a deep extra cover. The fielder in the deep, in the only fielder in the offside region in the deep. This time high up in there. Opportunity for the fielder to take the catch and wideish long on fielder making no mistake at all. And Akshit, that is a juicy full toss. Mistimed cricketing stroke there from Akshit. Pays the penalty for that. Deep on long on fielder has got a plenty of time to judge that catch. The ball which is hit very high in the air. Yakshit back into pavilion. It's 17 for the loss of 2 wicket. No fall. New batsman walking towards the middle. So time is exactly 10 past 10 minutes. Bright sunny morning. The wind which is passing with the strong, very strong wind passing in the middle. A little bit condition suitable for the batters. Jitesh to bowl with this condition. Wait and see how we'll go to restrict the runs. Second ball, first ball, beautifully one, but protection has been given in the long off region so that the batter have to settle for the single. Now fall is off the mark with the single. And total score now moves on to 18 for the loss of 2 wicket in the over number second in progress. Dilip so far is batting on 12 with help of 2 sixes. And he is a danger batter as far as the opposition Rajeshwari. Gorimar won the toss, selected to field first. And Jitesh bowling round the wicket, right arm. Drives that one nicely down to deep backward square like this. Deep mid-wicket region. They're going for the second. Little bit fumble from the fielder. They're grabbing the opportunity of that the fumble. And both the batters completed a couple of runs. So with that couple of runs, Kobar moves on to 20 for the loss of 2 wicket. For the loss of 2 wicket. Here is again bowler bowls. Full toss outside the off stump and going for the drive, missing it completely.
and there is no chance at all for any run. So young boys probably out of 2 matches, they won 2. All 3 matches they won. 3 matches they won. So they're unbeaten in this particular league match season. 5 of this prestigious BPL. White call by umpire. One more extra. 21 for the loss of 2 wicket in the over number second in progress. So both the teams is unbeatable in this particular match. Nice driven that one. Lack of timing. Ball went towards the cover point region. Ample time for the batter to complete the single. With that single, Skopan was on to 22 for the loss of 2 wicket in the over number 2 is in progress. Two very good teams and playing each other, and wait and see which team will going to win this match. Again, nicely bowled and going for the drive, missing it completely. Leg by call by umpire. Answer, so 1 hour addition. 23 for the loss of 2 wicket in the over number 2, which is completed. Good over. Ball by Jitesh. One of the best over, I want to say, in this condition. In the 5 runs which is he conceded in that over. Altogether, 2 overs completed. Searching for the attack. And team young boys probably managed to get 23 at the rate of 11.5 runs per over. Rajeshwari Goremar, out of 3 matches yesterday they played, they won all 3 matches. And the same from Young Boys Pola League. They're also out of 3 matches they won 3. This was 2 top teams in the B pool. And then they're playing each other, and wait and see which team will going to continue their winning track in this particular tournament. So Robin brought into attack to bowl that third over of their innings, and he will go into ball to Naufal. And went for the drive. Wicketkeeper misses it completely. It looks like one more buy here, one more extra. 24 for the loss of 2 wicket in the over number 3 is in progress. Robin starts well, but not a good effort coming from behind the stump, and wicketkeeper behind the stump misses the ball, and that brings Dilip into strike now. Dilip is only one player. He's got looks so confident so far in this match. Beautifully balled, and again that ball is hitting his legs. No chance of any run there. So Robin, 2 very good deliveries to start with. Right arm over the wicket balls. To Dilip is batting on 15 with the help of 2 massive sixes. He's a tall player. And for tall player, it's very easy to dispatch the ball. This time he lofted it. I don't think he will going to get distance, but the fielder is there in the long off. Takes a catch. Mistimed cricketing stroke there from Dilip. Might be a little bit the full toss, which is a low full toss. He wanted to play that one on the offside region. That's a big reason that he's got out. And if he manages to get that one over the deep long on a deep mid wicket, he can just get the distance, but he fails to do that. So, and Dilip's innings, which is comes to an end after scoring a valuable 15 runs. Robin has got a very important breakthrough. So far, it's a very good over ball from Robin. 3 balls completed, and without conceding a run there. 1 run, that is a leg by. No run conceded in the bat, and he picked up valuable wickets. So new batsman in is Kiran. Kiran will be the new batter for the side as a number 5 batsman. Again tries Robin looking for the run out, but he fails to collect the ball neatly on his follow through, and quite hardly Kiran has got a first run, and scoreboard is now 25 for the loss of 3 wicket in the over number 3 is in progress. Robin so far is bowled a very tidy line and length. 2 deliveries remaining in this over. Naufal is on strike. Can he able to get one big shot in this over? Robin bowls.
This time again, little bit short pitch delivery, drives that one down to mid wicket region. They're running hard, looking for the second. In comes the throw, but not quite enough. Not quite enough power behind the throw to stop the couple of runs from these two batters. And with that couple of runs, cover numbers on to 27 for the loss of 3 wicket in the over number 3 is in progress. Robin. After that, the bowler Hitesh bowled a very tidy over, and he's just continuing that line and line. This time, driven that one uppishly, but landed very safely before the cow point fielder will go into fields the ball. Ample time for the batter to complete the single. So 3 overs gone. One more good over completed by Robin, and just 3 came from that over from the bat. It's a 28 on the board for the loss of 3 wicket. 3 overs completed. 28 for the loss of 3 wicket in the over number 3, which is completed. The current run rate is 9.33 runs per over. The 2 overs, 1 over remaining. And wait and see how well young boys probably will going to get some runs in this last over. Prajwal, the bowler, to bowl that last 2 over of the innings of young boys. Drives that one down to deep long on decision. Whitish long on depth. Good piece of fielding. That fielder. Chance of run out in the non-strikers, and the batsman is safe. Kiran once looks like he's struggling to reach his home, but the throw which is not came from the fielder is not quite enough to make the run out. It's a little bit wide throw for bowler to collect the throw, and it's gave a time for the batter to complete the couple of runs. With that couple of runs, covered moves on to 30 for the loss of 3 wicket. Prajwal bowling right arm over the wicket. So next match, after this match, JKC Kalai will go into take SFC Benjanapadavu B. Prajwal has picked up the wicket here, and the wicket of now fall back into pavilion after scoring 6 runs in 7 deliveries back into pavilion. The new batsman in is Api. Api to face as next delivery of Prajwal. So far, I think the bowlers of Rajeshwari able to put some break on the run rate. Again, a wicketkeeper behind the stump misses that one. It's not up to the mark from a wicketkeeper. By call by umpire, what could be a certain dotted deliveries because of wicketkeeper missed it. They got a single here. 31 for the loss of 4 wicket in the over number. Last is in progress. Prajwal 4 time in this over. Right arm over the wicket. Bowls Kiran. Kiran again. Lovely delivery. Again the wicketkeeper behind the stump fails to collect the ball. And Kiran going for the second. Absolutely suicider. There is no chance of a second run, but Kiran wants a second. His partner is not interested, and ended in a disaster run out. Very good throw coming from the fielder, from the deep third man, and the fielder did a great job to return the ball to us as non-strikers. And one more run out to scoreboard numbers on to 32 for the loss of 5 wicket. Rajeshwari Gurmar are doing a fantastic job here as far as winning the toss, selected to field first. They're really doing a good job against young boys. Polali. Both the teams are unbeaten. In again, this time ball looks like got a bat onto that, down to fine leg division. No bat, it's a leg by. Deflected from the leg. One more addition to total scoreboard numbers on to 33 for the loss of 5 wickets. Last delivery remaining in the innings of young
Boys Pololi. Can this man will going to get a big one here? Nikhil. If they wanted to get a good total, one big shot which is badly required, the left hand batter, Nikhil is on strike. But so far Prajwal bowled very good last over. So left hand batsman got one deep backwards corner to mid wicket and long on is there. A lot of protection has been given in the onside position. One at deep long off, wide is long on, one at long off. So last delivery, Prajwal. All right, Amra on the wicket, balls to Nikhil. Nikhil tries that one, but not more than a single here. And with that single, Skoban was on 34. That's it. Young boys finished with 34 runs in their stipulated 4 overs. And Dilip is the only one batter has got a double figure of 15 runs out of 9 deliveries. But what we can see that the bowlers did a great job. Very economical over from the last 2 overs. Robin, Prajwal and Jitesh, the 3 bowlers did a great job for restricting the runs of young boys Polari. That means the bowlers of Raja Rajeshwari Goremar did a great job and to restrict the opposition for 35 runs. And we did see 34 runs and 35 runs required for the victory. And before the innings will going to start of Raja Rajeshwari, I would like to invite Mr. Gopi to take over the microphone in our national language. And wait and see these 2 teams. They are unbeaten so far in these league matches. And wait and see which team will going to continue their winning track and which team will going to face their first defeat. It's going to be a more interesting game of cricket is coming up. And we'll take a short break here. And after a short break, my friend Mr. Gopi will going to take over the microphone. Thank you. Dhanyawad Satish. So 34 the target for Raja Rajeshwari Goremar, set by young boys Polali. At batters first, they managed to score 34 runs on the board after the completion of 3 overs, and now the target is 35, exactly 11.67 the required run rate for them at this situation. And their innings not going to start. Naufal यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए नौफल ने हाथ राउंड इस बार गेंद ड्राइव किया बैक टू द बॉलर की दिशा में, गेंद पहुंची तक सवाल है रनों का, तो रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। नौफल
एक बार फिर से गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिना हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार गेंद को उछालना चाहा, पैरों पर गेंद टकराई, रन से नहीं मिलेगा। पावर प्ले का फायदा उठाने का प्रयास, लेकिन यहाँ पर ठीक तरह से फायदा नहीं उठा पाए इस गेंद पर, और स्कोर इस वक्त रुक चुका है कुल मिलाकर 1 रन बिना किसी नुकसान के। और तो अगली गेंद लेकर तैयार, दाहिना हाथ राउंड द विकेट, ये गेंद इस बार एक्स्ट्रा क्विक, जस्ट मिसिंग आउटसाइड द ऑफ स्टंप एट द लास्ट मोमेंट, जस्ट गॉन फॉर अ लॉफ, नॉट सक्सीडेड, नॉट सो मिसिंग टू फॉर आउटसाइड द ऑफ स्टंप एंड कलेक्टेड बाय विकेट कीपर बिहाइंड द स्टंप्स, एंड देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ एनी रन। स्कोर इस वक्त रुक चुका है 1 रन बिना किसी नुकसान के। और अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार, दाहिना हाथ राउंड द विकेट, ये गेंद इस बार एब्सोल्युटली फैंटास्टिक पीस ऑफ बॉलिंग परफॉर्मेंस continuing here from Nofal, 4 dot balls in a row after being bowling a wide delivery, and this is a fantastic start for the bowler. 4 लगातार गेंद यहाँ पर वाइड फेंकने के बाद फेंक चुके हैं बेहतरीन तरीके से गेंदबाज नौफल। अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार, रॉबिन इस वक्त सामना करते हुए दाहिना हाथ राउंड द विकेट, ये गेंद इस बार दिस इज गॉन ऑल द वे, यस इट डज, इट्स अ ह्यूज वन. It just took the pressure off at the last moment after being bowling 4 consecutive dot deliveries. This time he just got that one right from the middle of the bat and loved that one in a style. Have a look at this in the replay, and it's gone over the fence for a huge one. और इस छक्के के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 7 रनों पर बिना किसी नुकसान के। और पहला ओवर उनकी पारी का यहाँ पर शुरू हो चुका है। अगली गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए गेंदबाज और अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार, दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए नौफल दाहिने हाथ के बल्लेबाज रॉबिन के लिए तैयार। इस ओवर में अंतिम बार दाहिने हाथ राउंड द विकेट, ये गेंद इस बार बॉल्ड आउट, फैंटास्टिक कमबैक बाय द बॉलर, दिस टाइम गेट सम एक्स्ट्रा बाउंस एंड leg stump has been approved. That was a much straighter delivery at the last moment. Just have a look at in the replay. इस बार देखिए किस तरीके से गेंद के लाइन पर नहीं आ पाए, लेग स्टंप इस वक्त उखड़ कर गिरता हुआ पहला विकेट गिर चुका है। रॉबिन इज आउट फॉर पेविलियन एंड फर्स्ट विकेट लॉस इज 7 for the loss of 1 wicket for Raja Rajeshwari Goremar. Next match, JKC Kalai will takes over SFC Benjanapadavu B, and because of that I request the captains of these two teams to please report to the stage immediately for toss procedure. JKC Kalai ಹಾಗೂ SFC ಬೆಂಜನಪದವು ಬಿ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯವು ನಡೆಯಲಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎರಡೂ ತಂಡದ ನಾಯಕರಿಗೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಸಂಘಟಕರೊಂದಿಗೆ. ದಯವಿಟ್ಟು SKC ಕಲೈ ಹಾಗೂ SFC ಬೆಂಜನಪದವು ಬಿ ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಗಮನಿಸಬೇಕು. So first over completed, it's 7 runs on the board, 1 wicket lost. Second over starts and the bowler starts the fresh proceedings is Kumar in fact, and he starts the fresh proceedings, and the striker is Manu. In fact, the non-striker is Mohan. He now comes out to the middle as a number 3 batsman. और ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाज इस वक्त यार फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट यहाँ पर करते हुए पहले ओवर के पावर प्ले के बाद फील्डिंग के प्रतिबंध यहाँ पर हट चुके हैं, पावर प्ले समाप्त हो चुका है। फील्डर इस वक्त मैदान पर छा चुके हैं। कुल मिलाकर 4 खिलाड़ी इस वक्त 20 गज के दायरे के अंदर मौजूद है। और जहां तक का सवाल है गेंदबाजी का, तो गेंदबाज इस वक्त गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट कुमार ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार मनु के लिए। ये गेंद ऑफ स्टंप से काफी बाहर की ओर निकलते हुए और वाइड का इशारा अंपायर का, और वाइड के रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 8 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर यहाँ पर प्रारंभ हो चुका है। सेकंड ओवर स्टार्टेड जस्ट शॉर्ट वाले को 8 for the loss of 1 wicket। और फिर से एक बार कुमार गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए वाइड के साथ शुरुआत कर चुके हैं और अपनी अगली गेंद लेकर तैयार इस वक्त मनु सामना करने के लिए। 19वां मैच बेंजनापदावु प्रीमियर लीग 2023 इस मेगा श्रृंखला के अंतर्गत यहाँ पर खेला जाता हुआ। और गेंदबाज कुमार अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। 8 से 10 बार गेंद को जमीन पर टिप्पा खिलाने के बाद दाहिना तो ऊपर तक विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद ड्राइव किया इस वक्त, नॉट क्वाइट मिड विकेट, इन फैक्ट गेट्स अ सिंगल फॉर दैट स्ट्रोक। मिड ऑफ फील्डर गेंद तक लपकते हुए दूसरे रन के लिए बल्लेबाज दौड़ पड़े और यशस्वी तब दूसरा रन यहां पर पूर्ण करते हुए। थोड़ी सी मिसफील्ड इस वक्त यहाँ पर सिली मिड ऑफ फील्डर के हाथों में, और आखिरकार जब तक दोबारा हो गेंद को फील्ड करे बल्लेबाज ने तेज रनिंग बिटवीन द विकेट द्वारा दूसरा रन यहाँ पर पूर्ण कर लिया और इन
2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 2 अंकों पर, यानी 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर। मनु इस वक्त सामना करते हुए, कुमार गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए इस वक्त तैयार। कोई डीप कवर पॉइंट नहीं, लॉन्ग ऑफ इस वक्त मौजूद, लॉन्ग ऑन डीप मिड विकेट और डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग तैनात इस बीच। अगेन टॉप एज, गेंद इस वक्त उछल चुकी है, फील्डर गेंद तक नहीं पहुंच पाएंगे। 3 फील्डरों के बीच गेंद इस वक्त टिप्पा खा चुकी है और आखिरकार बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन यहां पर प्राप्त करने का। हालांकि गेंद टॉप एज पर जरूर टकराई थी, लेकिन 3 फील्डरों के बीच इस वक्त टिप्पा खाते हुए शॉर्ट मिड विकेट पर। और जहां तक सवाल है रनों का, तो 2 रन इस गेंद पर बल्लेबाज प्राप्त कर चुके हैं और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 12 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 12 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस। बराबर का टक्कर यहां पर जारी इस टूर्नामेंट के 19वें मैच में यंग बॉयज पड़ली और राजा राजेश्वरी गोरेमार के बीच। और गेंदबाज कुमार एक बार फिर से गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए इस वक्त दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए गेंद ऑन साइड पर, गेंद को स्विंग किया, गेंद जाकर टकराती हुई दीवार पर डीप मिड विकेट पर 1 रन मिलेगा, दूसरा रन भी मिलेगा इससे पहले कि गेंद को जब तक वहां पर फील्ड किया जाता। और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 14 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। इट्स 14 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस। 30 league matches to be played in this tournament. After that, playoff matches, qualifier 1, eliminator, and qualifier number 2, and the grand finale of this tournament will be played on today evening of this fantastic tournament in the name of Benjanapadavu Premier League 2023, which proudly presented by SFC Benjanapadavu. और गेंदबाज इस वक्त कुमार गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट। ये गेंद इस बार एक्स्ट्रा क्विकर, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक वन, एंड द बॉल वेंट इनटू द हैंड्स ऑफ विकेट कीपर आफ्टर बीटिंग द बैट्समैन एंड देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ एनी रन। मच स्ट्रेट लाइन। और जहां तक सवाल है रनों का, रन इस गेंद पर बल्लेबाज को नहीं मिला। बेहतर गेंद थी गेंदबाज कुमार की। एक बार फिर से गेंदबाजी के मार्ग पर यहां पर आते हुए बिल्कुल प्रखर धूप मैदान पर छा चुकी है। और जहां तक माहौल का सवाल है तो क्रिकेट के लिए एक पर्याप्त माहौल इस मैदान पर छा चुका। सुबह के 10:30 यहाँ पर बच चुके हैं और धूप का प्रकोप इस बढ़ते हुए वक्त के साथ साथ बढ़ता हुआ यहाँ पर। और इस बीच कुमार अपनी उनकी अगली गेंद लेग स्टंप से काफी बाहर और इस बार रन के लिए दौड़ पड़े, नजदीकी मामला हो सकता है स्ट्राइकर एंड पर, लेकिन इससे पहले कि थ्रो पहुंचे बल्लेबाज 1 रन के साथ अपना छोड़ यहाँ पर बदल चुके थे। वाइड का इशारा, 1+1 2 runs now added to the total. And with that couple run, the scoreboard moving up to 16 for the loss of 1 wicket in the over number 2 in progress. और जहां तक बचे हुए रन्स का सवाल है तो 19 रन और चाहिए। 19 more runs now they have to score for victory in 2+ overs. That means in remaining 14 deliveries. और मैच का जहां तक सवाल है, मैच अभी भी बराबरी पर रुक चुका है। तो एक बेहतरीन एक्सक्विजिट लाइव टेलीकास्ट इस वक्त किया जा रहा है बेद्रा मीडिया द्वारा, जनाब इरफान इनके सारथ्य में। और जहां तक सवाल है इस वक्त फील्डिंग के नजरिए का, तो फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट यहाँ पर चलती हुई और कुमार काफी लंबा और उनका इस वक्त प्रगति पर। बाएं हाथ के बल्लेबाज लेफ्टी बैट्समैन मोहन इज नाउ गोइंग टू फेस कुमार। हियर ही कम्स। दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए बाएं हाथ के बल्लेबाज मोहन इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। और ये गेंद इस बार गेंद को ड्राइव करना चाहा, गेंद पैरों पर टकराई, रन से बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। एब्सोल्युटली फैंटास्टिक वन केम अलोंग द कार्पेट एंड वेंट इनटू द हैंड्स ऑफ एंड द बॉल आफ्टर बीइंग स्टकिंग टू द बैट्समैन्स लेग। विकेट कीपर जस्ट कलेक्टेड द बॉल कमिंग टुवर्ड्स हिज फ्रंट साइड एंड देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ एनी रन एंड द स्कोरबोर्ड स्टेज एट 16 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। और कुमार एक बार फिर से तैयार, गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए इस बार गेंद को ऑफ स्टंप से काफी बाहर निकलते हुए रन के लिए दौड़ पड़े और यहाँ पर यह विकेट गिर चुका है। वाइड का भी इशारा हो चुका है, विकेट भी यहाँ पर गिर चुका है रन आउट के रूप में। तो 1 रन उनके खाते में जुड़ेंगे। जोखिम भरा रन यहाँ पर चुराना चाहता है। लुक एट दिस इन द रिप्ले। देखिए किस तरीके से पहले मना किया था, बाद में बल्लेबाज दौड़ पड़े, लेकिन इससे पहले कि नॉन स्ट्राइक पर बल्लेबाज पहुंचे, थ्रो पहुंचता हुआ गेंदबाज के हाथों में, गेंदबाज ने तेजी के साथ विकेट चटका दिया। तो इसी के साथ 17 रनों पर दूसरा विकेट गिर चुका है। 17 for the loss of 2 wicket. 18 more runs. Now they have to score for victory in remaining 13 deliveries. 13 गेंदें बाकी, 18 रन चाहिए और लगभग बराबर का संघर्ष यहाँ पर जारी। नए बल्लेबाज
जयकर इस वक्त क्रीज पर मौजूद है, जो कि सामना करने के लिए तैयार रहा और ओवर की अगली गेंद लेकर गेंदबाज कुमार फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट इस वक्त करने के बाद अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार, अपनी ओर की अंतिम गेंद कहना पड़ेगा। दाहिने हाथ के बल्लेबाज इस वक्त सामना करते हुए जयकर काफी दूर दूर तक फैला हुआ क्षेत्र रक्षण हमें यहाँ पर दिखाई देता हुआ और कुमार अपनी ओर की अंतिम गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ ऊपर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए। तो इस वक्त बल्लेबाज तैयार नहीं थे, तो एक बार फिर से सामना करने के लिए तैयार कुमार की गेंदों का काफी तेज हवा मैदान की दाईं से बाईं और इस वक्त गुजरते हुए और जहां तक सवाल है अगली गेंद का, तो कुमार अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ ऊपर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए। लेग स्टंप पर आती हुई गेंद सही गेंद घोषित और इसी के साथ ओवर नंबर 2 की समाप्ति हो चुकी है। 2 overs completed, 17 runs on the board and 2 wicket loss for Raja Rajeshwari Goremar, and now they have to score 18 more runs for victory in remaining 2 overs. That means the required run rate for them is exactly 9 runs per over. एसएफसी क्रिकेटर शिवाजी नगर बेंजनपदव इन्होंने इस श्रृंखला का आयोजन किया अपने 5वें वर्ष के वर्षगांठ पर। In the celebration of their 5th year, they are organizing this fantastic tournament in the name of Benjanapadavu Premier League 2023. So, selected prestigious 12 teams are participating in this tournament in a league manner. And as far as this tournament is concerned, the second day of this tournament is now progressing here nicely. And match number 19 of this tournament is now going on here. और गेंदबाजी इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए और नया ओवर इस वक्त प्रारंभ होता हुआ। काफी धीमी प्रगति इस वक्त, अगर ओवर रेट को तुलना की जाए करीबन 15 मिनट बीत चुके हैं, सिर्फ 2 ओवर अब तक फेंके जा चुके हैं इस वक्त गेंदबाजों द्वारा। और ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार निजाम दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए। ओवर की पहली गेंद, ये गेंद पैरों पर टकराई, गेंद पहुंची शॉर्ट कवर पर, तेजी के साथ रन के लिए दौड़ पड़े। 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा, इससे पहले की गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 18 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। इट्स 18 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस। तो जहां तक सवाल है अगली गेंद का, तो यहां पर गेंदबाज अपनी गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए निजाम दाहिने हाथ राउंड द विकेट, ये गेंद इस बार गेंद को चिप किया, गेंद जाते हुए एक्स्ट्रा कवर की दिशा में 1 रन मिलेगा। इस बीच 1 ही रन से बल्लेबाज को संतुष्ट होना पड़ेगा और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है अब 19 रनों पर। 19 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। एक बेहतरीन क्रिकेट टीम एसएफसी क्रिकेटर्स। और जहां तक एसएफसी का सवाल है, आज उनके खिलाड़ी भरतराज इनका जन्मदिन है, तो हम भरतराज इनको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं यहाँ पर देते हैं। बर्थडे बॉय भरतराज, और मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे फॉर भरतराज द मेंबर ऑफ एसएफसी क्रिकेटर्स। और जहां तक सवाल है इस वक्त गेंद का, तो 1 रन इस गेंद पर मिला और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 20 2 विकेट के नुकसान पर। 20 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स, 15 रन टू गेट, 9 बॉल्स लेफ्ट इन द इनिंग्स। 9 गेंदें बाकी, 15 रन चाहिए। कम से कम 1 चौके या छक्के की इस वक्त जरूरत है यहाँ पर राजा राजेश्वरी गोरेमार को इस मैच में वापस आने के लिए। ये गेंद इस बार एक्स्ट्रा क्विकर, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक वन, मच स्ट्रेट लाइन। विकेट कीपर ने तेजी के साथ विकेट जरूर चटकाया, लेकिन बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद था और इस वजह से सब कुछ सुरक्षित उनके लिए। स्कोर इस वक्त रुक चुका है कुल मिलाकर 20 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर, 21 रनों पर, माफ कीजिए, 21 नाउ। वाइड का इशारा इस बीच हो चुका था अंपायर का। 21 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट, 14 मोर रन्स नाउ दे हैव टू स्कोर फॉर विक्ट्री इन रिमेनिंग 9 बॉल्स। और गेंदबाज निजाम
इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार बाउंड आउट. Absolutely fantastic one this time, and he just got the rid of the batsman. Just wanted to hit the ball on the onside area, not succeeded. The ball passed just wide off his bat and stuck to his off stump. Have a look at this in the replay. देखिए किस तरीके से. In fact, he just tracked onto the stumps at the last moment. बल्ले का भीतरी किनारा टकराने के बाद गेंद इस वक्त स्टम्प्सों पर टकराई थी. स्टम्प्सों पर गेंद को खींच लिया था. Just tracked onto the stumps at the last moment, and because of that, he lost his wicket. And wicket number 3 has been falling, and now they are looking in trouble. It's 21 for the loss of 3 wickets. 8 balls remaining in overall calculation. 14 more runs now they have to score for victory. Meantime, the next match, match number 20 is now coming up live and exclusively right in front of you right after this match between JKC Kalai versus SFC Benjanapadavu. And because of that, I request all the players of these two teams to please get ready for the next match. And as far as this match is concerned, the equal battle is now continuing here. Nizam, the new batsman, Madhav is now comes out to the middle और वो इस वक्त सामना करते हुए निजाम की गेंद का. गेंद को इस वक्त उछालना चाहा. गेंद पहुंची इस वक्त शॉर्ट कवर पर. रजा जब तक गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता, 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका. कुल मिलाकर 22 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर. 22 रन 2 विकेट के नुकसान पर. 3 विकेट के नुकसान पर. 7 balls left and 13 more runs now they have to score for victory. Last time in this over, Nizam दाहिने हाथ राउंड द विकेट. ये गेंद ऑन साइड पर उछालना चाहा. Absolutely brilliant piece of wicket keeping made by wicket keeper behind the stumps. जैसे ही गेंद चूकी, गेंद बल्लेबाज के बल्ले से विकेट कीपर के हाथों में पहुंचे और विकेट कीपर लगभग बिजली की रफ्तार में यहाँ पर स्टंपिंग करने में सफल. Have a look at this in the replay. देखिए किस तरीके से गेंद कौन साइड पर उछाला था. And this is an absolutely fantastic piece of stumping made by wicket keeper. तिलक का विकेट कीपर थे और इस बेहतरीन स्टंपिंग की बदौलत यहाँ पर विकेट गिर चुका है. 3 overs completed, 22 runs on the board for losing 4 wickets and 13 runs required for Raja Rajeshwari Goremar in the last over. ಅಲ್ಲಿ ಮೈದಾನದ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಾಹನಗಳನ್ನು ಅಡ್ಡಾದಿಡ್ಡಿಯಾಗಿ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಅದರ ಮಾಲಕರು ಅಲ್ಲಿಂದ ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹಲವಾರು ವಾಹನಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ವಾಹನಗಳನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಅಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಬೇಕು ವಾಹನದ ಎಲ್ಲ ವಾಹನಗಳ ಮಾಲಕರು. Dilip, the bowler is now brought into the attack. Last over starts in Raja Rajeshwari Goremar's innings. 13 runs required in the last over. और जहां तक सवाल है स्ट्राइक का, तो स्ट्राइक इस वक्त लेने के लिए तैयार माधव, जबकि नए बल्लेबाज का आगमन हो चुका है जितेश इस वक्त नॉन स्ट्राइक रन पर मौजूद. और 13 रन चाहिए अंतिम ओवर में. 13 required in the last over. They badly required at least 1 boundary or 6 at this stage to get back into this match in this last over. और देखते हैं अंतिम ओवर में चौका या छक्का यहाँ पर बल्लेबाज लगा पाते हैं या नहीं. फील्डिंग में इस वक्त जमावट हो चुकी है और इस बीच गेंदबाज दिलीप गेंदबाजी इस वक्त आरंभ करते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार. ऑफ स्टंप से काफी बाहर शॉर्ट थर्ड मैन पर गेंद पहुंची और इसी के साथ वाइड का इशारा. 23 now, 12 required, 6 balls remaining. और वाइड के साथ यहाँ पर शुरुआत कर चुके हैं और निस्संदेह यहाँ पर 1 रन तोहफे के रूप में, उपहार के रूप में वो इस वक्त प्रदान करते हुए सामने वाली टीम को. और स्कोर इस वक्त बढ़कर पहुंच चुका है इस वाइड के रन के साथ 23 रनों पर. 12 रन अब चाहिए. गेंदें बाकी है 6. और दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस वक्त गेंद को उछालना चाहा. गेंद पहुंचे सीले मैदान पर, रन के लिए दौड़ पड़े. काफी ऊंचा थ्रो, लेकिन इस बार ये विकेट गिर चुका है. यहाँ पर विकेट उखाड़े गए थे. हालांकि थोड़ा सा ऊंचा सा थ्रो जरूर था, लेकिन थ्रो को क्लीन पिकअप करते हुए इस वक्त स्टंप्सों पर गेंद को लगा दिया. गिल्लियां बिल्स उड़ा दिए और बल्लेबाज का बल्ला, बैट जो कि हवे में था, द बैट वाज इन द एयर व्हेन द स्टंप्स हैव डिस्टर्ब्ड बाय द बॉलर. और इसी के साथ रनआउट के रूप में विकेट यहां पर गिर चुका है. 5 गेंदें अब बाकी, 12 रन चाहिए. 12 runs required in remaining 5 balls. 5 wickets down for Raja Rajeshwari Goremar, and still they got 5 wickets in their hand. New batsman, number 7 batsman is now coming out to the middle, Prajwal, और वो इस वक्त
सामना करने नॉन स्ट्राइकर पर मौजूद। फिलहाल स्ट्राइक इस वक्त लेने के लिए तैयार जितेश, और 5 गेंदों में चाहिए 12 रन इस वक्त विजय के लिए। और गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दिलीप, और ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार। तैनात राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार गेंद को उछालना चाहा, गेंद पहुंची शॉर्ट थर्ड मैन पर, मिसअंडरस्टैंडिंग का और विकेट का पतन यहां पर हो चुका है रनआउट के रूप में। बल्लेबाज के बल्ले से गेंद चूकी थी और जैसे ही गेंद शॉर्ट थर्ड मैन पर पहुंची, नॉन स्ट्राइकर के बल्लेबाज ने रन लेने की हड़बड़ाहट दिखाई, लेकिन वहां पर स्ट्राइकर के बल्लेबाज वहीं पर खड़े रहे और आसान सा रनआउट इस वक्त होता हुआ नॉन स्ट्राइकर पर। 12 रन चाहिए, 4 गेंदें बाकी अब उनकी पारी में। And we are just waiting for the number 8 batsman of Rajeshwari Goremar. Rohit, the number 8 batsman, is now coming out to the middle at the non-striker end. Meantime, the striker is Jitesh. और जितेश इस वक्त सामना करने के लिए तैयार, जबकि गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दिलीप। निस्संदेह अब ऐसा कहना पड़ेगा चौके या छक्के ही राजेश्वरी गोरेमार को इस मैच में वापस ला सकते हैं। और इस बीच गेंदबाज दिलीप दाहिने हाथ राउंड द विकेट, गेंद इस बार गेंद को उछाला है, काफी ऊंचा गेंद जाती हुई लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। और इस छक्के के साथ नाउ आई मस्ट से राजेश्वरी गोरेमार आर नाउ बैक इन द गेम। 6 रिक्वायर्ड, 3 balls रिमाइनिंग। और छक्का इस वक्त यहां पर लग चुका है, जितेश के बल्ले से यह छक्का लग चुका है। एब्सोल्युटली फैंटास्टिक स्ट्राइक, जस्ट गॉट दैट वन राइट फ्रॉम द मिडल ऑफ द बैट एंड lofted that one in a style over long on fence for a boundary, for a 6 in fact. And 6 required, 3 balls remaining, and the match is now still in balance. तो दिलीप इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए और जितेश छक्का लगाने के बाद अब देखना ही है कि वो अपनी अगली गेंद पर किस तरीके की बल्लेबाजी अपनाते हैं। एंड नाउ स्ट्रेट अवे द बाउलर इज नाउ अंडर प्रेशर। और इस वक्त तैयार, दाहिने हाथ राउंड द विकेट, 6 रिक्वायर्ड ऑफ 3 balls। दाहिने हाथ ओवर द विकेट, झुके विकेट कीपर झुके, रन आउट का खतरा इस बीच, और इसी के साथ यह विकेट यहां पर गिर चुका है। रन लेना चाहता नॉन सेकंड के बल्लेबाज इससे पहले कि स्ट्राइकर एंड पर पहुंचे। शॉर्ट थर्ड मैन फील्डर ने गेंद को फील्ड करने के बाद विकेटों पर निशाना दागा और उनका निशाना बिल्कुल सही बैठता हुआ। अब जितेश ऑफ द स्ट्राइक हो चुके हैं, 6 रन चाहिए, 2 गेंदें बाकी, 6 रिक्वायर्ड इन रिमाइनिंग 2 डिलीवरीज। So 7 wickets down and we are just waiting for the number 9 batsman. आशिक नंबर 9 बल्लेबाज की हैसियत से इस वक्त क्रीज पर कदम बढ़ाते हैं। फिलहाल उन्हें नॉन स्ट्राइकर एंड पर जाना होगा, जबकि स्ट्राइक इस वक्त लेने के लिए तैयार रोहित। और तो इस वक्त सामना करने के लिए तैयार आशिक, जबकि रोहित माफ कीजिए जितेश इस वक्त ऑफ द स्ट्राइक हो चुके हैं। और आशिक इस वक्त सामना करते हुए 6 रन चाहिए, 2 गेंदों में, 6 रिक्वायर्ड ऑफ लास्ट 2 balls। गेंदबाज दिलीप गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए मैच एक दिलचस्प मोड़ पर आकर इस वक्त रुक चुका है। दाहिने हाथ राउंड द विकेट, दाहिने हाथ के बल्लेबाज सामना करते हुए इस वक्त यह गेंद इस बार गेंद को ड्राइव कर दिया खूबसूरती के साथ, लॉन्ग ऑफ की दिशा में गेंद जाती हुई 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा। दूसरे रन के लिए बल्लेबाज दौड़ पड़े, स्ट्राइकर रन पर थ्रो पहुंचा, लेकिन तीसरा रन लेना चाहते हैं, लेकिन यहां पर तीसरा रन नहीं मिलेगा। सो जितेश कीप्स द स्ट्राइक एंड 4 रिक्वायर्ड इन द लास्ट बॉल। अंतिम गेंद बाकी, 4 रन चाहिए। और खुशी की बात यह है राजेश्वरी गोरेमार के लिए कि जितेश इस वक्त स्ट्राइक पर आ चुके हैं। सो 8th विकेट डाउन एंड 4 रिक्वायर्ड ऑफ लास्ट बॉल। जितेश स्ट्राइक इस वक्त लेने के लिए तैयार, जबकि गेंदबाजी इस वक्त करते हुए दिलीप मैच की अंतिम गेंद लेकर तैयार। तो नंबर 10 बल्लेबाज इस वक्त क्रीज पर कदम बढ़ाते हुए, मैच अभी भी एक दिलचस्प मोड़ पर आकर रुक चुका है। और जहां तक सवाल है इस वक्त अंतिम गेंद का, तो अंतिम गेंद में चाहिए विजय के लिए 4 रन। और इस वक्त जितेश सामना करने के लिए तैयार, नए बल्लेबाज का आगमन हो चुका है इस वक्त प्रशांत का, जो कि नॉन स्ट्राइकर एंड पर
इस वक्त उन्हें जाना होगा, कुछ बातचीत इस वक्त करते हुए. 3 for tie, 4 for win, and the last ball remaining in their innings. तो 3 रन चाहिए टाई के लिए, 4 रन चाहिए विजय के लिए. मैच निर्धारित गेंद लेकर तैयार गेंदबाज दिलीप सामना करते हुए इस वक्त जितेश. Here we go. The last ball of the match is now coming up. Here this time bowled him, and he's got the breakthrough in the final delivery, and a thrilling victory for Young Boys Polali against Raja Rajeshwari Goremar by 3 runs, and with that 3 run thrilling victory, Young Boys Polali back the complete points. So what a fantastic match ended just short while ago. And the next match is now coming up live exclusively right in front of you between JKC Kalai versus SFC Benjanapadavu. And that match starts within just a while. And till then we are taking a short break. और एक छोटे से ब्रेक के बाद हम आपके सामने उपस्थित होंगे अंग्रेजी में सतीश के साथ जब मैच नंबर 20 की शुरुआत यहाँ पर होगी. और तो अब वक्त है एक ब्रेक का. नाउ इट्स टाइम फॉर ब्रेक. थैंक यू, धन्यवाद. So man of the match of this match, undoubtedly the man who controlled in the last over of the batsmen of Raja Rajeshwari Goremar, and he just won the match for his team with his bowling, fantastic bowling. Not also in the fantastic bowling, but in the batting, he also contributed 15 runs. Dilip of Young Boys Polali, Dilip of Young Boys Polali, adjudged man of the match. I request Mr. Dilip of Young Boys Polali, please come on to the stage and receive the man of the match from organizers. Dilip of Young Boys Polali, please to be reported here to receive the man of the match award. And we'll be back right after the short break with Satish in English when the next match will going to start. Thank you. Dhanyavad. ದಯವಿಟ್ಟು ದಿಲೀಪ್ ಅವರು ವೇದಿಕೆ ತೆರಳಿ ತಮ್ಮ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಶ್ರೀಯುತ ಸುರೇಶ್ ಕುಳಾಲ್ ಇವರಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗ ವಿನಂತಿ. ಈಗಾಗಲೇ ತಮ್ಮ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ದಿಲೀಪ್ ಅವರು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಂದಿನ ನಮ್ಮ ಸಮಾರಂಭದ ಅತಿಥಿಯಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಸುರೇಶ್ ಕುಳಾಲ್ ಇವರಿಗಾಗಲೇ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠನಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಗೊಂಡಂತಹ ದಿಲೀಪ್ ರವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ JKC Kulai ಹಾಗೂ JKC Kalai ಹಾಗೂ SFC ಬೆಂಜನಪದವು ತಂಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. SFC ಬೆಂಜನಪದವು ಇದರ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಇತರ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ತಮ್ಮ SFC ಇದೆ JD ಬಾಯ್ಸ್ JKC ಕಲಾಯ್ ತಂಡದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ಲೇಯರ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. JKC ಕಲಾಯ್ ತಂಡದ ಇತರ ಆಟಗಾರರು ದಯಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಡೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹನ್ನೆರಡನೇ ಆಟಗಾರ JKC ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಪಂದ್ಯಾಟ ಆರಂಭ ಮಾಡಲು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ದಯಮಾಡಿ 12ನೇ ಆಟಗಾರ ಬರಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ JKC ಕಲಾಯ್.
After won the toss, captain of JKC, Kalai elected to field first, so that first over and Chandrasekhar facing his first ball and outside the line of leg stump and well within the reach of the batter, so that no question of any run in dedication. Wicketkeeper behind the stump did the rest and back to bowler. Zahid with the jersey number 17 will go into ball second delivery. Pass umpire Ansar. Right arm over the wicket to Chandrasekhar. This time again nicely bowled. Oh, going to be a suicider. Absolutely going for the blind run. Pays the penalty for that. After ball hitting the leg, went towards the hands of a short fine leg. And Chandrasekhar this time without seeing the ball just wanted to get the single. Pays the penalty for that. Wicket number first which is back into pavilion. It's a 0 for the loss of 1 wicket. And it's a blind attempt there from Chandrasekhar. Actually, there is no chance at all for any run. Ball went very quickly to the fielder. So new batsman in. Sachin is a new batter in. With a lot of responsibilities, just walking towards the middle. Coming back to the SFC B. And so far... So far, out of 2 matches in the league matches, SFC couldn't manage to open the account in the points table. And that's why this is a more important match here for SFCB to get the victory. And so that they can open the account in the points table. For that, they need to perform very well because they're playing against one of the top team. JKC Kalai, they won all matches of their league match. Zahid, the right arm over wicket balls to Sachin. Sachin this time misjudging the line of the ball. He thought it might be a wide, but well within the reach of the batter, so that one more dotted delivery. Yet to open the account, it's a 0 for the loss of 1 wicket. Zahid is doing a right job here. After winning the toss, selected to field first. Everything is going in their favour. Zahid. Right arm over the wicket balls again. This time it's going to be a wide. And this time Zahid once again tried to ball that same line around the legs of the batter. But this time he's lost his concentration over the line. Ball going down the leg stump. And first run comes up here for SFC Benjanapadavu B. 1 for the loss of 1 wicket. Zahid again with a short run up. Right arm over the wicket again. Sachin wanted to get a single here. A chance of run out. It's going to be... not out call by umpire. The batsman just in, and before that ball hits the stump. Lucky escape here for the batter. Bharat just survived from that run out, and one more run added total. It's a 2 for the loss of 1 wicket. The over number first is in progress. Bharat. This time beautifully balled. Zahid really doing a fantastic job in this over. Beaten by the pace. And the quicker one there from Zahid, and Bharat fails to make a contact with the bat. Then wicketkeeper behind the stump did the rest. Back to bowler. Zahid again. Away from us. Right arm over the wicket to the right-hand batter. Begin a lovely delivery. Fantastic start for the first over. And after completion of first over, searching for the right track. SFC are struggling in the middle. They are 2 for the loss of 1 wicket after completion of 1 over. So SFC cricketers Shivajinagar Benjanapadavu organizing this cricket tournament. This is a 5th year cricket tournament, and Benjanapadavu Premier League 2023. The winners will go to get cash prize of rupees 40,000 with the very attractive BPL trophy. The runner will go to get cash money of rupees 20,000 with the BPL trophy, and some attractive individual prizes for best batsman, best bowler, and man of this series. And every matches there is a man of the match, and best wishes which is coming from Gori Young Boys Pandeshwar, one of the most popular team in South Kenda district.
Meanwhile, second over going to start from the commentary box end. Mufid is the bowler. Mufid will go into bowl to Sachin. So for Sachin, there is a deep mid wicket, one at wideish long on, one at a straight long on. Long off is there, deep wideish long off. That means in front of wicket, a lot of protection has been given because of the reason that the direction of the wind is really encouraging the batsman to go for the stroke on the in front of the wicket. So starts with a very good delivery there from the bowler Mufid, and scoreboard remains at 2 for the loss of 1 wicket to Mufid. Right over wicket balls. This time going for the drive. Ball is in the air. They're going for the single, and they manage to complete the single at last moment. And with that single, Skopan moves on to 3 for the loss of 1 wicket against a strong bowling department of team JKC Kalai. The batters are a little bit struggling to get the runs. So meanwhile, the next match will be played between SFC A versus JD Boys Amunje. So that I request both the teams' captain please be reported here immediately for the tossing ceremony. Meanwhile, one more addition to total. With that addition of that single, Skopan moves on to 5 for the loss of 4 for the loss of 1 wicket in the over number second in progress. Mufid. 4 time in this over. Right arm over the wicket balls to Sachin. Sachin again. That ball is just hitting his legs. Looks like it's going to be one more leg by. And very hard to get the ball to the bat against the bowling of Mufid. They're bowling a lot of quicker one, faster one. And even is bowling against the direction of the wind, but bowling with a lot of pace. So that brings the batsman Bharat into strike now. Again, Bharat going for the expansive drive, and wicketkeeper missed it completely by call by umpire. One more addition. With the addition of that single, Skopan was on to 6 for the loss of 1 wicket. Very hard to combine the runs against the bowling of Mufid. So far, the two opening bowlers did a great job here for Jai Karnataka. Kalai are looking in a commanding position after winning the toss. Right arm round the wicket he balls. Again going for the drive. Again he missed it. Absolutely fantastic over which is comes in. And after completion of over number 2, again SFC Benjanapadavu are searching for the right track, struggling in the middle. It's 6 for the loss of 1 wicket. Round the wicket. Again going for the drive, and Jasim is one more bowler with the start. Jasim starts with the delivery, which is dotted one outside the run of off time. The wicket keeper behind the stump is very impressive as he collects the ball very nicely behind the stump, and there is no chance at all for any run. Jasim bowls this time lofted but straight to the hands of fielder. Long off fielder was standing there in the deep long off, and he's not really moved at all. Where he's standing, ball came straight to the hands of the fielder, and he completes the catch. And wicket number second, which is back into pavilion. Bharat back into pavilion, looking for the youth stoke, but he didn't got the distance. Santosh is a new batsman in SFC, being the host of this team, this tournament, and so far they are not having a good start here. Shackling start, 6 for the loss of 2 wicket, and Santosh and Sachin, the two batters, are in the middle. Jasim bowls outside and off stump, and he got a little bit bat onto that, so that he got a single. So Santosh is off the mark, and Skopan moves on to 7 for the loss of 2 wicket in the over number 3 is in progress. A very good bowling performance continues here for JK Kalai. Again, they're going for the drive. Chance of run out in the non-strikers, and that is gone. Sachin looking for the quick single, but bowler Jasim on his follow through picks the ball, returns the ball into the non-strikers, and hits the stump. Sachin back into pavilion.
Disappointment continues here for SFC, and the new batsman Bharat walking towards the middle. The Bharat B. Already one Bharat is back into pavilion. It's a tall Bharat. Now is a little master. Bharat coming to the middle. Walking towards the middle. Jasim balls. Rise at one. But straight to the chance of the field. Chance of run out in the strikers. And one more wicket is back into pavilion in the form of run out. Non-striker not responding at all. Have a look at that one. And because ball went straight to the hands of fielder, and maybe a little bit fumble, but non-striker is not interested. It's a 7 for the loss of 3 wickets back into pavilion. 4 wickets back into pavilion. So last time in this over, Jasim will go into ball to the new batter, Prajwal. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕರೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. SFC ಬೆಂಜನಪದವು ಎ ಹಾಗೂ JD ಬಾಯ್ಸ್ ಅಮ್ಮುಂಜೆ ಇದರ ನಾಯಕರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಮ್ಮ ನನ್ನ ಟೀಮಿಗೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮೀನ್ ವೈಲ್ ball which is hitting a leg, so that one more single. They're looking for the second. In comes the throw from the deep. One more run out taken place. Prajwal going for the second. No response coming from Bharat. He's back into pavilion. It's 8 for the loss of 5 wicket. So Sahi is the batter, the Sahil is the bowler. So Sahil bowls the last over. Starts with the warm-up delivery outside the non-break stump and going to be a wide with that wide covered Mozan to 9 for the loss of 5 wicket. Sahil to Sai. Young cricketer Sai facing his first delivery. Sahil round the wicket, drives that one. And managed to get the single down to deep long on. With that single, Skoban was on to double figure, very hard fought double figure, 10 for the loss of 5 wickets. The last 5 deliveries remaining in their innings. Prajwal is on strike, needed 1 or 2 big shots in this last over to get some respective total. This time, big white, far outside line of off stump, and with that 1+1, 2 more to the total, and 12 for the loss of 5 wicket. Sahil again back to his bowling mark. Right arm from the wicket, he balls to side riser nicely down to deep long off. But the ball will be stopped by the fielder going for the second. And batsman completed 2 valuable runs. With that couple of runs, Koban was on to 14 for the loss of 5 wicket. 14 on the board. In last over is in progress. Sai taking the initiative of getting some acceleration in that last over. Much required some big shot. This time again tries that one nicely. Again they're looking for the second. In comes the throw. They completed a couple of runs. So Sai really contributing very well in this last over. 16 for the loss of 5 wicket in another 3 balls remaining in their innings. Sahil again that wide 1+1, 2 more to the total. So runs which is coming here for team SFC Benjanapadavu in the form of extra 18 for the loss of 5 wicket. Sahil bowling a first expensive over. 10 runs came from that over.
Drives that one down to deep mid wicket region, running hard, looking for the second. In comes the throw, and looks like the batsman out is short of his crease. Sai tried his level best to complete that run, but the throw which is very good indeed from the fielder. And a perfect throw indeed. Have a look at the throw, that one. Absolutely just over the bills. And Sai is finding himself out of the crease. He's contributed very well. Small cameo from Sai. He's scored 6 valuable runs in just 3 deliveries and 19 for the loss of 6 wicket. Sanat is a new batter. 2 deliveries remaining. Again went for the drive. And the backward point fielder fields the ball. One more addition. With the addition of that single scored moves on to 20 on the board. The much required runs coming in this last over. 12 in that last over. Side. Last delivery. Sanat is on strike. Lofted it! And he lofted and he got the distance. A fantastic way to finish the match. Finish the innings. Sanat hitting that 6. Beautifully driven. 18 runs, very costly runs came from that last over. And scoreboard is 26, which is a total score. 27 will be the target for team SK Kalai. JKC Kalai, they got a target of 27 to win this match. And we didn't see how well they were going to get these runs. And JKC Kalai, I think in the end, they got some runs. But Sahil is bowled expensive 18 runs deliveries. 27 required from 24 balls. And we didn't see how JKC Kalai will going to get that one. And we didn't see how SFC Benjanapadavu will going to restrict that one. So time to change in commentary box. It's over to Gopi. Thank you. Dhanyawad Satish. So 18 runs came from the last over from the innings of SFC Benjanapadavu, and because of that they finished well. 26 runs they scored in the stipulated 4 overs, and now the target for JKC Kalai is 27. They have to score for victory in the stipulated 4 overs with the help of 10 wickets. The present equation shows for them with the required run rate of exactly 6.75 runs per over. They have to score for victory, and their innings now going to start. और पहली गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाज तैयार। जहां तक सवाल है इस वक्त इरशाद और जाशिम आरंभिक बल्लेबाज, जबकि गेंदबाजी प्रज्वल
गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए और प्रज्वल अपनी ओर की पहली गेंद लेकर तैयार। 27 रन इस वक्त बनाने हैं लेग स्टंप से बाहर एंड ही जस्ट स्टार्ट्स ऑफ विद अ वाइड और वाइड के इस रन के 7 रनों का सिलसिला यहां पर शुरू हो चुका है। एक रन बिना किसी नुकसान के और एक बार फिर से प्रज्वल गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज इरशाद इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। ड्राइव किया इस वक्त खूबसूरती के साथ, गेंद पहुंची इस वक्त लॉन्ग ऑफ की दिशा में, गेंद इस वक्त लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। तो इस बार गेंद को नो बॉल का भी इशारा हो चुका है और चौका इस वक्त प्राप्त करते हुए खूबसूरती के साथ गेंद को निकाला था इनटू द गैप एज वेल बिटवीन लॉन्ग ऑफ एंड लॉन्ग ऑन एंड बिकॉज ऑफ दैट इट्स गॉट 4 रन्स फॉर दैट स्ट्रोक। 5 रन्स ओवरऑल कैलकुलेशन एडेड टू द टोटल और इन 5 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 6 रनों पर बिना किसी नुकसान के। 6 विदाउट लॉस, फ्री हिट गेंद इस वक्त बल्लेबाज के लिए और गेंदबाज एक बार फिर से तैयार। दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार गेंद को ड्राइव किया खूबसूरती के साथ इस बार, लेकिन लॉन्ग ऑफ पर फील्डर मौजूद, नॉट मोर देन अ सिंगल और इस एक रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 7 रनों पर। 7 विदाउट लॉस, 27 दे हैव टू स्कोर इन द स्टिपुलेटेड 4 ओवर्स with the required run rate of exactly 6.75 runs per over। अगली गेंद ये गेंद ऑन साइड पर उछालना चाहा, पैरों पर गेंद टकराई, गेंद पहुंची शॉर्ट स्कोर लेग पर और एक रन का इजाफा यहां पर हो चुका है और एक रन के इजाफे के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 8 रनों पर, जबकि पहला ओवर उनकी पारी का यहां पर प्रगति पर, पहला और एकमात्र पावर प्ले ओवर उनकी पारी का इस वक्त प्रगति पर और ये गेंद इस बार बल्ले का बाहरी किनारा थर्ड मैन की दिशा में गेंद पहुंची और एक रन के साथ दोनों बल्लेबाज अपना छोड़ यहाँ पर बदल चुके हैं। तो एक रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 9 रनों पर। 3 गेंदें अब तक फेंकी जा चुकी है। फिर से एक बार गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए ये गेंद इस बार दिस इज गॉन ऑल द वे, इट्स अ ह्यूज वन एंड 6 डिक्लेयर्ड बाय अंपायर और छक्का इस वक्त जुड़ चुका है उनके खाते में और बेहतरीन स्ट्रोक इस वक्त जाशीम के बल्ले से लगता हुआ और स्कोर इस छक्के के साथ बढ़कर पहुंच चुका है 15 रनों पर। 15 विदाउट लॉस in the upper number, first in progress, just 12 runs more runs now they have to score for victory or in this situation the equation seems to be much easier for them। इस बार एक रन का इजाफा ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಜೆಡಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಮುಂಜೆ ತಂಡದ ನಾಯಕರಿಗೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ। ಟಾಸ್ಗಾಗಿ ಎಸ್ಎಫ್ಸಿ ಬೆಂಜನಪದವು ಎ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಟಾಸ್ಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಯ್ತಿದ್ದಾರೆ। ಜೆಡಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಮುಂಜೆ ತಂಡದ ನಾಯಕ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು। तो इस बीच ये गेंद लेग स्टंप पर आती हुई गेंद को इस वक्त उछालना चाहा, वाइड का इशारा और वाइड के इस रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 17 रनों पर बिना किसी नुकसान के। 17 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर, फर्स्ट इन प्रोग्रेस। गेंदबाज की ओर की ये गेंद प्रज्वल की लेग स्टंप से कुछ ज्यादा बाहर की ओर नहीं निकल रही थी, सही गेंद घोषित था और रन से इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। ओवर की समाप्ति हो चुकी है, पहले ओवर की समाप्ति, 17 रन बच चुके हैं। 17 the score after completion of first over। Just 10 more runs now they have to score for victory in remaining 3 overs. That means in 18 deliveries with a required rate of exactly 3.33 runs per over। Next match, JD Boys Amunje will take over SFC Benjanapadavu in the next match, and because of that I request the captains of these two teams to please report to the stage immediately for toss। So JD Boys Amunje are won the toss against SFC Benjanapadavu A, and what the decision they are taking, just we have to wait and see। So back to this game और जहां तक सवाल है गेंदबाजी, साई इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए और दूसरा ओवर उनकी पारी का यहाँ पर शुरू होता हुआ, पहली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद बेहतर गेंद थी, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक वन, जस्ट kept low at the last moment and went into the hands of wicket keeper after beating the batsman। और स्कोर इस वक्त बल्लेबाज को नहीं मिला और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 17 रनों पर बिना किसी नुकसान के। गेंदबाज की ये गेंद इस बार बाउंड आउट ऑफ स्टंप, स्टक टू द ऑफ स्टंप एट द लास्ट मोमेंट एंड दैट इज द विकेट नंबर 1। जाशीम की पारी समाप्त, ऑन साइड पर गेंद को उछालना चाहता और पहला विकेट यहां पर गिर चुका है। 17 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर, सेकंड इन प्रोग्रेस फॉर जेकेसी कलाई।
तो इस वक्त जाशिम के आउट होने के बाद अशरफ का आगमन यहाँ पर होता हुआ. अशरफ द मैन इज नाउ कम्स आउट टू द मिडल एज अ नंबर 3 बैट्समैन फॉर JKC Kalai. Still they have to score 10 more runs for victory in remaining 2+ overs. और साई इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए अशरफ के लिए दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए 16 balls in overall calculation left in their innings. 10 more runs now they have to score for victory. ये गेंद इस बार उछाला खूबसूरती के साथ लॉन्ग ऑन पर गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए. Really, the ball went like a bullet at the last moment. He hit that one pretty hard, just wide of the long on fielder. In fact, and because of that, he's got a bounty for that stroke. Perfect stroke came from the bat of Ashraf. और इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 21 रनों पर. It's 21 for the loss of 1 wicket now. और अगली गेंद इस बार टिप किया लॉन्ग ऑन पर, लेकिन straight to fielder at long on. Can't find the gap as well. And finally, long on fielder made no mistake. One more wicket fall on, second wicket down. 21 for 2 now. In the second over for JKC Kalai. Just 6 more runs now they have to score for victory. In remaining 14 deliveries. So अशरफ के आउट होने के बाद रमीज का आगमन यहाँ पर होता वन नए बल्लेबाज के रूप में इस वक्त क्रीज पर कदम बढ़ाते हुए. और नॉन स्ट्राइक रन के बल्लेबाज इरशाद से इस वक्त कुछ बातचीत करने के बाद अपने स्वस्थान पर वो इस वक्त पहुंचते हुए. कोई जल्दबाजी की इस वक्त जरूरत नहीं है. 14 गेंदें बाकी हैं, सिर्फ 6 रन चाहिए इस वक्त विजय के लिए JKC कलाई के लिए. और इस बीच गेंदबाज की ओर की अगली गेंद दाहिने हाथ राउंड द विकेट उछाला लॉन्ग ऑन पर और इस छक्के के साथ नहीं, इस बार बेहतरीन कैच लपकने में सफल. And that is an absolutely outstanding catch taken by this fielder. Have a look at this in the replay. किस तरीके से गेंद को इस वक्त लपका था, उछाला था. देखिए absolutely perfect स्ट्रोक. और जैसे ही गेंद सीमा रेखा को पार करे अपने ऊपर की ओर छलांग लगाते हुए इस कैच को लपका उन्होंने. Absolutely magnificent catch taken by the long on fielder just inside the fence. And because of that fantastic catch, the band is now backing to the pavilion. Is Ramiz out for a golden duck. And one more wicket fallen. It's 21 for the loss of 3 wickets. आतिर का आगमन यहाँ पर होता हुआ और गेंदबाज इस ओवर में अंतिम बार तैयार. साई गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए. तो साई गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए इस वक्त आतिर के लिए. और इस बीच अपनी अगली गेंद लेकर तैयार दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए. दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए ये गेंद ऑन साइड पर गेंद को बोलना चाहा. नॉट क्वाइट मिडल विकेट एट द लास्ट वन. इज गॉट अ सिंगल फॉर दैट स्ट्रोक. और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 22 रनों पर. 22 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट. 2 overs completed and just 5 more runs now they have to score for victory. 2 overs remaining in overall calculation in their innings. So Bharat, the bowler, is now brought into the attack and the first ball of his fresh over is now coming up. और दाहिने हाथ के बल्लेबाज इस वक्त सामना करने के लिए तैयार. द फर्स्ट बॉल ऑफ द थर्ड ओवर ऑफ द इनिंग्स इज नाउ कमिंग अप. ये गेंद ऑन साइड पर गेंद को उछालना चाहा. इसको इनसाइड एज ऑन दैट. और जब तक गेंद शॉर्ट फाइल लेग फील्ड हो 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है. 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 23 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर. 4 रन न सिर्फ चाहिए विजय के लिए. 4 required in just 11 deliveries. और गेंदबाज की ये गेंद इस बार ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए शॉर्ट थर्ड मैन फील्डर चूके 1+1, 2 runs now added to the total in the face of wide. And that wide couple of runs brought JKC Kalai more nearer to the victory. अगली गेंद ये गेंद उछाला और this time he finished the match in a style with a 6. Comprehensive victory for JKC Kalai by 7 wickets with 10 balls to spare in their innings, and with that victory they back the complete points. So the next match, SFC Benjanapadavu A will take over JD Boys Amunje. So JKC Kalai, they registered their 4th victory in this tournament. They won all 4 matches and they are now looking in a commanding situation to qualify for the playoff of this tournament. So the next match is now going to play between SFC Benjanapadavu versus JD Boys Amunje, and that match is now starts with Rajesh while
टिल देन वी आर टेकिंग ए शॉर्ट ब्रेक और एक छोटे से ब्रेक के बाद हम आपके सामने उपस्थित होंगे अंग्रेजी में सतीश के साथ जब अगले मैच की शुरुआत यहाँ पर होगी। धन्यवाद, थैंक यू। मेडन विकेट इज जाते So man of the match of this match, the award goes to the bowler who bowled brilliantly in this match. He bowled a maiden over. In fact, Zaid, the bowler, adjudged the man of the match. Zaid of JKC Kalai adjudged the man of the match because of his fantastic bowling performance for maiden over, and because of that. Request. In fact, he scored. He conceded just a single runs in that over in the face of wide. And I request Mr. Zaid to please come onto the stage and receive the man of the match award from the organizers. Suresh Salian, I request one of our guests, Mr. Suresh Salian, kindly distributing this award to Mr. Zaid of JKC Kalai, the man of the match award. So the match starts now between SFC Benjanapadavu A versus JD Boys Samunje. So SFC Benjanapadavu A is now going to bat, and first ball of the match is now coming up. और गेंदबाज इस बार ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए और आखिरकार गेंद को खेलने के प्रयास में चूके रन से बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। I request the extra player of JD Boys please to be reported here to tell the player's name. और जहां तक गेंदबाजी का सवाल है, इस वक्त गेंदबाजी तस्लीम इस वक्त प्रारंभ कर चुके हैं। दीपक के लिए ऑफ स्टंप से बाहर गेंद निकलती हुई इस वक्त। और जहां तक रनों का सवाल है तो रन्स मिलेंगे एक वाइड के रूप में, और वाइड के इस रन के साथ रनों का सिलसिला यहां पर शुरू हो चुका है। एक रन बिना किसी नुकसान के पहला ओवर इस वक्त शुरू हो चुका है और गेंदबाज एक बार फिर से तैयार। बाएं हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए, ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए और एक बार फिर से वाइड का इशारा, और वाइड के इस रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 2 रनों पर बिना किसी नुकसान के। तो कुल मिलाकर मैच नंबर 23 इस टूर्नामेंट का यहां पर खेला जाता हुआ बेंजनापदावु प्रीमियर लीग 2023 के अंतर्गत 4 ओवर प्रति पारी खेले जाएंगे। पहला पावर प्ले ओवर इस वक्त जारी, ऑन साइड पर गेंद को स्विंग करना चाहा, मिसअंडरस्टैंडिंग की बदौलत यहां पर यह विकेट गिर चुका है और आखिरकार बल्लेबाज भविष्य आउट होकर पेविलियन वापस लौटते हुए। तो ये पहला विकेट यहां पर गिर चुका है और मिसअंडरस्टैंडिंग, और दीपक जो कि गेंद को खेलने के बाद सीधे दौड़ पड़े थे दूसरे छोर पर, लेकिन आखिरकार दीपक इस वक्त आउट होकर पेविलियन वापस लौटते हुए। और निस्संदेह ऐसा कहना पड़ेगा ये एक बहुत ही बड़ा झटका इस वक्त साबित होगा, क्योंकि दीपक एक बेहतर बल्लेबाज के रूप में जाने जाते हैं एसएफसी बेंजनापदावु के, और यहाँ पर उनका विकेट गिर जाने की वजह से इस वक्त एसएफसी बेंजनापदावु के ऊपर दबाव साफ दिखाई देता हुआ। 2 रनों पर पहला विकेट खो चुका है। दीपक आउट होकर पेविलियन वापस लौटते हुए। इट्स 2 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट।
तो यहाँ पर पहला विकेट खो चुका है दीपक के रूप में, 2 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और नए बल्लेबाज सुशांत इस वक्त बल्लेबाजी के मार्ग पर आते हुए और पहला ओवर उनकी प्रगति पर। तस्लीम इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए और सुशांत इस वक्त अंपायर से गार्ड लेते हुए इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। ओवर की पहली गेंद, ओवर की अगली गेंद कहना पड़ेगा, बाएं हाथ राउंड द विकेट। ये गेंद इस बार टॉप एज मौका, लेकिन फील्डर काफी पीछे लॉन्ग ऑफ पर। और इससे पहले कि आफ्टर फर्स्ट बाउंस पहले टिप्पे के बाद गेंद को फील्ड करे बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका 3 रन 1 विकेट के नुकसान पर। निस्संदेह जहां तक एसएफसी बेंजनपदव ए का सवाल है, इस वक्त उन्हें चाहिए एक साझेदारी यानी पार्टनरशिप, क्योंकि पहला विकेट दीपक के रूप में पारी के पहले ही ओवर में इस वक्त गिर चुका है। तो इस वक्त बचे हुए बल्लेबाजों को, खासकर क्रीज पर मौजूद ये दोनों बल्लेबाजों की एक पार्टनरशिप यहाँ पर निभा रही है। बाएं हाथ राउंड द विकेट ये गेंद इस बार गेंद को खेल दिया शॉर्ट कवर के दिशा में, गेंद पहुंची, 1 रन फिर से मिलेगा और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 4 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। 2 बॉल्स लेफ्ट इन दिस ओवर, 2 गेंदें इस ओवर में बाकी। और तस्लीम एक बार फिर से अपने गेंदबाजी के मार्ग पर जाते हुए बाएं हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ के बल्लेबाज ये गेंद इस बार ऑन साइड पर खेल को खेलना चाहा, शॉर्ट मिड विकेट पर गेंद पहुंची, 1 रन का इजाफा और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 5 रन। सुशांत ऑफ द स्ट्राइक हो चुके हैं इस वक्त भविष्य सामना करने के लिए तैयार। तो रन्स अभी भी सिंगल्स के रूप में बनते हुए। और जहां तक सवाल है इस वक्त गेंदबाजी का, तो एक बेहतर गेंदबाजी का सिलसिला यहां पर जारी रखते हुए गेंदबाज तस्लीम अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। बाएं हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए। दाहिने हाथ के बल्लेबाज भविष्य इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। ये गेंद इस बार बेहतर, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक वन, अपीलिंग फॉर कट बिहाइंड दिस टाइम, इनफैक्ट क्विक पीस ऑफ वर्क मेड बाय विकेट कीपर बिहाइंड दिस टर्म्स। लेकिन बल्लेबाज यहां पर क्रीज पर मौजूद और इस वजह से सब कुछ सुरक्षित। पहले ओवर की समाप्ति, फर्स्ट ओवर कंप्लीटेड, 5 रन्स ऑन द बोर्ड, 1 विकेट लॉस्ट, मिक्स स्टार्ट फॉर SFC Benjanapadavu A against JD Boys Amunji, the match number 23 of Benjanapadavu Premier League, which proudly presented by SFC cricketer Shivaji Nagar Benjanapadavu. In the celebration of their 5th year, they are organizing this fantastic tournament in the name of Benjanapadavu Premier League 2023. So that's the story, and the second over of their innings is now coming up. The bowler starts the fresh proceedings from this side and is तो गेंदबाज इस वक्त नया ओवर यहां पर प्रारंभ करते हुए और फील्डिंग में जमावट यहां पर चलते हुए पहले ओवर के खेल के पश्चात फील्डिंग के प्रतिबंध हट चुके हैं, पावर प्ले समाप्त हो चुका है और फील्डर इस वक्त मैदान पर छाते हुए। अजीज इस वक्त गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए और ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। इस बार गेंद को खेल दिया, गेंद पहुंची इस वक्त मिड ऑफ की दिशा में और 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है और स्कोर बढ़कर इस वक्त पहुंच चुका है कुल मिलाकर 6 रन 1 विकेट के नुकसान पर। गेंदबाज एक बार फिर से गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए ये गेंद फुल टॉस बीमर गेंद, नो वाइड का इशारा, तो वाइड का इशारा इस बीच और वाइड के रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 7 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। और अपनी अगली गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाज तैयार। दाहिना तो ऊपर द विकेट ये गेंद ऑन साइड पर गेंद को उछालना चाहा, नॉट क्वाइट मिड विकेट, गेंद जाती हुई इस वक्त बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में, दूसरे रन के लिए बल्लेबाज दौड़ पड़े, थ्रो पहुंचा स्ट्राइकर एंड पर, लेकिन इससे पहले कि थ्रो पहुंचे बल्लेबाज तेज रनिंग बिटवीन द विकेट बारा दूसरा रन यहाँ पर चुरा चुके हैं। बेहतर रनिंग बिटवीन द विकेट, 2 रन उनके और टीम के खाते में जुड़ता हुआ और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 9 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। जबकि दूसरा ओवर उनकी पारी का यहाँ पर प्रगति पर गेंदबाज इस बीच अजीज गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार गेंद को उछाला है काफी ऊंचा, फील्डर गेंद के नीचे आते हुए लेकिन जी नहीं, गेंद सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए।
बेहतरीन स्ट्रोक इस वक्त लगता हुआ भविष्य के बल्ले से, ऐसा कहना पड़ेगा जस्ट गॉट दैट वन हाई इन द एयर बट द बॉल हैव गॉट इनफ पावर टू गो ओवर द फेंस एट द लास्ट मोमेंट। और इस बीच ये गेंद ड्राइव किया इस वक्त मिड विकेट की दिशा में गेंद जाते हुए 1 रन का इजाफा, थोड़ी सी मिसफील्ड और बल्लेबाज दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े। इस बीच दूसरा रन यहां पर पूर्ण कर चुके हैं। बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट और 2 रन उनका खाते में जुड़ता हुआ और 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 17 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर इस वक्त प्रगति पर, बेहतर बल्लेबाजी का प्रदर्शन इस वक्त देते हुए भविष्य और एक बार फिर से सामना करने के लिए तैयार। अजीज की गेंदों का दाहिना तो बढ़ता विकेट, ये गेंद इस बार दिस इज क्लीन इट, यस इट डज, इट्स अ बिग हिट, 6 नंबर 2 इन दिस ओवर एंड भविष्य लुकिंग ऑन फायर। मिडल ऑफ द बैट गेंद को कनेक्ट किया था, देखिए किस तरीके से, हैव अ लुक एट दिस इन द रिप्ले, और गेंद को इस वक्त उछाला लंगोन नसीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए। तो स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 23 रनों पर। और जहां तक सवाल है इस वक्त गेंद का, तो एक गेंद इस ओवर में बाकी, 1 बॉल लेफ्ट इन दिस ओवर और अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाज तैयार। अजीज गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए और गेंद पहुंची इस वक्त फाइनल लेग की दिशा में। 1 + 1 2 रन्स नाउ एडेड टू द टोटल 25 नाउ। तो यहां पर अगली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद इस बार बेहतर गेंद थी, जस्ट चेंज ऑफ पेस एट द लास्ट मोमेंट, बोल्ड स्लोवर डिलीवरी और बल्लेबाज चूंकि इस वक्त गेंद सीधे विकेट कीपर के हाथों में। सो फैंटास्टिक ओवर इन एसएफसी Benjanapadavu ace point of view came to an end. 20 runs scored in this over, 20 runs came in this over, and because of this over SFC Benjanapadavu A are now strongly back in the match. They are looking in a commanding situation. 25 for the loss of 1 wicket after completion of 2 overs. And still in overall calculation, it's going to be 2 overs remaining in the innings. 2 over का खेल बाकी और एक बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन यहाँ पर भविष्य देते हुए। कुल मिलाकर जहाँ तक भविष्य का सवाल है, इस वक्त 17 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर वो बल्लेबाजी करते हैं। He is batting on 17 including 2 massive sixes by भविष्य। और इस वक्त जो कि सामना करने के लिए तैयार सुशांत और तीसरा उनकी पारी का शुरू होता हुआ। पहली गेंद ड्राइव किया इस वक्त खूबसूरती के साथ लॉन्ग ऑफ की दिशा में, फील्डर वहां पर मौजूद, थोड़ी सी मिसफील्ड है लेकिन बल्लेबाज के पास मौका था सिर्फ 1 रन प्राप्त करने का और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 26 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर यहां पर शुरू हो चुका है। सुशांत और भविष्य इस वक्त पारी के भागदौड़ को इस वक्त संभाले हुए। भविष्य इस वक्त सामना करने के लिए सुशांत इस वक्त सामना करने के लिए तैयार और गेंदबाज की ये गेंद इस बार उछाला लंगों पर और कैच को लपकने में सफल यहां पर। हालांकि अपना संतुलन अंतिम क्षण में कुछ हद तक खो बैठे थे लेकिन अपने आप को संभालते हुए गेंद को सीमा रेखा के अंदर लपकने में सफल। देखिए यहाँ पर गेंद को किस तरीके से लपके थे और गेंद को जैसे ही गेंद सीमा रेखा पर वो पैर रखे अपने आप को संभाला और सीमा रेखा के अंदर अपने आप को पाते हुए। और इस बीच ये कैच यहाँ पर लपक चुका है और इस बेहतर कैच की बदौलत विकेट यहाँ पर गिर चुका है सुशांत का। इट्स 26 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। तो अश्वत का आगमन यहाँ पर होता हुआ और इस बीच गेंदबाज तैयार। अगली गेंद लेग स्टंप से बाहर पैरों पर टकराई, गेंद पहुंची शॉर्ट फाइल लेग पर। 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका और 1 रन के इजाफे के साथ 1 + 1 in fact 2 runs added to the total. No ball declared by umpire and now it's 28 for the loss of 2 wicket in the over number 3 in progress. और अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए बाएं हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार। दाहिने हाथ के बल्लेबाज सामना करते हैं। फ्री हिट गेंद, ये गेंद इस बार चूंकि कदमों का इस्तेमाल करते हुए आगे निकले थे, नॉट क्वाइट मिड विकेट एट द लास्ट, इन फैक्ट दे कम बैक फॉर द सेकंड रन एंड गेट इट कंफर्टेबली। और वहां पर काफी मिसफील्ड के बाद गेंद को जब तक फील्ड किया जाता 2 रनों का इजाफा यहां पर हो चुका है। इट्स 30 नाउ फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस। So outstanding progressing here for SFC A
इस बार बेहतरीन गेंद थी। गेंद को इस वक्त खेलने में चूके शॉर्ट थर्ड मैन फील्डर के हाथों में गेंद, बाइक का इशारा और बाइक इस रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 31 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। इट्स 31 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। फैंटास्टिक प्रोग्रेसिंग या फॉर एसएफसीए एट द सिचुएशन। और गेंदबाज जो कि 18 नंबर की जर्सी पहने हुए अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार, बाएं हाथ अराउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए। ये गेंद लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए इस बार शॉर्ट थर्ड बैन पर वाइड का इशारा। 1+1, 2 runs now added to the total. So sloppy piece of bowling performance continuing here from the bowler. He bowled too many deliveries in the face of wide in this over, and because of that SFCA are now looking in a commanding situation. 33 for the loss of 2 wickets. गेंदबाज एक बार फिर से तैयार। ये गेंद ड्राइव किया खूबसूरती के साथ लॉन्ग ऑन पर, लेकिन फील्डर वहां पर मौजूद। क्लीन कलेक्शन, नॉट मोर देन अ सिंगल। और इस एक रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 34 रनों पर। 34 नाउ। Prolonged over progressing here so far from the bowler. इस बार राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। ये गेंद इस बार चूके गेंद पहुंची शॉर्ट थर्ड बैन पर, रन लेने के लिए 2 कदम आगे जरूर बढ़ाए, लेकिन एन मौके पर अपने कदमों को क्रीज पर खींचते हुए सुरक्षित। 3 ओवर की समाप्ति, 3 overs completed and progressing along nicely for SFCA. 34 for the loss of 2 wicket after completion of 3 overs. I request the extra player of JD Boys Amunje please to be reported here to tell the player's name. JD Boys Amunje ತಂಡದ ಇತರ ಆಟಗಾರ ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಆಟಗಾರರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಲು. So the last over starts in their innings and the bowler starts the fresh proceedings is Nasir. और वो इस वक्त नया ओवर प्रारंभ करते हुए अंतिम ओवर शुरू होता हुआ उनकी पारी में। Match number 23 of Benjanapadavu Premier League 2023 is now progressing here, which proudly organized by SFC cricketer शिवाजी नगर बेंजनपदाऊ। और जहां तक सवाल है इस वक्त गेंद का, तो पहली गेंद इस वक्त डॉट फेंक चुके हैं नासिर और रन्स इस गेंद पर बल्लेबाज को नहीं मिला। एक बार फिर से गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए भविष्य बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन देते हुए 21 रन बना चुके हैं सिर्फ 11 गेंदों पर इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। यह गेंद इस बार भविष्य के लिए बेहतर, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक पीस ऑफ बॉलिंग एंड फैंटास्टिक पीस ऑफ वर्क मेड बाय विकेट कीपर बिहाइंड द स्टंप्स, लेकिन बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद और इस वजह से सब कुछ सुरक्षित। एक्स्ट्रा विकेट गेंद थी, काफी तेज रफ्तार था और तेज तरीके की विकेट कीपर ने दिखाई। देखिए यहाँ पर किस तेजी के साथ विकेट उन्होंने उखाड़े थे, लेकिन बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद और इस वजह से सब कुछ सुरक्षित उनके लिए। 2 बेहतर गेंदे नासिर इस ओवर में फेंक चुके हैं और कुल मिलाकर अब एसएफसी बेंजनपदाऊ ए की पारी में सिर्फ 4 गेंदें बाकी। जस्ट 4 balls नाउ लेफ्ट इन देयर इनिंग्स और अपनी अगली गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाज तैयार नासिर दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करते हुए भविष्य के लिए। राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार चूके ब्रिलियंट पीस ऑफ स्टंप मेड बाय विकेट कीपर एंड दैट इज द एंड ऑफ एन फैंटास्टिक इनिंग्स फ्रॉम भविष्य। 21 runs he scored in just 13 deliveries and after being playing a good knock, a fantastic knock for their side. Have a look at this in the replay. बेहतरीन तरीके की स्टंपिंग विकेट कीपर द्वारा और भविष्य की बेहतरीन पारी पर यहाँ पर पर्दा गिर चुका है। So 34 for the loss of 3 wickets now. So 3 balls left in overall calculation in the rings और नए बल्लेबाज इस वक्त क्रीज पर कदम बढ़ाते हुए रक्षित इस वक्त नए बल्लेबाज के रूप में इस वक्त क्रीज पर मौजूद और गेंदबाज नासिर की गेंदों का सामना करने के लिए तैयार। तो अब तक इस ओवर में पहले 3 गेंद बेहतर, काफी बेहतर फेंक चुके हैं नासिर। बल्लेबाजों को बांध कर रखने में सफल बल्लेबाज को पहले 3 गेंदों में चौथी गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए गेंदबाजी करते हुए इस वक्त ये गेंद रक्षित के लिए। इस बार गेंद को उछाला खूबसूरती के साथ लॉन्ग ऑन की दिशा में, फील्डर गेंद का पीछा करते गेंद को फीड करते हुए रन आउट का खतरा, लेकिन यहाँ पर थ्रो रिसीव करने में सफल बल्लेबाज गेंदबाज और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का। बेहतर स्ट्रोक था इस वक्त और बेहतर रनिंग बिटवीन द विकेट, फलस्वरूप 2 रन इस बीच
बल्लेबाज प्राप्त करते हुए और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 36 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर 36 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट इन द ओवर नंबर 4th and last in progress in their innings. और 2 गेंदे इस वक्त बाकी और नासिर इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए तैनात राउंड द विकेट। ये गेंद इस बार बल्ले का भीतरी किनारा शॉट स्क्वायर की दिशा में विकेट कीपर गेंद तक पहुंचते हुए एक रन बल्लेबाज को मिलेगा। दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े और दूसरा रन यशस्वीतम यहां पर पूर्ण करते हुए। स्क्वायर लेग फील्डर जब तक गेंद तक पहुंचे गेंद को फील्ड करके थ्रो करे नॉन स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का। देखिए किस तरीके से विकेट कीपर वहां पर दौड़े थे लेकिन सबसे पहले पहुंचे स्क्वायर लेग फील्डर लेकिन 2 रन बल्लेबाज को लेने से नहीं रोक पाए और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 38 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर 38 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स एंड द लास्ट बॉल ऑफ देयर इनिंग्स इज नॉट कमिंग अप। और नासिर इस वक्त सामना करने के गेंदबाजी करने के लिए तैयार। रक्षित इस वक्त सामना करते हुए 2 गेंदों में 4 रन रक्षित अब तक बटोर चुके हैं और उनकी पारी की अंतिम गेंद का इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। So the last ball for their innings is now coming up. Nasir to Rakshit. दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद चूके विकेट कीपर चूके और गेंद पहुंची गली की दिशा में। 1 रन मिलेगा। इस बार आउट का इशारा और बल्ले का बाहरी किनारा टकराने के बाद गेंद विकेट कीपर के हाथों से टकराने के बाद सीधे पॉइंट फील्डर द्वारा लपक ली गई और पारी की अंतिम गेंद पर रक्षित का विकेट गिर चुका। सो द इनिंग्स इज अप एंड देयर स्टिपुलेटेड ओवर्स आर कंप्लीटेड। दे फिनिश्ड विद 38 for the loss of 4 wickets for SFC Benjanapadavu A, and now the target for JD Boys Amunje is 39. 39 they have to score for victory with a run rate of exactly 9.75 runs per hour. Required run rate of exactly 9.75 runs per hour. They have to score for victory. 39 the target for them in 4 overs. With the help of 10 wickets they have to score for victory. The present equation for them at this situation 39 in 24 stipulated deliveries so they have to score. एंड लेट्स सी कैन दे रीच द टारगेट और नॉट। और उनके पारी की शुरुआत यहाँ पर होगी। तब तक एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और छोटे से ब्रेक के बाद हम आपके सामने उपस्थित होंगे अंग्रेजी में सतीश के साथ जब जेडी बॉयज मुझे की पारी की शुरुआत यहाँ पर होगी। धन्यवाद। थैंक यू। So thank you very much, Gopi. So at last, team SFCA managed to get the total, which is going to be a little bit satisfaction for depending that one. 39, which is a target for team JD Boys Amunje to win this match. Win at stipulated 4 hours, 24 deliveries. And 2 opening batters came into middle to chase this runs against team SFCA. SFCA so far in this particular tournament, they played 2 matches. Out of 2 matches, they won all 2 matches, and they're playing the 3rd matches. JD Boys Amunje, out of 3 matches, they lost 2, won 1 matches, and this is the 4th match of JD Boys Amunje. Opening batters, Taufik and Taslim and Nasir are the 2 opening batters in the middle, and on behalf of SPFC, I think the bowler will go into start proceedings. And Deepak of Gori Young Boys, one of the most popular name as far as Underarm cricket is concerned, is a very good all-rounder, and fails to contribute from the bat. Now wait and see how he'll go and contribute from the ball. First ball.
Right arm over the wicket starts with the dotted delivery, which is a little bit outside the line of leg stump, and Taslim missed it completely. Then there is no chance at all for any. Nasir is on striker's end. Taslim is in non-striker's end. So Deepak keeping the fielder in the deep long on and deep widish long on. Right arm over the wicket. Beautifully balled. Cleaned him up with the beauty. Deepak got a huge wicket. Nasir departs. Just like I mentioned, he fails to contribute from the bat because of a run out taken place. And now he's just bowled that and a little bit wide of the crease and coming into the batsman. Batsman going for the drive, missing the line completely. Then Deepak not missing the opportunity to hit the stumps. 0 for 1. JD Boys, Munje have lost the first wicket for 0. So new batsman in is Aziz. Still it's a strong breeze, the wind which is passing in the ground. This is a typical condition here in Benjanapadavu. But time progresses, the wind will going to change the directions. And so far from morning to afternoon, the wind is flowing in front of wicket, so that each and every batsman loves to play in front of a wicket. As Deepak again bowling with a short run up. Right arm over the wicket balls, beautifully balled. The wicketkeeper fails to collect the ball, but backstop fielder did a great job. And excellent fielding there by the fielder. And one more dotted delivery. It's a good start there from Deepak, just like a start which is required for SFC. Deepak already started with 3 very good deliveries. But for team JD Boys needed one good over and one big shot. Again, nicely driven, but yes, misfielder by the fielder at short mid wicket, so that before the fielder from deep mid wicket to run front to field the ball, ample time for the batter to complete the single. The first run comes off here for the JD Boys, 1 for the loss of 1 wicket. 39 target, that means 38 more runs required for the victory. Deepak balls, quicker one and faster one. One more dotted delivery, fantastic over which is continues here for team SFCA. Through Deepak, they are getting one good start from the ball. Right arm over the wicket, there he was. Again, ball hitting his legs and no question of any run. Fantastic over. Just a single run which came from that over of Deepak and completion of first over. It's 1 for the loss of 1 wicket. 38 more runs required from 18 balls now. 12.6 runs, 7 runs per hour required run rate now. Target looking a little bit tougher now for the JD Boys, but not impossible. In cricket, anything is possible. But 12.67 runs per hour is the required run rate, and it's going to be a big ask. So next match, I request two teams please be reported here for the toss. Ambika Kalai as well as Jaguar Badakabail captain. Please report here for the commentary box for the tossing ceremony. Ambika Kalai Agu Jaguar Badakabail ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂತಮ್ಮ ನಾನೇ ಚಿಮಿಗೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಅಂಬಿಕಾ ಕಲಾಯ್ ಹಾಗೂ ಜಾಗ್ವರ್ ಬಡಕಬೈಲ್ ನಾಯಕರಿಗೆ ಕರೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. So BPL 2023 is in progress. The last and the final day of this cricket tournament is in progress. The second over will go into start. And bowler Guru is in action. This time lofted that one, handsome looking drive, and he clearing the boundary line for a long wing. Absolutely fantastic stroke there from Aziz. Just stand and delivered. Guru bowled that one, a little bit short pitch outside the line of off stamp, and the batter Aziz just waiting for that short pitch delivery. Lofted that one over the deep long off for a huge 6. And that 6 will going to open the gate here for JD Boys. 7 for the loss of 1 wicket. Guru.
Away from us, right arm over the wicket balls. Drives that one nicely down to deep long off region. The fielder there in the deep long off, neat collection there from the fielder. So no question of any run. Bavish at the deep long off, one who scored runs from the bat and now he's contributed from the fielding as well in the deep long off. 8 for the loss of one wicket. Taslim is on strike. Guru balls a big wide ball running down to deep third man. And it's going to be a 1+1, 2 more to the total. With that couple of runs, Koban moves on to 10 for the loss of one wicket. Guru back to his bowling mark. Aziz is batting on 8 and with the 1-6. Beautifully bowled, perfect one. This is a fantastic delivery there from Guru. And he just got the revenge here after he conceded 6 and 1 wide in this over. Then he bowled a beautiful delivery right on the block hold. Have a look at it, one. And the batsman completely missed that on from the bat. Ball is almost around the legs of the batter. And Aziz misjudging the line completely. The wicket number 2, which is back into pavilion. So 10 for the loss of 2 wicket. This is last and final call for both the team to report here for the toss. Ambika Kalai Ago Jaguar ಬಡಕಬೈಲ್ ತಂಡದ ನಾಯಕರಿಗೆ ಅಂತಿಮ ಕರೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ನನ್ನ ಚಿಮುಕಿಗಾಗಿ. So Guru at last got a breakthrough. Misbah is a new batsman in. Guru balls, drives that one down to the mid-wicket region. Little bit fumble from the fielder. They're grabbing the opportunity. Come back for the second and with that couple of runs, Coburn moves on to 12 on the board for the loss of 2 wicket in the over number second in progress. Guru, 5th time this over. Already 11 came from this over. Right arm over the wicket balls. Ball him, clean him up. One more wicket here for Guru. Miss by this time. Again looking for the drive against the line. And Guru is about a very, very quicker delivery. The fastest one. Have a look at that one. And batsman misjudging the bounce of the delivery. The wicket number 3, which is back into pavilion. It's a 12 for the loss of 3 wicket. So new batsman in is Altaf. 2 wickets here for Guru. Good comeback from the bowler's point of view. After that 6 which is conceded. Then he bowled 1 wide. And after that he bowled a very tidy line and length. Altaf, left-hand batsman. For him, 1 at mid-wicket. Deep long on is there. Deep long off. Deep extra cover. So for the next match, captain of Ambika Kalai won the toss for the next match. So Deepak keeping one fielder at a short extra cover. Deep extra cover, deep long off, deep long on. The 5 fielders outside the circle. The square of the wicket and in front of the wicket. Nice ready one down to deep extra cover region. And they're looking for the second, and a good throw coming from the fielder. Just a single. So with that single, Coburn was on to 13 for the loss of 3 wicket. 2 overs completed, chasing 39 to win this match. Still, it's 26 more runs required for the victory in 2 overs and at the asking run rate of 13 runs per over.
for JD Boys Ammoje. 26 required from 2 overs. Matches looks to be very interesting. Punit brought into attack now. 26 required from 12 balls. Little bit difficult one, but not impossible. In cricket, the left-hand batsman is on strike. Altaf. Balls outside and like stem starts with the delivery which is called as a wide. Now 24 required from 12 balls. Every ball required 2 runs now onwards for the team. JD Boys. Punit keeping one fielder in the deep, long on long off, deep cow point, unorthodox. Short mid off is there, short third man, short fine leg, short mid wicket. This time he lofted, handsome looking drive, and he got a maximum for that. And that 6 will go into brought JD Boys strongly back into this game. The ball which is little bit outside the line of that's on the middle stump. The batsman shuffled across the line. Batsman shuffled across the line of the delivery. Plays it beautifully down to mid wicket for a huge 6. Now 18 runs required from 11 balls. 18 required from 11 balls. Taslim with that 6 is just opened the gate for his team. Punit. Right arm over the wicket. This time lovely delivery. Good comeback here by the young bowler. 18 required from 10 balls. The 18 required from 10 balls. Bowler is on attack, Punit. Batsman in on strike is Taslim. This time outside the run of time too much, so that wide call by umpire. 17 to get from 10 balls. Punit might be feeling a little bit of pressure there. He's searching for the right track, right line length to ball to Punit. Right arm over the wicket balls. This time again, nicely balled. One more data delivery. 9 ball, 17 required. After that, 6 which came from the bat of Taslim. Now he's looking a little bit uncomfortable against the bowling of Punit. Punit knows that can't do the mistake to bowl the short pitch delivery, so he's bowling along the carpet with the extra pace. "17 required from 9 balls. Punit again. Right arm over the wicket he bowls. This time he loved it. What a shot. What a magnificent struck. This is really a huge 6 came from the bat. Oh my goodness. Have a look at that stroke there from the batter. Ball which is came into the batsman with the short pitch length. And he's just waiting for the ball. He dispatching that one into the roads for absolutely the huge 6. Now 11 required from 8 balls. Taslim. The battle is on from Taslim. 2-6, which is takes his team back into the track. Punit have to bowl 2 good deliveries if they wanted to back in this game in this over.
Puneet again. Bowling right arm over the wicket. This time nicely bowled. 11 required from 7 ball. 11 required from 7 ball. This is going to be a decided delivery for team SFC A. Wait and see how Puneet will going to restrict the runs in this last ball. Right arm over the wicket he balls. Again that going to be a ball delivery which is called as a wide. 10 required. Ten required from 7 balls. Puneet slightly feeling the pressure here because he's bowling against Taslim, one who hit 2 sixes in this particular over. So it's not so easy to handle the pressure. Again, Puneet. Beautifully ball. Perfect line. This time, fumble. Chance of run out. And he's gone. Huge wicket. Taslim. Absolutely huge wicket. Now last bowler. 10 required for team JD Boys Samunje here. And they're going for the single. Wicketkeeper behind the stump. Deepak little bit fumbled, but he's recovered quickly to return the ball to the hands of the bowler. Mufid is a new batsman in. So Sujan has got a responsibility of restricting the 10 runs in the last over. At the same time, Mufid and Altaf, the two batters in the middle, has got a responsibility of scoring 10 runs. It's a fantastic match. It's going to be anybody's game. One good over which is required for SFC, but one big shot which is takes the match away from the opposition for JD Boys. Lovely start, but a wide outside line of off stump. Quicker one, but ball which is going outside the line of off stump too far. 9 required, 6 balls remaining. Right arm over the wicket. This time one more wide. Back to back two wides. The bowler is under pressure. Now 8 required, 6 ball remaining. What a match. Lofted that one. Magnificent struck. That is a huge 6 came from the bat of the batter Mufid. Now it's all looks like it's easy for JD Boys. Amunje, just a couple of runs required. 2 required for 5 balls. This is the beauty of cricket. First 2 overs just belongs to team SFC, but remaining 2 overs which is belongs to JD Boys Amunje. Two required, 5 balls remaining. Two big shots will really change the complexion of this game. Mufid drives that one. Straight to the answer field, a chance of run out, and he missed it. Scores are level. Scores are leveled. 1 required from 4 balls. The last bowler is not really up to the mark.
Sujan, after conceding two wide deliveries in the first two balls, then next ball he conceded six. That's a big problem. That's it, winning run. The winning run here for JD Boys Amunje. They defeated very strong SFC by 6 wickets and three deliveries to spare. At last, it's a very easy victory comes to an end for the team JD Boys Amunje. It's a time for announcement of the man of the match. So man of the match which goes to the all-round performance by the all-rounder of team JD Boys Amunje. It's none other than Taslim. Taslim of JD Boys Amunje is judged as man of the match, who scored valuable runs, 12 runs with a 2-6, and he bowled a fantastic 1 over, just a 5 runs conceded in the first over. So I request Taslim, please collect your man of the match award from our chief guest. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಮನೋಜ್ ಇವರು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. Manoj of SFC presenting man of the match award for Taslim for his all-round performance. Congratulations. Thank you very much. So one more match is coming up. Is a good match. Ambika Kalai versus Jaguar Badakabail. And for that match, I request Mr. Gopi to take over the microphone in our national language, Hindi. Thank you. ಅಂಬಿಕಾ ಕಲಾಯಿ ಹಾಗೂ ಜಾಗ್ವಾರ್ ಬಡಕಬೈಲ್ ತಂಡದ ಇತರ ಆಟಗಾರ 12 ಆಟಗಾರ ತಕ್ಷಣ ವೇದಿಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು. ಆಟಗಾರರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಲು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ಅಂಬಿಕಾ ಕಲಾಯಿ ಅಂಡ್ ಜಾಗ್ವಾರ್ ಬಡಕಬೈಲ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಟು ಬಿ ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಟೆಲ್ ದ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ನೇಮ್. So Ambika Kalai, after 1 toss, they elected to bowl first, and the openers of Jaguar Kalai are the crease. Jaguar Badakabail are the crease. ಜಾಗ್ವಾರ್ ಬಡಕಬೈಲ್ ತಂಡದ 12ನೇ ಆಟಗಾರ ತಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು. ಆಟಗಾರರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಲು ದಯವಿಟ್ಟು.
So the first ball of the match is now coming up outside the off stump this time. Beauty one from the bowler, much straighter line. And the ball went into the hands of wicketkeeper after beating the batsman. And there is no possibility of any run. The match number 24 of this tournament started just right now between Ambika Kalai versus Jaguar Padakabail, and the bowler continuing his second delivery. अगली गेंद लेकर तैयार, बहुत ही बेहतर गेंद, एक्स्ट्रा क्विकर गेंद ऑन साइड पर गेंद को उछालना चाहता, चूंकि इस वक्त गेंद जब तक पॉइंट पर फील्ड हो, एक रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है। इस एक रन के इजाफे के साथ जगवर बड़कबैल का खाता यहाँ पर खुल चुका है। एक रन बिना किसी नुकसान के अंबिका कलाई ने टॉस जीतने के बाद पहले फील्डिंग करने का निर्णय जो कि उन्होंने लिया, और इस बीच गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए गेंदबाज नौशाद, आरिस और राजेश इस बार रन के लिए दौड़ पड़े, रनआउट का खतरा, और इसी के साथ विकेट यहाँ पर गिर चुका है। फर्स्ट विकेट फॉलन, gone through for an unnecessary single. One of them lost his wicket, and a first wicket loss for Jaguars Badakabail, and now they are one for the loss of one wicket in the over number first in progress. Match number 24 of Benjanapadavu Premier League 2023 is now started just short while ago between Ambika Kalai versus Jaguars Badakabail, and still in overall calculation it's going to be 6 matches to be played right after this match in a league stage of this tournament, and after that 3 playoff matches. Qualifier number 1 eliminator and qualifier number 2 will be played on today evening, and later that grand finale of this competition will be played on today evening right after 5 o'clock. So lots of cricketing actions are have to become in this tournament, and now the match number 24 started just short while ago in their innings, और गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए नौशाद, जबकि नए बल्लेबाज का आगमन यहाँ पर हो चुका है। एरिस इस वक्त सामना करने के लिए तैयार, दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते एब्सोल्युटली क्विक वन, दिस इज एन आउटस्टैंडिंग डिलीवरी फ्रॉम द बॉलर, और गेंद फुलर रंग गेंद थी, लगभग बल्ले के 3 निकट टिप्पा खाकर सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में। रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। एक बेहतरीन गेंदबाजी का सिलसिला यहाँ पर जारी रखते हुए गेंदबाज नौशाद अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। 3 गेंदे इस ओवर में अब तक फेंके जा चुके, 1 रन बच चुके, 1 विकेट के नुकसान पर। नौशाद एक बार फिर से तैयार, दाहिने हाथ राउंड द विकेट, पहला और एकमात्र पावर प्ले उनकी पारी का यहाँ पर प्रगति पर। फर्स्ट एंड ओनली पावर ओवर ऑफ पावर प्ले इज नाउ प्रोग्रेसिंग हियर इन देयर इनिंग्स। नौशाद अपने ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार, ये गेंद बेहतर गेंद, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक वन, अपीलिंग फॉर कट बिहाइंड दिस टाइम, एंड दिस टाइम आई थिंक ही इज गॉन. He's got a big nick on that at the last moment, and at last moment umpire raises his finger, and that is the wicket number 2. Aris the man departs, and a second wicket lost for Jaguar Badakabail in the total of just a single run, and now they are looking in trouble, looking deep in trouble in fact. 1 for the loss of 2 wicket in the over number first in progress. So 12 prestigious teams are participating in this tournament in the name of Benjanapadavu Premier League 2023, which proudly presented by SFC Benjanapadavu. The celebration of their 5th year, they are organized this fantastic cricket tournament, Benjanapadavu Premier League 2023, SFC cricketer Shivaji Nagar Benjanapadavu. And next one from the bowler, अगली गेंद थी इस वक्त, चूंकि इसी के साथ over की समाप्ति. So a fantastic over comes to run from Naushad, conceded just single run in this over, and he captured 2 wickets. First over completed, and first over Jaguar Badakabail make a shocking start. In fact, they managed to score only a single run on the board, and they lost their 2 wicket right after first over. Still in overall calculation, it's going to be 3 overs remaining in their innings. 3 overs 3 ओवर का खेल अभी भी बाकी उनकी पारी में, और पहले ओवर में एक बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन यहाँ पर दिया। नौशाद ने सिर्फ 1 रन प्रदान करते हुए 2 विकेट प्राप्त करने में सफल, और 3 ओवर का खेल अब बाकी, और देखना यह है कि इन बचे हुए 3 ओवर में जागवर बड़कबैल के बल्लेबाज और कितने रन यहाँ पर बटोर पाते हैं। दूसरा ओवर शुरू होता हुआ, सेकंड ओवर स्टार्ट्स इन देयर इनिंग्स।
निशान निशार इस वक्त गेंदबाजी प्रारंभ करते हुए और ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट, दूसरा ओवर शुरू होता हुआ इस वक्त जागवर बड़ा कबैल की पारी में सामना इस वक्त करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज अनवर, जबकि नॉन स्ट्राइक रन पर भरत। ओवर की पहली गेंद, यह गेंद ऑन साइड पर गेंद को उछाला, मिड विकेट पर गेंद पहुंची आफ्टर वन बाउंस कलेक्टेड बाय द फील्डर। और इससे पहले की गेंद को फील्ड करे, एक टिप्पे के बाद बल्लेबाज के पास मौका था एक रन प्राप्त करने का और इसे एक रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 2 रन 2 विकेट के नुकसान पर। एक धीमी प्रगति यहां पर करता हुआ जागवर बड़ा कबैल और निसार इस वक्त गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों बढ़ता विकेट भरत के लिए। ये गेंद ऑन साइड पर उछालना चाहा, गेंद पहुंची शॉर्ट थर्ड बैन पर, फील्डर के हाथों में गेंद, लेकिन वहां पर अंपायर पर कोई प्रभाव नहीं और एक रन का इजाफा, एक रन के इजाफे के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 3 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर इस वक्त प्रगति पर, रनों के लिए संघर्ष इस वक्त करते हुए जागवर बड़ा कबैल के बल्लेबाज इस वक्त और एक बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन जारी रखते हुए अंबिका कलाई के गेंदबाज अगली गेंद के लिए तैयार। यह गेंद इस बार गेंद को उछाला काफी ऊंचा 6 रनों के लिए। He just caught that one from the middle of the bat और गेंद को उछाला खूबसूरती के साथ लंगोर सीमा रेखा से बाहर छक्के के लिए और इस छक्के के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 9 रनों पर। Have a look at this in the replay, किस तरीके से गेंद को उछाला था, just stand and delivered and he finds the gap as well at long on for a huge one. अनवर के बल्ले से यह छक्का लग चुका है और 9 रनों पर स्कोर बोर्ड पहुंच चुका है 2 विकेट के नुकसान पर। बेहतर स्ट्रोक इस वक्त और अब अनवर कुछ हद तक आत्मविश्वास प्राप्त करते हुए उस छक्के की बदौलत अपनी अगली गेंद का सामना करने के लिए तैयार और गेंदबाज इस वक्त गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों बढ़ता विकेट। ये गेंद इस बार गेंद को एक बार फिर से उछालना चाहा, गेंद पहुंची शॉर्ट फाइन लेग की दिशा में जहां पर गेंद को फील्ड कर लिया गया। 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है, स्कोर बोर्ड बढ़कर पहुंच चुका है 2 अंकों पर यानी 10 रन 2 के नुकसान पर। तो निशार इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए और सामना इस वक्त करने के लिए तैयार भरत और अपने ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथों बढ़ता विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद बेहतर गेंद थी, पैरों पर गेंद टकराई, गेंद पहुंची इस वक्त शॉर्ट गली की दिशा में जहां पर गेंद को फील्ड कर लिया गया। 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है, 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 11 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। अंतिम गेंद इस संबंध में बाकी और निसार गेंदबाजी इस वक्त यहां पर आगे बढ़ाते हुए ये गेंद इस बार उछाला लॉन्ग ऑफ पर, लेकिन गेंद सीमा रेखा के बाहर हो चुकी है इस वक्त 6 रनों के लिए। Actually, I want to look at this in the replay. Actually, what was happened there? तो यहाँ पर देखिए किस तरीके से गेंद को इस वक्त उछाला था। गेंद इस वक्त पहुंची थी लॉन्ग ऑन पर और लॉन्ग ऑन पर जो फील्डर खड़े हुए थे, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक एफर्ट मेड बाय द विकेट कीपर बट अनेबल टू स्टॉप द बॉल इनसाइड द फेंस। 6 number 2 in this over and 17 for the loss of 2 wicket after completion of 2 overs for Jaguar Badakavel recovered after being a slower start. ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಶ್ರೀಯುತ ವಿಜಯ ಕೆ ಧರ್ಮದರ್ಶಿಗಳು ಕೊರಗಜ್ಜ ಸನ್ನಿಧಿ ಬೆಂಜನಪದವು ಇವರು ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ। ಇವರಿಗೆ SFC ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಶಿವಾಜಿನಗರ ಬೆಂಜನಪದವು ಸಂಘಟಕರ ಹಾಗೂ ಸರ್ವ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ನಾವು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ। ತಮಗಿದು ಆಧಾರದ ಸ್ವಾಗತಗಳು ಸರ್। ಸೊ ಹರ್ಟ್ಲಿ ವೆಲ್ಕಮ್ಸ್ ಟು ಮಿಸ್ಟರ್ ವಿಜಯ ಕೆ ಧರ್ಮದರ್ಶಿ ಕೊರಗಜ್ಜ ಸನ್ನಿಧಿ ಬೆಂಜನಪದವು। So back to this game, 17 for the loss of 2 wicket, 2 overs remaining in overall calculation in their innings. ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ವಿಜಯ ಕೆ ಧರ್ಮದರ್ಶಿಗಳು ಕೊರಗಜ್ಜ ಸನ್ನಿಧಿ ಬೆಂಜಿನಪದವು ಇವರಿಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ಸುರೇಶ್ ಶಾಲಿಯನ್ ಇವರು ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಈ ಮೂಲಕ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ। ದಯವಿಟ್ಟು ಸರ್ ಈಗಾಗಲೇ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಅದೇ ರೀತಿ
ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ನಾವು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. इस बीच गेंद पहुंची थर्ड मैन की दिशा में, दूसरा रन इस बीच मिलेगा वाइड का इशारा. इनफैक्ट 3 runs added to their total in the face of wide, and with that 3 runs the scoreboard moving up to 20 now. 20 रन बन चुके हैं. तीसरा ओवर यहाँ पर प्रारंभ हो चुका है. गेंदबाज एक बार फिर से तैयार. ये गेंद इस बार लेग स्टंप से काफी बाहर, फाइन लेग फील्डर चुके हैं और इस बीच एक रन फिर से मिलेगा. 1+1, 2 runs now added to their total. It's 22 now for the loss of 2 wicket. तीसरा ओवर इस वक्त प्रगति पर. कोई भी सही गेंद अब तक इस ओवर में फेंकी जा चुकी नहीं है और स्कोर इस वक्त 22 रनों पर रुक चुका है. 2 विकेट के नुकसान पर इम्तियाज इस वक्त गेंदबाजी शुरू कर चुके हैं और लगातार दूसरा वाइड यहां पर फेंक चुके हैं. कुल मिलाकर ऐसा कहना पड़ेगा 24वां मैच इस श्रृंखला का, इस टूर्नामेंट का यहां पर खेला जाता हुआ. 24th मैच ऑफ दिस टूर्नामेंट इज नाउ प्लेइंग प्रोग्रेसिंग हियर Benjanapadavu Premier League 2023, which proudly presented by SFC Benjanapadavu Mangalore. और जहां तक गेंदबाजी का सवाल है, इस वक्त गेंदबाजी के मार्ग पर जाते हुए, तो इस बीच अपना बल्ला बैट जो कि बदलने के लिए इस वक्त बल्लेबाज के लिए एक टीम के अन्य खिलाड़ी बल्ला लेकर इस वक्त उनके पास आते हुए और इस वक्त पानी का ग्रहण करने के बाद एक बार फिर से खेल जो कि यहाँ पर पुनरारंभ होता हुआ. Two overs remaining in overall calculation and the scoreboard stays at 22 for the loss of 2 wickets. और इम्तियाज अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार. दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए काफी दूर दूर तक पहला क्षेत्र क्षण हमें यहाँ पर दिखाई देता हुआ. लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन डीप मिड विकेट इस वक्त मौजूद. डीप बैकवर्ड स्कोर लेकिन इस वक्त ना ठीक सीमा रेखा के पास. इम्तियाज ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार. दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार ऑफ स्टंप से बाहर. एक बार फिर से वाइड का इशारा. 1 more wide. 23 now for the loss of 2 wicket. 3 वाइड इस ओवर में लगातार इम्तियाज यहाँ पर फेंक चुके हैं और निस्संदेह ऐसा कहना पड़ेगा अपनी सही लेंथ और लाइन को वो इस वक्त तराशते हुए और अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार. इस वक्त दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए इस वक्त तैयार. ये गेंद इस बार बेहतर गेंद थी. परिवर्तन के तौर पर धीमी गेंद ऑफ स्टंप से कुछ ज्यादा बाहर की ओर नहीं निकल रही थी. गेंद पर स्ट्रोक खेलने के प्रयास में चूकी और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में. रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला. स्कोर इस वक्त रुक चुका है. कुल मिलाकर 23. The scoreboard stays at and at the start of the third over in fact. और अगली गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करते हुए इम्तियाज दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए अगली गेंद लेकर तैयार. दाहिने हाथ राउंड द विकेट कहना पड़ेगा. ड्राइव किया इस वक्त. बेहतर फील्डिंग. सिली मिडान पर सेकंड बल्लेबाज काफी आगे लेकर आए लेकिन इन मौके पर अपने कदमों को क्रीज पर खींचते हुए सुरक्षित और इस तरह से कोई क्षति यहाँ पर नहीं. स्कोर रुक चुका है इस वक्त 23 रनों के ऊपर 3 विकेट के नुकसान पर. एक बार फिर से इम्तियाज धीरे धीरे अपने सही रिदम लय को इस वक्त प्राप्त करते हुए 2-3 वाइड फेंकने के बाद 2 बेहतर गेंद इस वक्त फेंक चुके हैं लगातार. इस ओवर में दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार गेंद को चिप किया. लॉन्ग ऑफ पर मौका नहीं, गेंद तक नहीं पहुंच पाएंगे. थोड़ा सा मिस जजमेंट है और जब तक गेंद को दोबारा फील्ड किया जाता बल्लेबाज को इस बार काफी धीमा थ्रो और बल्लेबाज तीसरे रन के लिए यहाँ पर दौड़ पड़े और तीसरा रन यहाँ पर पूर्ण कर चुके हैं. तो थ्रो करने के प्रयास में इस वक्त गेंद उनके हाथों से फिसल गई थी और इसका फायदा उठाकर बल्लेबाज 3 रन यहां पर प्राप्त कर चुके हैं और इन 3 रनों के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 26 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर. बोथ ओपनर्स आर नाउ ऑलरेडी बैक इनटू द पेविलियन एंड नाउ दे आर 26 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस. इम्तियाज एक बार फिर से अपने गेंदबाजी के मार्ग पर जाते हुए सामना करते हुए इस वक्त भारत इम्तियाज की गेंदों का और दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज भारत इस वक्त सामना करने के लिए तैयार. ये गेंद इस बार गेंद को उछालना चाहा. एब्सोल्युटली फैंटास्टिक वन केम अलोंग द कार्पेट एंड वेंट इनटू द हैंड्स ऑफ विकेट कीपर आफ्टर बीटिंग द बैट्समैन एंड देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ एनी रन एंड द स्कोर स्टेज एट 26 for the loss of 2 wicket in the over number 3 in progress. इम्तियाज एक बार फिर से गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए इस वक्त तैयार. दाहिने हाथ के बल्लेबाज भारत इस वक्त सामना करते हुए ये गेंद ड्राइव किया इस वक्त बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में. 1 रन मिलेगा
Just a single they have got, and with that single run, the scoreboard moving up to 27 for the loss of 2 wicket in the over number 3 in progress. So good progressing here for Jaguar Badakabail after being a slower start. They started slowly in their first over, and after that they recovered very well, all because of that second over, and now they are progressing along nicely at the situation. इम्तियाज एक बार फिर से गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज सामना करने के लिए तैयार। इस बार जब किया लॉन्ग की दिशा में गेंद पहुंची इस वक्त लॉन्ग ऑन पर आफ्टर फर्स्ट बाउंस गेंद को कलेक्ट करने में सफल फील्डर लॉन्ग ऑन पर नॉट मोर देन अ सिंगल और एक रन के साथ इस वक्त स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 28 रन पर। कुल मिलाकर तीसरे ओवर के मुकम्मल ले आने समाप्ति हो चुके हैं। 3 overs completed, 28 on the board, 2 wickets lost, and still in overall calculation it's going to be last over remaining in their innings. SFC Benjanapadavu bila kalai mikle continue apun match ade oh next the inch team ichata next side the bokkada okkalege nandu young boys kodali last over ade. So last over starts in Jaguar Badakabail's innings और इस बीच गेंदबाज संदीप गेंदबाजी यहां पर शुरू करते हुए अंतिम ओवर शुरू होता हुआ उनकी पारी में। फील्डिंग में जमावट यहां पर चलते हुए और एक ओवर अभी भी बाकी जागवर बड़कबैल की पारी में। So the last over starts in the innings. First ball, संदीप इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर शुरू करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज सामना करने के लिए तैयार रहा। लेग स्पिन गेंदबाजी, पहले गेंद उछाला खूबसूरती के साथ into the gap as well, and it's gone over the fence for a boundary. Absolutely perfect struck came from the bat of the right-handed batsman. He's hit that one pretty hard and finds the gap as well between long on and a mid wicket. And have a look at this in the replay. देखिए किस तरीके से गेंद को उछाला था इस वक्त। लॉन्ग ऑन पर फील्डर मौजूद थे, डीप इन विकेट पर फील्डर मौजूद थे, लेकिन उन दोनों के बीच से गेंद निकल गई इस वक्त काफी तेज रफ्तार के साथ 4 रनों के लिए। बेहतरीन स्ट्रोक यहाँ पर लगता हुआ अनवर के बल्ले से और इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 32 रनों पर। और संदीप गेंदबाजी यहां पर शुरू कर चुके हैं। लेग स्पिन गेंदबाजी, दाहिने हाथ राउंड द विकेट एक बार फिर से अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। यह गेंद इस बार गेंद को उछालना चाहा, गेंद पहुंची इस वक्त शॉर्ट फाइन लेग की दिशा में, जहां पर गेंद को फील्डर फील्ड करते हुए और इस बीच 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 33 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। कुल मिलाकर ऐसा कहना पड़ेगा एक बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन यहाँ पर देते हुए बल्लेबाज अनवर एक लंबी पारी अपने टीम के लिए खेलते हुए। और अपनी अगली गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए गेंदबाज दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए अपनी अगली गेंद लेकर तैयार। फील्डिंग में एक बार फिर से जमावट वहां पर चलती हुई और संदीप दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस बार भारत के लिए सामना करते हुए ये गेंद उछालना चाहा। बेहतरीन गेंदबाजी और आखिरकार यहां पर गेंद स्टंप्स पर टकरा चुकी है। जस्ट वांटेड टू लॉफ्ट दैट वन दिस टाइम and the ball after beating his bat stuck to his leg stump. One more wicket fallen, extra quicker delivery from the Sandeep and he got the lead of the batsman. Have a look at this in the replay. इस बार पैरों पर टकराने के बाद गेंद सीधे स्टंप्स पर टकराए थे और ये विकेट यहाँ पर गिर चुका है। विकेट नंबर 3 गिर चुका है and now they are 33 for 3 with just 3 balls to go in their innings. अगले मैच से हर मैच 3 ओवर का खेला जाएगा। राइट फ्रॉम द नेक्स्ट मैच एवरी मैच विल बी फॉर 3 overs टू बी प्ले। Taslim, the new batsman
Is now comes out to the middle. और वो इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। और गेंदबाज संदीप इस वक्त गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए तैयार। ये गेंद इस बार गेंद को उछालना चाहा, विकेट कीपर चुके, गेंद पहुंची शॉर्ट थर्ड मैन पर, स्टंप आउट का मौका था लेकिन यहाँ पर गंवा चुके हैं विकेट कीपर। 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है और इस 1 रन के इजाफे के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 34 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर। 2 गेंदें अब बाकी उनकी पारी में। जस्ट 2 balls नाउ लेफ्ट इन देयर इनिंग्स। और तस्लीम फिर से एक बार गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए, माफ कीजिए संदीप इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हैं। अनवर 23 रनों पर बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 10 गेंदों का उन्होंने सामना किया। सामना करते हुए इस वक्त ये गेंद लेग स्टंप से बाहर और गेंद पहुंची शॉर्ट फाइन लेग पर, रन के लिए दौड़ पड़े। 1 रन इस बीच मिलेगा, वाइड का इशारा। 1+1 2 रन नाउ एडेड टू द टोटल। और 2 रनों के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 36 रनों पर। 36 नाउ फॉर द लॉस ऑफ 3 wickets and now in overall calculation still 2 balls left in their innings. तो अनवर की बेहतरीन पारी पर सब पर्दा यहाँ पर गिर चुका है। 23 रन उन्होंने बनाए सिर्फ 10 गेंदों पर और आखिरकार रन आउट के रूप में आउट होकर पेविलियन वापस लौटते हुए। और 2 गेंदें अभी भी बाकी उनकी पारी में। जस्ट 2 balls now left in their innings. So second last ball of the innings is now coming up. Sandeep bowls और दाहिने हाथ राउंड द विकेट। ये गेंद ड्राइव किया इस वक्त लॉन्ग ऑफ की दिशा में, कोई फील्डर वहां पर नहीं और गेंद को जब तक सीमा रेखा के अंदर फील्ड किया जाता बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का। और इन 2 रनों के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 38 रनों पर। 38 now 2 runs added to the in this delivery and the last ball of their innings is now coming up. अंतिम गेंद लेकर संदीप इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ के बल्लेबाज सामना करते हुए ये गेंद इस बार आउट, स्ट्रेट फॉरवर्ड कैच। The innings is up and now Jaguar Badakabail finished their 4 overs quota and they managed to score 38 runs on the board for losing 4 wickets. And they set a victory target of 39 for Ambika Kalai. 39 runs Ambika Kalai have to score with a required run rate of exactly 9.75 runs per hour. They have to score for victory with the help of 10 wickets. The present equation shows for them at their situation and their innings are going to start within a just a short while. 39 they have to score. 39 रनों का लक्ष्य और उनकी पारी की शुरुआत यहाँ पर होगी एक छोटे से अंतराल यानी ब्रेक के बाद। तब तक एक छोटा सा ब्रेक हम लेते हैं और एक छोटे से ब्रेक के बाद राइट आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक हम आपके सामने उपस्थित होंगे मेरे काबिल दोस्त अंग्रेजी में सतीश के साथ जब अंबिका कलाई की पारी की शुरुआत यहाँ पर होगी। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर ब्रेक। थैंक यू, धन्यवाद। ಅಲ್ಲಿ ದಯಮಾಡಿ 2 ದಿನದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಅಂಬಿಕಾ ಕಲೈ ಹಾಗೂ ಜಾಗ್ವಾರ್ ಬಡಕಬೈಲ್
ಜಾಗೂರ್ ಬಡ್ಕಬೈಲಿದ್ದಾರೆ. ದಯಮಾಡಿ ಅಂಬಿಕಾ ಕಲೈ ತಂಡದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. So 39, the same target. The previous match also, it's a same target, 39. When it's SFC Benjanapadavu versus JD Boys Amanje. JD Boys Amanje, they reached the target 39 in the previous match. And wait and see how well Ambika Kalai will go into reach this total of 39 to win this match in 24 balls. Manish and Guru are the two opening batters are in the middle. Iqbal will go into starts the proceedings. 39 to win the match. And here is the first ball. And the bright sunny afternoon. And here is the first ball of the innings. Iqbal. The first ball drives up and over. Down to deep long off region boundary. Fielder behind the ball. But ball just winning the race. Positive start here for Manish. First ball. Which is bowled by the bowler Iqbal. The width is offered there by the bowler and batsman just going over the top of the infield. Perfect stroke to play in the power play over. And he got the placement right down to deep long of boundary for 4 runs. So Manish is off the mark with the boundary. And his team has also started the journey with the boundary. Second ball, little bit outside the run of leg stump and the batter going for the single in the form of leg bye. With that leg bye score numbers on to 5 on the board without loss of any wicket in the over number. First is in progress. That brings Guru into strike now. Guru, the bowler, batter, and Iqbal is the bowler. Nicely driven right in the gap. And before the throw came from the fielder, excellent throw, but not quite enough to get the result. A very good throw from the fielder, but a couple of runs taken in between by the batter Guru in the negation. Have a look at the throw, just over the bails. Little bit hesitation for the second run, but it's a little bit high throw from the fielder, so the batsman completed a couple of runs. So 7 without loss of any wicket. So far in this day number 2, 5 fours and 22 sixes which is scored. The more than boundaries, the batsman enjoying the sixes in this particular cricket ground. One more single has been taken there. 8 on the board without loss of any wicket. In the over number, first is in progress. Positive start from these two opening batters of Ambika Kalai. Right now. This time he lofted. How? That was a magnificent struck. That is a huge one. Ball travels and travels and travels a long way out of the ground into the road. That ball went, and what a magnificent struck there for Manish. And with that 6, score jumps into 14 now. The Iqbal is punished by Manish with the boundary and a 6. So 23 sixes so far in this day number 1. Day number 2 of this prestigious cricket tournament. Iqbal. Balls that drives that one Manish, but this time he's got a protection in the deep long on, so that he need to settle for the single. 15 on the board. Expensive over. His pitches comes in and off Iqbal. Chasing 39 to win the match. Ambika Kalai starts well with the 15 runs. That means another 24 more runs required for the victory in 18 balls. Ambika Kalai now required 24. And asking run rate is coming down because of that first over of the power play where is 15 runs taken and 8 runs per over is the required run rate. ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ
ಭುವನೇಶ್ ಪಚ್ಚಿನಡ್ಕ ಇವರು ಆಗಮಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಕೂಡ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರಿಗೆ SFC ಬೆಂಜನಪದವು ಇವರ ಪರವಾಗಿ ಈ ಒಂದು BFC ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೆಸ್ಟಿಜಿಯಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್. ಭುವನೇಶ್ ಪಚ್ಚಿನಡ್ಕ, ದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲಿಸ್ಟ್, ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್. ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಸಂದೀಪ್, ದಯಮಾಡಿ ಸಂದೀಪ್ ಅವರು ವೇದಿಕೆ ಬಂದು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಅವರನ್ನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತೇವೆ. Meanwhile, the first wicket is back into pavilion. The danger man Manish departs, and what a fantastic start here for the second over. Manish back into pavilion, they're trying for the big shot on the offside region, but didn't quite getting the timing behind the stroke. Placement is not good enough to get past that fielder. So new batsman walking towards the middle. Sukesh. Sukesh walking towards the middle. Now 24 more runs required for the victory in 17 balls remaining. Rajesh starts well with the wicket. Sukesh is on strike now. Rajesh right arm round the wicket. This time beautifully bowled. Perfect delivery. And the batsman completely missed out the delivery. Leg by call by umpire. With that leg by scored numbers on to 16. 23 required. And 16 ball remaining. Good start from Rajesh in this over. The kind of restriction which is required in this over. So far, Rajesh has succeeded to put some break on the run rate of their opposition. Rajesh bowling round the wicket. This time bowled him, cleaned him up. Guru back into pavilion. Both the opening batters are back into pavilion. Rajesh once again producing a beauty. Have a look at that one in a replay. Round the wicket, angling almost in the midland of stump, and batsman missing the line completely, and the bowler hits the stumps. So important breakthrough here for Ambika Kalai. The two opening batters are back into pavilion. It's a 16 for the loss of 2 wicket. Now 15 balls remaining. 23 runs required for the victory. The Naushad is a new batter, is coming to the middle. The tall player for the side. Wait and see how well Naushad will go into contribute from the bat. But Rajesh is looking so good in this over. 3 balls, 2 wickets. 4 time in this over, Rajesh. Right arm round the wicket he bowls. Again the dotted delivery. The batsman not interested to play the stroke on the onside region. Of course, he's got a little bit reaction to get the ball to the bat, but ball missing his bat. And no damage done. One more dotted delivery. 14 balls. 23 runs required for the victory. Right arm round the wicket he bowls. Again, nicely bowled. Just a single here for the batter. So with that singles covered moves on to 17 for the loss of 2 wicket. So far it's a very, very good over is in progress from Rajesh. 13 ball remaining. Last ball remaining this over. 13 ball remaining. 22 runs required for the victory. The Ambika Kalai, after getting a good start in the first over, they got a valuable 15 runs. But in this over, Rajesh has been outstanding. Now Sukesh back on strike. Rajesh around the wicket. Beautifully bowled. Perfect one. And over number 2 completed. Great over there from Rajesh. Now it's a 22 required from 12 balls. 11 runs per over is the required run rate.
So SFC cricketers Sivajinagar Benjanapadavu organizing this Benjanapadavu Premier League 2023 season. Of course, 5. The final day of this cricket tournament is in progress, and each and every team wanted to be in the playoff round of this prestigious cricket tournament. So far, now it's a match which is going between Ambika Kalai versus Jaguar Badakabail, and Jaguar Badakabail they strongly back into this game after that previous over, and bowler is been introduced by the captain Harris. Wait and see how Harris will going to ball here. 22 required, 12 balls remaining for the right-hand batsman. Naushad, the one fielder, is in the deep in the mid-wicket, wideish long on, straight long on, long up is there, deep extra cover. The fielders are in the deep in front of a wicket. Short fine leg, short mid off, short mid wicket. The fielders inside the ring. Harris balls outside the leg stump and going to be a wide. 21 required from 12 balls. The match is really inching towards an interesting finish for this match. Ambika Kalai wanted 21 from 12 balls. Again, the huge wide. It's absolutely spectra wide. 1+1, 2 more to the total. Bowler under pressure. 20 for the loss of 2 wicket. So 19 required. Now pressure is off now for the batter because of that wide balls bowled by the bowler. Again, same delivery, the same line. It absolutely Xerox copy of the previous over, and the bowler is taken off straight away after bowled at 3 wide balls. So after that consecutive wide balls, the captain taken off that bowler from the attack. So brought Jabbar into attack. Jabbar will go into ball. Will continue, and so over number 3 is in progress. 18 to get from 12 balls. Nicely balled outside. No ball called by umpire. No ball called by umpire. So free hit delivery for the batter. Problem continues here for the team. So Jaguar just losing the momentum after Rajesh bowled brilliantly in the previous over. But in this over, the much required runs coming here for Ambika Kalai. $17 to get from 12 balls. Jabbar bowling round the wicket. So coming down to track using his feet, but not really able to get that one from the bat, leg by call by umpire. So now Jabbar bowled a tidy line that for the batter.
using his feet to coming down, using his feet to get that one on over the deep long on. But Jabbar not settling the batter for that stroke. So 16 to get from 11 balls. One big stroke will going to change the complexion of this game. Jabbar. This time he lofted, just like I mentioned about the 1-6 will going to change the complexion of the match. The huge 6 coming from the bat. Naushad, I already mentioned, is tall enough to get the distance down to mid-wicket. Now equation looks to be pretty easy for Ambika Kalai. 10 required from 10 balls. The bowler under pressure now, straight away, Jabbar. To Naushad, lofted, but this time again one more 6. One more 6 now, 4 runs required for the victory from 9 balls. What the kind of bowling which is required after Rajesh bowled a very good over, the second over. But in this over, the team completely lost the momentum. And Ambika Kalai are in a driver's seat and he's gone. He's gone, bowled out. Might be it's too late. Too late here for team Jaguar to back into this game. And the batsman Naushad, after the damage what he wanted to make in this particular over, 2 sixes he scored. And that takes a team into very close to target. 4 required from 8 balls. Imtiaz is the new batsman in. So 4 required. This time match finished in a style. Huge 6 there from Imtiaz. So comprehensive victory for Ambika Kalai, defeating their opposition by 7 wickets with the 7 deliveries to spare. Congratulations Ambika Kalai for that victory. And Jaguar Badakabail just not quite enough to defeat their opposition. Congratulations. Now time to announce the man of the match. So undoubtedly, it's Naushad of Ambika Kalai who judged as the man of the match for his all-round performance. Bowled brilliantly, and then he hits the 2 sixes. They changed the complexion of this game. So that I request Naushad of Ambika Kalai to come and collect the man of the match of the chief guest in the main stage. ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ.
ಪರವಾಗಿ. ನೌಷಾದ್ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಯುತ ವಿಜಯ್ ಕೆ ಕೊರಗಜ್ಜ ಸನ್ನಿಧಿ ಬೆಂಜೇರವಾದ ಇವರಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ವಿತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನೌಷಾದ್ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.
ಅಲ್ಲಿ ಅಂಬಿಕಾ ಕಲಾಯಿ ತಂಡದ 12ನೇ ಆಟಗಾರರ ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು. ಆಟಗಾರರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ಅಂಬಿಕಾ ಕಲಾಯಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಟು ಬಿ ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಟೆಲ್ ದ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ನೇಮ್. So the match number 26 of this tournament is now going to start between SFC Benjanapadavu B versus SFC Benjanapadavu. SFC Benjanapadavu B versus Ambika Kalai, and SFC are both toss. They elected to field first, and because of that, their fielders are now spread out on the field. And the first ball, पहली गेंद थी इस वक्त वाइड का इशारा और वाइड किस रन के साथ यहाँ पर अंबिका कलाई की पारी की शुरुआत यहाँ पर हो चुकी है. एक रन बिना किसी नुकसान के 3 ओवर का मैच, 3 overs per side to be play. This is a 3 overs match. Players please note. और अपने ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार. ये गेंद बेहतर गेंद थी इस वक्त. शॉर्ट रन की दिशा में गेंद पहुंची और गेंद को वहां पर फील्ड कर लिया गया. एक रन के साथ रनों का सिलसिला यहां पर शुरू हो चुका है. एक रन बिना किसी नुकसान के, जबकि पहला ओवर उनकी पारी का यहां पर शुरू हो चुका है. और गेंदबाज एक बार फिर से गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए संतोष दाहिने हाथ राउंड द विकेट. ये गेंद ऑन साइड पर स्विंग किया. गेंद को इस वक्त नेट के उस पार गेंद इस वक्त जा गिरी है. और जहां तक सवाल है रनों का, तो रन सिंगल के रूप में इस वक्त मिलेंगे. और इस एक रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 3 रनों पर. 3 विदाउट लॉस इन द फर्स्ट ओवर फॉर अंबिका कलाई अगेंस्ट एसएफसी बेंजनपदाव बी. और बेहतरीन लाइव टेलीकास्ट बेद्रा मीडिया द्वारा इस वक्त किया जा रहा है जनाब इरफान इनके सारथ्य में. और मैच नंबर 26 इस श्रृंखला का यहाँ पर शुरू हो चुका है.
और एक बार फिर से गेंदबाज संतोष गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए नौशद इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। मनीष नॉन स्ट्राइकर एंड पर अगली गेंद के लिए तैयार। ये गेंद इस बार ऑन साइड पर उछालना चाहा, बाउल्ड ऑफ हिज लेग्स और इसी के साथ पहला विकेट यहाँ पर गिर चुका है। नौशद ने गेंद को ऑन साइड पर उछालना चाहा था, चूंकि गेंद टिप्पा खाने के बाद नीचे रहती हुई और सीधे लेग स्टंप को उखाड़ कर ले गए। देखिए किस तरीके से यहाँ पर हुआ था, बेहतर गेंदबाजी और गेंद इस वक्त लेग स्टंप को उखाड़ कर ले जाती हुई। इसी के साथ पहला विकेट यहाँ पर गिर चुका है। 4 रनों पर पहला विकेट गिर चुका है। इट्स 4 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट फॉर अंबिका कलाई इन द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस। सुकेश का आगमन यहाँ पर होता हुआ नंबर 3 बल्लेबाज की हैसियत से अंबिका कलाई की ओर से इस वक्त क्रीज पर कदम बढ़ाते हुए और वो इस वक्त सामना करेंगे गेंदबाज संतोष की ओर की अगली गेंद का। और कोई पावर प्ले नहीं और सारे फील्डर लगभग मैदान पर छा चुके हैं। 5 फील्डर ठीक सीमा रेखा के पास तैनात। लॉन्ग ऑफ थोड़ा डीप एक्स्ट्रा कवर, लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, डीप मिड विकेट। कोई एक फील्डर डीप बैकवर्ड खोलेगा और डीप मिड विकेट के दरमियान इस वक्त तैनात ठीक सीमा रेखा के पास। और संतोष अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। नए बल्लेबाज मुकेश इस वक्त सामना करते हुए, सुकेश इस वक्त सामना करते हुए संतोष की गेंदों का। यह गेंद ऑन साइड पर गेंद को उछालना चाहा, पैरों पर टकराई, गेंद पहुंची शॉर्ट स्क्वायर लेग पर। जब तक गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका और 1 रन के इजाफे के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 5 रनों पर। 1 विकेट के नुकसान पर पहला ओवर इस वक्त प्रगति पर। इस ओवर में अंतिम बार गेंदबाज संतोष गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए बेहतर ओवर अब तक उनका यह साबित हो चुका है। दाहिने हाथ राउंड द विकेट। ये गेंद लेग स्टंप पर आती हुई शॉर्ट थर्ड मैन फील्डर चूक गया और गेंद जब तक फील्ड हो बल्लेबाज के पास मौका था सिर्फ 1 रन बाई के रूप में। ओवर की समाप्ति। फर्स्ट ओवर कंप्लीटेड, 6 रन्स ऑन द बोर्ड। स्टेडी स्टार्ट फॉर अंबिका कलाई after being losing the toss and put it to bat by SFC Benjanapadavu B in the match number 26 of Benjanapadavu Premier League 2023 which proudly presented by SFC Benjanapadavu। और जहाँ तक सवाल है बचे हुए ओवर्स का, तो 2 ओवर का खेल अभी बाकी। स्टिल 2 ओवर्स लेफ्ट इन द इनिंग्स और देखते हैं इन बचे हुए 2 ओवर में उनके बल्लेबाज और कितने रन यहाँ पर बटोर पाते हैं। गेंदबाज साई इस वक्त गेंदबाज यहाँ पर शुरू करते हुए और सामना इस वक्त करने के लिए तैयार। Manish bowled out first ball and Sai got the breakthrough. Much straighter line. The batsman just trying to play a mighty heave at the last moment, not succeeded और गेंद सीधे उनके बल्ले को वंचित करती हुई सीधे जा टकराए मिडल ऑफ स्टंप पर। गिल्लियां बिल्स डिस्टर्ब होते हुए और इसी के साथ दूसरा विकेट यहां पर गिर चुका है। मनीष की पारी यहां पर समाप्त होती हुई और साई इस वक्त विकेट प्राप्त कर चुके हैं। तो नए बल्लेबाज का आगमन यहां पर होता हुआ। न्यू बैट्समैन इज नाउ कम्स आउट टू द मिडल, गुरु, और वो इस वक्त स्ट्राइकर एंड पर मौजूद साई की गेंदों का सामना करने के लिए तैयार रहा और साई अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई और वाइड का इशारा अंपायर का और वाइड किस रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 7 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर, जबकि दूसरा ओवर उनकी पारी का यहाँ पर शुरू हो चुका है। अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार रहा। दाहिने हाथ राउंड द विकेट साई, ये गेंद इस बार गेंद को ड्राइव कर दिया। गेंद आती हुई डीप मिड विकेट पर, फील्डर गेंद तक पहुंचते हुए 1 रन मिलेगा और जब तक गेंद दीवार से टकराने के बाद जब तक फील्ड हो, फील्डर द्वारा बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 9 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर, जबकि दूसरा ओवर उनके पारी का यहाँ पर प्रगति पर और साई अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद उछाला इस वक्त, नॉट क्वाइट मिड विकेट, इन फैक्ट ही गेट्स अ सिंगल फॉर दैट स्ट्रोक। दे लुकिंग फॉर द सेकंड एंड दिस टाइम इन कम्स द थ्रो, लेकिन इससे पहले कि थ्रो पहुंचे बल्लेबाज तेज रनिंग बिटवीन द विकेट द्वारा दूसरा रन यहाँ पर पूर्ण कर चुके हैं और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 2 अंकों पर, यानी 11 रन 2 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर इस वक्त प्रगति पर। साई अपने ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ राउंड द विकेट, ये गेंद इस बार बाउल्ड आउट, जस्ट गॉन फॉर अ बिग वन, मिसिंग द लाइन कंप्लीटली एंड द बॉल स्टक टू हिज लेग स्टंप। सो तीसरा विकेट यहां पर गिर चुका है
आक्रामक स्ट्रोक खेलना चाहता। देखिए किस तरीके से यहाँ पर होता है। बल्कि दिस इन द रीप्ले और गेंद सीधे बल्लेबाज को वंचित करने के बाद सीधे लेग स्टंप पर जाकर टकराती हुई और विकेट नंबर 3 यहाँ पर गिरता हुआ। इट्स 11 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट एंड दिस इज द सेकंड ओवर इन प्रोग्रेस इन देयर इनिंग्स। इम्तियाज का आगमन यहाँ पर होता हुआ नए बल्लेबाज के रूप में। इम्तियाज इज नाउ कम्स आउट टू द मिडल एज अ नंबर 5 बैट्समैन फॉर अंबिका कलाई और वो इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। गेंदबाज साई की ओर की अगली गेंद का और साई इस वक्त गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट। ये गेंद इस बार पैरों पर टकराई। गेंद पहुंची शॉर्ट थर्ड मैन पर। रन के लिए दौड़ पड़े। एक रन मिला इससे पहले कि गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता और एक रन के साथ कुल स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 12 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर। कुल मिलाकर दूसरा ओवर उनकी पारी का यहाँ पर प्रगति पर। जहां तक एक बेहतर स्कोर खड़ा करने का सवाल है अंबिका कलाई के लिए कम से कम 25 रनों के आंकड़े तक यहाँ पर पहुंचना होगा अगर उन्हें एक चुनौती भरा लक्ष्य प्रदान करना है एसएफसी बेंजनपदव बी के बल्लेबाजों के लिए जब वो बल्लेबाजी पर उतरेंगे। और सही इस वक्त तैयार। ये गेंद इस बार चूके बेहतर गेंद एक्स्ट्रा क्विकर गेंद विकेट कीपर चूके शॉर्ट थर्ड मैन फील्डर जब तक गेंद को फील्ड करे बल्लेबाज के पास मौका था एक रन प्राप्त करने का। बैट आउट टू दैट एट द लास्ट मोमेंट एंड सेकंड ओवर हैज बीन केम्स टू एंड। 2 ओवर की समाप्ति 13 रन्स ऑन द बोर्ड 3 विकेट्स लॉस्ट फॉर अंबिका Kalai. Next match, SFC Benjanapadavu A will takes over Young Boys Polali, and because of that, I request the captains of these two teams to please report to the stage immediately to make a sign in the for the toss procedure. In fact, ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ SFC Benjanapadavu A ಹಾಗೂ Young Boys Polali ತಂಡದ ನಾಯಕರಿಗೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಟಾಸ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ದಯವಿಟ್ಟು Bharat, the bowler, is now brought into the attack, and a third over and the last over starts in their innings. First ball, पहली गेंद, ये गेंद बेहतर गेंद थी, ऑन साइड पर उछालना चाहा, गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर को चूकने के बाद विकेट कीपर से सीधे शॉट थर्ड मैन फील्डर के हाथों में रन्स बल्लेबाज को नहीं मिला। 5 गेंदें अब बाकी उनकी पारी में और फिर से एक बार गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए ये गेंद इस बार खूबसूरत स्ट्रोक लॉन्ग ऑन के दिशा में गेंद जाती हुई लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद नॉट मोर देन अ सिंगल और इस एक रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 14 रनों पर। तीसरा और अंतिम ओवर उनकी पारी का यहाँ पर शुरू हो चुका है और भरत एक बार फिर से गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए लेग स्टंप से बाहर वाइड का इशारा और वाइड के इस रन के साथ 15 रनों पर स्कोर बोर्ड पहुंच चुका है 3 विकेट के नुकसान पर 15 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट। भरत के ओवर की अगली गेंद दाहिने हाथों पर द विकेट। ये गेंद इस बार बेहतर गेंद थी परिवर्तन के दौर पर कुछ हद तक धीमी गेंद को ऑन साइड पर उछालना चाहा चूंकि गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला तो स्कोर इस वक्त रुक चुका है कुल मिलाकर 15 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर 3 गेंदें इस ओवर में फेंकी जा चुकी है और भरत एक बार फिर से गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करते हुए एक बार फिर से चूके विकेट कीपर चूके गेंद के हाथों में रनआउट का खतरा और इसी के साथ ये विकेट यहाँ पर गिर चुका है। नो बॉल का भी इशारा हो चुका है तो एक रन उनके खाते में जोड़े जाएंगे और एक विकेट भी यहाँ पर गिर चुका है रनआउट के रूप में। 16 नाउ फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट इन द ओवर नंबर 3rd and last in progress and still in overall calculation it is going to be 3 balls remaining in their innings. तो संदीप का आगमन यहाँ पर होता हुआ 3 गेंदें अभी भी बाकी उनकी पारी में। फ्री हिट गेंद इस वक्त बल्लेबाज के लिए और देखने हैं कि बल्लेबाज इस फ्री हिट गेंद का किस तरह फायदा उठाते हैं और गेंदबाज भरत अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए। अंपायर्स विकेटों को इस वक्त सही करते हुए और खेल एक बार फिर से आगे बढ़ता हुआ। भरत
ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार, फ्री हिट गेंद लेकर दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए। यह गेंद ड्राइव किया इस वक्त कदमों का इस्तेमाल करते हुए वाइड लॉन्ग ऑन के दिशा में गेंद पहुंचे, मिस फील्डर गेंद सीमा रेखा की ओर बढ़ती हुई, जब तक गेंद को बैकअप किया जाता वहां पर 2 रन बल्लेबाज को प्राप्त हुए। अंतिम क्षण में गेंद से अपनी नजरें हटा ली थी फील्डर ने, फलस्वरूप गेंद उनके हाथों से छूटती हुई और बल्लेबाज इस चूक का फायदा उठाकर दूसरा रन यहाँ पर पूर्ण करते हुए, और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 18 रनों पर 4 विकेट के नुकसान पर। 2 गेंदें अभी भी बाकी उनकी पारी में। मैदान पर तेज हवा इस वक्त गुजर रही है, इस वजह से विकेट के ऊपर बिल्स इस वक्त बार बार गिरते हुए हवा की तेज रफ्तार की बदौलत। तो गेंदबाज एक बार फिर से तैयार। ये गेंद चूके शॉट विकेट कीपर के हाथों में, गेंद रन आउट का खतरा और कलेक्ट नहीं कर पाए। ओवर थ्रो, दूसरा रन यहां पर पूर्ण कर चुके हैं। वाइड का इशारा, 2+1 3 रन्स नाउ एडेड टू द टोटल, इन फैक्ट 21 नाउ। 3 रन तोहफे के रूप में, उपहार के रूप में उनके खाते में जुड़ते हुए। और देखते हैं यहाँ पर बचे हुए 2 गेंदों में और कितने रन उनके बल्लेबाज यहाँ पर बटोर पाते हैं। तो अगले मैच में यंग बॉयज पुलाली जो कि टॉस पहले जीत चुका है एसएफसी बेंजनपदव ए के खिलाफ, और देखते हैं क्या निर्धार वो लेते हैं। और इस बीच भरत अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए। यह गेंद इस बार गेंद को उछाला है, काफी ऊंचा गेंद सीमा रेखा से बाहर हो चुकी है 6 रनों के लिए। सुकेश के बल्ले से यह छक्का लग चुका है। जस्ट यूजिंग हिज फीट कम्स डाउन द ट्रैक एंड लॉफ्ट दैट वन इन अ स्टाइल एंड ही जस्ट गॉट दैट वन फॉर अ मैक्सिमम। और इस छक्के के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 27 रनों पर। अंतिम गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाज भरत तैयार। सुकेश इस वक्त सामना करते हुए भरत की गेंदों का। यह गेंद एक बार फिर से फ्लैटर वर्जन पर 6 रनों के लिए। This time he hit that one in a flatter version and a consecutive success for him, and what a way to finish their innings with a consecutive success for Sukesh now, and the stipulated overs are completed, and so Ambika Kalai finished well with 33 for the loss of 4 wicket in the stipulated 3 overs against SFC Benjanapadavu B, and now the target for SFC Benjanapadavu B is 34. 34 they have to score in the stipulated 3 overs with the required run rate of exactly 11.67 runs per over. They have to score for victory with the help of 10 wickets. The present equation shows for them. और देखते हैं 34 रनों के लक्ष्य तक, 34 द टारगेट फॉर एसएफसी बेंजनपदव बी। और देखते हैं 34 रनों के लक्ष्य तक एसएफसी के बल्लेबाज पहुंच पाते हैं या नहीं।
Welcome back. Thank you very much, Gopi. So SFC Benjanapadavu have to depend 34 runs against Litigation. SFC have to get 34 against Ambika Kalai, and wait and see how Ambika Kalai will going to restrict the runs from the bowling. Now Shad is the bowler, the man of the match of the previous match, is now get ready to bowling first over of the innings of SFC Benjanapadavu B. Sanat is on strike now, and Bharat is in non-strike again. The first ball. Now Shad, right arm round the wicket. Drives that one nicely down to mid-wicket region. They're running hard, looking for the second, and in comes the throw from the deep. Absolutely perfect throw. A very good throw indeed, but not a good running between the wicket there from Sanat. It's absolutely very slow running, and have a look at that throw from the fielder. Seeing that Sanat very slow for reacting for the second run, and the Sanat is back into pavilion. It's one for the loss of one wicket. Chandrasekhar, the one of the most experienced campaigner for the side of SFC. Wait and see how Chandrasekhar will go into contribute from the bat. Needed one partnership for SFC Benjanapadavu to wanted to win this match. Naushad balls, beautifully balled, perfect one, quicker one, and Chandrasekhar not really able to get that one from the middle of the bat and got an inside edge of the bat. And meantime, ample time for the batter to complete the single. Two for the loss of one wicket in the over number first in progress. Naushad keeping one fielder in the mid wicket and one at deep long on, the straight deep long on. Long off. Naushad again. Round the wicket. Beautifully balled. Kicker one, faster one, and Bharat is a little bit comedy of error. The Bharat wanted to help the wicketkeeper to give the ball, but the wicketkeeper trying for the run out. Two for the loss of one wicket in the over number second in progress. Naushad again. Right arm round the wicket. Ball is in there, but looks like it's going to be a leg bite. No, it's a leg bite. Yes, one more addition. The addition of that single scorer was under three for the loss of one wicket in the over number first in progress. Naushad is looking very good so far in this particular tournament from the bat and ball, and the kind of start which is required for Ambika. The lovely shot using his speed, beautifully driven down to deep wide long off. Excellent piece of fielding by the fielder. And just a couple of runs, and with that couple of runs, Kabarna moves on to three for the loss of one wicket. Good work by the fielder in the deep long off. And Skobarna moves on to five for the loss of one wicket. Chandra. Facing Naushad. This time, big swing of the bat, but once again, it's going to be a one more leg by the coming back to the second unnecessarily. No need for the second run, isn't it? Chandra one who looks so good in the middle, and unfortunately, it's back into pavilion to try to get that couple of runs where there is difficult to get a couple of runs. Pays the penalty for that. Six for the loss of two wicket. Misjudgment of the run, total misjudgment. Six on the board, six for the loss of two wicket. 28 required from 2 overs. 28 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ 2 ಓವರ್ನಲ್ಲಿ. ಹದಿನಾಲ್ಕು ರನ್ನಿನ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. 14 runs per over. The required run rate.
Sandeep is a new bowler. So Sandeep brought into attack to bowl the second over of the innings. 28 required from 12 balls. The leg spinner. This time catch it is a call. Bharat going for the single and they made it quite easily in the end. Direct it. 27 required from 11 balls. Santosh back on strike. This time driven nicely, and but protection is there in the deep, so that batsman how to settle for the single. So needed that kind of a batting performance, which is badly for SFC Benjanapadavu if they wanted to win this match. Do or die situation now. And Bharat is a tall player. Can he able to get one or two big shots here? And Sandeep around the wicket bowls. Beautifully bowled, perfect leg cutter, but going away from the outside the line of off stump, so that wide call by umpire, rightly so. With that wide score numbers on to 9 for the loss of 2 wicket. Sandeep again back to his body mark. 25 required, lofted at one, magnificent stack. Just like I mentioned, is a tall enough to get the distance. And that 6 will going to really make the opportunity for Team SFC to win this match. Now 19 required in remaining 10 deliveries. 9 deliveries, 19 required. Bharat this time breaking the shackle by hitting the huge 6 down to deep long off. Just stand and delivered. Can he able to get one more? Sandeep. Right arm around the wicket. The full toss again. What a shot. This is a huge one. And it's a monumental. Now 13 required from 8 balls. The match now going to be more interesting. Full toss delivery from Sandeep. 13 required from 8 balls. Bharat is on fire. 2 back-to-back sixes.
Sandeep bowling. This time driven that one, but just for a single and good piece of fielding there by the fielder. So 12 required from 7 balls. What a match. Now Santosh back on strike. Sandeep already bowled an expensive over. The over of 2 sixes in that over. They altogether 15 runs came from that over. The much required a better over for team SFCB. Twelve required. 7 balls remaining. Sandeep. Right arm round the wicket. Coming down the track, it's that one down to mid-wicket region. Little bit fumble from the field. They're going for the second. Yes and no's. And at last they're going back. 11 required from last over. 6 ball, 11 required for the victory for SFC Benjanapadavu. The opportunity is there for them to win this match. And but Bharat is out of the strike. And Santosh is on strike. After long discussion, Ambika Kalai captain decided to give the ball to the hands of Nisar, the young bowler. Need to restrict 11 runs in the last 2 overs. But sensible batting which is required for SFC to win this match. Santosh Bharat is the one who opened the gate for the team SFC to win this match, but still 11 to get from a last over. The fielding set, 2 fielders behind the wicket. Final against third man. Very interesting. One at deep mid-wicket. Long on is there. Wideish long on is there. Straight long on is there. Long off. There's no field and the cover point. Again, went for the big shot. Going for the quick single. That brings Bharat into strike now. 10 required from 5 balls. ಹತ್ತು ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ 5 ಎಸೆತದ ಮುಂದೆ. So wait and see how Bharat will going to contribute. His jersey number is 6 and he is enjoying some sixes in this particular match. 2 sixes already came from that in that innings of Bharat. But the job which is not yet over. 10 required from 5 balls. Drives that one nicely down to deep long on, but just for a single. Just for the single. So bowler is handling the pressure very well. Nishar. Now Santosh. Coming down the track, misses the line completely and is gone. Fantastic bowling display here from Nishar, the last over. Batsman coming down the track, Yorker line delivery, beautifully bowled. Nine required from a 3 ball. Bharat Junior. Bharat Junior is coming to the middle, and wait and see what Bharat will going to do here. Can he able to get one big shot, or he wanted to get the single and give the strike to Bharat? Bowled him, clean him up. Now looks like is a task now difficult one.
Fantastic last over there from Nisar. What a great bowling performance. Again, right on the block hold of the batter. So 9 required from 2 balls. So Nishar really so far bowled a fantastic last over. Now last opportunity for SFC in this particular delivery. Needed one big shot if they wanted to keep the hope of winning this match. And the new batsman in is Prajwal. Wait and see how Prajwal will go into bat here. This time lofted and he got the distance. Just like I mentioned, they wanted to take this match into the last delivery. This delivery need to dispatch, and he dispatched it beautifully down to deep long off for a 6. Now last ball, 3 runs required for the victory, 2 for the tie. 3 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ, 3 required, 2 for the tie, 3 for the victory. 1 ball remaining. Prajwal, can he become the hero here? Can he become the hero? Nisar wanted to become the hero. Prajwal also wanted to become the hero. But this last delivery will going to tell you whether the batsman or the bowler. Here is the last one. Oh, going down the leg stamp and the direct return is gone. White signal by umpire. 2 runs required from the last ball. Still the match is very interesting. Bharat desperately wanted to back into the strike. Wicketkeeper behind the stump has got a very good sensible mind, hitting the stumps. Now young talented batter Sai is walking towards the middle. Bharat's innings which is completed, played a good innings for his team. Two required from last ball. What a match. One of the best match of the day number final. Day number 2 and final day of this cricket tournament. It's very interesting. Sahil Nasir, will be correction. Sahi is the batter. Nasir is the bowler. And after that, Nisar, little bit correction. Nisar, after that 6, a little bit started to feel the pressure. And now last ball remaining. Need to restrict the 2 runs. His jersey number is 2. He wanted to restrict the 2 runs. But Sai desperately wanted to get a couple of runs for his team if they wanted to win the match. Here is the last delivery, final delivery. Driven nicely, beautiful placement. They're running hard. They're looking for the second, and in comes a, oh my goodness, very slow running. It's absolutely poor piece of running between the wicket, isn't it? The ball went in the gap. Have a look at the batsman, how slowly he's running there. That might be the couple of runs. The match is ended in a tie, and scores are leveled. Points will be shared. 1-1 points for both the team. Very good placement there from Sai, but I think he couldn't manage to run quickly between the wicket. Pays the penalty for that. Congratulations.
So man of the match of the previous match, which is goes to the batter who managed to tie the match and bowled very good 1 over, picked up 2 wickets. Young player of SFC, Sai is judged as a man of the match. ದಯಮಾಡಿ ಸಾಯಿ ಅವರು ವೇದಿಕೆ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 2 ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 5 ರನ್ ನೀಡಿ 2 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸಮಬಲವನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಸಾಯಿ ಅವರು ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕು, ತಮ್ಮ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪಂದ್ಯದ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಾಯಿ ಇವರಿಗೆ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಪೊಳೆ ತಂಡದ 12ನೇ ಆಟಗಾರ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಆಟಗಾರರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಲು ದಯವಿಟ್ಟು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಪೊಳಲಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಟು ಬಿ ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಟೆಲ್ ದ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ನೇಮ್. तो यहाँ पर धन्यवाद सतीश. तो मैच शुरू होने जा रहा है एसएफसी बेंजनपदव ए और यंग बॉयज पोलल के बीच एंड द मैच स्टार्ट्स एंड इन ए पुल स्टेबल पॉइंट्स टेबल यंग बॉयज पोलली won 4 of their 4 matches. In fact NFC Benjanapadavu A won 3 of their 4 matches. In fact, SFC Benjanapadavu A they won 2 matches out of their 3 matches they played, and Young Boys Polali won all of their 4 matches as they played. They are going to be table topper at the situation, and let's see can NFC A put the break of the winning streak of put the break of a winning streak of Young Boys Polali in this match. So the first ball of their innings is now coming up और गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हैं नौफल और सामना इस वक्त करने के लिए तैयार दीपू, जबकि नॉन स्ट्राइकर एंड पर भविष्य और ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार. 3 overs per match, 3 overs per side to be played. This is a 3 overs match and the first ball of the match is now coming up. दाहिने हाथ राउंड द विकेट, पहली गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाज तैयार. गेंदबाज ये गेंद दीपक के लिए, गेंद को इस वक्त ड्राइव कर दिया मिस फील्ड यहाँ पर, लेकिन बल्लेबाज के पास रन
मिलेंगे सिर्फ एक, और इस एक रन के साथ रनों का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो चुका है। नौफल गेंदबाजी यहाँ पर शुरू कर चुका है। भविष्य इस वक्त सामना करने के लिए तैयार, और जहां तक भविष्य का सवाल है, पिछले मैच में 21 रन उन्होंने बनाए, बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन उन्होंने दिया था। भविष्य को 21 runs in the previous match in just 11 or 12 deliveries, and that's absolutely a fantastic knock played by Bhavish in the previous match. And let's see what he will what he is doing in this match. So here he is now going to face the right-handed bowler नौफल। इस वक्त नौफल की गेंद भविष्य के लिए, इस बार गेंद तो स्टंप्स पर टकरा चुकी है, और पहली गेंद पर गोल्डन डक के रूप में विकेट यहाँ पर गिर चुका है भविष्य का। The ball gets some extra bounce at the last moment. Just have a look at in the replay. और गेंद देखिए अंतिम क्षण में थोड़ी सी उछाल लेते हुए, और इस उछाल को भविष्य समझ नहीं पाया, और गेंद सीधे ऑफ स्टंप पर जा टकराती हुई गिल्ली बिल्स डिस्टर्ब होते हुए, और इसी के साथ पहला विकेट गिर चुका है गोल्डन डक के रूप में भविष्य का, और 0 पर पहला विकेट खो चुका है यहाँ पर एसएफसी बिंजनपदव ए यंग बॉयज पुलली के खिलाफ। और उनका स्थान इस वक्त ग्रहण करते हुए नए बल्लेबाज के रूप में अश्वत इस वक्त क्रीज पर कदम बढ़ाते हुए, जहां तक एक बेहतर स्कोर खड़ा करने का सवाल है एसएफसी ए का, तो इस वक्त उन्हें चाहिए एक साझेदारी यानी पार्टनरशिप, एंड a partnership is now badly required for SFC Benjanapadavu A if they have to post a good total in front of the batsmen of young boys Polali when they come to bat. और जहां तक सवाल है इस वक्त गेंदबाजी का, तो नौफल इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए नए बल्लेबाज अश्वत इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए, ये गेंद इस बार लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई, और गेंद पहुंची इस वक्त शॉर्ट थर्ड मैन की दिशा में, 1 रन मिलेगा। इनफैक्ट इट्स ओनली बाय डिक्लेयर्ड बाय अंपायर, और 22 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 2 रनों पर, 1 विकेट के नुकसान पर। दीपक इस वक्त सामना करने के लिए तैयार, और जहां तक एक बेहतर स्कोर बनाने का सवाल है एसएफसी ए का, तो दीपक की उपस्थिति उनके लिए बेहद जरूरी है। दीपक एक बेहतरीन बल्लेबाज के रूप में जाने जाते हैं, आमतौर पर गोरी यंग बॉयज का वो प्रतिनिधित्व किया करते हैं, मंगलोर की प्रतिष्ठित टीमों में से जो एक जानी जाती है, और यहाँ पर वो अपने स्थलीय टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए एसएफसी बंजनपदव ए की ओर से, और इस वक्त सामना करने के लिए इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए, गेंदबाज ये गेंद ऑफ स्टंप से काफी बाहर की ओर निकलते हुए अंतिम क्षण में गेंद को छोड़ दिया, वाइड का इशारा अंपायर का, और वाइड के रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका 3 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। इट्स 3 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस। नौफल एक बार फिर से गेंदबाजी के मार्ग पर तैयार। दीपक बाएं हाथ के बल्लेबाज इस वक्त सामना करते हुए नौफल की गेंदों का, और अपनी अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। ये गेंद इस बार गेंद को साइड पर स्विंग करना चाहा, गेंद पहुंची बैकवर्ड स्क्वायर की दिशा में, सिर्फ एक मात्र रन मिलेगा इस बीच, इससे पहले की गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 4 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। पहला ओवर इस वक्त प्रगति पर, एक बेहतर लेंथ और लाइन के साथ यहाँ पर गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज नौफल बल्लेबाजों को कोई रूम या विड्थ यहाँ पर प्रदान नहीं कर रहे हैं कि वो बल्लेबाज खुलकर स्ट्रोक से खेल सके, और अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथों पर विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज अश्वत इस वक्त सामना करते हुए नौफल की गेंदों का। ये गेंद इस बार लेग स्टंप पर आती हुई छोड़ दिया, वाइड का इशारा अंपायर का, और वाइड के रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 5 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। और नौफल फिर से एक बार गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए, पहला ओवर उनकी पारी का यहाँ पर प्रगति पर, और गेंद की परीक्षा करने के बाद दीपक ने इस वक्त गेंद को गेंदबाज नौफल के हाथों में लौटाया, और नौफल एक बार फिर से तैयार। दाहिने हाथ राउंड द विकेट, ये गेंद बेहतर गेंद, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक वन, इनफैक्ट विकेट कीपर मिसेस, और गेंद पहुंची इस वक्त शॉर्ट फाइनल की दिशा में, और जब तक गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है। 6 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। 12 प्रतिष्ठित टीमें इस श्रृंखला में हिस्सा ले रही है, इस बेंजनपदव प्रीमियर लीग 2023 इस मेगा श्रृंखला में, और 6 टीमें 2 गुटों में 2 ग्रुप में इस वक्त बांट दिए गए हैं, और फिलहाल यहाँ पर मुकाबला जो कि जारी है ए पूल के मैच में, और ये गेंद इस बार लेग स्टंप से काफी बाहर गेंद जाती हुई फाइनल की दिशा में, 1 रन मिलेगा फील्डर गेंद तक पहुंचते हुए, और इस बीच रन बल्लेबाज को मिला, बल्लेबाज को नहीं मिला, टीम को मिला 2 रन, 1+1 2 रन नाउ एडेड टू द टोटल। लेग स्टंप से काफी बाहर की ओर गेंद फेंकी थी गेंदबाज नौफल ने, और 2 रन इस बीच एसएफसी ए यहाँ पर प्राप्त करता हुआ, और
एक बार फिर से नौफल गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए और अश्वथ सामना करने के लिए तैयार। दाहिने हाथ राउंड द विकेट। ये गेंद इस बार चिप किया, लंबा पर मौका, फील्डर गेंद के नीचे आते जी नहीं, गेंद तक नहीं पहुंच पाए और गेंद सीमा रेखा की ओर बढ़ती हुई इस वक्त अपने रफ्तार को खोने के बाद दोबारा गेंद को फील्ड की जाए। दूसरे फील्डर द्वारा बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का। लॉन्ग ऑफ के फील्डर ने जी तोड़ कोशिश जरूर की थी गेंद तक पहुंचने के लिए, लेकिन अंतिम क्षण में गेंद तक नहीं पहुंच पाए और गेंद को ठीक तरह से फील्ड भी नहीं कर पाए। थोड़ा सा मिस जजमेंट और इससे पहले कि गेंद को बैकअप किया जाता बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का। सो कपिल फ्रांस एडेड टू द टोटल और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 2 अंकों पर। 10 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। फर्स्ट ओवर कंप्लीटेड इन फैक्ट और 2 ओवर का खेल बाकी। एक बेहतर शुरुआत कर चुका है यहाँ पर, हालांकि भविष्य का विकेट जरूर गिर चुका है पहले ओवर में, लेकिन इसके बावजूद एक बेहतर शुरुआत करने में सफल एसएफसी बेंजनपदव ए 10 रन जोड़ चुका है 1 विकेट के नुकसान पर। मैच नंबर 27 इस बेहतरीन क्रिकेट श्रृंखला के अंतर्गत यहाँ पर खेला जाता हुआ बेंजनपदव प्रीमियर लीग 2023-2023 के अंतर्गत एसएफसी क्रिकेटर शिवाजी नगर बेंजनपदव ने इस श्रृंखला का आयोजन किया अपने 5वें वर्षगांठ पर। In the celebration of their 5th year, they are organizing this fantastic cricket tournament in the name of Benjanapadavu Premier League 2023. 12 prestigious teams are participating in this tournament, and 12 teams are divided in a 2 group, A and a B pool. And this tournament is fantastically organized by SFC cricketer Shivaji Nagar Benjanapadavu. In the celebration of their 5th year, they are organizing this prestigious cricket tournament in this beautiful Shivaji ground, Benjanapadavu. और इस बीच गेंदबाज अपनी ओर की अगली गेंद लेकर कुमार गेंदबाजी इस वक्त प्रारंभ करते हैं। ओवर की पहली गेंद, ये गेंद ऑन साइड पर स्विंग करना चाहा, चूंकि इस बार नॉन स्ट्राइकर के बल्लेबाज थोड़े से आगे निकल आए, लेकिन एन मौके पर अपने कदमों को क्रीज पर खींचते हुए सुरक्षित देखा कि गेंद को वहां पर फील्ड की जा चुकी है। और जहां तक सवाल है रनों का, तो रन इस बीच नहीं मिलेंगे। बेहतर गेंद थी, बेहतर गेंद के साथ इस वक्त शुरुआत कर चुके हैं गेंदबाज कुमार और अपनी अगली गेंद फेंकने के लिए इस वक्त तो गेंदबाजी के मार्ग पर तैयार। सामना करते हुए इस वक्त बाएं हाथ के बल्लेबाज दीपक और 10 से 12 बार गेंद को जमीन पर पटकने के बाद दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बाएं हाथ के बल्लेबाज दीपक के लिए यह गेंद इस बार ऑन साइड पर, गेंद को इस वक्त मोड़ा खूबसूरती के साथ बैकवर्ड स्क्वायर लेग सीमा रेखा की ओर गेंद बढ़ती हुई और गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। Just drifting down the leg side at the last moment, and just he got that one from the bat and lofted that one. Have a look at this in the replay. Perfectly lofted that one by Deepak, and the ball went over the deep backward square leg fence for a boundary. Absolutely perfect struck और इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 14 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। It's 14 for the loss of 1 wicket in the over number 2 in progress। और गेंदबाज कुमार एक बार फिर से गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए और धीरे धीरे दीपक अपना सही लय, सही रिदम यहाँ पर प्राप्त करते हुए और अपनी अगली गेंद का सामना करने के लिए तैयार। कुमार अपनी अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट यहाँ पर चलती हुई। लॉन्ग ऑन के फील्डर ने कुछ कहा चिल्लाकर इस वक्त विकेट कीपर से फील्डिंग के सजावट के बारे में। और एक बार फिर से कुमार गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए बाएं हाथ के बल्लेबाज दीपक के लिए अगली गेंद फेंकने के लिए तैयार। दाहिने हाथों पर विकेट, ये गेंद इस बार चिपकी खूबसूरती के साथ नहीं, लेकिन गेंद लॉन्ग ऑफ पर सीमा रेखा के अंदर फील्डर के हाथों में लपक ली गई है। स्ट्रोक में रफ्तार था लेकिन प्लेसमेंट बिल्कुल गलत था और लॉन्ग ऑफ के फील्डर जो खड़े हुए थे उन्होंने आखिरकार कोई गलती नहीं की। देखिए यहाँ पर किस तरीके से हुआ था। हैव अ लुक एट दिस इन द रिप्ले। स्ट्रेट हिट दैट वन pretty hard, but placement was too wrong, and because of that he paid the penalty for that. So Deepak departs, second wicket lost for SFC Benjanapadavu, and now they are 14 for the loss of 2 wickets. So दीपक का विकेट यहाँ पर गिर चुका है और उनका विकेट गिर जाने के बाद नए बल्लेबाज के रूप में इस वक्त क्रीज पर कदम बढ़ाते हुए नंबर 4 बल्लेबाज की हैसियत से सुशांत इस वक्त क्रीज पर मौजूद है और वो सामना करेंगे इस वक्त कुमार की गेंदों का। और कुमार पिछले गेंद पर विकेट इस वक्त प्राप्त कर चुके हैं दीपक का और इस बीच वो अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ के बल्लेबाज सुशांत ने इस वक्त सामना करते हुए कम से कम 25 का आंकड़ा यहाँ पर पार करना होगा
एसएफसी ए को अगर उन्हें एक बेहतर स्कोर यहाँ पर खड़ा करना है तो एक चुनौती भरा स्कोर यहाँ पर खड़ा करना है तो। और गेंदबाज इस बीच तैयार, गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए कुमार, दाहिने हाथ के बल्लेबाज सुशांत इस वक्त सामना करते हुए। और अगली गेंद, ये गेंद लेग स्टंप पर आती हुई गेंद को इस वक्त छोड़ दिया, वाइड का इशारा, लेग स्टंप से काफी बाहर की ओर गेंद निकलती हुई दिशाहीन गेंद थी। और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 15 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। दोनों आरंभिक बल्लेबाज इस वक्त क्रीज पर पेविलियन पर वापिस लौट चुके हैं। 3 गेंदें इस ओवर में बाकी। और गेंदबाज एक बार फिर से गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद इस बार ऑन साइड पर गेंद को स्विंग करना चाहा, चूंकि गेंद पहुंची शॉर्ट थर्ड मैन पर, रन्स बल्लेबाज को नहीं मिलेगा और स्कोर इस बीच रुक चुका है 15 रनों पर। 15 for the loss of 2 wickets. The scoreboard stays at, and this is the second over in progress in their innings. तो यहाँ पर एक बार फिर से सामना करते हुए सुशांत, कुमार की गेंदों का दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए, ये गेंद इस बार ऑन साइड पर ही चला, लेकिन 2 स्क्वायर, इट्स गॉन 2 स्क्वायर इन फैक्ट, इट्स गॉट ओनली अ सिंगल फॉर दैट स्ट्रोक। अगर थोड़ा सा सीधा उछालते हैं तो निस्संदेह छक्का उनके पक्ष पे आ सकता था, लेकिन यहाँ पर गेंद को उछाला इस वक्त काफी स्क्वायर और सिर्फ एकमात्र रन उनके और टीम के खाते में जुड़ता हुआ, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 16 रनों पर। इट्स 16 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। स्टिल अ बॉल लेफ्ट इन दिस ओवर, एक गेंद अभी भी बाकी इस ओवर में, और इस ओवर में अंतिम बार कुमार इस वक्त सामना करने के लिए तैयार, गेंदबाजी करने के लिए तैयार, जबकि सुशांत इस वक्त सामना करते हुए, ये गेंद इस वक्त गेंद को उछालना चाहा, गेंद पैरों पर टकराई, पहुंची शॉट कवर पर, रन के लिए दौड़ पड़े, निशाना इस वक्त लग चुका है, लेकिन इससे पहले बल्लेबाज क्रीज पर पहुंच चुके हैं, तो इस गेंद पर बच चुके हैं। 1 रन मिला और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 17 रनों पर। 17 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट, 2 overs had been bowled, and still in overall calculation it's going to be last over remaining in their innings. So pretty good, good over in young boys Polali's point of view came to an end. 7 runs conceded by Kumar, and he also got the wicket of Deepak in this over, and just a last over now remaining in their innings. So Nizam starts the fresh proceedings from commentator box, and the fresh over starts in their innings. First ball of his over is now coming up, और सामना इस वक्त करने के लिए तैयार दाहिने हाथ के बल्लेबाज सुशांत, और 6 गेंदें अब उनकी पारी में बाकी, और देखना यह है कि इन बचे हुए 6 गेंदों में उनके बल्लेबाज और कितने रन यहाँ पर बटोर पाते। चौथा मैच इस वक्त खेलता हुआ एसएफसी ए, और जहां तक एसएफसी ए का सवाल है, इस वक्त पिछले मैच में जेडी बॉयज समुंजे के खिलाफ उन्हें पराभव का सामना करना पड़ा था, और इस वजह से इस मैच में उन्हें विजय दर्ज करना बेहद जरूरी यहाँ पर बन चुका है। दाहिने हाथ फॉर द विकेट, ये गेंद इस वक्त विकेट कीपर चूके गेंद को रिवर्स शॉट खेलना चाहता, 1 रन मिलेगा, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है इस वक्त 18 रनों पर। इसको बैट हो दैट एट द लास्ट मोमेंट, और 5 गेंदें अब बाकी उनकी पारी में। गेंदबाज निजाम गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए, और जहां तक सवाल है इस वक्त यंग बॉयज पोलली का, तो अपने अजय अभियान को जारी रखने की पूरी कोशिश में उनके खिलाड़ी। ये गेंद इस बार ऑफ स्टंप पर आती हुई गेंद को इस वक्त मोड़ दिया था, इस वक्त पॉइंट पर 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है। इट्स ऑफ द बैट इन फैक्ट, 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 19 रनों पर। 19 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। 2 गेंदें 2 रन इस ओवर में प्रदान कर चुके हैं गेंदबाज निजाम, और अपनी अगली गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाज तैयार। निजाम दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए, दाहिने हाथ के बल्लेबाज इस वक्त सामना करते हुए, यह गेंद बेहतर गेंद थी, इस बार विकेट कीपर गेंद को ठीक तरह से कलेक्ट नहीं कर पाए, और गेंद इस वक्त पहुंची सीधे विकेट शॉर्ट पॉइंट फील्डर के हाथ में। बेहतरीन गेंदबाजी का सिलसिला यहाँ पर जारी रखते हुए निजाम, और 1 रन के साथ इस बीच स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है अब 20 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। 20 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस। स्टिल इन ओवरऑल कैलकुलेशन इट्स गोइंग टू बी 3 balls रिमाइनिंग इन द रिंग्स। 3 गेंदें अब बाकी उनकी पारी में, और निजाम इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए, और रशवत इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। काफी तेज हवा इस वक्त मैदान पर चलती हुई, और जिस तरीके से धूल इस वक्त वृत्ताकार में
उठ रहे हैं, तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वहां पर ट्विस्टर कुछ हद तक हवा इस वक्त चल रही है और खेल जो कि कुछ क्षणों के लिए यहाँ पर रुक चुका है। एब्सोल्युटली दैट इज एन एब्सोल्युटली ट्विस्टर। और यहाँ पर हवा वृत्ताकार में इस वक्त घूमती हुई सीमा रेखा की ओर बढ़ती हुई लंगोन पर, और एक बार खेल फिर से आगे बढ़ता हुआ। 3 balls left in their innings और अश्वत इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। निजाम 20 for the loss of 2 wickets. निजाम bowls to अश्वत। अगली गेंद लेकर तैयार था इन्हें राउंड द विकेट। यह गेंद इस बार गेंद को खेल दिया, गेंद जाती हुई बैकवर्ड स्क्वायर लेग सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए। एब्सोल्युटली फैंटास्टिक स्ट्रोक came from the bat of Ashwath now. Have a look at this in the replay. Just using his feet, comes down the track and lofted that one in a style of the toes. Down to a deep in wicket और छक्का इस वक्त प्राप्त करते हुए अश्वत, और जरूरतमंद छक्का इस वक्त जुड़ चुका है यहाँ पर एसएफसी ए के खाते में। बेहतरीन स्ट्रोक और इस छक्के के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 26 रनों पर। 26 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। 2 गेंदे अब बाकी और निजाम स्ट्रेट अवे द बाउलर इज नाउ अंडर प्रेशर। और देखना है कि अपने अगली गेंद में वो किस तरह की गेंदबाजी यहाँ पर करते हैं। गेंदबाज निजाम, ये गेंद एक बार फिर से गेंद कौन साइड पर उछालना चाहा, कदमों का इस्तेमाल करते हुए आगे निकलते हुए, लेकिन गेंद को उछाल नहीं पाए और वाइड का इशारा इस बीच अंपायर का। 1+1, 2 runs now added to the total, and this is turning out to be a fine over in SFC A's point of view. 11 runs already scored in this over so far, और 2 गेंदे अभी भी बाकी। Still 2 balls left in their innings. निजाम गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए और गेंद बल्लेबाज सामना करते हुए, यह गेंद इस बार ऑन साइड पर उछालना चाहा, शॉर्ट थर्ड मैन पर गेंद पहुंची, थोड़ी सी मिसफील्ड। दूसरे प्रयत्न में गेंद को फील्ड करते हुए फील्डर लेग बाय का इशारा, और लेग बाय किस रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 29 रनों पर। तो सुशांत ऑफ द स्ट्राइक हो चुके हैं, उनके पारी की अंतिम गेंद का सामना करने के लिए तैयार अब अश्वत। So the last ball of their innings is now coming up. Nizam to Ashwath. Right arm round the wicket. Here he bowls. Again, इस बार ड्राइव किया गेंद को लंगोन की दिशा में, गेंद जाती हुई लंगोन सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। And he finished the innings in a style with a boundary. Fantastic piece of batting performance came in the last over from Ashwath. He's got a 6-run boundary for that, and they finished well with 33 for the loss of 2 wicket in the stipulated 3 overs for SFC Benjanapadavu A, and now the target for Young Boys Polali is 34. 34 runs Young Boys Polali have to score in the stipulated 3 overs with the required run rate of exactly 11.33 runs per over. 34 they have to score in 3 overs. That means in their stipulated 18 deliveries with the help of 10 wickets. The present equation shows for them. और देखते हैं वो इस लक्ष्य तक पहुंच पाते या नहीं। और बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन उनके पारी के अंतिम क्षणों में अश्वत ने दी। एक छक्का एक चौका अंतिम ओवर में जड़ा, फलस्वरूप एक बेहतर स्कोर यहां पर खड़ा कर चुका है एसएफसी बेंजनपदावु ए। 34 द टारगेट फॉर यंग बॉयज पोलाली, और उनकी पारी की शुरुआत यहां पर
So thank you very much, Gopi, and we are coming back to the chasing here from Young Boys Polali. And Young Boys Polali so far in this tournament is unbeaten. And wait and see how SFCA will going to break their track of unbeaten. Can they able to get the victory? And coming back to SFCA, out of three matches, they won two matches. They have lost one match. And this match is definitely going to be more interesting. And highlight of the innings, which was the innings of Ashwath. Was got a finishing touch in the innings of hitting a boundary and sixes in the last over and takes his team into comfortable position. They can feel that they can win the match if they bowl well. So Deepak, as always, will go into ball the hat. Bat ball is in hand, and Dilip is one of the key player for the side of Young Boys Polali. They got a bat in his hand, and it's a good competition between two very good players now. First ball, Deepak. Right arm over the wicket. Balls nicely balled. Quicker one. Faster one. Going for overthrow. Looks like the batsman is right in front of the stumps while he trying for the run out. But I think it's going to be a disaster. Have a look at that one. And the batter, a little bit going across, and Deepak tried to hit the stumps, and the batsman wanted to save it, but by moving across. But I think it's not nothing wrong with the attempt there from Deepak. He's attempted for the run out, but the batter is running across. And here is Deepak, right arm over the wicket, balls to Dilip. Dilip this time beautifully balled. It's gone. Balled him. Huge wicket for Deepak. Absolutely huge wicket. Dilip is the one is wanted to hit the ball on the onside region. It's a bowled out ball, just kissing the brushing the stumps. The buzzer off. Wicket number first, which now for batsman in. Deepak bowling right arm wicket after the successful delivery, which is got Dilip. One more single is added to total as the batter. Uh, Naufal picked up a single then. And they started their journey. It's a 34, which is going to be target. And Deepak so far is bowled two very good deliveries. So four time in this over. Deepak that one. And scoreboard now two on the board, for the loss of Deepak, the recognized player of Goryang Boys, useful left-hand batter. This time he lofted and he got the distance. Tilak lofting that one, little bit short pitch delivery there from Deepak, and batsman just waiting for the ball, and which is a little bit short enough for the batter Tilak to hoisting it over towards the deep long of for a six, and that six will going to open the gate here for Young Boys Polali. Scoreboard is 8 on the board, 26 required for the victory. Over number first is in progress. Deepak balls, beautifully balled, perfect one around the legs of the batter. This time they're going for the single in the form of a leg bite. With that leg bite, scoreboard moves on to 9 on the board for the loss of one wicket in the over number first in progress. Deepak, this time the last ball, which is remaining. 33 sixes so far in this tournament. It's been huge runs, which is in the form of six. Absolutely, it's for the sixer. Come over the wicket. Beautifully ball. Perfect one. Good comeback here by Deepak.
A very good comeback as the first over completed after completion over number first. And chasing 34 to win this match. It's a 9 on the board, 25 required from 2 overs. Excluding that 6, I think it's going to be a very good over there from Deepak. He picked up a wicket of Dilip. It's been a huge wicket. And now Guru brought into attack. ಸೊ 25 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ 12 ಎಸೆತದ ಮುಂದೆ ನೋಡುವ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರನ್ನನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ and wait and see how well the bowler Guru will go and restrict the runs. The Guru bowling second over, right arm over the wicket to Tila. Wide means it's a big wide despite 2 more total with that couple of runs covered was a loss of 1 wicket. The pressure is always there for the bowler, isn't it? Especially when playing in this particular cricket ground. It's not so easy for bowler to survive because it's a little margin for error. Now bowling a short pitch delivery going to be punished. Drives that one down to deep mid wicket. Oh, back for the second. And again the fielder in the deep take the ball properly. Couple of runs here. With that couple of runs, Skopan moves on to 13 on the board. 21 required from 11 balls. Tilak like to get some runs from his bat to his team. Tilak and Naufal are the 2 batters out there in the middle. Now he's on strike now. He's on attack. Over the wicket, that one, but not more than a single. Protection has been given in the more in the onside region. Deep long on deep wide long and mid. So difficult to get boundaries there. One more single from 10 balls. $20 required from 10 balls. Deep extra cover is there. Deep long off is there in the offside region. Bowling mark. Right arm over the wicket delivers. This time beautifully ball. Perfect. Absolutely fantastic work. If the ball will miss the stumps, then it's going to be over. So have a look at that one. How quickly he may just going turning back. It's the stumps. The batsman out of the crease. Fantastic work there from Guru. So 20 required from 9 balls. 9 balls, right correction. Yes, 9 balls remaining. 20 runs required for the victory. 3 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಇದೆ ಈ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 20 ಎಸೆತದ ಮುಂದೆ is in outside again. Guru back to his bowling mark, watching the field set, and now get ready to bowl to the right-hand batter Tilak. Tilak is on strike. Beautifully bowled. Deepak missed it. Wicketkeeper behind the stump. Even the short fine leg fielder they missed it completely. They're going for the single, and looks like it's from the bat. 19 required. 19 required. 8 balls remaining. 8 ಎಸೆತದ ಮುಂದೆ 19 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. So 19 required from 8 balls as Guru once again back to his bowling mark. Right arm over the wicket, and this time going for the reverse sweep. A chance of run out in a non-cycles, and oh my goodness. Unnecessarily is going for the run out, trying for the run out. No backup. By call by umpire. Couple of runs.
So 17 required, lot of firework here for Guru there, and because the strikes which is rotated, and they got a couple of runs in the form of extra. Very well bowled by Guru, absolutely. It's bowled fantastic one, but little bit absence of mind, trying for the run out, which is not unnecessary. And 17 to get from 7 balls. Last ball remaining. Guru, he's just buying that over. His lot of runs which is came to the extras. More than bat came in the form of extras. 16 to get from 6 balls. So after long discussion, Sujan looks like he's got a ball in his hand. Sujan will be the last bowler. 16 required from 6 balls. 3-4 good balls which is required in the last over, and 3 big stroke which is required for team Young Boys Polali to win this match. Now, very exciting last over. 16 to get from 6 ball. This time again, ball went behind the wicket. It's going to be a 1+1, 2 more to the total. 14 to get from 6 ball straight away. Just like in a previous match, the bowler started to feel the pressure. First ball, which is a wide. 14 to get from 6 ball. Sujan is just releasing the pressure from the batter by bowling that wide. Sujan. Right arm round the wicket. Bowled him, cleaned him up. The batter went for the reverse stroke, pays the penalty for that. Maybe the direction of the wind is encouraging the batter to go for the reverse stroke. Have a look at that one. Beautifully bowled. Yorker line delivery right on the block hold. No chance at all for Tilak to reach that one. Absolutely fantastic stuff there from bowler Sujan. Now 5 balls remaining. 14 runs required for the victory. Nikhil is the new batter in with the orange cap. 14 runs required from 5 balls. Match is still is in balance, because in this particular ground very difficult to predict over the match, because 1 or 2 good shots is quite enough for the chasing team to come back to this match, bounce back to this match. Sujan arranging the field set. Now they kept one fielder, extra fielder in the deep in the square leg, because left-hand batsman is on strike. Left-hand batsman always useful, and especially in this condition when the direction of the wind is a little bit changing here, and left of our commentary box a little bit, so that Sujan will going to bowl the next ball. Right arm over the wicket balls. Beautifully bowled. Perfect one. Fantastic delivery. 13 required from 4 deliveries. 21 on the board. 13 required from 4 balls. The batsman is on strike now. Afraid. Afraid is the striker. Is desperately wanted one big shot for his team, but 1 or 2 good deliveries required. Sujan.
This time, he got that one right from the middle of the bat, and he got the distance. This is the beauty of cricket. And have a look at that, Afrid, how fantastic switch it. Really, quite easily plays it down, that one down to deep backward square, like in front of square. And just like I mentioned, the direction of the wind is encouraging the ball batter. Now 7 required from 3 balls. What a match. Sujan once again, job which is given for him to restrict the runs. 3 balls remaining. Still he got opportunity to restrict the runs. But Afrid is in a different way. It's a different tactics that you want to finish the match for his team. Now, there is no long off. There is a wideish long off, almost in the extra cover. Long on in the straight version. Now long off, long on straight, long on coming to long off. Long on is there. Deep mid wicket is there. One fielder hit a deep backward square leg for a reverse stroke because Afrid is a master of switch it. Same jersey number, those who are standing outside the boundary line, please don't stand. It will confuse the batsman. Afrid will go into take the strike. This time he went for the reverse stroke, but fielder is there in the deep. They settle for the single, looking for the second, and they complete it. Now 5 required, 2 balls remaining. This time Afrid didn't able to control that switch, but quite enough for him to complete that couple of runs. Now 5 required from 2 balls. Afrid is a man. He is wanted to complete the match. But Sujan is the bowler. He wanted to get desperately 2 good deliveries where he can find even the wicket of Afrid. It's going to be easy for them to win the match. But this is a decider delivery. The one total delivery will going to make a for the bowl batter in the last ball. I request captain of AC as Sairam Friends Ramnagara. Please be reported here for the toss. ಎರಡು ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಗೆಗಾಗಿ ಸಾಯಿರಾಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ರಾಮನಗರ ಹಾಗೂ JKC ಕಲಾಯಿ ತಂಡದ ನಾಯಕ. So here is bowler balls. This time he lofted and one bounce into the fence. I think it's going to be boundary or not. I wait for the umpire signal. It's a boundary. It's a boundary. Scores are level. Again the Afrid played that switch it. Magnificent stroke. Ball went like a tracer bullet. In the last 2 overs, he played a 3 reverse stroke, and in that 3 reverse stroke, he scored a 12 valuable runs, 6 the boundary and couple of runs. But still, bowler not learning from the mistake. Still, he bowling that same line, which is very useful to the batter to play the reverse stroke. Now, last ball remaining. Sujan can tie the match if he bowled one good delivery, but Afrid doesn't want to do that. You want to get a single run after getting that kind of runs in this last over. He will definitely wanted to make his team to victory. Last ball. This time, chance of run out in the non-striker's end, and looks like it's going to be. The argument is going on. The umpires will going to clarify what really happened in this last ball. They're claiming that that is a wide, but umpire have Deepak saying that it's a last delivery. The umpire will go to see the decision of this last ball. So very interesting. If it is a fair delivery, the score were definitely going to be leveled. If it is a wide delivery, then I think the match will go into tie.
third umpire will go in to see whether the batsman whether that ball which is decision which is pending. Please not umpire not give any wide here. Please don't make any decision for one. Only captain. ದಯಮಾಡಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ. ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಮಾತ್ರ. ಎಸ್, ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಮಾತ್ರ ಬರಲಿ. ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಮಾತ್ರ, ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೆ ಸಹ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಮಾತ್ರ ಬರಬೇಕಿಲ್ಲಿ. ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಮಾತ್ರ ಬರಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ದಯಮಾಡಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು ಪ್ಲೀಸ್. ಅಂಪೈರ್ ಡಿಸಿಷನ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಇಂಟು ಫೈನಲ್. ಅಂಪೈರ್ ಡಿಸಿಷನ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಇಂಟು ಫೈನಲ್. So umpire decision is a final. So umpire says it's a fair delivery, so that scores are levelled and points will be shared. The points will be shared here. Please note. So young boys is in top. Young boys in a point, top in a points table. They got 9 points. They got 9 points. They're in a top. And Rajesh, the team SFC, 1 match to spare. They're in second place. Scores are level. ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ. ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಅಫ್ರೀದ್ ಅವರು ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ದಯಮಾಡಿ ಅಫ್ರೀದ್ ಅವರು ವೇದಿಕೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಮೊಳಲಿ ತಂಡದ ಅಫ್ರೀದ್ ಅವರು ವೇದಿಕೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ.
ಅಲ್ಲಿ ಜೆಕೆಸಿ ಕಲಾಯಿ ಹಾಗೂ ಸಾಯಿರಾಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ರಾಮನಗರ ಈ ತಂಡದ 12ನೇ ಆಟಗಾರ ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು. ಆಟಗಾರರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಲ್ಲ. ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ಜೆಕೆಸಿ ಕಲಾಯಿ ಅಂಡ್ ಸಾಯಿರಾಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ರಾಮನಗರ ಪ್ಲೀಸ್ ಟು ಬಿ ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಟೆಲ್ ದ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ನೇಮ್. ಜೆಕೆಸಿ ತಂಡದ 12ನೇ ಆಟಗಾರ ತಕ್ಷಣ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು. ಆಟಗಾರರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಲು ದಯವಿಟ್ಟು. The 28th of the tournament is coming up. JKC and the openers for them is Samir and Jasim. Full toss at this time. I think he dropped that one. He dropped that one. That wasn't a simplest chance gone in vain. और इसके साथ ही एक रन बल्लेबाज पूर्ण कर चुके हैं. 2 रन पर मिल चुके हैं. 2 रनों के साथ यहाँ पर शुरू हो चुका है. जहाँ तक जेके और श्री राम फ्रेंड्स राम का, तो अगर बल में देखा जाए तो श्री राम रामनगर साईराम रामनगर ने 4 मैचेस में 3 मैचेस जीते हैं. इस बार ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई गेंद को छोड़ दिया इस वक्त शॉर्ट कवर की दिशा में. गेंद पर जो पॉइंट पर दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े, नजदीकी मामला, लेकिन रन आउट यहाँ पर गवाते हुए विकेट कीपर वाइड. 3 runs added total. The scoreboard is now और ये मैच से ज्यादा साईराम रामनगर के लिए ड्राइव करते के साथ फील्डर बल्लेबाज के पास मौका था प्राप्त करने का. 1 रनों का रन बढ़कर पहुंच चुका है 6 रनों पर बिना किसी नुकसान के. 2 रन कुल मिलाकर स्कोर बढ़ चुके हैं 6 रनों पर और 2 गेंदें इस वक्त फेंकी जा चुकी है. और फिर से एक बार गेंदबाज नितेश गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए. फर्स्ट बॉल पर कैच सिंगल सिंगल जी. इस बार ये गेंद ऑफ स्टंप पर आती हुई रन्स नहीं मिलेंगे. वाइड का इशारा 7. अभी तो स्ट्राइकर है आज टाइम में मुझे रन ना तो स्कोर इस वक्त रुक चुका है 7 रनों पर और पहला ओवर उनकी पारी का प्रगति पर नितेश इस बार गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिनाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिनाथ के बल्लेबाज के लिए तैयार. ये गेंद रिवर्स शॉट गेंद को खेलना चाहा, गेंद पहुंची इस वक्त विकेट कीपर के हाथों में. रन्स इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिलेगा तो स्कोर इस वक्त रुक चुका है 7 रनों पर बिना किसी नुकसान के. और फिर से एक बार गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए नितेश दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज जासीम सामना करने के लिए तैयार. ये गेंद बेहतर गेंद थी, गेंद को इस वक्त खेलना चाहा, रनआउट का खतरा, लेकिन कोई बैकअप नहीं वहां पर और बल्लेबाज दूसरे रन के लिए यहाँ पर दौड़ पड़े ओवर थ्रो के रूप में. लेग बाई का इशारा और 2 रन लेग बाई के रूप में उनके खाते में जोड़े जाएंगे. और इन 2 लेग बाई के रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 9 रनों पर और पहला ओवर यहाँ पर पूर्ण हो चुका है. और इनफैक्ट 2 balls लेफ्ट इन दिस ओवर और गेंदबाज इस बार गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए नितेश दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए और
जासीम सामना करने के लिए तैयार। ये गेंद चिप किया खूबसूरती के साथ लॉन्ग ऑफ पर गेंद को रोका गया। इस वक्त बेहतर तरीके से दूसरा रन लेना चाहते हैं, रन के लिए दौड़ पड़े, काफी ऊंचा थ्रो, लेकिन यहाँ पर बल्लेबाज दूसरा रन पूर्ण कर चुके हैं। बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट, गेंद को स्कूप किया था इस वक्त लॉन्ग ऑफ क्षेत्र पर, और आखिरकार जब तक गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता, बेहतर फील्डिंग के जरिए थ्रो किया जाता, बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का, और इन 2 रनों के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 2 अंकों पर, यानी 11 रन बन चुके हैं बिना किसी नुकसान के। पहला ओवर उनकी पारी का यहाँ पर चलता हुआ। जासीम एक बार फिर से स्ट्राइक लेते हुए 11 विदाउट लॉस इन द फर्स्ट ओवर। Full toss, driven that one this time into the same fielder's hand. In fact, once again, slight bit of fumble. Then, in fact, they come back for the second. This time, he won't survive. He won't survive. That is the wicket number 1. He is now fallen. So, JKC Kalai lose their first wicket after being completing a single run. They come back for the unnecessary second run, and because of that, one of them back into the pavilion. One of the batsmen is now backing to pavilion. Samir the man dismissed, and a first wicket loss for JKC Kalai. It's 12 for the loss of 1 wicket. फर्स्ट ओवर कंप्लीटेड, पहले ओवर के समाप्त 12 रन बन चुके 1 विकेट के नुकसान पर, और ओवर की अंतिम गेंद पर यहाँ पर विकेट गिर चुका है जेकेसी कलाई की ओर से समीर का। 12 for the loss of 1 wicket. First over completed in JKC Kalai's innings. 3 overs per side to be played. This is a 3 overs match, and the second over now is going to start within just short while. दोपहर का वक्त, प्रखर धूप इस वक्त छा चुकी है। दोपहर के 2:45 यहाँ पर बच चुके हैं। सूरज आसमान की बुलंदियों को छूने के बाद अपने प्रखर किरणों को मैदान पर फैलाता हुआ, और भीषण गर्मी का एहसास न सिर्फ खिलाड़ी बल्कि दर्शक भी यहाँ पर करते हुए। और जहाँ तक सवाल है इस वक्त गेंदबाजी का, तो गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए कमेंटेटर बॉक्स एंड की ओर से गेंदबाज चेतन इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए, और सामना इस वक्त करने के लिए तैयार यहाँ पर इस बार रिवर्स शॉट गेंद को खेलना चाह चुके, और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। और स्कोर रुक चुका है इस वक्त 12 रनों पर। दूसरा ओवर इस वक्त प्रारंभ होता हुआ, और गेंदबाज एक बार फिर से तैयार। जायद इस वक्त सामना करते हुए, गेंद इस बार खूबसूरती के साथ निकाला, कवर पहुंच सीमा रेखा की ओर, गेंद को बेहतरीन फील्डिंग के जरिए वहां पर फील्ड किया जाता, बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का। बेहतरीन तरीके से गेंद को विद रिवर्स शॉट खेला था, लेकिन वहां पर एक बेहतरीन फील्डिंग निभाते हुए गेंद को वाइड स्लॉट सीमा रेखा के अंदर रोकने में सफल फील्डर, और इस बीच 2 रनों का इजाफा यहां पर हो चुका है। कपल ऑफ रन्स एडेड टू द टोटल, और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 14 रन 1 विकेट के नुकसान पर। इट्स 14 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। So good start for JKC Kalai. Just a second over in progress in their innings. They managed to score 14 runs on the board for losing just a single wicket. और अपनी अगली गेंद लेकर गेंदबाजी इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए, दाहिने हाथ के बल्लेबाज जैद इस वक्त फील्डिंग का मुआयना करते हुए, और अपनी अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज चेतन। ये गेंद इस बार जायद के लिए चूके पूरी तरह, गेंद समसों पर टकराते हुए, और इसी के साथ यहां पर विकेट गिर चुका है। Zayed is now backing to pavilion. Just wanted to play the reverse shot. The ball gets some extra bounce at the last moment. After beating his bat, it stuck to his leg stump, and that is the wicket number 2. Zayed departs, and JKC Kalai are now lose their second wicket. It's 14 for 2. तो 2 बल्लेबाज इस वक्त पवेलियन वापस लौट चुके हैं, समीर और जायद, और यहाँ पर दूसरा ओवर उनकी पारी का प्रगति पर। एक बेहतरीन क्रिकेट टूर्नामेंट, क्रिकेट श्रृंखला, क्रिकेट प्रतियोगिता यहाँ पर एक शानदार प्रगति करती हुई बेंजनापदव प्रीमियर लीग 2023-2023 के अंतर्गत, जिसका शानदार तरीके से प्रस्तुति की है एसएफसी बेंजनापदव ने अपने 5वें वर्षगांठ पर। इन सेलिब्रेशन ऑफ द 5th year they are organizing this fantastic cricket league tournament in the name of Benjanapadavu Premier League 2023. 12 reputed teams are 12 prestigious teams are participating in this tournament, and 12 teams are divided by 2 groups in this competition, and the batch number 28 of this tournament is now progressing here. और गेंदबाज इस वक्त तैयार, ये गेंद ड्राइव किया इस वक्त स्लिप डाउन की दिशा में, और इस बार रन आउट यहाँ पर हो चुका है। जासीम काफी आगे निकल आए थे, वापस लौटने का कोई मौका नहीं, और विकेट, और यहाँ पर गेंदबाज ने अपना काम तमाम किया विकेटों को चटकाने के बाद।
तो 14 रन 3 विकेट 3 टॉप एंडर्स बल्लेबाज पवेलियन वापस लौट चुके हैं और उनकी पारी का दूसरा ओवर यहाँ पर प्रगति पर। बैट्समैन अशरफ इज नाउ कम्स और वो इस वक्त स्ट्राइकर एंड पर इस वक्त सामना करते हुए और चेतन इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए ऑन द विकेट गेंद टकरा चुकी है और विकेट नंबर 4 पर Irshad की बारी सभा just wanted to play the reverse shot, not succeeded. The ball kept low at the last moment and just hitting to the off stump, just chipping to the off stump at the last moment, clipping to the off stump, and the batsman is now backing to pavilion. 14 for the loss of 4 wicket in the over number second in progress. Still a ball left in this over. New batsman. आतिर इस वक्त नए बल्लेबाज के रूप में क्रीज पर मौजूद और वो इस वक्त सामना करने के लिए तैयार चेतन की गेंदों का। तो 4 विकेट यहाँ पर खो चुके हैं 14 रनों पर और जेकेसी अंतिम करते के बल्लेबाज के लिए पर रन नहीं मिला and a fantastic over came from Chetan. Just 2 runs he conceded in this. He captured a couple of wickets and after 2 overs wicket. तो अंतिम ओवर का खेल बाकी और देखते हैं इस बचे अंतिम ओवर में जे कलाई के बल्लेबाज और कितने रन यहाँ पर बटोर काफी बेहतर रहा। इसमें चेतन ने सिर्फ 2 रन 2 उनके बाद यार ना तो बता फुल टॉस नीचे सवाल अंतिम बट ताकि सीमा रेखा को पार कर सके और फील्डर ने आखिरकार जजमेंट के साथ इस कैच को लपका सीमा के अंदर और इसी के साथ एक और विकेट यहां पर गिर चुका है। 5th विकेट फॉलन एंड नाउ दे आर लुकिंग इन ट्रबल। इट्स 4-5। साहिल का आगमन यहाँ पर होता हुआ और वो इस वक्त स्ट्राइकर एंड की ओर कदम बढ़ाते हुए तो पहले जो विकेट प्राप्त कर गया 5 गेंदें उनके 5 गेंद में शेष और इस बीच अंपायर कुछ कहते हुए बल्लेबाजों से और कहने के बाद अपने स्वस्थान पर इस वक्त लौटते हुए और स्ट्राइकर एंड की ओर इस वक्त बल्लेबाज बढ़ते हुए अपने नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज के पास कुछ बातचीत करने के बाद और यहाँ पर गेंदबाजी आगे बढ़ती हुई तो धीरज
इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए साहिल सामना करने के लिए तैयार। दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करने के बाद अपने ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार। यह गेंद इस बार बेहतर गेंद थी, गेंद पैरों पर टकराई, शॉट फाइनल की दिशा में पहुंची। नो बॉल का इशारा इस बीच अंपायर का, और कुल मिलाकर 2 रन उनके खाते में जोड़े जाएंगे। 1+1 2 runs now added to the total, and with a couple on the scoreboard moving up to 16 now for the loss of 5 wickets. With just 5 balls to go in the innings, 16 for the loss of 5 wickets, and a free hit delivery for the batsman. Free hit गेंद देखना ही है कि इस फ्री हिट गेंद पर बल्लेबाज इस तरीके का स्ट्रोक यहाँ पर बनाते हैं। तो चेतन, माफ कीजिए, धीरज इस वक्त गेंदबाजी के भाग पर तैयार। ओवर की अगली गेंद लेकर दाहिने हाथ के बल्लेबाज आतिर इस वक्त सामना करते हुए इस बार गेंद को उछाला खूबसूरती के साथ 6 रनों के लिए। It just comes down the track and lofted that one in a style. And this is an absolutely magnificent struck came from the bat of the batsman. Have a look at this in the replay. Absolutely fantastic. And he's got that one for a maximum. और इस छक्के के साथ स्कोरबोर्ड बढ़कर पहुंच चुका है 22 रनों पर। निस्संदेह बेहतरीन स्ट्रोक यहां पर लगता हुआ छक्के के रूप में, और स्कोर 22 रनों पर पहुंच चुका है। बेहतरीन स्ट्रोक यहां पर लगा चुके हैं बल्लेबाज आतिर, और इस वक्त एक बार फिर से गेंद का सामना करने के लिए तैयार। एक बार फिर से उसी तरह का स्ट्रोक दोहराना चाहा, चूंकि बेहतरीन वापसी, जस्ट मिसिंग ऑफ शादी ऑफ टाइम। इनफैक्ट रन आउट हैपेंड एट द नॉन स्ट्राइकर एंड। साहिल की पारी समाप्त हो चुकी है, रन के लिए दौड़ पड़े थे और यहां पर आतिर दौड़े ही नहीं। फिलहाल विकेट नंबर 6 यहां पर गिर चुका है। इट्स 22 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट। 3 balls now left in their innings. Ramesh, the number 8 batsman, is now coming out to the middle for JKC Kalai. और गेंदबाज धीरज इस वक्त तैयार, और 3 गेंदें अब उनकी पारी में शेष। और इस बीच धीरज अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज इस बीच रमीज सामना करते हुए ये गेंद लेग स्टंप पर आते हुए रन के लिए दौड़ पड़े। 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा। विकेट कीपर ठीक तरह से गेंद को गैदर नहीं कर पाए, दूसरा रन लेना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर रन मिल सकता है। दूसरा थ्रो पहुंचा, नजदीकी मामला जी नहीं, बल्लेबाज दूसरा रन पूर्ण कर चुके हैं और तीसरा रन इस बीच नहीं मिलेगा। और 2 रन बल्लेबाज पूर्ण कर चुके हैं। अंपायर, whether it's a wide, 2+1, 3 runs added to their total. 25 now for the loss of 6 wickets. So 25 for the loss of 6 wickets. और जहां तक गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट, दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए, और अभी भी 3 गेंदें उनकी पारी में बाकी। और गेंदबाज धीरज इस वक्त गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए और अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार पहलों पर गेंद टकराई, गेंद पहुंची पॉइंट की दिशा में। 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा। फील्डर गेंद तक पहुंचते हुए बल्लेबाज दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े। यहां पर 2 रन पूरा कर चुके हैं। इस बीच लेग बाय के रूप में बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट, रन इस वक्त खुलकर बनते हुए इस वक्त जेके कलाई के लिए बेहतर स्कोर की ओर इस वक्त बढ़ता हुआ। 2 गेंदें बाकी, 27 द स्कोर नाउ for losing 6 wicket and 2 balls left in overall calculation in their innings. और बार बार विकेटों के ऊपर लगे हुए बेल्स इस वक्त गिरते हुए, हवा का रुख जो कि काफी तेज है। और इस बीच गेंदबाज की गेंद, इस बार गेंद को खेला इस वक्त बल्ले का भीतरी किनारा, स्क्वायर की दिशा में। 1 रन मिलेगा। दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े, थ्रो पहुंचा स्ट्राइकर एंड पर और विकेट कीपर चुके और बल्लेबाज तीसरा रन लेना चाहते हैं लेकिन नहीं मिलेगा। स्वयं खुद वहां पर बैकअप करते हुए शॉर्ट कवर पर विकेट कीपर 2 रन के साथ। स्कोरबोर्ड मूविंग अप टू 29 एंड जस्ट अ लास्ट बॉल रिमाइनिंग इन देयर इनिंग्स। The last ball remaining in their innings, 29 the score for losing 6 wickets, and the last ball of their innings is now coming up. धीरज bowls और अपनी अगली गेंद लेकर तैयार। अंतिम गेंद, ये गेंद इस बार चूके, विकेट कीपर चूके, रन के लिए दौड़ पड़े, नॉन स्ट्राइकर एंड पर थ्रो पहुंचा, लेकिन यहाँ पर स्टंप्सों पर गेंद टकराई लेकिन बिल्स नहीं ऑफ हुए और स्ट्राइकर एंड पर इस वक्त रन आउट करते हुए विकेट कीपर। सो द इनिंग्स इज अप एंड जेके कलाई फिनिश विद एग्जैक्टली 30
in the 3 overs, stipulated 3 overs. And now the target for Sai Ram Friends Ramnagar is 31. Exactly 10.33 runs per over they have to score for victory. 31 they have to score in the stipulated 3 overs. This is the target for Sai Ram Friends Ramnagar set by JKC Kalai, and let's see can they reach the target of 31 or not. Meantime the inning starts within just short while तब तक एक छोटा सा ब्रेक हम लेते हैं और एक छोटे से ब्रेक के बाद हम आपके सामने उपस्थित होंगे अंग्रेजी में सतीश के साथ जब साई राम फ्रेंड्स रामनगर की पारी की शुरुआत यहाँ पर होगी. धन्यवाद. थैंक यू. साई राम ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಎಸ್ಎಫ್ಸಿ ಬೆಂಜನಪದವು ಎ ಹಾಗೂ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಗೋರೆಮಾರ್ ತಂಡದ ನಾಯಕರಿಗೆ ಕರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಟಾಸ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಸ್ಎಫ್ಸಿ ಬೆಂಜನಪದವು ಎ ಅಂಡ್ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಗೋರೆಮಾರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಟು ಬಿ ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ಹಿಯರ್ for the toss procedure. And next for the next further comments I'd like to invite Mr. Satish in English. Thank you. धन्यवाद. So thank you very much, Gopi, and good afternoon, cricket lovers. And back to this match. 31 is the target now for Sai Ram Ramnagar against JKC Kalai. And more than the victory for JKC Kalai, I think Sai Ram Ramnagar definitely they wanted to win the match because if they wanted to win the qualifier, this is a must-win match for Sai Ram Ramnagar. Wait and see how well these two opening batters will going to get the start here for Sai Ram Ramnagar. So 31 to win the match, and Manoj is on strike, and in the non-strikers, and Chetan Zahid will go into start the proceedings from the commentary box, and right arm over the wicket. First ball starts with the wide outside the line of off stump. Too much with that extra score, and they started their journey one without loss of any wicket. Zahid, one who represented for NM, Zahid NM, and is representing for his home team for JKC Kalai, and Zahid bowling with a short run up. Right arm over the wicket balls. This time he lofted, ball is in the air, but ball will going to carry to the field. The Manoj back into pavilion. This is not a start where Sai Ramnagar wanted in the first over. Their first wicket is back into pavilion, the second ball of the over. Manoj wanted to get that one over the top of that deep cover fielder, but didn't got enough timing, and he just pays the penalty for that. The new batsman in, Puneet is walking towards the middle, and it's a huge wicket here for Zahid. And have a look at that dismissal in the replay. The ball which is pitched outside the line of stump, batsman going after that ball and tried to play that one a little bit square of the wicket, so that he didn't got that much of timing enough to get that any big stroke. So Zahid strikes, the new batter. Puneet is on strike now. Right arm over the wicket, away from us, pass umpire. Again, that going to be one more the extras there. There 1 + 1, 2 more to the total, and with that 2 wides, Kobar Namuzan to 3 on the board for the loss of 1 wicket. So this is all runs, bonus run for Sai Ramnagar. They need to capitalize this extra deliveries and extra runs. 3 for the loss of 1 wicket in the over number first is in progress.
JK Kalai, that means Jai Karnataka Kalai. They are in a fantastic tournament they got so far. Oh, what a delivery! What a fantastic delivery there from Zahid. Absolutely typical that reaction coming from Zahid after he takes a wicket. Absolutely. Have a look at that one. Beaten by the pace, and batsman has got no chance to survive. So wicket number 2, which is back at the pavilion of Sairam, are looking in a trouble now. 3 for the loss of 2 wicket. 35 sixes so far in the final day, and just 8 numbers of boundaries. That shows that this is a batting paradise. The batters loves to hit those big sixes. 8 boundaries you can see, and the 35 sixes. I don't know what the result in the first day. Maybe there's more than that sixes which is witnessed in the day number 1 of this prestigious BPL Benjanapadavu Premier League 2023, which is proudly organized by SFC cricketers Shivaji Nagar Benjanapadavu in this Shivaji cricket ground. Right arm over the wicket delivers. Nicely driven down to down to cow point region off the back foot. Good looking stroke there from the batter, the new batsman Apu is off the mark with a single. With that single, Skubana moves on to 4 for the loss of 2 wicket in the over number first is in progress. And that brings Puneet into strike now. Zahid again bowling away from us. Short run up. And he bowling right arm over the wicket to the right hand batsman Puneet. Puneet this time again nicely bowled. The ball just hitting his leg a little bit misfield by the field. So that batsman completed single leg by. Of course, there is no leg before wicket. So otherwise it's going to be a flum in front of wicket. The back foot which is right in front of a middle stump, and one more addition. 5 for the loss of a 2 wicket in the over number first is in progress. 31 is going to be target, and still they have long way to go. 26 more runs required for the victory. Right arm over the wicket balls. The slower one change up is wanted to play the reverse sweep and Apu quite uncomfortable by playing that reverse sweep, and one more dotted delivery. 5 for the loss of 2 wicket in the over number first is in progress. Zahid last time in this over. Right arm over the wicket to the right-handed batter Puneet. So far it's a quiet over, excluding that wides in this over is a good over. The beautifully balled, clean him up. One more wicket is back in the pavilion. Now Sairam Ramnagar are looking in deep trouble. Lost their wicket number 3, and he's almost look at it where he's standing. He's exposing all the stumps. He was standing in on the 4th or 5th stump in the leg side and exposing the stump, and Zaid quite easily bowled that line which is on the middle stump, and wicket number 3 which is back in the pavilion. It's a 5 for the loss of 3 wicket. 2 overs 26 required. 13 runs per over is the required run rate. What a fantastic tournament is in progress, and SFC cricketers Shivaji Nagar Benjanapadavu is providing that wonderful opportunity for the talents of the belt area to showcase their talent in this prestigious cricket tournament. And so far is 12 teams is participating in this wonderful cricket tournament in day number 1, the Sunday yesterday, and today the final day of this cricket tournament. They're witnessing some fantastic performance by all the players. Again driven that one, but not more than a single. Here they're coming back for the second chance of run out. Excellent thinking there by the batter, seeing that the fielder a little bit slow to react to that fielding, and because ball a little bit went high, so it takes time for the fielder to run front to collect that one, and the batter once again they're grabbing the opportunity of that slowness of the fielder, and they got valuable 2 runs. 7 on the board. Again that ball is far away outside the line of off stump, and one more wide. One more extra. With that extra, Skubana moves on to 9 on the board for the loss of 3 wicket in the over number 2 is in progress. Ball aim. One more wicket is back into pavilion. Wickets are tumbling here of Sai Ram.
looking in a trouble now. One more wicket is back into pavilion. The bowler Mufid, 8 runs. 8 runs, please note, little bit correction. 23 required from 10 balls. 23 required from 10 balls. The new batter is walking towards with the jersey number 9. Lohit is the batter. And bowler balls. Again, lovely delivery. Chance of run out in the non-cycles and wide throw coming from the fielder. So that they completed. Single looking for the 2 then. The opportunity of run out. Again, they completed a couple of runs. So with that couple of runs, covered Namuzan to 10 for the loss of 4 wicket. 21 required from 9 balls. Sairam Ramnagar desperately wanted a victory here. For that, they need to bat well. They're running very well in the between the wicket, but need to bat well. Mufid bowling round the wicket. Again, beautifully bowled there by the bowler. Chance of run out and trying for the shy at the stump. Ball misses the stump. Batsman completed a single. With that single, score was on to 11 for the loss of 4 wicket. That means 20 required from 8 balls. 20 required from 8 balls. Mufid. Balls extra bounce, beaten by the bounce and opportunity of run out, but Mufid is missed it completely. Very good throw coming from the wicketkeeper behind the stump, but the bowler fails to collect the throw and batter survives. 19 required now from 7 balls. 12 for the loss of 4 wicket. 19 required from 7 balls. So far it's a very quiet over from Mufid, excluding some wide balls in this over. Again, extra bounce for Mufid. Then one more over completed. Now last over remaining. 19 runs required for the victory. In last over. This tournament yesterday, which is inaugurated by Ramesh B. The Trustee of Shri Bhadrakali Temple. Then witnessing some chief guest for this prestigious Benjanapadavu Premier League 2023, which is proudly organized by SFC cricketers Shivaji Nagar, Benjanapadavu, and they are celebrating their 5th year of this cricket tournament, and fantastic cricket tournament so far. And all 12 teams are fighting hard for the place in the playoff round. Again, first ball outside the line of leg stump. The batsman looking for the drive, misfilled by the fielder, so that they're going for the single. By call by umpire. With that extra score, Mazanto 13 on the board for the loss of a 4 wicket. 18 required from 5 balls, and badly required 1 or 2 big shots for Sri Sai if they wanted to back. Sai Ram if they wanted to back in this game. Again, that ball is outside the leg stump. Too much. 1 + 1. 2 more to the total. With that, a couple of runs. Covered Namazan to 15. 16 required. 5 balls remaining. Jasim, little bit feeling the pressure. Right arm round the wicket. B balls. This time looks like ball is deflected from the leg, and wanted a second here, but chance of run out and it's gone. The fielding team appealing for the deliberate padding. So no run scored. Absolutely, it's a deliberate padding. No stroke which is offered there by the batter. So that umpire, please note there is a run out. For deliberate, there is run out. Run out is there. ಡೆಲಿಬ್ರೇಟ್ ಆದರೆ ಕೂಡ ರನ್ಔಟ್ ಇದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಬೇಕು. The ball is in play, so that run out will be considered. Please note, as per the rules and regulation of cricket is concerned, it's always the batsman's mistake. And run out which is given there by the squalag umpire. One more wicket is back into pavilion now.
condition is looks so bad here for Sairam. 16 to get from 4 balls. Needed 1 or 2 big shots badly here for the team. Sairam if they wanted to win this match. Sairam, I'm very interesting to see that they are written the name in the Tulu Lipi, than the back of their t-shirts. That Sairam Ramnavagar, the Tulu Lipi, the back of their t-shirts. Getting a promotion for the Tulu language, and 1 more wicket is back into pavilion. Now it's going to be last opportunity. 16 to get from 3 balls. 3 sixes required. Otherwise, 2 sixes and 1 boundary, which is required from the last 3 balls of their innings. Deepak is the new batter in. Deepak, correction, Deepak. Lohit is now seconds and 3 balls remaining. It's a bright, sunny afternoon here in Benjanapadavu, and we are witnessing some fantastic cricket tournament is in progress. Benjanapadavu Premier League 2023. SFC cricketers Shivaji Nagar Benjanapadavu. They're celebrating their 5th year cricket tournament in this beautiful cricket ground outside the leg stump, and it's going to be a 1 more wide, 1 plus 1, 2 more to the total with that couple of runs. Kubernamuzan to 17 for the loss of 6 wicket. Coming down the track, wicketkeeper missed it. They're going for the single, but that single is not going to help them to win this match. And now last 2 balls remaining, and 13 runs required for the victory. 2 sixes, which is badly required. Driven at 1 down to deep long off for a single, but with this single, now 12 required from 1 ball, and the victory, which is the sure here, drives that one, not going for the run. The victory of 11 runs, 11 runs victory for Jai Karnataka Kalai, and after this win, they are really into the playoff round. But unfortunately, looks like very difficult for Sri Sai Ramnagar to qualify. But after this, all league matches. The last league match, we are coming to the last league match. SFC Benjanapadavu A versus Raja Rajeshwari Goremar, and wait and see how well these 2 teams will go into fight for the victory in the playoff rounds. It's going to be very interesting. Now it's a time to the man of the match. The man of the match, which is goes to the bowler who picked up valuable 3 wickets. Who picked up 3 wickets? Zahid NM of team JKC Kalai, the man of the match winner. Madi Zahid NM JKC Kalai ತನದ ಜಾಹಿದ್ ಇವರ ವೇದಿಕೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. May I request Zahid of JKC Kalai, Jai Karnataka Kalai, to please come here to collect your man of the match award from our chief guest in our main stage. Thank you. We'll take a short break. Thank you.
ಅಲ್ಲಿ ಈ ಪಂದ್ಯದ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಂತಹ ಜಾಯದ್ ಇವರಿಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ನವೀನ್ ಇವರು ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ವಿತರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗಾಗಲೇ. धन्यवाद सतीश. So the match, the last league match of this mega tournament, Benjanapadavu Premier League 2023 is now going to start between SFC Benjanapadavu A versus Raja Rajeshwari Goremar. The must-win match for both teams. Meantime, Raja Rajeshwari got 6 points. Meantime, SFC Benjanapadavu got 5 points. So winner of this match straight away going into the playoff round. And because of that, this is the must-win match for both teams. और जहाँ तक सवाल है यहाँ पर टॉस का, तो राजा राजेश्वरी गोरेमार के कप्तान ने पहले टॉस जीता और फील्डिंग करने का निर्णय जो के लिया है. फलस्वरूप इस वक्त दोनों आरंभिक बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद और दीपक और भविष्य आरंभिक बल्लेबाज, जबकि गेंदबाज आशिक गेंदबाजी यहाँ पर शुरू करते हुए 3 ओवर प्रति पारी जो कि खेले जाएंगे. 3 overs per side to be played. And the first ball of the last league match of this tournament is now coming up. पहली गेंद आशिक गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए दीपक के लिए 3 ओवर प्रति पारी खेले जाएंगे 3 विकेट के नुकसान पर. remaining in overall condition in their innings. और जहाँ बॉल है स्ट्राइक का, तो इस सुजान सामना करने के लिए तैयार. सुजान एक मैच में सामना करने के लिए तैयार. ये गेंद रॉबिन की गेंद, रिवर्स शॉट गेंद को खेलना चाहा, नॉट क्वाइट मिडविकेट. इनफैक्ट द फील्डर चेजिंग इट. इनफैक्ट दे कम बैक फॉर द सेकंड. दिस कुड बी इन ट्रबल, दिस कुड बी इन ट्रबल एंड दिस टाइम नो सेज अंपायर. Fantastic running between the wicket between these two batsmen. और इस बेहतरीन रनिंग between the wicket की वजह से 2 रन यहाँ पर दोनों बल्लेबाज बटोर चुके हैं. खासकर जो कि के खाते में और एक विकेट for the last wicket. 3 balls remaining in their innings. Rakshit, the new man, is number for SFC A और वो इस वक्त नॉन स्ट्राइक रन पर मौजूद. फिलहाल स्ट्राइक इस वक्त लेने के लिए तैयार सुजान. ये चाहा, पैरों पर टकराई गेंद, शॉट मिड विकेट पर, मोर देन अ सिंगल. Moving to 30 now for the loss of wicket. The last of their innings. अंतिम गेंदबाज रॉबिन तैयार, जबकि सुजान सामना करते हुए. रॉबिन टू सुजान. The last bowler, Raja Rajeshwari Goremar, is to qualify the playoff of this tournament. Round of this tournament. Have to score 31 with 100. Break with it.
Goremar will going to get this 31. And we are definitely looking for some the healthy battle between these two teams to get the place in the playoff round. So 31, which is the required run from 18 deliveries. Deepak has always wanted to start some proceedings, and each one is so far has got a good tournament for the ball for his team. How well Deepak will going to get the start, and it is how Robin, two wingers, the left and right combination will going to get the start of their team for very good ball. Went for the safe shot down to Deepak. As far as the point is concerned, they got points, and at the same time has got five of their five matches. So that is very interesting. And winning this match will go and make both the teams win to the match. The right hand batsman Robin this time they're going for the single chance of might be little in the position. I think it's like if we be able to opportunity created for the run out happening in this wicket. Rajesh and here is Deepak again bowling with a shot. Deep and a wideish long off almost in the extra cover again. They're going quick single number 3 on the board. Is in progress for line length, but the universal gate is number that he wanted to get him. So in the last moment because Deepak bowled the slower one, change up pace, and the batsman is lucky there, still there in the middle. Robin but one more. So with that singles, Kabun was on to four singles. Correction. 5 on the board and 5 deliveries, 5 taken by the batters. Final time in this square like deep mid wicket and deep one. Wind which is passing strongly into the left of our commentary box again. And as he's looking for some experiment by now he has to call one good delivery for his team. At the same time, the batter knows that Robin that one big shot which is required in the first over if they wanted to win this match. Strong so that Deepak is waiting for that when we're going to start again. Nicely ball, beautifully ball. And he's gone. Mohan is gone. Robin wanted to hit the ball on the onside region, but hitting his legs and wicketkeeper behind the stump quickly returns the ball to the hands of Deepak and Deepak
delivery of the over. Score gone. Chasing 31 to win this match. Rajeshwari Gorema struggling. 5 more runs required for the victory. 12 balls, 25 required. .5 runs per over. Qualified for got 7 points, and SK Kalai has got points unbeatable. Done. 5. One ten claim up after Pune strikes with that still it's 25 more runs required from 11 balls for Rajeshwari Goremar. In the points table. The eliminator. Right up over the wicket balls. Again outside the line of leg stump, but well within the reach of the batsman. Misjudgment by the bowler batter Ashik. Each and every dot ball will going to create the problem for Rajeshwari Goremar to qualify. 25 required from 10 balls. Ashik facing next delivery of Punita. Outside the leg stump, they're going for the single. High throw from the fielder. And wide call by umpire. 1+1. 2 more to the total. Opportunity of run out in the striker's end. But a fielder is trying for the run out in the non-striker's end. And that makes a little bit tough here for the bowler to collect the high throw from the fielder. 1+1, 2 to the total. 8 on the board for the loss of 2 wicket. Puneet bowls right arm over the wicket, tries that one down to deep square leg region, running hard, looking for the second, and they will going to collect that one. Oh, direct it! Direct it is providing the opportunity to come back for the third chance of run out, and is gone. This is a big wicket. This is absolutely a big wicket. The run out which is taken place. Robin is the batter, will going to be the batsman going to the pavilion. Very good throw from the fielder. After that, ball hits the stumps. Ball which is traveling towards the cow point region, and the fielder is charging to the ball. Returns the ball very quickly to the hands of a bowler, and bowler completes the formalities. 21 required from 9 balls. New batter coming to the middle. Along with Ashik, they need to get 21 runs in 9 deliveries. So far, Puneet looking
good in this particular over, excluding that wide ball. He bowled well. Deep back point, deep extra cover. Deep short mid off, deep long on, deep in wicket. Here is Punit again, bowling away from us. Very good. This will going to be a disaster for team FC. SF's position in this match, but slowly the time on 19 required also. Was beautiful shot. Wow, good piece of fielding there by the fielder. Absolutely good piece of fielding. Otherwise, it's going to be a boundary there. The moving to his left hand. Done a great job there by the fielder. And have a look at the fielding effort from the fielder and replay. Absolutely good collection. And picks it one nicely and got a done very well. With the direction of the wind ball, they went like a trace bullet. 17 on the board. 17 required, 14 on the board. Driven that one right in the gap. Down to deep long of good collection. Good year of remaining 7. Last time in this division, David second in comes from run out. Good region returns the ball quickly of keeper wicket keeper and wicket keeper Deepak is just to complete the formalities of making run out. Now last over remaining, 15 runs required for the victory for Rajarajeshwari Goremar to get the place in the playoff rounds. So last over, 15 required for Rajarajeshwari Goremar. Do a distribution here for Rajarajeshwari. But one good over which is badly required for SFC Benjanapadavu to get the place in the qualifier. The batsman in front, Jaikar. Jaikar facing first delivery of the over number 3. Beautifully balled. Perfect one. Starts well by Guru with the dot ball. 5 balls, 15 required for the victory. 5 ball, 15 required for the victory. Jaikar knows that 3 cricketing, very good cricketing stroke is quite enough for them to get the winning runs. And coming down the track, wicketkeeper behind the Sam did the rest. Absolutely fantastic bowling. Seeing the batsman is coming down the track, he bowled a little bit outside the leg stump. And have a look at the wicketkeeper Deepak. Absolutely fantastic work behind the stump. Just in a blink of eyes, he completed the job. Absolutely terrific work behind the stump. Even better line there by the bowler. And with that wicket, looks like now Rajarajeshwari Goremar, they are in a deep trouble, under pressure situation. Need to get one big shot straight away.
So 4 balls, 15 required. Jitesh. This time again, just a single there, or he is not interested, rightly so. Black ball called by umpire. 14 required. 3 balls remaining. This is the one delivery which is going to be decides. This one delivery is going to decide the winner of this match. Madhav is back on strike. 14 required from 3 balls. So far, it's so good, Guru, in this last over. The bails are off because of the strong wind. The strong wind is passing in the ground, so that bails are off. That's why wicketkeeper Deepak is stopping the bowler not to bowl that. And here is a Jaikar, little correction. Guru back to his bowling mark. 3 ball, 14 required for the victory. Decider delivery for Rajarajeshwari. This time outside the leg stump, and batsman completely missed it. And umpire saying that the bails are off, so that dead ball. They called a dead ball because the bails are off before the ball which is delivered. That's why batsman is not interested to play the ball. Again, Guru bowls right arm over the wicket. Went for the big shot, missed it completely. That's it. Now 14 required. 2 balls remaining. 2 sixes will not going to help the team Rajarajeshwari to win the match. But I think if a bowler making no mistake of bowling wides and no balls, it's a victory which is sure for team SFC Benjanapadavu to qualify. Again, that's it. One more good delivery there from Guru. The last ball, 13 required for the victory. And now SFC Benjanapadavu, the supporters might be pretty happy that they will be in the playoff rounds. They will go into play the eliminators. Right arm over the wicket balls. That's it. The victory for team SFCA qualify for the playoff round. Now first match, the qualify number 1. The qualify number 1 will be played between toppers Ambika JKC Kalai versus Young Boys Polali. Sorry, the toppers. This is the qualify number 1 between the 2 toppers of the 2 pools. In pool A, JKC Kalai are the toppers, so they are going to face the toppers of B pool. That is Young Boys Polali. They are the topper to qualify. After that eliminator round, the winner of eliminator will go into face a loser of qualify number 1. So that's it. We are just waiting for the 2 captains. ದಯಮಾಡಿ ಎರಡು ತನದ ನಾಯಕರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ತಮ್ಮ ನನ್ನ ಚಿಮ್ಮಿಗೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬೇಕು. JKC ಕಲಾಯಿ ಹಾಗೂ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಪೊಳಲಿ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಇದೆ. ಸಮಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯವನ್ನು ನೀಡಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಗೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬೇಕು. So time to announce the man of the match. The Sujan is the man of the match for his outstanding batting display. When they're not having enough runs on the board, he's the one. He's just got a very important runs for his team. So that I request Sujan of SFCA to collect your man of the match. ದಯಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಾಶ್ ಇವರು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರು ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕು. ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸುಜನ್ SFC ತಂಡದ ಸುಜನ್ ಇವರು ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ ತಮ್ಮ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ.
So he played a magnificent innings for his team when his team is required some runs. And he is the one, in the previous two matches, not that much impressive in the bowling, but he performed very well from his bat. So news here is that captain of Young Friends won the toss, elected to, yes, Young Boys Polali won the toss, decision which is pending. Whether they're going to bat first or ball first, let's wait and see against team JKC Kalai. And we'll take a short break here in the commentary box. After a short break, Mr. Gopi will go and take over the microphone in our national language, Hindi. Thank you.
Right, the qualifier match number 1 is now going to start off playoff round between JKC Kalai versus Young Boys Polali, and in this match Young Boys Polali, after won the toss, they elected to field first, and now their fielders are now spreading out of the field, and we are just the openers for JKC Kalai are the crease. 3 overs match, and the first ball of the match is now coming up. और जहाँ तक सवाल है, Young Boys Polali, they Satish, they won 4 matches, and 1 matches they got a tie. So with 9 points, they are through to the Young Boys Polali. In fact, they won 4 matches and got 1 tie. That means they have got 9 points, and they are came as a group topper. And as far as the JKC is concerned, they are unbeaten in a pool A round, all 5 matches. So it's going to be a very interesting match, and we will see what will happen in this match between the 2 group toppers. And Young Boys, after won the toss, they elected to field first, and the first ball of the match is now coming up. पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार, और दाहिने हाथ राउंड द विकेट ये गेंद इस बार गेंद को चिप किया, इस वक्त गेंद जाती हुई लॉन्ग ऑफ की दिशा में, फील्डर गेंद के नीचे आते हुए, इसी के साथ पहले ही गेंद पर यहां पर विकेट गिर चुका है जेकेसी कलाई का। इरशाद की पारी समाप्त, और यहाँ पर इरशाद की पारी इस वक्त इरशाद की पारी समाप्त हो चुकी है। देखिए किस तरीके से गेंद को चलाता है, लुक एट दिस इन द रिप्ले, और गेंद को इस वक्त लपक लिया गया वाइड इस लॉन्ग ऑफ पर, और मैच की पहली गेंद में यहाँ पर विकेट गिर चुका है सतीश, और मैं समझता हूँ यहाँ पर पहली गेंद में जेकेसी कलाई का जो विकेट गिर चुका है, इट्स गोइंग टू बी दिस कुड बी द ड्रॉबैक नाउ फॉर जेकेसी कलाई व्हेन दे लॉस्ट देयर फर्स्ट विकेट इन देयर फर्स्ट डिलीवरी ऑफ देयर इनिंग्स। Absolutely, Gopi. The Irshad wicket is definitely going to be a huge, big factor in this match. Young Boys Polali managed to pick the wicket of Irshad, one of the top performer of the team. And coming back these 3 teams, Gopi, absolutely you're right. That is unbeaten team, JKC Kalai. Their run is absolutely fantastic in the league matches. But in the league matches, different, Gopi. When you're coming to the playoff round, little bit. And because of that, he's got a boundary for that. और जहाँ तक सवाल है चौके का, तो चौका इस वक्त प्राप्त कर चुके हैं। तो इस वक्त so runs account begin for them, and तो जहाँ तक सवाल है इस वक्त गेंद बल्लेबाजी का, तो इस वक्त नौफल की गेंद पर इस वक्त जायद का स्ट्रोक था, बेहतरीन स्ट्रोक विद ट्विस्टेड बैट, और जहाँ तक सवाल है इस वक्त रनों का, तो चौका इस वक्त प्राप्त कर चुका है। और इस बीच अगली गेंद लेकर गेंदबाज नौफल गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज सामना करने के लिए तैयार। रिवर्स शॉट गेंद को खेलना चाहा, एक्स्ट्रा क्विकर गेंद थी ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए, और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में, रन्स बल्लेबाज को नहीं मिला। स्कोर इस वक्त रुक चुका है 5 रनों पर, 1 विकेट के नुकसान पर, जबकि पहला ओवर उनकी पारी का प्रगति पर। पहली गेंद पर इरशाद का विकेट गिरा था, लेकिन उसके बाद जायद आए, उन्होंने चौका जड़ा, और इस वक्त 5 रन उनका स्कोर है, जबकि पहला ओवर उनकी पारी का प्रगति पर। नौफल अपनी अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार, दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए। ये गेंद रिवर्स शॉट गेंद को खेलना चाहा, गेंद पहुंची इस वक्त विकेट कीपर को बीट करने के बाद शॉट स्क्वायर लेग की दिशा में, जहां पर गेंद को फील्ड कर लिया गया, और इस बीच 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है। स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 6 रनों पर, 1 विकेट के नुकसान पर, जबकि पहला ओवर उनकी पारी का यहाँ पर प्रगति पर। तो इस वक्त जायद हफ्ता स्ट्राइक हो चुके हैं, और जासीम इस वक्त सामना करने के लिए तैयार, और अपनी अगली गेंद लेकर निजाम गेंदबाजी। नौफल इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट। ये गेंद इस बार लेग स्टंप से काफी बाहर की ओर निकलती हुई शॉट फाइन लेग की दिशा में गेंद पहुंची, वाइड का इशारा अंपायर का, और वाइड के रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 7 रनों पर, 1 विकेट के नुकसान पर, जबकि पहला ओवर उनका यहाँ पर प्रगति पर। और कुल मिलाकर इस ओवर में गेंदें सिर्फ 3 इस वक्त फेंके जा चुके हैं, 4 गेंदें फेंके जा चुके हैं, और अपनी ओर की 5वीं गेंद लेकर इस वक्त नौफल गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए। ये गेंद ड्राइव किया इस वक्त खूबसूरती के साथ, गेंद जाते हुए डीप कवर पॉइंट की दिशा में, और इससे पहले की गेंद को वहाँ पर फील्ड किया जाता। 1 रन के साथ दोनों बल्लेबाज अपना छोड़ बदल चुके हैं, 8 रनों पर स्कोर बोर्ड पहुँच चुका है 1 विकेट के नुकसान पर। और यहाँ पर
जेसन ऑफ द स्ट्राइक हो चुके हैं, जायद इस वक्त स्ट्राइक पर आ चुके हैं और इस वक्त सामना करने के लिए तैयार नौफल की गेंदों का। इस ओवर में अंतिम बार नौफल इस वक्त गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट। ये गेंद रिवर्स शॉट गेंद को खेलना चाहा, एक्स्ट्रा क्विकर गेंद थी, टिप्पा खाने के बाद कुछ उछाल लेते हुए लेकिन बल्लेबाज गेंद को कनेक्ट नहीं कर पाए और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। ओवर नंबर 1 की समाप्ति हो चुकी है। तो पहले ओवर की समाप्ति के बाद 8 रन बन चुके 1 विकेट के नुकसान पर और पहली गेंद पर विकेट गिरा था इरशाद का सतीश, लेकिन उसके बाद एक बेहतर बल्लेबाजी निभाई, खासकर जायद ने एक चौका उन्होंने लगाया और एक पहले ओवर के बाद 8 रन 1 विकेट के नुकसान पर कुछ हद तक रिकवर हो चुका है अपने पहले विकेट पहली गेंद पर खोने के बाद। Absolutely, Gopi. That boundary which is really make a little bit difference in this particular first over. Otherwise, it's a very good over which is bowled by Naufal, and Saeed is the one is picked up a boundary in that over. But still, Gopi, the equal battle is on. Both the teams has got a good start. As far as JKC Kalais wanted to get a good start is concerned, they got 8 runs on the board, and at the same time, the young boys. They got a huge wicket of his shot in that over. So going to be a equal battle, Gopin, and quite understandable because both the teams are unbeaten in the league matches. They doesn't want to lose their winning track in this qualifier number 1. And competition definitely going to be a very interesting, Gopi. And we are expecting some great battle from these two teams to get the place in the final. In the first attempt itself, both the teams wanted to be the finalist of this cricket tournament, so that level of competition is going to be very high between these two top teams. एग्जैक्टली सतीश, यहाँ पर दोनों टीमों का आत्मविश्वास सहज रूप से बढ़ चुका है लीग स्टेज में बेहतरीन प्रदर्शन देने के बाद। और देखते हैं इस मैच में कौन सी टीम विजय यहाँ पर प्राप्त करती है। दूसरा ओवर शुरू होता हुआ कुमार इस वक्त गेंदबाज यहाँ पर शुरू करते हुए नई ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार और स्ट्राइक इस वक्त लेते हुए जेसन जासीन ये गेंद लेग स्टंप पर आती हुई और गेंद को ज्यादा हद तक लेग स्टंप से बाहर की ओर नहीं निकल रही थी। सही गेंद घोषित अंपायर का और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 8 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर, जबकि पहला ओवर उनकी पारी का यहाँ पर शुरू हो चुका है और कुमार एक बार फिर से गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए 8 से 10 पर गेंद को जमीन पर वो टिप्पा खिलाते हैं अपना रन अप लेने से पहले। और इस बीच तैयार दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए ये गेंद ड्राइव किया खूबसूरती के साथ इनटू द गैप, गेंद जाती हुई वाइड एक्स्ट्रा कवर पर। जब तक गेंद को फील्ड किया जाता बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। बेहतर फील्डिंग वहां पर अपनी दाईं ओर दौड़ते हुए इस वक्त गेंद को डीप एक्स्ट्रा कवर सीमा रेखा के अंदर फील्ड करने में सफल बेहतरीन तरीके से फील्डर। और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका था सिर्फ 1 रन प्राप्त करने का और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 9 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। जबकि दूसरा ओवर उनकी पारी का प्रगति पर। क्वालिफायर मैच नंबर 1 बेंजनपदव प्रीमियर लीग 2023 के अंतर्गत यहाँ पर खेला जाता हुआ निस्संदेह यहाँ पर ऐसा कहना पड़ेगा क्रिकेट के लिए एक पर्याप्त वातावरण माहौल यहाँ पर छा चुका है। शाम का वक्त लगभग 4:10 यहाँ पर बच चुके हैं और दर्शक लगभग इस मैदान पर मौजूद मैदान के इर्द गिर्द मैच का खामोशी के साथ मुआयना इस वक्त करते हुए। और इस बीच गेंदबाज कुमार गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए रिवर्स शॉट खेलना चाहा। बेहतर गेंद थी इस वक्त, कुछ ज्यादा तक लेग स्टंप से बाहर की ओर नहीं निकल रही थी, गेंद की लाइन पर नहीं आ पाए, बल्लेबाज बीट हो गए, गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला, स्कोर रुक चुका है इस वक्त 9 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर यहाँ पर प्रगति पर कुमार एक बार फिर से तैयार दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए इस बार जायद सामना करने के लिए तैयार और कुमार की ओर की अगली गेंद दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार बल्ले का बाहरी किनारा, गेंद निकली इस वक्त शॉर्ट टर्न पर 1 रन का इजाफा और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका 2 अंकों पर यानी 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर इस वक्त प्रगति पर। जहां तक एक बेहतर स्कोर खड़ा करने का सवाल है तो कम से कम 25 के आंकड़े तक यहां पर पहुंचना होगा जेकेसी कलाई के बल्लेबाजों को अगर उन्हें एक चुनौती भरा स्कोर यहां पर खड़ा करना है तो। और फिर से एक बार गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए कुमार दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए अगली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद इस बार उछाला, गेंद को लॉन्ग ऑफ पर फील्डर गेंद के नीचे आते हुए और बेहतरीन तरीके से इस कैच को लपका और आखिरकार ये विकेट यहाँ पर गिर चुका है। और जिस तरीके से यहाँ पर कैच को लपका था, देखिए यहाँ पर गेंद को किस तरीके से उछाला था स्क्वायर ऑफ द विकेट अंतिम क्षण में। और जब जैसे ही गेंद सीमा रेखा को पार करे अपने ऊपर की ओर
लगातार छलांग लगाते हुए इस वक्त अपने बाएं हाथ से गेंद को इस वक्त लपका उन्होंने, और इस बेहतर कैच की बदौलत यहाँ पर यह विकेट गिर चुका है। तो 10 रनों पर दूसरा विकेट गिर चुका है। कुल मिलाकर इस ओवर में 5 गेंदे फेंके जा चुके हैं। 5 balls बाउल्ड इन दिस ओवर, स्टिल अ बॉल लेफ्ट, और बल्लेबाज आउट होकर इस वक्त पेविलियन वापस लौट चुके हैं। यहाँ पर जाशिम आउट होकर पेविलियन वापस लौट चुके हैं, और दूसरा विकेट यहाँ पर गिर चुका है। 10 रन 2 विकेट के नुकसान पर इस ओवर में अंतिम बार गेंदबाज कुमार गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार। फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट यहाँ पर चलती हुई, और इस ओवर में अंतिम बार कुमार दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए नए बल्लेबाज अशरफ जो कि इस वक्त सामना करने के लिए तैयार कुमार की गेंदों का, और कुमार दाहिने हाथ ओवर द विकेट। ये गेंद लेग स्टंप पर आती हुई और वाइड का इशारा अंपायर का, और वाइड की रन के साथ स्कोर बढ़कर के नुकसान पर। तो सतीश यहाँ पर बेहतर ओवर रहा। फर्स्ट ओवर कॉस्ट 8 रन, सेकंड ओवर कॉस्ट कंपेयरिंग टू द फर्स्ट ओवर, सेकंड ओवर इज बेटर इन यंग बॉयज पोलरिस पॉइंट ऑफ व्यू। जस्ट 4 रन केम फ्रॉम दिस ओवर, और निस्संदेह इस ओवर में एक बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन कुमार ने दिया है। Absolutely, Gopi, and the contribution from the fielder as well, because Arshid is the fielder in the deep long on region, is responsible for the spectacular catch. What could be a certain six because of that. Arshid is just a wrong hand, actually he's a right hander, but he's taken that catch in the left hand, and the catching and fielding is very good, Gopi. The young boys Polali, they got a fantastic fielding department. One catch which is taken by Harish, the wicket of Irshad, and one more catch which is taken there by the Arshid in the deep long. So that the little bit contribution when coming from the fielding side, Gopi, is always the bowler will going to get a lot of confidence when fielders started to support the bowler. So that's the result here, Gopi. The first 2 overs which is dominated by the bowlers of team Young Boys Polali, but the last opportunity for JKC Kalai to get some acceleration. At least, Gopi, 15 plus runs is badly required in this last over. एग्जैक्टली सतीश, कम से कम 12 से 15 रन इस ओवर अंतिम ओवर में बनाने होंगे अगर उन्हें एक चुनौती भरा स्कोर यहाँ पर खड़ा करना है। तो पहली गेंद वाइड का इशारा, 1+1, 2 runs added to the total, and निजाम starts the bowling of wide with a wide, और 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 14 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर, जबकि तीसरा ओवर उनकी पारी का यहाँ पर शुरू हो चुका है। और इस बीच गेंदबाज निजाम अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। स्ट्राइक इस वक्त लेते हुए जायद, और इस बीच निजाम कुछ बातचीत करने के बाद अपनी टीम के अन्य खिलाड़ी से अपनी अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज जायद के लिए ये गेंद। इस बार जायद ने गेंद को उछाला, लेकिन नॉट क्वाइट मिड विकेट, फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड कर लिया गेंदबाज ने, लेकिन अंतिम एक्शन में जैसे ही वो घूम कर विकेटों पर गेंद को लगाना चाहा, बल्लेबाज तेजी के साथ अपना बल्ला यानी बैट क्रीज पर रख चुके थे, और इस वजह से सब कुछ सुरक्षित बल्लेबाज के लिए 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 15 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर यहां पर प्रारंभ हो चुका है। 5 गेंदें सिर्फ अब उनकी पारी में बाकी, और अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त निजाम गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए अशरफ सामना करने के लिए तैयार। निजाम की गेंदों का दाहिने हाथ राउंड द विकेट, ये गेंद इस बार बेहतर गेंद थी, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक वन। आई थिंक द बॉल स्टक टू द ऑफ स्टंप एट द लास्ट मोमेंट। फैंटास्टिक डिलीवरी फ्रॉम निजाम। मैं देखना चाहूंगा रिप्ले में इस वक्त वहां पर क्या हुआ था। तो यहां पर देखिए राउंड द विकेट गेंदबाज ने गेंदबाजी की थी, और गेंद ऑफ स्टंप पर आती हुई देखिए बिल्कुल सीधी रफ्तार के साथ गलत लाइन पर खेल गए, और गेंद उनके बल्ले को वंचित करते हुए सीधे मिडल ऑफ स्टंप पर जा टकराई, और बिल्स डिस्टर्ब होते हुए, और इसी के साथ ये विकेट नंबर 3 यहाँ पर गिर चुका है। अशरफ की पारी समाप्त। बेहतर गेंद थी इस वक्त निजाम की, और एक और विकेट यहाँ पर गिर चुका है। 15 रन 3 विकेट के नुकसान पर 4 गेंदें अब बाकी उनकी पारी में। नए बल्लेबाज आतिर इस वक्त क्रीज पर मौजूद, और पिछले मैच में आतिर ने बेहतर बल्लेबाजी का प्रदर्शन दिया था, और यहाँ पर देखना यह है कि इस मैच में भी उस सफलता के सिलसिले को वो आगे बढ़ा पाते हैं या नहीं। और निजाम इस वक्त गेंदबाजी करेंगे दाहिने हाथ राउंड द विकेट, दाहिने हाथ के बल्लेबाज अतीर के लिए, और फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करने के बाद निजाम तैयार। नए बल्लेबाज अतीर भी तैयार सामना करने के लिए निजाम की गेंदों का। दाहिने हाथ राउंड द विकेट,
ये गेंद ऑफ स्टंप पर आते हुए और ऑफ स्टंप से रन के लिए दौड़ पड़े। यहाँ पर रन आउट हो चुका है, वाइड का इशारा, एक विकेट भी यहाँ पर गिर चुका है। One more run added to the total and a wicket lost. It's 16 for the loss of 4 wickets now. 16 for the loss of 4 wicket. And still in overall calculation, it's going to be 4 balls remaining in the innings. 4 गेंदें अभी भी बाकी। इस मैच के बाद एलिमिनेटर दौर का मैच खेला जाएगा SFCA और अंबिका कलाई के बीच में। और यहाँ पर नए बल्लेबाज का आगमन होता हुआ रमीज शमीर इस वक्त नए बल्लेबाज के रूप में, जो कि क्रीज पर कदम बढ़ाते हुए और इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। जायद इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। 4 गेंदें बाकी और गेंदबाज इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए निजाम दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए। यह गेंद इस बार गेंद को उछाला है, गेंद काफी ऊंचा स्ट्रोक लॉन्ग ऑन सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए। बेहतरीन स्ट्रोक इस वक्त लगता हुआ जायद के बल्ले से, ऐसा कहना पड़ेगा जस्ट गॉट दैट वन राइट फ्रॉम द middle of the bat. Have a look at this and left that one in a style level long on fence for a huge one. और इस छक्के के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 22 रनों पर। जायद एक बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन यहां पर देते हुए थोड़ी सी उछाल लेती अंतिम क्षण में गेंद और इस उछाल को पहचानते हुए गेंद को इस वक्त मिडल ऑफ द बैट कनेक्ट करते हुए लॉन्ग ऑन सीमा रेखा से बाहर भेजने में सफल छक्के के लिए। और स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 22 रनों पर। बेहतरीन स्ट्रोक जायद के बल्ले से लगता हुआ। एक बार फिर से निजाम गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए जायद इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद पैरों पर टकराई, बेहतरीन गेंद थी। द बॉल केम अलोंग द कार्पेट एट द लास्ट मोमेंट एंड वेंट इनटू द हैंड्स ऑफ विकेट कीपर। इनफैक्ट जायद इस वक्त स्ट्राइक खुद अपने पास रखना चाहते हैं, इसलिए दूसरे रन के लिए वो दौड़ पड़े थे। और दूसरे छोड़ के बल्लेबाज यहाँ पर समीर आउट होकर पेविलियन वापस लौटते हैं। तो एक रन ना इस गेंद पर मिला, एक विकेट भी गिरा और कुल मिलाकर इस वक्त स्कोर है 23 रन। 23 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स एंड नाउ जस्ट 2 balls now left in their innings. दो गेंदें इस वक्त बाकी और गेंदबाज इस वक्त तैयार। निजाम गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए, तो जायद स्ट्राइक इस वक्त लेने के लिए तैयार। अपनी ओर की अगली गेंद निजाम गेंदबाजी करने के लिए तैयार। दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद जायद के लिए। इस बार गेंद को उछाला, बैकवर्ड स्कोर लेग सीमा रेखा के दीवार पर गेंद टकरा चुकी है 6 रनों के लिए। 6 number 2 came from the bat of Zayed in this over. Ice bar 2 squarer and hit that one this time right from the middle of the bat. Just look at this, off the toes, just flicked it away and he finds the gap as well. और इस छक्के के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 29 रनों पर. The scoreboard is now rising up to 29 now with that 6 and Zayed looking on fire now. He is batting on 17 including 2 sixes and a boundary. अगली गेंद, इस वक्त गेंद को खेलना चाहता, ठीक तरह से खेल नहीं पाए. बाई का इशारा सिर्फ और इसी के साथ the innings is up. तो सिर्फ एक मात्र रन बल्लेबाज को ने टीम को मिला and the innings is up for JKC Kalai. They finished with the 30 runs, exactly 30 runs they scored and now the target is young boys Polali is 31. So तो आइए सतीश माइक्रोफोन पर आपको बुलाते हैं एक बार फिर से. टारगेट 31 in 3 overs और यहाँ पर 31 रनों का लक्ष्य. और यंग बॉयज पोलली ने जिस तरीके की बल्लेबाजी की है लीग स्टेज में, तो उनके लिए 31 रनों का लक्ष्य ज्यादा चुनौती भरा नहीं साबित होगा. लेकिन JKC Kalai, they won all their 5 matches, they won all their 5 matches of league stage. और जिस तरह बल्लेबाजी में उनकी गहराई है उसी तरह गेंदबाजी भी उनका सशक्त है. तो यहाँ पर उनके गेंदबाजी के खिलाफ खेलना है तो यंग बॉयज पोलली को एक बेहतर बल्लेबाजी यहाँ पर अपनानी होगी. खासकर 31 रनों का लक्ष्य मैं समझता हूँ अगेंस्ट दी स्ट्रॉन्ग बॉलिंग लाइनअप कुछ हद तक चुनौती भरा जरूर साबित होगा यंग बॉयज के लिए अगर JKC कलाई के बल्लेबाज राइट फ्रॉम द फर्स्ट ओवर एक बेहतरीन गेंदबाजी यहाँ पर करते हैं. माइक्रोफोन पर आइए सतीश. Well, thank you very much, Gopi. So that absolutely right. And we're talking about the two teams and JKC Kalai
and at last they managed to get the runs what they really wanted in the qualifier number 1. The last over, Gopi, it's become productive, and first over which is belongs to young boys Polali, but the last over, that one over which is definitely JKC Kalai has got the runs what they really wanted in that final over, and that's only because of Zaid, Gopi. He's played a very good innings for his team, scored 20 valuable runs in just 11 deliveries, and one of the highlight of the innings of team JKC Kalai. So with that, with the help of that 20 runs, they can feel that now they can win the match if they bowl well, field well. But just like you mentioned, Gopi, you cannot underestimate the performance of young boys Polali in this particular tournament. Just like what JKC Kalai are unbeaten in this tournament, same here is young boys Polali also. They're unbeaten in the league matches. Of course, the one match which is ended in a tie, but they're unbeaten. And so that it's going to be very interesting, and even the 31 runs which is going to be a fighting total, but I think both the teams will going to fight hard for the victory in the qualifier number 1. Now meanwhile, I request the two teams those are playing eliminator round, I request SFCA captain as well as Ambika Kalai, the two captains, please report here immediately for the tossing ceremony. SFCA ಹಾಗೂ ಅಂಬಿಕಾ ಕಲಾಯಿ ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ನಾಣ್ಯಚಿಮಿಗೆಗಾಗಿ ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಇದೆ, ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಅಂಬಿಕಾ ಕಲಾಯಿ ಹಾಗೂ SFCA ತಂಡದ ನಾಯಕರು ನಾಣ್ಯಚಿಮಿಗೆಗಾಗಿ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಡೆ ಬರಬೇಕು. So opening batters are just walking towards the middle, and very successful opening pair for the team young boys Polali, as like Dilip is in the non-strikers end, and in the strikers end Tilak, the two opening successful opening pairs, and wait and see how well these two successful opening pair will go into get the success in this qualifier number 1. So bowler got in his hand is Zahid. Zahid is got experience of playing for one of the top team of Underarm cricket, NM cricketers Mangalore, and wait and see how Zahid will go into produce the good over for his team, and here is Zahid after contributing from the bat. Now he wanted to contribute from the ball, and he is bowling right arm over the wicket to Tilak. Tilak this time nicely driven down to deep cow point region. Oh, misfield by the fielder, absolutely misfield, sloppy fielding out there by the fielder of JKC Kalai, and ball running down to deep cow point boundary for 4 runs. Absolutely lucky boundary. Have a look at that, the fielder. It's unforced error, isn't it? He's just wanted to pick the ball in left hand, and he just pays the penalty for that. And ball running down to deep cow point boundary for 4 runs. With that boundary, and the team young friends, young boys Polali got a good start, and frustration for the bowler Zahid. That pretty ordinary effort there from the fielder. The toss which is completed of eliminator, toss which is won by the captain of SFCA Benjanapadavu, and wait and see what will they going to decide against Ambika Kalai. The eliminator will going to start after this match. Second ball, right arm over the wicket, went for the reverse sweep down to deep cow point. Again the ball is raising with the wind, and coming back for the second before the throw coming from the fielder in the deep. So with that couple of runs scored, moves on to 6 on the board. So positive start there from Tilak and Dilip. Just like mentioned, these two opening pairs absolutely the needed one good start for the team, and so far 6 runs came from 2 deliveries of Zahid's over. Third time in this over, Zahid bowling away from us. Right arm over the wicket to the right-hander batter Tilak. Is batting on 6 with the help of 1 boundary. Again outside on leg stump, going for the big swing of the bat. The batsman crossed off for a single in the form of bye. With that single scored, moves on to 7 on the board without loss of any wicket. Zahid quickly realizing that not to bowl that line which is on the midland off stump, but when we're going to get the run, so that he just wanted to get the ball around the legs of the batter, and he succeeded to defeat the bat, and wicketkeeper fails to collect the ball. 7 without loss of any wicket. Zahid again. Short run up, bowling right arm over the wicket
to Dilip. That's some lovely reverse sweep, but the protection has been given when the day for that reverse stroke. So Dilip has to settle for the single. With the single scope numbers under 8 on the board. Different way, that is a very different techniques required for the batter, especially when playing in this condition. The wind direction is always going to be a key for the success of the batter as far as the shot selection is concerned. This is very important here, the shot selection with the direction of the wind. They need to hit the ball. So 8 on the board in the first over. Zahid bowling away from us. Right, Mohammad wicket. Tilak there drives that one down to right wicket area, down to mid wicket area. Running hard, looking for the second. In comes the throw from the deep. Good throw from the fielder, but not good enough. I think so that batsman is safe there. A couple of runs is taken. Tilak is running hard in the strikers and Vivian, that's a very good throw. Have a look at the throw then. Absolutely, I really appreciate that fielder's throw. That absolutely is a good throw indeed, but not good enough to stop the couple of runs here from the batters. So with that couple of runs, Koban moves on to 10 on the board. At positive start for young boys Polali. They got 10 runs in just 5 deliveries of the first over. Zahid again is just wanted to get one good delivery here if they wanted to restrict the flow of the runs in this first over. But here is a Tilak is already, they got runs from his bat along with Dilip. Got a very good start. Beautiful shot. That was an imperious extra cover drive there from Tilak there. Quality looking technical cricketing stroke here from Tilak there. So first over completed after completion of over number. The first it's 11 without loss of any wicket. And Gopi 11 in the first. It's really opened the gate for young boys, especially in this particular cricket ground. The asking run rate is a 10-11. It is manageable. It's not like it's going to be a difficult one. But in this condition, I think we can see that now 20 runs required from 12 balls. I think first over, which is belongs to young boys Polali, because they got that 11 runs against the bowling of Zaid, one of the best bowler of this tournament so far. In this particular over, he just considered 11 runs. It's quite enough for young boys Polali to get the good start. एग्जैक्टली सतीश, पहले ओवर में 11 रन बना चुका है इस वक्त यंग बॉयज पोलैंड और निस्संदेह बेहतरीन शुरुआत यहां पर कही जाएगी। और जायद जैसे गेंदबाजों के खिलाफ अगर आप पहले ओवर में 11 रन बनाते 31 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए निर्धारित 3 ओवर में, तो एक बेहतर शुरुआत यहां पर कहलाएगी जो इस वक्त सलामी बल्लेबाजों ने की है तिलक और दिलीप ने। 11 विदाउट लॉस। और कंपैरिजन अगर देखा जाए तो पहले ओवर के बाद 8 रन 2 विकेट के नुकसान पर कलाई ने बनाए थे, जेकेसी कलाई ने, जबकि यहां पर यंग बॉयज पोलैंड बना चुका 11 रन। और निस्संदेह सतीश, एब्सोल्युटली अ गुड स्टार्ट given by the openers of young boys Polali. Exactly, they got a start, but they wanted to continue that start and wait and see how well they will going to continue. But here is the first ball, single taken by the batter in the form of leg by. The bowler is introduced by the captain of the side is Mufid. Mufid is a good bowler so far for his team. Has contributed very well for the success of their team. JKC Kalai, and wait and see how JKC Kalai will going to restrict the runs. Now 12 on the board, target 31, and 19 more runs required for the victory in the remaining 11 balls. And Mufid again, right arm over the wicket, round the wicket to Dilip. Dilip went for the reverse sweep, appeal for leg before wicket, but nothing much difference in that. There will be a leg by, and with that leg by, Skoban Muzan to 13 on the board. A good start there from Mufid in this particular over. You know exactly, need to restrict the boundaries and sixes, which is more important for a team to bounce back to this in this match for KFC. A little bit correction for team. This time again, driven that one down to deep long off reason for a single. They're going for the second, but here overthrow comes into play. This time again the chance of run off. Fantastic work. Absolutely fantastic work there by the wicketkeeper behind the stump, and the batsman Tilak is back into pavilion. Total misunderstanding misunderstanding between the wicket. I have a look at the wicketkeeper behind the stump. He's fallen, but here is diving to the stumps and uprooted the bills, and he got the result for that. Tilak's wicket is back into pavilion, and young boys Polali now 14 for the loss of 1 wicket. 17 more runs required for the victory in remaining 9 deliveries.
Hafrid is a hero of the previous match. He's the one. He's played a fantastic game of cricket against SFC, and he's now back into strike. Mufid ball went for the reverse hip, going for the run. One more wicket is back into pavilion in the form of run out. 2 wickets gone, and again this run out taken place. Misunderstanding between the wicket. Went for the reverse stroke. Ball which is not too far away from the wicket keeper. Dilip wants a single, and his partner is not interested, rightly so, and pays the penalty for that. And wicket number 2, which is back into pavilion. So new batsman, just number 28, came into middle. Looks like Nikhil. And here is Afrid, went for the swing of the bat. Again the dotted delivery. Sometime it's happening that confidence is different, but overconfidence is so different. It's look like Afrid is very confident with this reverse stroke, but 2 deliveries he faced, he misses the ball and makes things a little bit tougher. 17 to get from 7 balls. Mufid is doing a fantastic job. Again he went for the reverse sweep. Again wicketkeeper misses the ball here, and going to be a bye here. With that bye, Koban Muzan to 15 for the loss of 2 wicket. 16 to get from 6 ball, and Gopi outstanding over. Absolutely fantastic over, isn't it? The kind of over which is badly required for that kind of over which is badly required for JKC. Kalai Gopi, the kind of over is bowled by Mufid. Absolutely fantastic one. Just 4 runs, and because of that very good economical over, now things looks like a little bit tougher for young boys Polali. एग्जैक्टली सतीश, इस ओवर में मुफीद ने बेहतरीन बल्लेबाजी का बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन यहाँ पर दिया। सिर्फ 4 रन उन्होंने प्रदान किए और 2 ओवर के बाद पहले ओवर के बाद 20 रन बनाने थे अंतिम 2 ओवर में, और यहाँ पर 4 रन सिर्फ मुफीद ने प्रदान किया अपनी गेंदबाजी में। तो अब थिंग्स गेटिंग टाइटर नाउ फॉर द बैट्समैन ऑफ यंग बॉयज पुलले, और 16 रन चाहिए, 16 दे नीडेड इन द लास्ट ओवर, और ऐसा कहना पड़ेगा कम से कम 1 या 2 चौका या छक्का यहाँ पर लगाना पड़ेगा इस वक्त उन्हें वापसी करने के लिए। कम से कम 1 चौका या छक्का तो जरूर लगाना होगा, और कुछ हद तक मुश्किल हो चुका है लक्ष्य, लेकिन यहाँ पर कठिन जरूर लेकिन नामुमकिन नहीं। और यहाँ पर एक विस्फोटक बल्लेबाजी, आक्रामक बल्लेबाजी निस्संदेह यंग बॉयज को इस मैच में वापस ला सकती है। Absolutely, Gopi, but here is the batter Afrid is trying for the reverse stroke, but he's not getting the ball to this bat. The fourth ball he's trying for the reverse stroke, but he's not really given up yet, and he missed it completely. But he got a single. That's very important. And 15 runs required from 5 balls. Nikhil is the new batter. Is now back into strike now, and wait and see how Nikhil will going to get one big shot here. The match is very interesting, and have a look at the crowd here. Absolutely good crowd enjoying the game of cricket. And right of our commentary box, some good number of spectators enjoying the game of cricket of this prestigious BPL Benjanapadavu Premier League. League 2023, which is proudly organized by SFC Cricketers Shivajinagar in this Benjanapadavu Shivajinagar Cricket Stadium. So excitement still left in this over, and 5 balls and 15 runs required for the victory. One big shot will going to change the complexion of this match. The Nikhil is a left-hand batsman. Always it's the favorable for the left-hand batters, especially in the afternoon, the direction of the wind. This time nicely ball is in there for a while, but landed very safely in front of the fielder out there in the short extra cover. Just a single. Excellent bowling performance continues here from the bowlers, and Jasim, the bowler in the last over, is trying his level best. Now 4 balls, 14 runs required for the victory. 14 required from 4 balls. That's a very interesting. We are all now ready for the first eliminator of this prestigious cricket tournament. Will be now played after this match between SFC versus Ambika Kalai. This time again that ball outside the line of leg stump. Batsman went for the single in the form of wide +1. 2 more to the total. This is going to be a bonus run. Absolutely bonus run here for young boys Polali. Now 12 to get from 4 balls. The pressure is on now for the bowler.
Pressure is on for the bowler. Pressure is also there for the batter because 12 to get from 4 balls. Everyone on their feet and just wanted to see that which team will going to qualify for the final, the mega final of this prestigious BFC Trophy 2023. Here is the bowler bowling from the far end. Commentary box and again it looks like going to be a one more wide. Once again a bowler under pressure. Jashim is feeling the pressure now. 11 required, 4 balls remaining. The batsman, left hand batsman, is on strike. Nitin again, it's going to be 1+1. It's going to be a 1+1. That means a disappointment and disaster. 9 required from 4 balls. All in sudden. The complexion of the match will go into turning around. And what could be a opportunity which is created by the previous bowler, and this bowler is really feeling a lot of pressure. 9 required from 4 balls. One stage is a 14 required from 4 balls. Now because of the mistake by the bowlers, now 9 required from 4 balls. This is a cricket, what you call, and a pressure game. And under pressure, bowlers started to bowl some wide deliveries. And young boys now probably looks like they can win the match because 9 to get from 4 balls. But still, the bowler can come back. Jasim need to be cool and calm. So what a match is going on here. 9 required from 4 balls. 8 will go into tie the match. If the match will go into tie, super over will go into decide the winner of this qualifier number 1. So left hand batter, Nikhil. Maybe the pressure is off because of that 2 wide balls and 3 runs which is conceded in that. And now Nikhil will go to face, little bit correction, Afrid, the striker. Again, outside line of off stamp, they're going for the single. 1+1. My goodness, can you believe this? 7 runs which is conceded in the wides. Now 7 required from 4 balls. 6 for tie. Jasim, JK, Kalai, everyone is under pressure and disappointed, in fact, because of that. Jasim is bowling that wide deliveries, that much of wide deliveries conceded. It's very difficult to win the match, but still he can come back. But here is young boy is probably enjoying that every extra runs which is conceded by the Jasim in the final over. 7 required. Drives, bowler's back drive, chance of cotton ball, but he just stopped the strokes from the batter Nikhil there. And now 6 required, 3 balls remaining, 5 for the tie, 6 for the win. It's going to be anybody's game. It's going to be anybody's game. And good comeback after that wide ball. Jasim ball 1 fair delivery which is on the midline off stamp, and Nikhil picked up a single for that. Afrid is on strike now. 6 required, 3 balls remaining. Afrid went for the big swing of the bat by playing the switch it. Wicketkeeper missed it, but it's going to be a bite. It's going to be a bite. Good bowling there from Jasim, but good. It's not a good collection behind the stump. 5 required, 2 balls remaining. 4 for the tie. 4 for the tie, 5 for the victory. The kind of qualifier which is required from these 2 top teams of the A and B group. That are the same competition. The fantastic competition is on between these 2 teams to get the place in the mega final. Jai Karnataka Kalai, young boys Polali. They're fighting hard. It's going to be anybody's game. Both the teams has got opportunity to win the match. Jasim, back to his bowling mark. Need to restrict the 5 runs. Nikhil is on strike. Again, a nice little one. They're going for the run. They're coming back for the second. In comes a throw from the fielder. Batsman struggling and he's gone. Just a single run. Have a look at that one.
Ball deflected from the leg, went in the vacant area. Fielder from the deep long on, deep mid wicket, charging to that one. Single line pick up and throw. Straight to the hands of wicket keeper, and wicket keeper completes the job. Now last ball remaining. 4 runs required for the victory, 3 for the tie. But one more interesting thing in this Gopi Gopi, the last ball that new batter have to take the strike. New batsman have to take the strike. It's not the batter which is settled down in the middle. Afrid is in out of the strike, and I think it is a golden opportunity for Jasim to ball one good delivery for the new batsman. बिल्कुल सतीश, यहाँ पर नए बल्लेबाज की इस वक्त स्ट्राइक लेना है अंतिम गेंद में, और यहाँ पर देखना ही है कि नए बल्लेबाज यहाँ पर अंतिम गेंद नौफल जो इस वक्त मैदान पर उतर चुके हैं क्या करते हैं। लेकिन इस मैदान का स्वभाव ऐसा है कि हवा के रुख के साथ जो भी स्ट्रोक्स खेलेगा वो सफलता प्राप्त करे, और इस वक्त हवा देखिए मैदान की दाईं से बाईं और इस वक्त गुजर रही है, तो इस वजह से बल्लेबाज रिवर्स शॉट खेलने का प्रयास कर रहा है। अंतिम गेंद पर अगर हवा के रुख के साथ स्ट्रोक्स बल्लेबाज खेलते हैं तो निस्संदेह वो यहाँ पर सफलता प्राप्त कर सकते हैं। Absolutely, Gopi. Short selection is going to be key in this particular cricket ground. He won 4 runs in one ball, which can be manageable. Here is the last ball. 4 runs required for the victory. Ball deflected from the leg. They're looking for the second. Even they're looking for the third for the tie. They will go in for the third. But here is a chance of run out. Indian strikers and 1 run victory. 1 run dramatical victory of Jai Karnataka Kalai, and they're through to the final of this prestigious Benjanapadavu Premier League 2023, defeating Young Boys Palali by just a single run. And Jasim is the one who really got a hard time in the final over, but he managed to pull the things back in the remaining deliveries, and they won the match. Congratulations for the winner, but nothing much lose the heart here for the team Young Boys Palali. They got one more opportunity to qualify for the final, but they need to wait for the result of the eliminator number 1 of this prestigious cricket tournament, SFC versus Ambika Kalai will go into start very soon, and we should take a short break, and before that there's a time to announcement of man of the match award. The man of the match which is goes to one who really performed very well from the bat, scored at 20 runs in 11 balls. Zahid is judged as a man of the match. May I request Zahid to come here? Zahid of Jai Karnataka Kalai, request you to come and collect your man of the match award from our chief guest. So time for the break. After the break, my friend Gopi will go and take over the microphone. Thank you. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಪಂದ್ಯದ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠನಾಗಿ ಪುರಸ್ಕೃತಗೊಂಡಂತ ಜಾಯದ್ ಇವರಿಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ತಂತ್ರಿ ಇವರು ದಯವಿಟ್ಟು ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಶ್ರೀಯುತ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ತಂತ್ರಿ ಅಮ್ಮುಂಜೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು ದಯವಿಟ್ಟು ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಶ್ರೀಯುತ ಜಾಯದ್ ಇವರಿಗೆ ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಂಬಿಕಾ ಕಲಾಯಿ ತಂಡದ ಇತರ ಆಟಗಾರ ಕೂಡಲೇ ಇಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು. ಆಟಗಾರರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಲ್ಲ. ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ಅಂಬಿಕಾ ಕಲಾಯಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಟು ಬಿ ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಟೆಲ್ ದ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ನೇಮ್.
तो धन्यवाद सतीश। तो यहाँ पर एलिमिनेटर मैच शुरू होने जा रहा है और इस वक्त एलिमिनेटर मैच में इस वक्त बैठ रहे एसएफसी ए बेंजनपदव वर्सेस अंबिका कलाई। और जहां तक का सवाल है इस वक्त इस मैच का, तो एसएफसी ए बेंजनपदव ने टॉस जीतने के बाद पहले फील्डिंग का करने का निर्णय जो कि उन्होंने लिया है और मैच की पहली गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाज दीपक का इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हैं, जबकि सामना करते हुए इस वक्त मनीष नॉन स्ट्राइकर पर गुरु पहली गेंद इस वक्त गेंद को इस वक्त उछालना चाहा, नॉट क्वाइट मिडलिंग एट द लास्ट मोमेंट और गेंद पहुंची इस वक्त शॉर्ट मिड विकेट पर, जहां पर गेंद को फील्ड कर लिया गया और इस बीच एक रन का इजाफा यहां पर हो चुका है और एक रन के इजाफे के साथ रनों का सिलसिला यहां पर शुरू हो चुका है अंबिका कलाई के लिए। 1 रन 90 लाख से नुकसान के टॉस जीतने के बाद यहाँ पर एसएफसी ए बेंजनपदव के कप्तान ने पहले फील्डिंग करने का निर्णय जो कि लिया है और अगली गेंद इस बार लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए और आखिरकार गेंद इस वक्त शॉर्ट फाइन लेग पर फील्ड होती हुई और वाइड का इशारा अंपायर का और वाइड के इस रन के साथ रनों का रन इस वक्त बढ़कर पहुंच चुके हैं 2 पर। 2 रन बिना किसी नुकसान के पहला ओवर इस वक्त प्रगति पर। दीपक का इस वक्त फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करते हुए और जहां तक का सवाल है अगली गेंद का, तो ये गेंद एक बार फिर से लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए और एक बार फिर से वाइड का इशारा, तो 2 लगातार वाइड यहां पर फेंक चुके हैं। और एसएफसी ए का जहां तक सवाल है मेजबान टीम है इस श्रृंखला का और यहाँ पर होस्ट टीम जिसे कहते हैं अंग्रेजी में, तो यहाँ पर एलिमिनेटर मैच में वो इस वक्त सामना कर रहे हैं अंबिका कलाई का। तो इस बीच दीपक एक बार फिर से गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए मनीष इस वक्त सामना करने के लिए तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार गेंद को उछाला लॉन्ग ऑन पर, लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद, थोड़ा सा मिस जाओ इस बार गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। मिस फील्ड यहां पर होती हुई, हालांकि एक फील्डर के सिर के ऊपर से गेंद निकली, मिस जजमेंट हुआ था, लेकिन दूसरे फील्डर भी गेंद को ठीक तरह से रोक नहीं पाए और गेंद सीमा रेखा को पार कर चुकी है। देखिए किस तरीके से यहां पर हुआ था, पहले फील्डर के सिर के ऊपर से गेंद निकली, मिस जजमेंट हुआ, दूसरे फील्डर भी गेंद को ठीक तरह से रोक नहीं पाए और गेंद सीमा रेखा को पार कर चुकी है 4 रनों के लिए। तो इस चौके के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 7 रनों पर, 7 विदाउट लॉस। और जहां तक पॉइंट्स टेबल का सवाल है लीग स्टेज में, तो एसएफसी ने 5 मैचेस खेले थे, 3 मैच में उन्होंने विजय दर्ज किया है, 1 मैच में उन्हें हार का सामना करना पड़ा है, 1 मैच टाई रहा है, 7 अंक उनके हैं इस वक्त लीग स्टेज में। जबकि अंबिका कुलाई ने भी 5 मैचेस खेले, 3 में उन्होंने विजय दर्ज किया है, 1 मैच उन्होंने हारा, 1 मैच टाई हुआ, 7 अंक वो भी उन्होंने भी प्राप्त किए हैं लीग स्टेज में। तो यहाँ पर बराबर का संघर्ष इस वक्त जारी है। और जहाँ तक सवाल है एसएफसी और अंबिका कलाई का, जहाँ तो इस वक्त ऐसा कहना पड़ेगा इस मैच में विजय की संभावना 50% तक कहा जा सकता है। तो इस वक्त कुछ हद तक फील्डिंग में जमावट करते हुए पिछले गेंद पर जो मिसफील्ड की थी इस वक्त डीप लॉन्ग ऑफ के फील्डर में, तो इस वजह से वो फील्डर को वहां से हटा दिया गया है और दूसरे फील्डर को नियोजित वहां पर किया गया, तैनात किया गया है। और दीपक अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार पैरों पर गेंद टकराई, गेंद पहुंची इस वक्त शॉर्ट स्क्वायर की दिशा में और जब तक गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है। लेग बाय का इशारा अंपायर का और लेग बाय के इस रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 8 रनों पर, जबकि पहला ओवर उनकी पारी का यहाँ पर प्रगति पर। एक बेहतर शुरुआत की इस वक्त ज़रूरत है अंबिका कलाई को, जहां तक एक बेहतर स्कोर खड़ा करने का सवाल है और जहां तक एसएफसी ए बेंजनपदव का सवाल है। तो इस बार स्क्वायर ऑफ द विकेट गेंद को खेला खूबसूरती के साथ, कवर पॉइंट फील्डर के हाथों में, रन आउट का खतरा इस वक्त थ्रो पहुंच चुका है, नजदीकी मामला और इसी के साथ पहला विकेट यहां पर गिर चुका है। बल्लेबाज मनीष ने दूसरा रन लेने की जोखिम उठाई और इससे पहले कि वो स्ट्राइक एंड पर पहुंचे सीधा थ्रो पहुंचता हुआ डीप कवर पॉइंट फील्डर का विकेट कीपर के हाथों में। विकेट कीपर को हालांकि थोड़ा सा आगे जरूर जाना पड़ा, लेकिन थ्रो को कलेक्ट करने के बाद उसके बाद उन्होंने दौड़ कर आकर विकेट यहां पर चटका दिए, बिल्स उड़ा दिए और इसी के साथ पहला विकेट गिर चुका है। मनीष की पारी समाप्त, पहला विकेट यहां पर हो चुका है अंबिका कलाई 9 रनों के ऊपर। इट्स 9 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट in the over number first in progress for अंबिका कलाई। एक बेहतरीन क्रिकेट श्रृंखला बेंजनपदव प्रीमियर लीग 2023-2023 जिसकी शानदार प्रगति इस वक्त होती हुई ढलते हुए शाम में एसएफसी क्रिकेटर शिवाजी नगर बेंजनपदव ने इस श्रृंखला का आयोजन किया अपने 5वें वर्षगांठ पर। In the celebration of their 5th year, they are organizing this fantastic tournament in the name of Benjanapadavu Premier League 2023 in this beautiful शिवाजी क्रिकेट स्टेडियम बेंजनपदव। और एक शानदार श्रृंखला और एक बेहतरीन प्रगति यहां पर करते हुए नए बल्लेबाज का आगमन यहां पर हो चुका है
सुकेश सामना करते हुए रिवर्स शॉट गेंद को खेलना चाहा, गेंद पहुंची इस वक्त शॉर्ट थर्ड मैन पर। गेंद को जब तक फील्ड किया जाता बल्लेबाज के पास मौका था एक रन प्राप्त करने का, और इस एक रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 2 अंकों पर, यानी 10 रन। लास्ट बॉल, अंतिम गेंद इस ओवर में बाकी, और इस बीच सुकेश का खाता यहाँ पर खुल चुका है। तो स्ट्राइक इस वक्त लेते हुए गुरु, और इस बीच दीपू यानी दीपक अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करने के बाद दाहिने हाथों पर विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए ये गेंद इस बार हल्के से गेंद को पुश कर दिया, शॉर्ट कवर की दिशा में रन के लिए दौड़ पड़े, मिसफील्ड वहां पर रहा, और इस मिसफील्ड का फायदा उठाकर बल्लेबाज ने 1 रन तेजी के साथ पूर्ण कर लिए, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 11 रनों पर, 1 विकेट के नुकसान पर। 11 for the loss of 1 wicket. A good start for Ambika Kalai after being losing the toss and put it to bat by SFCA Benjanapadavu in the eliminator match of Benjanapadavu Premier League 2023. They are made a good start. In fact, 11 runs they managed to score after first over for losing 1 wicket. और जहां तक सवाल है गेंदबाजी का, तो दूसरा ओवर इस वक्त शुरू होता हुआ, और दूसरा ओवर इस वक्त शुरू करते हुए गेंदबाज पुनीत इस वक्त गेंदबाजी यहां पर शुरू करते हुए, और इस वक्त सामना करते हुए गुरु, और दूसरा ओवर अंबिका कलाई के पारी में शुरू होता हुआ। ओवर की पहली गेंद पुनीत गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए, फील्डिंग में जमावट कुछ हद तक यहां पर चलती हुई। शाम का वक्त लगभग 5:05 यहाँ पर बच चुके हैं, और धूप की तीव्रता हालांकि काफ़ी हद तक कम हो चुकी है इस मैदान पर, लेकिन धूप का अस्तित्व अभी भी मौजूद है। और इस बीच गेंदबाज पुनीत ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार, दाहिना तो ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए, यह गेंद उछाला, गेंद पहुंची इस वक्त लॉन्ग ऑन की दिशा में। 1 रन का इजाफा हो चुका है, और 1 रन के इजाफे के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 12 रनों पर, 1 विकेट के नुकसान पर। इट्स 12 for the loss of 1 wicket at the start of the second over in fact। और पुनीत इस बीच गेंदबाजी करेंगे सुकेश के लिए, और कुछ हद तक फील्डिंग में जमावट करने के बाद अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। 3 से 4 कदम उनका रन अप, दाहिने हाथों पर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए ये गेंद इस बार लेग स्टंप पर आती हुई गेंद, विकेट कीपर ने गेंद को गैदर किया विकेटों के पीछे, लेकिन गेंद लेग स्टंप से काफ़ी बाहर की ओर निकलती हुई, और वाइड का इशारा अंपायर का, और वाइड के इस रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 13 रनों पर, 1 विकेट के नुकसान पर। इट्स 13 for the loss of 1 wicket इन द ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस। तो इससे पहले जो क्वालिफायर मैच नंबर 1 समाप्त हुआ था, जिसमें जेकेसी कलाई ने यंग बॉयज पोलली को रोमांचक तरीके से सिर्फ 1 रन से पराभव करने के बाद इस श्रृंखला के ग्रैंड फिनाले में प्रवेश वो प्राप्त कर चुके हैं, और इस मैच की विजेता टीम अगले क्वालिफायर मैच नंबर 2 में यंग बॉयज पोलली का मुकाबला करेगी। यह गेंद इस बार गेंद को ड्राइव किया खूबसूरती के साथ, गेंद जाती हुई लॉन्ग ऑन की दिशा में, और गेंद सीधे लॉन्ग ऑन सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। वहां पर गेंद तक पहुंच गए थे, लेकिन अंतिम क्षण में गेंद को सीमा रेखा के अंदर ढकेलने में असफल। ये देखिए किस तरीके से हुआ था, हैव अ लुक एट दिस इन द रिप्ले। गेंद किस वक्त ड्राइव किया था लॉन्ग ऑन पर, गेंद पहुंची थी लॉन्ग ऑन तक, फील्डर भी पहुंचे, लेकिन अंतिम क्षण में गेंद को रोकने में असफल, और गेंद सीमा रेखा को पार कर चुकी है 4 रनों के लिए। तो इस चौके के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 17 रनों पर, 1 विकेट के नुकसान पर। 17 for the loss of 1 wicket। गुड प्रोग्रेसिंग हियर नाउ फॉर अंबिका कलाई, और एक बेहतर स्ट्रोक यहाँ पर लगता हुआ सुकेश के बल्ले से, और वो अपनी अगली गेंद का इस वक्त सामना करने के लिए तैयार है, जबकि गेंदबाज पुनीत अपने जूतों के फीतों को इस वक्त बांधते हुए और अपनी अगली गेंद फेंकने के लिए इस वक्त तैयार रहा। दाहिने हाथ के बल्लेबाज सुकेश लंबे कद के खिलाड़ी इस वक्त सामना करते हुए इस वक्त पुनीत की गेंदों का बिल से एक बार फिर से गिर चुके हैं। हवा की रफ्तार जो कि काफ़ी तेज़ है मैदान पर, तो इस वजह से बार बार विकेटों के ऊपर रखे गए बेल्स इस वक्त गिरते हुए, और कुल मिलाकर ऐसा कहना पड़ेगा हवा मैदान की दाईं से बाईं ओर इस वक्त गुजरते हुए, और इस गर्मी से काफ़ी हद तक राहत दिला रही है इस वक्त खिलाड़ियों को और दर्शकों को। और पुनीत अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार सुकेश के लिए, ये गेंद स्क्वायर ऑफ द विकेट has gone over the fence straight in front of our commentator box for a huge one. This is an absolutely outstanding strike, just scooped it that one, square of the wicket, and the ball pitched right in front of our commentator box.
That is an absolutely perfect struck and he's got that one for a maximum. और इस छक्के के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 23 रनों पर। सुकेश लुकिंग ऑन फायर नाउ। थोड़ा सा विड्थ था और इस विड्थ को कबूल करते हुए इनसाइड आउट क्रिकेट इस वक्त उन्होंने खेला और खूबसूरती के साथ गेंद को उछाल दिया। इस वक्त डीप कवर पॉइंट सीमा रेखा से बाहर, सीधे गेंद कमेंटेटर बॉक्स के आगे यहाँ पर टिप्पा खाती हुई सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए। बेहतरीन स्ट्रोक। और फिर से एक बार गेंदबाजी पुनीत आगे बढ़ाते हुए ये गेंद एक बार फिर से गेंद को उछालना चाहा, गेंद पहुंची थर्ड मैन की दिशा में। 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा इस बीच और 1 रन के साथ दोनों बल्लेबाज संतुष्ट हो चुके हैं और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 24 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर इस वक्त प्रगति पर एक शानदार प्रगति यहाँ पर करता हुआ अंबिका कलाई और कुल मिलाकर 8 गेंदें अब उनकी पारी में बाकी। सुकेश ऑफ द स्ट्राइक हो चुके हैं। गुरु सामना करने के लिए तैयार। पुनीत की गेंदों का दाहिना तो बढ़ता विकेट, ये गेंद ड्राइव कर दिया इस वक्त लॉन्ग ऑन की दिशा में। गेंद जाती हुई तेजी के साथ गेंद पर लपके फील्डर, गेंद को उन्होंने फील्ड किया लेकिन इससे पहले बल्लेबाज के पास समय था कि 1 रन के साथ दोनों बल्लेबाज अपने छोड़ को बदल सके और 1 रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 25 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। 25 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। लास्ट टाइम इन दिस ओवर द बॉलर पुनीत बाउल्स इस बार लेग स्टंप से बाहर और गेंद इस वक्त वाइड का इशारा। 1 more extras 26 now 15 runs already scored in this over now, still a ball left और काफी महंगे इस ओवर में साबित हो चुके हैं अब तक पुनीत। अपनी ओवर की अंतिम गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट सुकेश इस वक्त सामना करते हुए काफी आत्मविश्वास पर इस वक्त सुकेश नजर आते हुए छक्का इस वक्त वो झड़ चुके हैं। दाहिने हाथ ओवर द विकेट, यह गेंद इस बार गेंद को उछालना चाहा, गेंद पहुंची थर्ड मैन की दिशा में। 1 रन मिलेगा इस बीच और 1 रन के साथ दोनों बल्लेबाज यहाँ पर संतुष्ट हो चुके हैं और 1 रन के साथ स्कोर बोर्ड बढ़कर पहुंच चुका है 27 रनों पर। 27 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। 2 overs had been bowled and 16 runs scored in this over and because of this over at this situation Ambika Kalai are now looking in a commanding situation. Still last over remaining in the innings। अंतिम ओवर का खेल बाकी और निस्संदेह यहाँ पर अंतिम ओवर में कम से कम 8 से 10 रन भी बटोरता है अंबिका कलाई तो निस्संदेह यहाँ पर एक चुनौती भरा स्कोर कहलाएगा। तो यहाँ पर तीसरा ओवर प्रारंभ होता हुआ गेंदबाजी यहाँ पर शुरू करते हुए गुरु और इस वक्त सामना करने के लिए तैयार सुकेश। और जहां तक सुकेश का सवाल है इस वक्त एक छक्का और एक चौका वो झड़ चुके हैं। कुल मिलाकर 13 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर वो बल्लेबाजी करते हुए एक छक्के और एक चौके की मदद से। और गुरु इस वक्त गेंदबाजी यहां पर शुरू करते हुए अपनी ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ के बल्लेबाज सुकेश इस वक्त सामना करते हुए फील्डिंग काफी दूर दूर तक फैला हुआ क्षेत्र हमें यहाँ पर दिखाई देता हुआ। डीप कवर पॉइंट, एक्स्ट्रा कवर, लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन इस वक्त मौजूद दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए। और ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर शुरू करते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार गेंद को उछाला सुकेश ने लेकिन सीधे फील्डर के हाथों में। सुकेश का स्ट्रोक बेहतर था लेकिन प्लेसमेंट बिल्कुल गलत था। लॉन्ग ऑफ के फील्डर ने आखिरकार कोई गलती नहीं की और सुकेश की 13 रनों की बेहतरीन पारी पर यहां पर पर्दा गिर चुका है। बेहतरीन स्ट्रोक देखिए किस तरीके से यहां पर गेंद को उछाला था लेकिन प्लेसमेंट बिल्कुल गलत था और आखिरकार लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा के अंदर गेंद को लपक लिया गया फील्डर द्वारा। तो दूसरा विकेट यहां पर गिर चुका है। सेकंड विकेट लॉस्ट एंड अ फैंटास्टिक नॉक केम टू एंड फ्रॉम सुकेश ऑफ 13 रन्स एंड अंबिका कलाई आर नाउ लूज देयर सेकंड विकेट। इट्स 27 for 2। नए बल्लेबाज नौशद इस वक्त स्ट्राइकर एंड पर मौजूद। सामना इस वक्त करेंगे गुरु की गेंदों का। 5 गेंदें अब उनकी पारी में बाकी और इस बीच गुरु गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज नौशाद के लिए अपनी अगली गेंद लेकर तैयार। रनअप में कुछ हद तक इस वक्त फिसल गए थे और एक बार फिर से अपने गेंदबाजी के मार्ग पर जाते हुए तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट अपनी ओर की अगली गेंद फेंकने के लिए तैयार। नए बल्लेबाज नौशाद इस वक्त सामना करते हुए
ये गेंद लेग स्टंप से काफी बाहर, रन के लिए दौड़ पड़े, इस बीच रन आउट का खतरा, नॉट स्ट्राइक रन पर डाइविंग लगाते हुए यहाँ पर ये रन आउट करने में सफल। हालांकि वाइड जरूर था, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने रन आउट किया था काबिल तारीफ है। लेग स्टंप से काफी बाहर की और देखिए गेंद निकली थी, बल्लेबाज रन के लिए दौड़ पड़े और इससे पहले कि नौशाद नॉट स्ट्राइक रन पर पहुंचे, देखिए एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग डाइविंग लगाते हुए इस वक्त रन आउट करने में सफल गेंदबाज गुरु अपने फॉलो थ्रू में। तो एक रन मिला और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 28 रन 3 विकेट के नुकसान पर, 28 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। 5 गेंदे अभी भी बाकी और नए बल्लेबाज का आगमन यहां पर होता हुआ। इम्तियाज इस वक्त स्ट्राइकर एंड की ओर कदम बढ़ाते हुए और वो इस वक्त सामना करेंगे गुरु की गेंदों का और गुरु इस वक्त गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करते हुए, विकेट कीपर दीपक का जो है इस वक्त फील्डिंग में जमावट करते हुए डीप बैकवर्ड थर्ड मैन पर एक फील्डर को पीछे भेज दिया गया है। डीप कवर पॉइंट इस वक्त मौजूद, एक्स्ट्रा कवर डीप एक्स्ट्रा कवर तैनात, लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन 5 खिलाड़ी इस वक्त 20 गज के दायरे के अंदर मौजूद है। और जहां तक सवाल है इस वक्त गेंदबाजी का, तो गेंदबाज इस वक्त आगे बढ़ाते हुए इस वक्त गेंदबाज गुरु और नए बल्लेबाज इम्तियाज इस वक्त सामना करने के लिए तैयार रहा। ये गेंद इस बार लेग स्टंप पर आती हुई गेंद को इस वक्त मोड़ दिया, स्क्वायर लेग की दिशा में गेंद पहुंची, जब तक गेंद को फील्ड किया जाता 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है। 29 नाउ फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। 4 balls remaining in overall calculation in their innings. Still the equal battle is now on. दर्शक खामोशी के साथ मैच का मुआयना इस वक्त करते हुए और क्वालिफायर मैच नंबर 2 इस बेहतरीन प्रतिष्ठित प्रेस्टिजियस क्रिकेट टूर्नामेंट के अंतर्गत यहां पर खेला जाता हुआ बेंजनपदव प्रीमियर लीग 2023 के अंतर्गत। और गेंदबाज एक बार फिर से तैयार, दाहिना तो ऊपर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार बेहतर, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक, रन के लिए दौड़ पड़े, रन आउट का खतरा लेकिन काफी वाइड थ्रो और इस बार ओवर थ्रो, और ओवर थ्रो के रूप में बल्लेबाज दूसरा रन यहां पर पूर्ण कर चुके हैं। गेंद को ठीक तरह से गैदर नहीं कर पाए इस वक्त गेंदबाज, काफी ऊंचा थ्रो आया था, ऊपर की ओर छलांग लगाकर ठीक तरह से गेंद को गैदर वो नहीं कर पाए और जब तक खुद वो बैकअप करते गेंद का शॉर्ट कवर पर बल्लेबाज के पास मौका था दूसरा रन प्राप्त करने का। और रेस इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 31 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर, 31 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस। एक लंबा ओवर यहां पर प्रगति पर गुरु का, 3 गेंदे अभी भी बाकी, स्टिल 3 balls लेफ्ट इन देयर इनिंग्स। गुरु दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए यह गेंद रिवर्स शॉट खेलना चाहा लेकिन इस बार रन आउट का खतरा, इस बार रन आउट हो चुका है और इस बीच विकेट गिर चुका है, डॉट गेंद यहां पर और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 31 रनों पर 4 विकेट के नुकसान पर, 31 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट एंड नाउ जस्ट 2 balls रिमाइनिंग इन देयर इनिंग्स। शाम का वक्त लगभग 5:15 यहां पर बच चुके हैं और यहाँ पर क्वालिफायर मैच, माफ कीजिए एलिमिनेटर मैच है यहाँ पर खेला जाता है। इस मैच की विजेता टीम क्वालिफायर मैच नंबर 2 में यंग बॉयज पोलली का मुकाबला करेगी और क्वालिफायर नंबर 2 मैच में पहुंचने के लिए इस वक्त संघर्ष जारी है SFC ए बेंजनपदव और अंबिका कलाई के बीच में। एक बेहतरीन एक्सक्विजिट लाइव टेलीकास्ट बेद्रा मीडिया द्वारा इस वक्त किया जा रहा है, जनाब इरफान इनके सारथ्य में। और इस बीच गेंदबाज इस वक्त तैयार, गुरु गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिना तो ऊपर द विकेट गेंदबाजी करते हुए यह गेंद उछालना चाहा, गेंद पहुंची थर्ड मैन की दिशा में, 1 रन मिलेगा, बल्लेबाज को दूसरा रन लेना चाहते हैं, इस बीच रन के लिए दौड़ पड़े हैं लेकिन नॉन सेकंड बल्लेबाज द्वारा कोई रिस्पांस नहीं। एक और विकेट गिर चुका है, 1 रन उनके खाते में जुड़ चुका है। 32 नाउ, अंतिम गेंद बाकी, द लास्ट बॉल नाउ रिमाइनिंग इन देयर इनिंग्स। 32 for the loss of 5 wickets. Nisar, number 7 batsman is now comes out to the middle to facing the last delivery of their innings. और अंतिम गेंद का सामना करने के लिए इस वक्त निसार तैयार रहा, जबकि गुरु गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए 32 द स्कोर नाउ। And the last ball of their innings is now coming up. Guru to Nisar, right arm over the wicket, गेंदबाजी इस वक्त करते हुए यह गेंद इस बार लेग स्टंप से बाहर, विकेट कीपर टटोलते रहे और यहां पर रन आउट हो चुका है और वाइड का इशारा हो चुका है, तो एक और विकेट गिर चुका है, एक और रन उनके खाते में जुड़ चुका है। 33 for 6
Still one ball left in their innings. तो अंतिम बल्लेबाज इस माफ कीजिए अगले बल्लेबाज इस वक्त क्रीज पर मौजूद नॉन स्ट्राइकर एंड पर। तो इस वक्त अंतिम गेंद लेकर गुरु तैयार। दाहिने हाथ के बल्लेबाज इस वक्त सामना करते हुए दाहिने हाथ ऊपर द विकेट। यह गेंद इस बार गेंद को उछालना चाहा, गेंद पैरों पर टकराए, खाली क्षेत्र पर टिप्पा खाती हुई एक रन बल्लेबाज को मिलेगा। दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े यहां पर और आसान सा रन आउट यहां पर हो चुका है। और इसी के साथ द इनिंग्स इज अप एंड दे फिनिश्ड विद 34 नाउ इन द स्टिपुलेटेड 3 overs फॉर अंबिका कलाई एंड नाउ दे सेट अ विक्ट्री टारगेट ऑफ 35 in fact 35 SFCA Benjanapadavu have to score for victory in the stipulated 3 overs with the help of 10 wicket. The present equation shows for them. और सतीश आइए आपको बुलाते हैं माइक्रोफोन पर। 35 रनों का लक्ष्य, quite difficult but not impossible सतीश। और as far as the required run rate is concerned, exactly 11.66 runs for the required run rate for them। और जहाँ तक सवाल है, सिर्फ दूसरा ओवर काफी कॉस्टली रहा जिसमें 16 रन बने, पहले ओवर में भी 11 रन बने थे। और कंपेयरिंग टू द फर्स्ट एंड सेकंड ओवर तीसरा ओवर बेहतर रहा गुरु का जिसमें 8 रन उन्होंने प्रदान किया। हालांकि काफी ज्यादा गेंदें उन्होंने फेंकी, वाइड उन्होंने फेंकी, 3-4 2-3 वाइड्स उन्होंने फेंके, लेकिन किफायती गेंदबाजी पहले 2 ओवर के मुकाबले तीसरे ओवर में उन्होंने किया। और 35 रनों का लक्ष्य इस वक्त 8 रन अंतिम ओवर में गुरु ने प्रदान किए। और 35 क्वाइट डिफिकल्ट बट नॉट इम्पॉसिबल। और जहां तक सवाल है SFC ए बेंजनपदवु मेजबान टीम है, होस्ट टीम है, तो यहाँ पर अगर उन्हें लक्ष्य तक पहुंचना है 35 रनों के, तो निस्संदेह यहाँ पर जो गेंदबाजी का लाइन अप है अंबिका कलाई का, तो उसके खिलाफ अगर उन्हें बेहतर शुरुआत करनी है तो राइट फ्रॉम द फर्स्ट ओवर उन्हें इस वक्त कुछ हद तक आक्रामक बल्लेबाजी यहाँ पर अपनानी होगी। Well, exactly, Gopi. The 35 seems to be a little bit difficult task, but not impossible. Just like you're mentioning about being the host of this cricket tournament, host wanted to be in the qualifier number 2. If they wanted to be in the qualifier number 2 of this prestigious cricket tournament, I think the batters have to do something special from the bat, especially the experienced batsmen like Deepak and some two batters like Ashwath, one who batted very well in the previous match. But I think as Deepak and Bhavish is one more batter is definitely going to be a key player to get some good start. And especially Deepak is the one in this particular day is couldn't manage to perform very well from the bat. And in this particular match eliminator, I think if Deepak will go into talk with this bat, then this match will going to be more interesting and BFC can be the winner of this match. But I think just like you're mentioning about against the strong bowling department of Ambika Kalai, there is some extraordinary batting performance which is required from the batters of SFC. And meanwhile, there's a very good contribution here from the batters of team Ambika Kalai, especially the man who got some runs from the bat. It's Guru and Sukesh has got some runs on the board, but more than anything else, I think some misfielding by the fielders of team SFC, especially in the deep, it's fielding which is not really up to the mark because they considered some boundaries because of some misfield, so that they need to cover that one with their bat. Wait and see how well these two opening batters will go into lay the foundation. So everything is ready for the chasing, and Naushad is the bowler, is a tall bowler, and will go into bowl the first over. ಅಲ್ಲಿ ದಯಮಾಡಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ, ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಗಳನ್ನು ರೋಡಿನ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರೋಡಿನ ಬದಿ ಅಂದರೆ ರೋಡಿಗೆ ತಾಗಿ ನೀವು ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ದಯಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಟ್ರಾಫಿಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ದಯಮಾಡಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಗಮನಿಸಬೇಕು, ತಮ್ಮ ವೆಹಿಕಲನ್ನು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. So Deepak will go into be the striker now, and Bhavish is in non-strikers, and Naushad will go into starts the proceedings. 35 is going to be a target for Team SFC to qualify for the
qualifier number 2. First ball, Naushad balls, Deepak swings at one, swings his bat, but didn't got ball onto his bat, and he just missed the opportunity to get some runs in this delivery, which is pitched outside the line of leg stump, and wicketkeeper behind the stump misses that one completely from his hand, and first run comes off in the form of a bye. So that brings Bhavish into strike now. Bhavish is absolutely one more tall player for the side, and for the tall player it's so easy to dispatch big shots, but even Naushad is also the tall bowler, so it's going to be a very good contest between these two tall player. Naushad bowling from the commentary box, and right arm round the wicket to Bhavish. This time nothing much to do with the delivery, left the ball rightly so, wide call by umpire. One more addition to total with the addition of that extra scope, Muzan to 2 on the board without loss of any wicket in the over number first is in progress. Naushad bowling with a shot on a pass umpire Ansar of Guriyang boys, and after some time Naushad bowls round the wicket. This time that's going to be a chance here for the fielder. Bhavish couldn't manage to hit the ball properly. It's a juicy full toss. It's absolutely juicy full toss, but batsman Bhavish, he just wanted to play that one away from this body. Have a look at that one, reaching to the delivery, but couldn't manage to get that ball into this middle of the bat, and he's back into pavilion. And Team SFC have lost their first wicket. So it was a disappointment dismissal here for Team SFC. The wicket of Bhavish, and Naushad has really got a prize wicket, isn't it? It's not a wicket-taking delivery, but sometime in cricket it's happening, and even the full toss delivery is quite useful to get the wicket if a batsman fails to take advantage of that one. And the new batter just coming to the middle, Shushan, and waiting to see how Shushan will go into get some partnership along with Deepak. Deepak in the non-strikers end, and just waiting for some support from other end, and he can make the things easier for Team SFC. But here is Naushad. He's got a wicket in the first over, and he's bowling now, bowling from the commentary box, and right arm around the wicket to Shushan. Shushan this time went for the reverse stroke, which is looks like it's going to be handy to play the reverse stroke. The line of delivery quite useful to play the reverse stroke, but a little bit late to react to that switch. It missed it completely. One more dotted delivery. Each and every dot ball will go and create the problem for SFC to reach to the qualifier number 2. Here is Naushad, right arm over the wicket again. Went for the reverse wave. This time bowled him, cleaned him up. Again Shushan wanted to play the reverse stroke. Again he missed the ball completely, and you miss high hit what Naushad did here. And have a look at that one, little bit one jump and getting a leg cutter. Absolutely perfect stuff here from Naushad, beaten by the pace, and Naushad picks up his second wicket. Now SFC Benjanapadavu are in trouble. It's 2 for the loss of 2 wicket. Ashwath is a new batter, is a young talented player. The hero of the previous match is just came into middle. Ashwath is on strike, and Naushad is on attack. Right arm round the wicket, coming down the rack, and wicket keeper behind the stump. First attempt he missed that one. First attempt suddenly looks to be a chance for the wicket keeper to make the stump out, but he missed the stumps in the first attempt. But in the second attempt he completed the job. But that time I think might be Ashwath safe in the strikers end. And a good piece of bowling continues here from Naushad, the wicketkeeper, very confident behind the wicket. But I think in first attempt he can be the handy if he able to remove the bails. But he misses the bails in the first attempt. But in the second attempt he managed to do the job.
and Ashwath survives from the delivery. 2 for the loss of 2 wickets. It's not a good start. It's not a good start from the batters of SFC, but a very good start there from Naushad in the bowling. Right arm round the wicket to Ashwath. This time Ashwath lofted and he got the distance. Absolutely terrific. This is Ashwath for you. Just like I mentioned, he's a hero of the previous match. And what the form is left in the previous match, this time he just lofted at one beautiful shot. It's not so easy to get the distance when you are going to hit the ball towards a straight long off, especially in the evening. And he really got that one right from the middle of the bat. And because of that 6, I think then SFC Benjanapadavu now really back into this game strongly. And 8 runs came from that over. That means 27 more runs required for the victory in 2 overs. 13.5 runs per over, the required run rate for team SFC. I requested the fielding team to make it fast. It's a 5 past 30. Still have to play another 2 matches. So your cooperation is much required. 12 balls, 27 required for SFC Benjanapadavu. The Ashwath really it's a big contribution in that over. Otherwise, it's going to be a slow start. Only 2 runs they got. Still, it's till 5 deliveries. But last ball of the over, Ashwath got a very important 6 from his bat. So 27 required from 12 balls. So the match is evenly poised for both the teams. It's going to be opportunity to qualify for the qualifier number 2. The bowler introduced from the commentary box end. Ashpak is the bowler to bowl the second over to Deepak. The very dangerous left-hand batter as far as underarm cricket is concerned. Deepak will going to be the striker, and the bowler Ashpak will going to bowl from the commentary box and right arm round the wicket to delivers. This time outside leg stamp ball is defeating the wicket keeper, and they got opportunity to cross off for a single. 1+1, 2 extra runs which is added to total. With that, a couple of runs Kubana moves on to 10 for the loss of 2 wicket. That means 25 runs required for the victory in 12 balls. 12 balls, 25, and every ball required just over 2 runs per ball. And wait and see how well Ashwath and Deepak will going to get these runs. So Ashpak will going to back to his bowling mark. Ashpak to Ashwath, and a very good contest between two very good players. And Ashpak is the bowler, Ashwath is the batter. Ashpak bowling away from us. Right arm round the wicket, pass umpire Answer. This time outside off stamp, defeats everyone. Ball running down to deep third man vision. Will they come back for the second? No, they doesn't. Deepak don't want, and here is a 1+1. Here is a 1+1, and because of that extra delivery, extra run, looks like it's going to be SFC Benjanapadavu. Slowly they're back into this game, because record run is coming down now, just under 12 runs per hour, 11.50. 12 on the board for the loss of 2 wickets. 23 required now from 12 balls. 12 balls, 23 required. 12 ಎಸೆತದ ಮುಂದೆ 23 ರನ್ ಅವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. So here is Ashpak again, bowling away from us. Right arm round the wicket to Deepak. Deepak again going for the swing, but missed it completely. Wicketkeeper behind the stump and just removes the bails, but batsman's back leg is safe in the crease, so that no question of getting out. And there's a very important dotted delivery there from Ashpak. Again, Deepak going for the big swing of the bat, but beaten by the pace. Of course, the line which is outside the line of leg stump, it's going to be very easy for the left-hand batsman. Sometime extra pace in the ball will going to create the problem for the batter to have a contact with the bat. Deepak is on strike now. Naushad. Ashpak led the correction. So 11 balls remaining. 23 more runs required for the victory.
46 so far in this day number 2, the final day. And still after these 2 matches remaining, and all the chances of getting 56ers in the day number 2. Now Ashpak again back to his bowling mark. Good comeback after that 2 wide balls. He bowled 1 dotted delivery. Now he's bowling second time in this over. Right arm around the wicket, to Deepak. Deepak again, that was just tried to reach the pitch of the delivery, going for the sweep shot. 1+1. Again, that was a 6 runs which is came in just a single delivery. That looks like the batsman hitting a 6 for the 1 ball. The same statistics here in the first ball of Ashpak. He conceded 6 runs, all 6 runs in the form of extras. That means he is feeling the pressure. 14 on the board for the loss of 2 wickets. 21 more runs required for the victory. 11 balls remaining. 11 balls remaining. 21 more runs required for the victory for SFC against Ambika. Friends Cricketers Kalai. Already one team from which is qualified for finals. Coming down the track, Ashwath gone. It's a huge wicket. Absolutely huge wicket, a wicket of Ashwath. And he's not really believing it is himself how he missed it. I have a look at the wicket keeper. Fantastic work. Just an electrifying work, isn't it? Absolutely fantastic work from wicket keeper behind the stump. The wicket number 2, which is back into pavilion. Ashwath, one who hits a 6, is back into pavilion. Beaten by the pace. And now 10 balls remaining. 21 required. 10 remaining, 21 required for the victory. The hero of the previous match is coming to the middle. It's Sujan. Sujan is a new batter in. One more very talented batter. So in the previous match, he is the one is responsible for the victory. When it's a do-or-die situation in the league matches, must-win match, he batted very well, performed very well. And once again, situation asking him to play one more good innings for his team along with Deepak. But Deepak in this particular match yet to open the account. The over number 2 is in progress. Good comeback here by the bowler Ashpak. After that, wide deliveries, 3 wide deliveries, considered 6. Now, again the bowler, back to his bowling mark. Right arm around the wicket. To Sujan. Ah, what a shot. Fantastic reverse stroke. Just going over the top of the fieldsman. Down to deep third man boundary for 4 runs. What a shot there from Sujan. Outstanding cricketing stroke. And he surprised everyone. Have a look at that one. Just over the top of the infield. And fine leg inside the ring. And he got that one very fine. Down to deep fine leg boundary for 4 runs. Absolutely fantastic improvisation. And score jumps into 18 for the loss of 3 wickets. 17 required. 17 required from 9 balls. 17 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ 9 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಇದೆ. And this boundary certainly opened the gate for SFC Benjanapadavu. Ashpak looks like he's under pressure. He's already conceded 10 runs in just 3 balls, 1 boundary and 6 extras. I request the fielding team, please make it fast. Another 2 matches to be played. And here is the bowler, Ashpak, after getting some suggestion from their teammates. They need to give a lot of confidence for the bowler. When he was looks like is a little bit lack of confidence. And but have a look at the confidence level of Sujan. Absolutely fantastic, isn't it? It's not a easy condition when he came into bat. The first ball itself, it's very confident, very brave and gutsy batting there from Sujan. But job which is not yet over. Another remaining runs which is need to be scored. 35 is the total score target. 50 and 17 runs which is required run.
Right arm round the wicket. This time, what a shot! That will going to be a maximum! This is a Sujan for you! Have a look at the crowd here. Absolutely magnificent struck. The reverse stroke, unbelievable. He swept that one, but it's not a simple sweep, that one. And with the power, he swept the ball. And he got the distance. 24 for the loss of 3 wicket. 2 deliveries, he got a 10 runs. Now 11 runs required for the victory in 8 balls. 11 required from 8 balls. Sujan is looking so good. 2 balls just he faced and he scored a 10 valuable runs, and the strike rate is a 500. Fantastic player Sujan, young, talented, brave and gutsy batting performance so far. But here is Ashbak, is conceding a lot of runs, 16 already in that 4 deliveries he bowled. Just like which in the second over, the same runs which came for the opposition team when Puneet is conceded. 11 required. 11 required from 8 balls. Ashbak. Ball Sujan. Again misfield. But protection there the deep in the... Now looking for the second, but they are going again slightly so. Just a single that misfield there by the field that shot square leg region. 25 comes off here for SFC Benjanapadavu. 25 for the loss of 3 wicket. Now 10 more runs required for the victory in the 7 balls. Deepak back on strike. Last delivery remaining in this over. Very important delivery for both the teams. And SFC Benjanapadavu wanted one good shot at the same time. One good delivery is required for Ashbak to finish this over. 17 came from this over already. And it's a big over. Ashbak again. Right arm over the wicket. To Deepak. Deepak this time drives that one, but protection has been given in the deep. So batsmen have to settle for the single. They're coming back for the second. Very good running mid of the wicket. 2 runs in the last ball and takes the total score into 27. That means 8 runs required from 6 ball. Six ball, 8 runs required for the victory. 7 for the tie. 6 for the victory. 19 runs came from that last over. Now Nisar has got a ball in his hand with the responsibility of restricting the 8 runs in the last over. But Sujan is a man. After he got some runs from his bat, he wanted to finish it off the things with from his bat. The 8 runs which is required for the victory in 6 balls. And he's batting on 11 in 3 deliveries. So 8 required from the last over. Nisar is the bowler. Got a responsibility of restricting the runs for his team. Bowling, right arm over the wicket, fieldsman down at deep cover point, 1 at deep extra cover, long off is there, mid wicket and long on. And this time tries that one into the short mid wicket region. They're going for the quick single. With that single, Skobarna moves on to 28 for the loss of 3 wicket. 7 runs required, 5 balls remaining. 7 ಮುಂದೆ 5 ಮುಂದೆ 7 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. SFC Benjanapadavu, if they wanted to be in the qualifier number 2, the 7 runs required for the victory in 5 balls. And winner of this match will go into face Young Boys Polaling. And here is again. This time going for the big swing of the bat. Looks like that ball is within the reach of the batter and no signal. That means it's from the bat of the batsman. So 2 ball, 2 singles, 6 required from 4 balls. 6 required from 4 balls. So everyone thought that it's going to be Deepak will going to finish the match, but here is Sujan is the one
is now is wanted to get a 6 runs for 4 balls desperately if they wanted to win the match. But so far Nisar is a good job. 2 very good deliveries he bowled. Considered just a singles in each and every ball. 2 runs in 2 balls. Here is 4 required, 6 required. Driven that one down to deep long on. This time good collection. Absolutely neat collection from the deep long on. So 3 balls, 3 runs. Now 5 balls, 5 runs required from 3 balls. First 3 ball he conceded only 3 runs. That means 5 required from 3 balls. 4 for the tie, 5 for the victory, and that means that the bowler is handling the pressure very well. Nisa, so far, Deepak, being the experienced campaigner of the side, you know exactly what to do in the remaining deliveries. 5 to get from 3 balls. Here is Nisar again. Right arm over the wicket. Full toss! Match finished in a style. SFC Benjanapadavu into the final, into the qualifier number 2 of this prestigious Benjanapadavu Premier League 2023. The full toss delivery, but I think Sujan is the hero here, who really changing the complexion of this match with the 2 magnificent strikes in the second over. But equal contribution from the bowler as well. Equal contribution from the bowler, one who bowled the second over, Ashfaq, because he is the one really helping the opposition team to get into the qualifier number 2. But here is SFC Benjanapadavu being the host of this tournament. They won the eliminator number 1. Now they're through to the qualifier number 2, and they will go into play against Young Boys Polali for the place in the big final, the mega final. And when I request 2 teams captain, please be reported here for the toss. Young Boys Polali ಹಾಗೂ ಹಾಗೆ SFC ಎ ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ತಮ್ಮ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಗೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಎಲಿಮಿನೇಟರ್ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸುಜನ್ ಆಫ್ SFC for his outstanding performance from the bat and bowl. He is deserved this man of the match once again. Second consecutive times he becomes the man of the match for his very brave and gutsy batting, hitting a 4 and 6 and opens a gate for his team. Polali ತಂಡದ ನಾಯಕ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಗೆಗಾಗಿ. ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರೇಮ್ಜಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಮನೋಜ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು. ಮನೋಜ್ ಇವರು ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಸುಜನ್ ಇವರಿಗೆ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಸುಜನ್ ಈಸ್ ಕಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಫ್ರಮ್ ಮನೋಜ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ ಸುಜನ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ in the eliminator and takes your team into the qualifier number 2, and the tossing ceremony is now going on. ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಬಾಬಾ ಇವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಸಂಘಟಕರ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ವಾರ್ಮ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೆಸ್ಟಿಜಿಯಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್. ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಬಾಬಾ ಇನ್ ದಿಸ್ ಮೇನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ BPL Benjanapadavu Premier League 2023, which is proudly organized by SFC cricketers Shivaji Nagar, and as they are celebrating their 5th year in this 5th year cricket tournament. One of the backbone of this cricket tournament,
and one of the organizers of this prestigious Benjanapadavu Premier League 2023. Praveen Baba, warm welcome sir for this prestigious cricket tournament. Meanwhile, change in commentary box as well before the qualifier number 2 will go into start here. It's a time for Gopi to take over the microphone in our national language Hindi. Thank you. ದಯವಿಟ್ಟು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು, ಸಮಯದ ಅಭಾವವಿದೆ. 2 ಪಂದ್ಯಾಟ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಆಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಸಮಯ 5:45 ಆಗಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಕತ್ತಲಾಗುವ ಮೊದಲು ಈ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಮುಗಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. 3 ಓವರ್ನ ಪಂದ್ಯಾಟ 15 ನಿಮಿಷದ ಒಳಗೆ ತಮ್ಮ 3 ಓವರನ್ನು ಮುಗಿಸಬೇಕು. ದಯಮಾಡಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿ. 3 ಓವರ್ 15 ನಿಮಿಷದೊಳಗೆ ಮುಗಿಸಬೇಕು. 4 ನಿಮಿಷ 1 ಓವರಿಗೆ, ಅಂದರೆ 12 ನಿಮಿಷ ಪ್ಲಸ್ 3 ನಿಮಿಷ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನಿಮಿಷ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು 15 ನಿಮಿಷದೊಳಗೆ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸನ್ನು ಮುಗಿಸಬೇಕು. ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಮುಗಿಸಬೇಕಾಗಿ ಈ ಮೂಲಕ ಅಭಿನಂದಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. Dhanwad Satish. So what a fantastic match ended with just short while ago, which won by SFCA Benjanapadavu thrillingly. With just 2 balls to spare, they reached the target against Ambika Kalai, and with that victory, they are through to the qualifier match number 2 in this tournament. And now in the qualifier match number 2, they will going to meet Young Boys Polali, and that match is now going to start. So news is here from the centre that the captain of Young Boys Polali, after 1 throws, he elected to field first, and we are just waiting for the first ball of the match. तो इस वक्त क्वालिफायर मैच नंबर 2 शुरू होता हुआ यंग बॉयज पोलाली विल टेक्स ओवर SFC ए बेंजनापदावु, और मैच की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार दोनों आरंभिक बल्लेबाज दीपक और भविष्य इस वक्त तैयार। पहली गेंद को उछाला डीप मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए। दिस इज एन एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग स्टार्ट फॉर SFC ए बेंजनापदावु। एब्सोल्युटली फैंटास्टिक स्ट्रक, और जिस तरीके से गेंद को उछाला था काबिले तारीफ है। गेंद को ऑन साइड पर इस वक्त खूबसूरती के साथ चिप कर दिया। छक्का इस वक्त बटोरते हुए दीपक, और इस छक्के के साथ एक बेहतरीन शुरुआत की सूचना वो यहाँ पर दे चुके हैं, और 6 रन यहाँ पर बन चुका है बिना किसी नुकसान के। तो पहली गेंद पर छक्का प्रदान करने के बाद स्ट्रेट अवे नाउ द प्रेशर ऑन द बॉलर, और इस बीच नौफल तैयार अपनी अगली गेंद लेकर दीपक का इस वक्त सामना करते हुए, और देखना यह कि अंतिम गेंद में किस तरीके की अगली गेंद में किस तरीके की गेंदबाजी वो करते हैं। एक बार फिर से दिस टाइम इट कुड बी कॉट, यस इट डज।
Wicket fallen for Deepak. This time the ball gets some extra ball. Not quite get that one from the middle of the bat. Have a look at this in the replay. देखिए किस तरीके से गेंद को उछाला था. इस बार मिडल ऑफ द बैट कनेक्शन नहीं और डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर जो फील्डर खड़े हुए थे आखिरकार उन्होंने कोई गलती नहीं की. तो छक्का और विकेट दीपक का यहाँ पर और सिर्फ 2 गेंदों पर 6 रन बनाने के बाद 300 स्ट्राइक रेट की मदद से वो पेविलियन वापस लौटते हुए और एसएफसी ए बेंजनापदव अपना पहला विकेट यहां पर खो चुका है. इट्स 6 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस. तो नए बल्लेबाज का आगमन इस वक्त होता हुआ एक और प्रमुख बल्लेबाज अश्वत्थ और वो इस वक्त भविष्य का साथ निभाने के लिए क्रीज पर कदम बढ़ाते हुए और इस बीच नौफल यहां पर विकेट प्राप्त कर चुके हैं अगली गेंद पर छक्का प्रदान करने के बाद. तो इस वक्त अश्वत्थ अंपायर से गार्ड लेते हुए इस वक्त और सामना करने के लिए इस वक्त तैयार नौफल की गेंदों का. नौफल दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज इस वक्त सामना करने के लिए तैयार. ये गेंद इस वक्त लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई गेंद कुछ ज़्यादा हद तक लेग स्टंप से बाहर की ओर नहीं निकल रही थी और जहां तक सवाल है रनों का तो रन्स नहीं मिलेगा और स्कोर इस वक्त रुक चुका है कुल मिलाकर 6 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर. और नौफल एक बार फिर से गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट. ये गेंद ऑन साइड पर गेंद को स्विंग कर दिया. गेंद जाती हुई बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर और गेंद सीमा रेखा से पार 4 रनों के लिए. Effortlessly played this time. मैं समझता हूँ जितनी तेज तरीके से गेंद आई थी उतनी ही तेज तरीके से बल्ले को इस वक्त हटाया. देखिए किस तरीके से गेंद लगभग उनके बल्ले पर सिर्फ टकराई थी और सीधे निकल गई इस वक्त लॉन्ग ऑन सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए. बेहतरीन स्ट्रोक एफर्टलेसली प्लेड बाय द बैट्समैन और इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 10 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर. 10 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट. And this is just the first over in progress in the rings. Absolutely a fantastic start for SFC A against Young Boys Polali. और इस बीच नौफल इस ओवर में महंगे साबित हो चुके हैं. हालांकि 1 विकेट उन्होंने जरूर प्राप्त किया है दीपक का लेकिन काफ़ी रन इस ओवर में अब तक वो प्रदान कर चुके. अपने ओवर की चौथी गेंद लेकर अपने ओवर की 5वीं गेंद लेकर इस वक्त तो तैयार. दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज अश्वत्थ इस वक्त सामना करते हुए ये गेंद इस बार गेंद कौन साइड पर मोड़ा. गेंद जाती हुई इस वक्त शॉर्ट मिड विकेट पर 1 रन मिलेगा और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 11 रन 1 विकेट के नुकसान पर. इट्स 11 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस. निस्संदेह कम से कम 30 का आंकड़ा यहाँ पर पार करना होगा इस वक्त एसएफसी को अगर उन्हें एक चुनौती भरा स्कोर यहाँ पर खड़ा करना है तो. और अब भविष्य सामना करने के लिए तैयार. नौफल की गेंदों का दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए ये गेंद इस बार गेंद को उछाला खूबसूरती के साथ लंबा सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए इस बार भविष्य की पारी और छक्का नंबर 2 इस ओवर में लग चुका है. सो दिस इज एन एब्सोल्युटली टेरिफिक स्टार्ट for SFCS. 17 runs scored in the first over. और निस्संदेह सतीश इस बेहतर शुरुआत के साथ अब ऐसा कहना पड़ेगा पिछले मैच में जो विजय SFCS ने दर्ज किया था उसका आत्मविश्वास का प्रभाव यहाँ पर दिखाई देता हुआ जिस तरह उन्होंने 17 रन बटोरे पहले ओवर में. Absolutely, Gopi. This is the result of after getting the victory in the previous match, eliminator round. Whenever you're getting a victory, Gopi, the level of confidence is always going to be very high when you are going to face even a much better team than SFC. Of course, they're unbeaten, but they face their defeat in the qualifier number 1. The team Young Boys Polali. But in this particular match, you look at that the level of confidence so different between these two teams, and this is a result of high confidence what SFC Benjanapadavu after getting a victory in the eliminator number 1. Exactly, Satish. तो देखते हैं दूसरा ओवर शुरू होता हुआ. कुमार इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हैं. ओवर की पहली गेंद इस बार बोल्ड आउट. फैंटास्टिक कमबैक और पहली गेंद पर कुमार यहां पर विकेट प्राप्त कर चुके हैं. और जहां तक सवाल है यहां पर बल्लेबाज का तो अश्वत्थ इनसाइड आउट कुछ हद तक इनसाइड आउट क्रिकेट खेलना चाहते थे. गेंद को इस वक्त विकेट से हटते हुए गेंद को ऑन साइड पर उछालना चाहा चूंकि गेंद के लाइन पर नहीं आ पाए और बिल्कुल सीधी रफ्तार के साथ गेंद बल्ले को वंचित करते हुए सीधे जा टकराई मिड लेग स्टंप पर और यहाँ पर दूसरा विकेट गिर चुका है. 17 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट और सुशांत का आगमन यहाँ पर होता हुआ और वो इस वक्त साथ निभाएंगे भविष्य का. तो 17 रन पहले ओवर में इस वक्त बटोर चुके हैं SFC A के बल्लेबाज और एक बेहतर शुरुआत यहाँ पर कर चुके हैं अपने टीम के लिए. और इस बीच
नए बल्लेबाज का आगमन होता हुआ सुशांत, और यहाँ पर यही एक सही वक्त है इस वक्त यंग बॉयज पोलली के गेंदबाजों को बाउंस बैक करने का। यहाँ पर चंद डॉट गेंदे और चंद विकेट अगर वो प्राप्त करते हैं तो निस्संदेह यहाँ पर SFCA के बल्लेबाजों के रन के बहाव पर वो अंकुश लगा सकते हैं। तो यहाँ पर गेंदबाज तैयार, दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए कुमार अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार, और बल्लेबाजी इस वक्त करते हुए सुशांत, दाहिने हाथों पर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए कुमार अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद इस बार गेंद को उछालना चाहा, बेहतरीन तरीके की विकेट कीपिंग, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक पीस ऑफ विकेट कीपिंग मेड बाय विकेट कीपर बिहाइंड द स्टंप्स। इस बीच नो बॉल का इशारा अंपायर का, तो यहाँ पर एक रन मिलेंगे एक्स्ट्राज के रूप में। मेरे ख्याल से ओवर स्टेप यहाँ पर किया था गेंदबाज ने, तो एक रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 18 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। 18 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। फ्री हिट गेंद इस वक्त बल्लेबाज के लिए, और देखना है कि बल्लेबाज सुशांत इस फ्री हिट का किस तरह फायदा उठाते हैं। तो इस बीच गेंदबाज नौफल अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज सुशांत इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। तो 10 से 12 कदम, 10 से 12 बार गेंद को जमीन पर टिप्पा खिलाने के बाद कुमार की गेंद थी। यह गेंद इस बार बेहतरीन कलेक्शन, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक पीस ऑफ कलेक्शन बिहाइंड द स्टंप्स मेड बाय विकेट कीपर एंड अ फैंटास्टिक पीस ऑफ bowling bowled by Kumar in this delivery, and the batsman completely beaten by the pace and there is no possibility of any run. Scoreboard stays at 18 for the loss of 1 wicket, 2 wickets in fact, और कुमार एक बार फिर से अपने गेंदबाजी के मार्ग पर यहाँ पर जाते हुए भविष्य इस वक्त स्ट्राइकर एंड बल्लेबाज सुशांत की ओर आए। उन्होंने कुछ कहा कि किस तरीके की बल्लेबाजी इस वक्त अपनानी चाहिए आने वाले गेंदों में बल्लेबाज को। तो इस बीच कुमार अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दिन धीरे धीरे इस वक्त रात की ओर ढलता हुआ और शाम के 6 बज चुके हैं लगभग, और रोशनी धूप का प्रकोप काफ़ी हद तक मैदान पर कम हो चुका है। यहाँ पर सूरज मैदान की दाईं ओर नीलाकाश तले अपना अस्तित्व का प्रदर्शन करता हुआ समंदर की ओर अपना सफर तय कर चुका है। इस बार गेंद को ड्राइव कर दिया खूबसूरती के साथ, गेंद जाते हुए लॉन्ग ऑफ की दिशा में, क्लीन कलेक्शन, और इस बीच एक रन न मिलेगा। थोड़ा सा भी मिस जजमेंट होता तो गेंद उनके हाथों से छूटकर सीधे सीमा रेखा को पार कर सकती थी, लेकिन क्लीन पिकअप, आखिरकार बल्लेबाज के पास मौका 1 रन प्राप्त करने का, और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 19 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। 19 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स इन द ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस। और जहां तक का सवाल है इस वक्त स्ट्राइकर एंड का, तो भविष्य इस वक्त सामना करने के लिए तैयार, और कुमार अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ ऊपर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज भविष्य इस वक्त सामना करते हुए, ये गेंद इस बार बेहतर गेंद थी, पैरों पर टकराई, इस वक्त गेंद को उछालने के प्रयास में चूके थे और आखिरकार 1 रन उनके खाते में जुड़ता हुआ, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 20 रन 2 विकेट के नुकसान पर। एक बेहतर ओवर यहाँ पर प्रगति पर, 3 रन सिर्फ अब तक इस ओवर में वो प्रदान कर चुके हैं, और कुल मिलाकर 3 गेंदें अभी भी, माफ कीजिए 2 गेंदें अब इस ओवर में बाकी हैं। 2 balls नाउ लेफ्ट इन दिस ओवर, और इस बीच कुमार अपनी अगली गेंद लेकर तैयार। तो इस बीच बल्ला अपना बैट बदलने के लिए इस वक्त बल्लेबाज अपना बल्ला इस वक्त बदलते हुए, और जहां तक सवाल है अपना बल्ला बैट बदलने के बाद वापस अपने स्वस्थान पर लौटते हुए सुशांत, और एक बार फिर से कुमार की गेंदों का सामना करने के लिए तैयार, और कुमार अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज सुशांत के लिए इस वक्त तैयार। क्वालिफायर मैच नंबर 2 बेंजनापदव प्रीमियर लीग 2023-2023 के अंतर्गत यहां पर खेला जाता हुआ इस ढलते हुए शाम में, और इस बीच कुमार की गेंद इस बार ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए विकेट कीपर गेंद को टटोलते रह गए जब तक शॉर्ट थर्ड फील्डर गेंद को फील्ड करे। 2 रनों का इजाफा हो चुका है वाइड के रूप में। 2 runs added to the total in the face of wides, and with that couple run the scoreboard moving up to 22 now for the loss of 2 wickets. There's an absolutely fantastic progressing here now for SFCA, और जहां तक सवाल है इस वक्त बचे हुए गेंदों का, तो अभी भी 8 गेंदें उनकी पारी में शेष, और गेंदबाज इस वक्त गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए, और कुमार जहां तक सवाल है इस वक्त भविष्य के पास स्ट्राइक इस वक्त मौजूद। कुमार 8 से 10 बार एक बार फिर से जमीन पर गेंद को टिप्पा खिलाते हुए, और एक बार फिर से
इस वक्त तैयार, दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करते हुए भविष्य के लिए ये गेंद इस बार लेग स्टंप से बाहर, पैरों पर गेंद टकरा, डिलीवरेट बिल्कुल सही तरीके से भविष्य ने इस वक्त अपने कदमों को रोक लिया। वो जानते थे कि यहाँ पर इस गेंद पर कोई स्ट्रोक शॉट उन्होंने ऑफर नहीं किया है और आखिरकार स्पोर्ट्समैन स्पिरिट उन्होंने दिखाई इस गेंद पर, तो रन से नहीं मिलेंगे। स्कोर इस वक्त रुक चुका है कुल मिलाकर 22 रनों पर और कुमार एक बार फिर से गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करते हुए इस वक्त दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ के बल्लेबाज सामना करते हुए ये गेंद लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए शॉट फाइन, लेग फील्डर के हाथों में गेंद, निशाना इस वक्त लग चुका है, लेकिन यहाँ पर अंपायर ने कहा कि जी नहीं, वाइड, वन मोर वाइड इन फैक्ट। So couple of runs once again added to their total. It's 24 for the loss of 2 wickets now. तो एक गेंद अभी भी बाकी इस ओवर में और इस बीच कुमार इस ओवर में अंतिम बार दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए इस वक्त दाहिने हाथ के बल्लेबाज सामना करने के लिए इस वक्त तैयार। अपने जूतों के फीतों को इस वक्त बांधने के बाद इस वक्त अपनी अगली गेंद लेकर तैयार। 20 बार गेंद को जमीन पर टिप्पा खिलाने के बाद अगली गेंद, इस बार गेंद को ऑन साइड पर उछलना चाहा, रनआउट का मौका और यहां पर यह विकेट गिर चुका है। गेंद को बिना देखे रन लेने की हड़बड़ाहट उन्होंने दिखाई और आखिरकार फॉलो थ्रू में तेजी के साथ गेंदबाज गेंद पर लपकते हुए खुद उन्होंने रनआउट किया स्ट्राइकर एंड पर और इसी के साथ दूसरा विकेट यहां पर गिर चुका है, तीसरा विकेट गिर चुका है। इट्स 24 for 3 एंड 2 ओवर से भी बॉलर बेहतर ओवर रहा सतीश, 7 रन सिर्फ कुमार ने दिए। हालांकि वो 15 से 20 बार जरूर गेंद को जमीन पर टिप्पा खिलाते हैं रनअप से पहले, लेकिन इस ओवर में गेंदबाजी उन्होंने बेहतरीन न की है, सिर्फ 7 रन उन्होंने प्रदान किए और इस ओवर की बदौलत अब मैं समझता हूँ यंग बॉयज पुलली कुछ हद तक इस मैच में वापस आ चुका है। Absolutely, Gopi. Very interesting the bowling action, because maybe that was one of the technique of regaining the concentration, but I think disturbing the concentration of the batsman. He is regaining the concentration, but he is also disturbing the concentration of the batsman, because batsman have to wait for the ball when he was going to deliver the ball. But anyhow, Gopi, it's a very good over, and no doubt at all, 7 runs which came from that over, and excluding that some wide balls he bowled, and that was a very good over as far as young boys is concerned. But still it's a good score, Gopi. 24 means it's a 12 runs per over. They got runs, but this is going to be a very important last over for SFC Benjanapadavu, that at least 10 runs they able to get in that last over, then it's going to be a very good score. 35 in this condition, evening condition, might be it was a very good score. That's why very important here for young boys have to get one good over if they wanted to restrict the opposition less than 35. एग्जैक्टली सतीश, अंतिम ओवर में कम से कम 8 से 10 रन जरूर बटोरना होगा अगर एक चुनौती भरा स्कोर यहां पर खड़ा करना है तो एसएफसी ए को। तो निजाम इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए नहीं, और की पहली गेंद भविष्य के लिए, यह गेंद ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए शॉट, थर्ड मैन फील्डर के हाथों में निशाना चूक चुका है और इस बीच बल्लेबाज 1 रन 2 रन मिलेंगे। 1 + 1 2 runs now added to their total and the scoreboard is now 26 now for the loss of 3 wickets. Still 1 over left in their innings और यहां पर ऐसा लग रहा है शायद फाइनल मैच 3 ओवर का होगा यहाँ पर, क्योंकि 6 बज चुके हैं, 6:04 यहाँ पर बज चुके हैं। तो यहाँ पर पहली पारी क्वालिफायर मैच नंबर 2 का यहाँ पर प्रगति पर और 1 ओवर अभी भी और फेंका जाना बाकी उनकी पारी में। और इस बार कुछ टीम के अन्य खिलाड़ी गेंदबाज निजाम को कुछ समझाते हुए और एक बार फिर से निजाम इस वक्त तैयार अपनी ओर की अगली गेंद लेकर, जबकि सामना इस वक्त करने के लिए तैयार दाहिने हाथ के बल्लेबाज सुजन, जिन्होंने बेहतरीन बल्लेबाजी पिछले मैच में की थी और यहां पर वो सामना करने के लिए तैयार। दाहिने हाथ राउंड द विकेट, ये गेंद सुजन के लिए अपना फेवरेट स्ट्रोक इस वक्त अपनाते हुए वो, लेकिन इस बार मिडल ऑफ द बैट कनेक्शन नहीं, गेंद पहुंची इस वक्त शॉर्ट थर्ड मैन पर जहां पर गेंद को फील्ड कर लिया गया और इस बीच 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है। 1 रन के इजाफे के साथ वाइड का इशारा एंड 1 मोर, वंस अगेन 1 + 1 2 runs added to their total। तो 2 रन यहां पर जुड़ेंगे उनके खाते में। 28 रनों पर स्कोरबोर्ड पहुंच चुका है। स्कोरबोर्ड इज नाउ मूविंग अप टू 28 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट एंड स्टिल 6 balls लेफ्ट इन देयर इनिंग्स। 6 गेंदे अब बाकी अभी भी और देखते हैं यहां पर इस ओवर में
और कितने गेंद इस वक्त गेंदबाज फेंकते हैं। और गेंदबाज इस वक्त तैयार। निजाम दाहिने हाथ राउंड द विकेट। यह गेंद इस बार गेंद को उछाला 6 रनों के लिए। Absolutely fantastic struck from the bat, came from the bat of Bhavish. This time he lofted that one just inside out cricket he played and lofted that one in a style over extra cover fence for a huge one. Perfect struck और इस छक्के के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 34 रनों पर। Straight away the bowler is now under pressure. 5 गेंदें बाकी, 34 the score, 3 wickets down and SFC A Benjanapadavu are now looking in the commanding situation. So 5 balls now left in the overall calculation in their innings और निजाम इस वक्त गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज भविष्य सामना करने के लिए तैयार। ये गेंद एक बार फिर से गेंद को ड्राइव करना चाहा, चूंकि बेहतरीन कमबैक का बाउट आउट के रूप में विकेट गिर चुका है, लेकिन एक बेहतरीन पारी की संपूर्णता यहां पर हो चुकी है भविष्य की। He scored 13 runs into his credit, including 2 massive sixes and a single. And after being playing a good knock for their side, he is backing to pavilion and a 4th wicket lost, and their total is 34 for the loss of 4 wicket. लीग स्टेज, अंतिम लीग स्टेज मैच में ये दोनों टीमों का मुकाबला हुआ था, तब मैच टाई हुआ था। तो यहाँ पर देखना यह है कि इस मैच में विजेता कौन होगा। तो इस बीच नए बल्लेबाज रक्षित का आगमन यहाँ पर होता हुआ। 4 गेंदें बाकी अब उनकी पारी में। जस्ट 4 balls नाउ रिमाइनिंग इन देयर इनिंग्स। स्ट्राइकर एंड पर रक्षित इस वक्त मौजूद और गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए निजाम इस वक्त गेंदबाजी निजाम इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए। तो अगली गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए निजाम। नए बल्लेबाज रक्षित इस वक्त सामना करते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए। ये गेंद इस बार गेंद को खेलना चाहा, नॉट क्वाइट मिडलिंग इट। गेंद पहुंची इस वक्त गली क्षेत्र पर, 1 रन मिलेगा और 1 रन के साथ दोनों बल्लेबाज यहां पर संतुष्ट हो चुके हैं और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब कुल मिलाकर पहुंच चुका है 35 रन 4 विकेट के नुकसान पर। सिर्फ 3 गेंदें इस वक्त बाकी। बेहतरीन लाइव टेलीकास्ट बेद्रा मीडिया द्वारा इस वक्त किया जा रहा है यहाँ पर इस ढलते हुए शाम में। और इस ढलते हुए शाम में भी ऐसा कहना पड़ेगा ये श्रृंखला एक बेहतरीन प्रगति यहाँ पर करती हुई। गेंदबाज की ओर की अगली गेंद रिवर्स शॉट, गेंद को खेलना चाह, नॉट क्वाइट मिडलिंग इट फ्रॉम सुजान, जस्ट अ सिंगल ही गॉट एंड विद दैट सिंगल रन द स्कोरबोर्ड मूविंग अप टू 36 now for the loss of 4 wicket. Just 2 balls now remaining in the innings. सिर्फ 2 गेंदें बाकी अब उनकी पारी में और निजाम अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। रक्षित इस वक्त सामना करते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट। ये गेंद उछाला एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से 6 रनों के लिए। इस बार रक्षित की पारी। He lofted that one in a style after being getting right from the middle of the bat. Absolutely fantastic struck came from the bat of Rakshit, and with that 6 the scoreboard is now rising up to 42 now. Just the last ball now remaining in the innings. अंतिम गेंद, the last ball of the innings is now coming up. निजाम to Rakshit. ये गेंद इस बार उछाला एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, फील्डर मौजूद, 1 रन मिलेगा। दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े, स्ट्राइकर पर थ्रो पहुंचा, थ्रो काफी वाइडर और बल्लेबाज 2 रन पूर्ण कर चुके हैं। यहाँ पर तीसरा रन लेना चाहते हैं लेकिन नहीं मिलेगा और इसी के साथ द इनिंग्स इज अप। So the innings is up for SFCA, and SFCA started well, progressed well, and finally they are finished well with 44 for the loss of 4 wicket. They scored in their stipulated 3 overs, and they set a victory target of 45. And now the huge target for young boys, Polali, 45. They have to score in their stipulated 3 overs with the required run rate of 15 runs per over with the help of 10 wickets. The present equation shows for them. और सतीश यहाँ पर 45 रनों का लक्ष्य absolutely difficult in this condition, लेकिन नामुमकिन नहीं, impossible नहीं। और मैं समझता हूँ राइट फ्रॉम द फर्स्ट ओवर इस वक्त एक घातक बल्लेबाजी, एक्सप्लोसिव बल्लेबाजी इस वक्त करनी होगी यंग बॉयज पोलली के बल्लेबाजों को। और मैं समझता हूँ सतीश, मैं समझता नहीं बल्कि यकीन के साथ कहूँगा कि सिर्फ आक्रामक बल्लेबाजी, एक्सप्लोसिव बैटिंग, विस्फोटक बल्लेबाजी ही अब यंग बॉयज पोलली को 35 रनों के विशाल से लक्ष्य तक पहुंचा सकती है। Exactly, Gopi. The 45, which is definitely it's going to be a difficult one, but not impossible, isn't it? As far as the asking run rate is concerned, the 15 runs per over is the required run rate, and but the condition which is not that much of easy enough for chasing team, because whenever you are
getting a target like 45 to win the match. Psychological advantages, which is for the fielding team, because they knows that what kind of target they're depending. But when it's 1 over, it is going to be a economical over, and then it's going to be a problem starts for the chasing team to how to get this huge total. Absolutely, it's the mountain of runs. It's a monumental, and wait and see how well the team young boys will going to climb this mountain of runs. But still, just like Gopi is mentioning about cricket is game of glorious uncertainty. You can't say anything in cricket. Any over which is over of 20 runs, which is definitely going to open the gate for the team young boys Polali. So young boys Polali and SFC Benjanapadavu, they met in the league matches, and in that match, the match which is ended in a tie, and that tie is very important for SFC to qualify for the eliminator, because of they tied the match, they came into the eliminator, and in eliminator they performed well. They qualified for the qualifier number 2. But as far as team Young Boys Polali is concerned, being the unbeaten in the league matches, but one defeat which really decreased the level of confidence of the team Young Boys Polali, because when they face the defeat against the team which is qualified against JK Sikalai, when they defeated, then their level of confidence which is came down, and that's the result in this particular qualifier number 2, the do or die situation now for young boys Polali. But still they got opportunity. The batter like Dilip and batsman like Tilak, they can do something special from the bat. The first ball lofted. Oh! Looks like the fielder is shown that urgency, so he just slipped out, and a boundary comes up in the first ball of the over. This is what I'm talking about. The Tilak might be unlucky there, absolutely unlucky. Have a look at that. The Guru, he wanted to charge that ball, try to take the catch, because of in the small stones in the outfield, it's very difficult for the fielder to grip that one. That's the problem what the Guru has got. Nothing much wrong with that attempt, but something wrong with that in the outfield. Might be that his shoe is not good enough to tackle with that small stones in the outfield. But anyhow, the boundary which is came. And here is the next one. Went for the reward sweep. Wicket keeper behind the stump asking the scholar umpire for the stump out. But Tilak is managed very well. Immediately he drags his bat into the line. Otherwise, he's got an opportunity here for wicket keeper to get the stump out. But anyhow, good comeback here by Deepak. In the second ball is bowled a dotted delivery. Now equation 41 required for the victory. 41 required from 16 deliveries. In this qualifier number 2 to qualify the final. Again, beautifully balled. Wicketkeeper behind the stump fails to collect the ball. One more single. It's from the bat. No signal from the umpire means it's outside of the bat of the batsman. So that one more single. 5 without loss of any wicket in the over number first is in progress. Good comeback by Deepak, but now this man is always going to be danger. Dilip is a very good striker of the ball. You know exactly what kind of runs they're chasing. This time he's going for the mighty stroke. Missed it completely. One more dotted delivery. Each and every dot ball will going to create the problem for the team Young Boys Polali to win this match. 2 balls which is remained in this over. That 5 runs which is scored. That means altogether 14 deliveries remaining. And they have to get another 40 runs to win this match. One more single. And of course, Deepak will not going to bother about the single. No, exactly. Need to restrict the boundaries and sixes. And scoreboard numbers on to 6 on the board without loss of any wicket. 39 more runs required for the victory. The point which is broken of that wicket, so that they are asking for the new wicket. ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರಾಗಿ ಸಂತೋಷ್ ಕುಲಾಲ್ ಬೆಂಜನಪದವು ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಇವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಿದ್ದೇವೆ ಸಂಘಟಕರ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾಗಿ. ಸೊ ವಾರ್ಮ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜಿಯಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಸೆರೆಮನಿ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜಿಯಸ್ ಬೆಂಜನಪದವು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2023 for respected Santosh Kulal Benjanapadavu, the businessman.
So, first over, which is not completed, and straight away the darken taken place here. Time exactly 6 for 15, 6 past 15. I requested to make it past one more match which is remaining after this, the final, the mega final of this prestigious cricket tournament. So that I request all the players to make it past. Don't waste the time. And now it's a target, and 39 which is required now. 39 runs required for the victory in remaining 13 deliveries. And the target is looking tougher and stiffer and each and every dotted deliveries. Deepak again bowling right arm over the wicket. This time lofted at one, but not quite enough. The fielder is there in the deep long off, just a single for the batter. And this single will not going to help the team there. Just a single. So good over there from Deepak. It's a very good over. Just 7 came from that over. And remaining 2 overs. Young boys probably have to get 38 runs to win this match at the required run rate of exactly 19 runs per over. This is a big problem, isn't it? When you're not getting first run as a huge one, then a problem starts that the asking run rate is climbing up after each and every economical over. 38 required from 12 balls. This over is very crucial for team Young Boys Palali. And if they wanted to take this match into the last over, to little bit anything which is going to be watched in that last over, this over they need to get at least 20 plus runs if they wanted to take this match into the final over. Otherwise, a door will go into close here for Young Boys Palali to reach to the final of this prestigious BPL 2023, and which is proudly organized by SFC cricketer Shivaji Nagar Benjanapadavu, and this is they're celebrating their 5th year cricket tournament, and it's progressing very successfully. Now the bowler Guru brought into attack, right arm over the wicket, balls, and first ball it starts with the wide and warm-up delivery of the evening. With that excess cover numbers on to 8 on the board without loss of any wicket. 37 more runs required for the victory and remaining 12 deliveries. Again, the Guru back to his bowling mark. So far, he's got a very good tournament from the ball, Guru. And now he's bowling first time in this over. All right, over the wicket delivers to Tilak. Tilak going for the big swing of the bat. Wicket keeper behind the stump. Deepak trying for the shy at the stumps, but missed the stumps completely. The batter completed a single there. With that single, score was on to 9 without loss of any wicket. 36 required from 11 balls. 36 required from 11 balls. That means each and every ball required a boundary at least, and even the sixes will now definitely going to help them to open the gate in this particular match. Guru again bowling away from us. Right arm over the wicket to the tall player Dilip. This time Dilip get away from the line of the delivery. Rightly so, you know exactly that ball is outside and flexed them too much, so that white called by umpire. With that excess cover numbers on to 10 on the board without loss of any wicket. 35 on the board. 11 balls remaining. 35 required. 10 on the board. 35 required from 11 balls. As again the bowler Guru bowls to Dilip. Dilip drives that one and right out of the reach of that short mid-wicket fielder. Before the mid-wicket fielder to return the bat, one chance of run out and is gone. Tilak is back into pavilion. This is what the result we are watching when you're chasing a huge total of 45 to qualify. They need to look for everything, isn't it? They need to look for everything wherever they're getting the chance of getting extra runs. But by doing that, the wickets are falling, and Tilak is back into pavilion, and 10 for the loss, 11 for the loss of 1 wicket. 34 more runs required for the victory in remaining 10 balls. ದಯಮಾಡಿ ಬ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಬರಬೇಕು, ಸಮಯದ ಅಭಾವವಿದೆ. Please cooperate with the organizers. So new batsman walking towards the middle. Naufal is the new batter in. Naufal is a very good striker of the ball, and lot of responsibility now from these two batters, how to get that 34 runs in remaining 10 balls. This time he lofted it. He lofted it, and he will going to get this distance. Yes, he got the distance. So at last Dilip is breaking the shackle. Have a look at that stroke. Absolutely terrific. It's not so easy in the evening to get the distance. Once it looks like the fielder will going to get there, but ball just defeating that fielder in the deep long on, and went into the fence for a 6. Now 28 required
In remaining 9 balls, scoreboard jumps into 17 for the loss of 1 wicket. Again, Guru back to his bowling mark. Dilip, I already mentioned, is a quality player. He is the kind of batsman who will not going to give up this match cheaply. Again, now it's bowled him, clean him up. Just like I mentioned, he will not going to give up this match. But here is a Guru saying that I am not given up. I am also not giving up this match. So that he bowled a fantastic off cutter. And the batsman going for the drive and missing it completely, then ball hitting the stumps. Wicket number 2, which is back into pavilion. It's 17 for the loss of 2 wicket. Danger man departs. The new batsman in is one more very good striker of the ball. Afreed is walking towards the middle. If his team wanted to win this match, he need to bat like the former Pakistan cricketer Saeed Afreed. He need to justify that the name what is Afreed he has got. And 28 runs which is required run and 8 balls which is remaining. Guru, after getting a success, wait and see. Right arm over the wicket, beautifully ball, perfect one, perfect delivery to ball that to the newcomer, and that's a single run anyhow. So last 7 balls remaining, 27 more runs required for the victory. And Naufal is a batter, one more tall man, the very good striker of the ball, will go into face the final delivery of this over. Guru away from us. Right arm over the wicket, beautifully balled, perfect one, chance of run out, and it's going to be a disaster. Now fall back into pavilion, and one more wicket is fallen. 18 for the loss of 2 wicket. Last over remaining, 27 runs required for the victory for Young Boys Polari. I request JKC Kalai, every players please get ready for the final because we are having a shortage of time. After this match, the final will go into begin. The winner of this match will go into play against JKC Kalai. But still it's a 27, long way to go for team Young Boys Polali to win this match. 6 ball, 27 required for the victory. Outside line of option, too much, and that's going to be a wide 1+1. It's not a good start there from the bowler Punita as the ball's wide. Now 25 required. 6 balls remaining. 18, which is the total score. Wide +1. 25 required from 6 ball. Puneet to Arshit. Again 1+1. And Puneet, I don't know. After having that much of runs you are depending, the bowling like this is not expectable. And not acceptable because of is depending a huge runs. Bowling, I don't know what kind of pressure is feeling. And bowled a 1+1 2 times, 4 runs conceded without bowling a single delivery. Now 23 runs required for the victory. The one big shot will go into change the complexion of this match. Puneet. Again bowling right arm. Over the wicket. Drives that one nicely down to deep long off region. The fielder there, the deep long, absolutely fantastic work there by Bhavish there. What could be a certain boundary? He done a great job, has got a fantastic footwork. Have a look at that effort there from Bhavish. Absolutely certain boundary and magnificently done. That was a really timing of putting his left foot to the direction of the ball is been outstanding. And now 21 required from 5 balls. Again, that ball is pitching outside the like stump, but well within the reach of the batter. The 4 balls and 21 required for the victory. The 4 balls 21. Then 3 sixes and a couple of runs will go into do the job for the team, Young Boys. That's why this ball is going to be a more very important delivery for Young Boys. At least they wanted to get one big shot in this ball. Otherwise, the team SFC Benjanapadavu will go into qualify for the final. This time, just like I mentioned, it's going to be a sixer. Oh, what a save! My goodness, he already saved that one, but unfortunately, ball which is stuck with his hand.
He ball which is stuck with his hand so that he couldn't manage to pull the ball into the playing area. Have a look at the effort. Magnificent. Absolutely fantastic. If he is able to pull the ball inside the playing area, this is going to be one of the best save of this tournament. Now, 15 required. 3 balls remaining. Match which is not yet over. Match which is not yet over, and that 6 will definitely, the hope of winning the match is alive for young boys Polali. 15 required from 3 balls. Right, over the wicket, drives that one down to deep long off. He wanted to back in the strikers and Afrid not interested. I don't know why, because 14 to get from 2 balls. I think if Afrid able to cross over for the second run, then opportunities, the 13 to get from 2 balls, at least they can tie the match. But here is a 2 sixes will not going to help the team Young Boys Polali to win this match. 2 balls, 14 runs required for the victory. Puneet. Balls. This time it looks like one more single. And last ball, 13 required for the victory. 13 required from the last ball. Now SFC, Benjanapadavu. Now no one can stop them to qualify for the finals of this prestigious Benjanapadavu Premier League 2023. 1 ball, 13 runs required for the victory. The batsman Afrid is on strike. Oh my goodness. Is bowling a wide delivery. 13 depending. Still you are bowling a wide ball. And you can bowl the one simple delivery as well. If a batsman going to hit the 6, will go not affect the result of this match. And 1 ball, 12 runs required for the victory. That's it. It's going to be a 6, but it's a too late. Oh, what a catch! He saved the 6. It's not a legal catch. He saved the 6 at last. So victory for SFC. Congratulations SFC, Benjanapadavu. They qualified for the final. But have a look at the attempt that from the fielder. I want to see it in a replay. That fielder is Sujan, I think so. Rakshit. And looks like he saved that one. But we are not seeing the boundary line in the camera. So this is a fantastic view of the sunset here in our Benjanapadavu. Fantastic view. The cameraman of Bedra Media having a beautiful view of sunset. And that's what the beauty of nature. Always one of the richest. The nature what we are having. The God gift. Thank you very much. And now we are into the final. SFC will take on JKC Kalai in the big final. And wait and see which team will going to become the champion. We'll take a short break. Thank you. JKC Kalai ತಂಡದ ನಾಯಕ ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಇದೆ, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ. Two overs final because we need to complete the matches before the dark. 2 overs big final will be played here because of bad light. ಅಲ್ಲಿ ಜೆಕೆಸಿ ಕಲಾಯಿ ತಂಡದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸದಸ್ಯ 12ನೇ ಆಟಗಾರ ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು. ಆಟಗಾರರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಲು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ಜೆಕೆಸಿ ಕಲಾಯಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಟು ಬಿ ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಟೆಲ್ ದ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ನೇಮ್.
I request the openers of JKC Kalai, please go for bat immediately. And also request the extra player. ಅಲ್ಲಿ JKC Kalai ಇತರ ಆಟಗಾರ 12ನೇ ಆಟಗಾರ ತಕ್ಷಣ ವೇದಿಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು. ಆಟಗಾರರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಲು ದಯವಿಟ್ಟು. Right, the final match, grand finale of Benjanapadavu Premier League 2023 is now going to start with proudly organized by SFC Benjanapadavu, and news is here from the center that the captain of SFC after both the toss elected to field first against JKC Kalai. 2 hours match, 2 hours per side to be played, and the first ball of the grand finale mega final match is now coming up. Zaid and Zazim the openers, and the ball is taken by Deepak. Start the fresh proceedings, and the lights getting dimmer and dimmer as the time progresses. It's already 6:30 in the evening, and we are just waiting for the first ball of the grand finale match. So the first ball of the match is now coming up. 2 hours match, and Deepak is now bowling to right-handed batsman Zaid is now going to face the first ball of the mega final match of SFC mega final match of Benjanapadavu Premier League 2023, which proudly organized by SFC cricketer Shivaji Nagar Benjanapadavu in this beautiful Shivaji Stadium. And first ball of the grand finale is now coming up. Deepak to Zaid. फर्स्ट बॉल पहली गेंद लेकर तैयार. ये गेंद इस बार गेंद को ड्राइव किया. गेंद पहुंची इस वक्त स्लिप मिड ऑन पर. दीपक खुद गेंद को रोक नहीं पाए, और जब तक गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है, और 1 रन के साथ रनों का सिलसिला यहां पर शुरू हो चुका है. 1 रन बिना किसी नुकसान के यहां पर धीरे धीरे अंधेरा सा छाता हुआ, और जहां तक एक बेहतर स्कोर खड़ा करने का सवाल है तो कम से कम 15 से 20 रन यहां पर बटोरने होंगे. यहां पर जेकेसी कलाई के बल्लेबाजों को अगर उन्हें दबाव डालना है एसएफसी ए के बल्लेबाजों के ऊपर, जब वो बल्लेबाजी पर उतरेंगे, और इन हालातों में कम से कम 18 से 20 रनों का लक्ष्य चुनौती भरा साबित हो सकता है अगर उनके गेंदबाज सही तरीके से गेंदबाजी करते हैं. तो गेंदबाज एक बार फिर से तैयार. दीपक गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दानियात ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए. ये गेंद ऑप्शन से बाहर कट करना चाहा, गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में. रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिलेगा. स्कोर इस वक्त रुक चुका है. ಸ್ಕೋರ್ ಇಸ್ ವಕ್ತ रुक चुका है. 1 रन ಅಲ್ಲಿ ಬೌಂಡರಿ ಒಳಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡವರು ಅಥವಾ ನಿಂತುಕೊಂಡವರು ದಯವಿಟ್ಟು ಸೀಮಾ ರೇಖೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. मैदानದ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು. तो इस बीच अगली गेंद के लिए तैयार. ऑफ स्टंप से बाहर की ओर गेंद निकलती हुई, और इस बीच 1 रन मिला और वाइड का इशारा. इनफैक्ट 1+1 2 runs now added to the total in the face of extras, and that couple run the scoreboard moving up to 3 without loss in the first over. और दीपक एक बार फिर से गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिना तो ओवर द विकेट. ये गेंद इस बार लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए एक बार फिर से रन के लिए दौड़ पड़े. सिर्फ बाई का इशारा. इस बीच लेग स्टंप से कुछ ज़्यादा बाहर की ओर गेंद नहीं निकल रहे थे, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 4 रनों पर. और जहां तक एसएफसी ए का सवाल है, कम से कम 15 रनों के अंदर उन्हें इस वक्त उनके गेंदबाजों को इस वक्त रोक कर रखना है. जेकेसी कलाई के बल्लेबाजों को अगर उन्हें लक्ष्य आसान होना है जब वो बल्लेबाजी पर उतरेंगे. और दाहिने हाथ ओवर द विकेट दीपक की गेंद. ये गेंद ड्राइव किया इस वक्त. गेंद पहुंची लॉन्ग ऑन की दिशा में. फील्डर वहां पर मौजूद. लॉन्ग ऑफ पर कहना पड़ेगा, नॉट मोर देन अ सिंगल इनफैक्ट. और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 4 रनों पर. 5 रनों पर बिना किसी नुकसान के पहला ओवर यहां पर प्रगति पर. दर्शक जो कि मैदान पर लगभग इस वक्त भर चुके हैं, मैदान के इर्द गिर्द मौजूद, और खामोशी के साथ मैच का मुआयना करते हैं. ये गेंद इस बार उछाला. दिस इज अ ह्यूज वन. यस इट डज. इट्स अ बिग. 6 रनों के लिए इस वक्त उछाल दिया बल्लेबाज ने. Zaid के बल्ले से ये छक्का लग चुका है. Have a look at this in the replay. This is an absolutely perfect stroke. Just caught that one right from the middle of the bat and lofted that one in a style. ऐसा कहना पड़ेगा, just stand and delivered. और इस छक्के के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 11 रनों पर. और दीपक का एक बार फिर से गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए Zaid इस वक्त सामना करने के लिए तैयार. अपनी ओर की अगली गेंद का 17 छक्के और 48 चौके इस मैच में, इस श्रृंखला में, इस टूर्नामेंट में लग चुके हैं. बेहतर गेंद थी इस वक्त दीपक की. रन के लिए इस वक्त दौड़ना चाहा था, लेकिन अंतिम क्षण में आखिरकार यहां पर यह विकेट गिर चुका है बोल्ड आउट के रूप में. और यहाँ पर बिल्कुल सीधी रफ्तार के साथ गेंदबाजी की थी इस वक्त दीपक ने. देखिए किस तरीके से यहाँ पर बोल्ड आउट हुए थे. रिवर्स शॉट मारना चाहते थे, गेंद उनके बल्ले को वंचित करते हुए सीधे मिड और लेग स्टंप पर जाकर टकराती हुई. गिलिया बिल्स डिस्टर्ब होते हुए, और इसी के साथ पहला विकेट यहाँ पर गिर चुका. पहले ओवर की समाप्ति, पहले ओवर के मुकम्मल यानी समाप्ति के बाद 11 रन बन चुके 1 विकेट के नुकसान पर. एक बेहतर शुरुआत 1 विकेट खोने के बावजूद यहाँ पर जेकेसी कलाई कर चुका. अब 1 ओवर का खेल
उनकी पारी में बाकी। और देखते हैं इस बचे हुए एक ओवर में उनके बल्लेबाज और कितने रन यहाँ पर बटोर पाते हैं। तो गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए गुरु ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार और इरशाद का आगमन इस वक्त होता हुआ, जबकि जासीम इस वक्त समर करने के लिए तैयार। लगभग मैदान पर अंधेरा सा छाता हुआ 6:40 बचते हुए ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। यह गेंद चिप किया इस वक्त खूबसूरती के साथ, इस बार कैच वहां पर छूट चुका है। स्ट्रेट फॉरवर्ड चांस गॉन इन वाइन। और जब तक गेंद को बैकअप किया जाता, लॉन्ग ऑन पर बल्लेबाज के पास मौका था एक रन प्राप्त करने का और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 12 रनों पर एक विकेट के नुकसान पर। 12 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट एट द स्टार्ट ऑफ द सेकंड ओवर इनफैक्ट। और गेंदबाज एक बार फिर से तैयार। गुरु की गेंद इस बार बेहतर गेंद थी। गेंद को इस वक्त विकेट कीपर ने गेंद को कलेक्ट किया, लेकिन अंतिम क्षण में अपना संतुलन खो बैठे विकेट कीपर दीपक। और आखिरकार एक रन उनको मिलता हुआ और इस एक रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 13 रन एक विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर इस वक्त प्रगति पर। गुरु दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद ऑफ स्टंप पर आती हुई रन के लिए दौड़ पड़े इस बार दीपक और इसी के साथ ये आउट। रन आउट के रूप में विकेट गिर चुका है। जोखिम भरा रन चुराना चाहा और वापस क्रीज पर लौटने का कोई मौका नहीं और इसी के साथ विकेट कीपर ने तेजी के साथ विकेटों पर गेंद लगा दिया, गिल्लियां बिल सुना दिया। देखिए किस तरीके से यहाँ पर हुआ था। हैव अ लुक एट दिस इन द रिप्ले। और तेजी के साथ गेंद पर लपके और दौड़ कर जाकर गिल्लियां इस वक्त बिल सुड़ाते हुए और इसी के साथ विकेट गिर चुका है यहाँ पर जैसन का। जासीम आउट होकर पेविलियन वापस लौटते हुए नए बल्लेबाज के रूप में इस वक्त अशरफ का आगमन यहां पर होता हुआ। कुल मिलाकर 3 गेंदें अब उनकी पारी में बाकी और एक बेहतर ओवर अब तक साबित हो चुका है गुरु का, जिसमें सिर्फ 2 रन वो अब तक पहले 3 गेंदों में प्रदान कर चुके हैं। अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार दाहिने हाथ के बल्लेबाज अशरफ इस वक्त सामना करते हुए। दाहिने हाथ के बल्लेबाज गुरु की अगली गेंद का और गुरु दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद अशरफ के लिए लेग से बाहर की और निकलती हुई नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज काफी आगे दौड़ा है और नॉन स्ट्राइकर रन पर इस वक्त रन आउट हो चुका है। वाइड का भी इशारा हो चुका है। One more run added to the total, and with that wide run, the scoreboard moving up to 14 for the loss of 2 wicket. Still, in overall calculation, it's going to be 3 balls remaining in their innings. और काफी लेग से बाहर स्पेक्ट्रा वाइड और एक विकेट यहाँ पर गिर चुका है। 14 now the score. 14 for the loss of 3 wickets, and we are just waiting for the number 5 batsman of JKC Kalai. आतिर नए बल्लेबाज के रूप में नॉन स्ट्राइकर पर मौजूद और गुरु इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज इरशाद इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। ये गेंद ड्राइव किया खूबसूरती के साथ, गेंद जाते हुए एक्स्ट्रा कवर की दिशा में 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा। क्लीन पिकअप थ्रो पहुंचा, दूसरा रन लेना चाहते हैं लेकिन अंतिम क्षण में यह विकेट यहां पर गिर चुका है रन आउट के रूप में। हाँ ना और इसमें यहां पर विकेट बल्लेबाज गवा चुके हैं। गेंद को खेला था इस वक्त लॉन्ग ऑफ और एक्स्ट्रा कवर के दरमियान और गेंद को वहां पर क्लीन पिकअप करते हुए फील्डर ने थ्रो किया था, लेकिन अंतिम क्षण में बल्लेबाज में थोड़ी सी झिझक दूसरा रन लेने के बारे में। और यहाँ पर देखिए किस तरीके से एक बार सोचा कि भागा जाए, दूसरी बार सोचा कि वापिस लौटा जाए, वापिस सोचा कि भागा जाए, तो आखिरकार यहाँ पर इस हिचकिचावट में यह विकेट यहाँ पर गिर चुका है। और कुल मिलाकर स्कोर है इस वक्त 15 रन 4 विकेट के नुकसान पर। 15 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट। 2 गेंदें बाकी। ये गेंद ऑन साइड पर गेंद को मोड़ा इस वक्त शॉर्ट विकेट की दिशा में गेंद जाती हुई 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा। दूसरे रन के लिए बल्लेबाज दौड़ पड़े। 2 रन इस वक्त यशस्वी दम यहाँ पर पूर्ण करते हुए। एब्सोल्युटली फैंटास्टिक रनिंग बिटवीन द विकेट बिटवीन दीज 2 बैट्समैन, एडिंग अ कपल ऑफ रन्स टू देयर टोटल। और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 17 रनों पर। 17 नाउ फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट। द लास्ट बॉल रिमाइनिंग इन देयर इनिंग्स। अंतिम गेंद इस वक्त बाकी। तो अंतिम गेंद लेकर इस वक्त गुरु तैयार, जबकि सामना इस वक्त करते हुए आतिर और अंपायर जो कि विकेटों को इस वक्त सही करते हुए और अंतिम गेंद लेकर इस वक्त गुरु गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज आतिर इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए आतिर के लिए इस बार चूके गेंद जाती हुई थर्ड मैन की दिशा में 1 रन मिलेगा, दूसरा रन नहीं मिलेगा और यहाँ पर दौड़ पड़े और रन आउट इस वक्त नॉन स्ट्राइकर पर होता हुआ सिर्फ बाई का इशारा। एंड द इनिंग्स इज अप। They finished with 18 for the loss of 5 wicket in the stipulated 2 overs for JK Kalai, and now the target for SFCA is 19 runs they have to score in the stipulated 2 overs with the required run rate of exactly 9.5 runs per over to clinch the prestigious
Benjanapadavu Premier League 2023 title. और सतीश 19 रनों को लक्ष्य, 19 the target for them in 2 overs, 12 deliveries, 19 runs, exactly 9.5 runs per over, the required run rate for them. और जहां तक रनों के पीछा करने का सवाल है तो अंडर दिस कंडीशन इट्स गोइंग टू बी डिफिकल्ट, और जहां तक सवाल है लेकिन नामुमकिन नहीं। और मैं समझता हूं यहां पर एक बेहतर बल्लेबाजी राइट फ्रॉम द फर्स्ट ओवर करते हैं, खासकर पहले ओवर में कम से कम 10 से 12 रन at least they have to get 10 to 12 runs in the first over. अगर वो बटोरते हैं 10 से 12 रन पहले ओवर में तो जाकर लक्ष्य उनके लिए यहाँ पर आसान हो सकता है। लेकिन जहाँ तक लक्ष्य तक पहुँचने का सवाल है, मुश्किल जरूर लेकिन नामुमकिन नहीं। इन हालातों में देखना है कि एसएफसी ए के बल्लेबाज किस तरीके की रणनीति टैक्टिक्स अपनाते हैं यहाँ पर 19 रनों के लक्ष्य तक पहुँचने के लिए। फिलहाल यहाँ पर इस मैच का फलितांश जो भी हो, लेकिन अब मैं कहूँगा इट्स गोइंग टू बी 50-50 एज सिचुएशन, और एक बेहतरीन रोचक क्रिकेट हमें यहाँ पर इस फाइनल मैच के अंतिम सत्र में, अंतिम अवधि में, अंतिम इनिंग्स में, अंतिम पारी में देखने को मिलेगा इस बेंजनापदव प्रीमियर लीग 2023-2023 के अंतर्गत। माइक्रोफोन पर आइए सतीश फॉर द लास्ट टाइम फॉर टुडे। So thank you very much, Gopi. So 19, which is required run to become the champion of this prestigious Benjanapadavu Premier League 2023 for being the host of this tournament, and host team SFC Benjanapadavu wanted to get 19 runs to win this match. But I think, Gopi, it's a good score. 19, which is a score we cannot underestimate. And in this 19, the 1-6 which is came from the bat of Zahid is definitely going to be a big difference in this big final. And wait and see if SFC Benjanapadavu wanted to win this match. I think that these two opening batters, of course, the destructive opening batter, left and right combination, Bhavish as well as Deepak, have to get a good start. Just like you mentioned, 12 to 15 runs in the first over will make it too easy for them to win the match. But I think the against him, they also has got a very good bowling department. They will not going to give this match very cheaply, and they will also fight hard for the victory. ಈಗಲೇ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಈಶ್ವರ ಬೆಲ್ಚಡ ಇವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಹಿರಿಯರು ಕೂಡ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ. ದಯಮಾಡಿ ಅವರು ತಾವು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಆಸನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಈಶ್ವರ್ ಬೆಲ್ಚಡ ಹಿರಿಯರು ಕೂಡ ದಯಮಾಡಿ ಅವರ ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕು. ಸಂಘಟಕರ ಪರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಿದ್ದೇವೆ. The first ball, the batsman looking for the slog sweep shot, but he missed it completely. Just like I mentioned, it's going to be under pressure each and every ball. Chasing these runs in this condition is not easy, but 1-2 big shots will going to change the complexion of this match. JKC Kalai, and after they scored a 18 valuable runs, they set a target of 19 to win the match. So 11 ball, 19 runs required for the victory. Zaid, who contributed from the bat, now he's tried to contribute from his bowling. Right arm round the wicket. Deepak swings and missed, and they're going for the single. And with that single, it's going to be 1+1, 2 to the total. So ball just going outside the line of off stump of the batter, so that he wanted to swing that one on the onside region, missed it completely, and umpire not missing this as he called it wide. So 17 runs required from 11 balls. Zahid now changing his angle, rightly so. He bowled first 2 deliveries for the left hand batsman. Now he's bowling to the right hand batsman, and Bhavish is a batsman, is more dangerous, and is more dangerous as far as opposition JKC Kalai is concerned. Is a very good striker of the ball. Now Bhavish is on strike, 17 to get from 11 balls. Zahid, right arm over the wicket, this time beautifully bowled, perfect one, defeating the bat of the batter Bhavish. They're going for the single here. With that single score moves on to 3 on the board. 2 balls, 3 runs conceded by Zahid. It's not a big run. As far as the required run rate is concerned, is 9.5 runs per over. They wanted to get to win this match, but so far I think Zahid starts well, but he need to finish well. And here is again Deepak, one more very dangerous left-hand batter, will going to take the strike. Zahid bowling right arm from the wicket past the umpire. This time swings and missed. Bowled him, is cleaned him up. Deepak is back into pavilion with the beauty of the delivery there from Zahid. Just like I mentioned, he is a key player for the side of JKC Kalai.
Have a look at that one. Deepak looking for the big shot, expansive drive, but he's exposing all the stamps. It's a short pitch delivery. He can hit the ball if he's able to get a connection for that. He will going to get a big shot for that. But unfortunately, ball missing his bat. You miss high hit what Zaidis did. And wicket number first is back into pavilion. It's 3 for the loss of 1 wicket. "16 more runs required for the victory. 9 balls remaining in their innings. Zahid has got a very important breakthrough. The new batsman in Sujan, early entry, promoted up in the order. Why not? We need to be promoted because he's a man in form for team SFC Benjanapadavu. And wait and see how Sujan will go into justify his promotion as a number 3 batter. Zahid is looking very confident after they got a wicket off Deepak. Bowling away from us. Right arm over the wicket delivers. This time Sujan went for the reverse sweep, but just for a single. Not more than a single. With that single, scored moves on to 4 for the loss of 1 wicket. 15 to get from 8 balls. One big shot which is badly required for SFC Benjanapadavu. That will go into change the complexion of this match. But Zahid is the one, you know exactly, the first over which is very important for them. If they wanted to win the match, he need to bowl 1 good over. So long off is there, deep extra cover is there, long on is there. Now long off is coming exchange of field. It's not a change of field set, it's exchange of field. And here is a bowler bowling right arm over the wicket. And condition is looks to be a little bit difficult one for a chasing team, but not impossible. Again Zahid, the right arm over the wicket. Ball to Bhavish. Bhavish went for the big shot again. Nicely bowled, just following the batsman. Bowling to his leg. Leg by call by umpire. One more addition to total. So far it's a good over. 5 for the loss of 1 wicket. 5 balls, 5 runs conceded. 14 required from 7 balls. Each and every ball required 2 runs here onwards. The couple of runs required run per deliveries. 2 runs per delivery is required. And here is again the bowler Zahid. So far is so good. But job which is not yet over. Last time in this over. This time going for the reverse talk. Fantastic piece of bowling from Zahid. Very good over indeed. Just 5 runs came from that over. Now do or die situation for SFC Benjanapadavu to need to get 14 runs in 6 balls. Last over, 14 runs required for the victory. Condition it seems to be a favorable for a team, fielding team, and but you can't blame for that because SFC Benjanapadavu captain won the toss. They elected to field first. So this is what I'm talking about. The decision may be wrong if they fails to get that 14 runs in last over. But the match which is not yet over, still they got opportunity. SFC Benjanapadavu having this man in the middle, Bhavish is always going to be danger. Mufid, one more very good bowler for the side of JKC Kalai in this tournament. He's been outstanding. And right arm over the wicket. Again, first starts with the delivery outside the line of off stump. Wide signal umpire. One more addition. With the addition of that singles, covered moves on to 6 for the loss of 1 wicket. Still 13 more runs required for the victory. 6 ball remaining. 13 required. One big shot will go into change the complexion of the match. But question raising here is, in this condition, will it going to be possible? And again, nicely balled, quicker than faster. And a leg by goal by umpire. One more addition. 12 to get. 5 balls remaining. 12 to get from 5. Sujan, the man who is responsible for his team in the final. Can he able to responsible to become the champion? Wait and see. But here is the bowler. He knows that what the responsibility you need to do. Right arm over the wicket. Mafid this time went for the reverse sweep here. Not quite getting hold of that properly. Just a single. Single will not going to help SFC Benjanapadavu to win the match. Now 11 to get from 4 balls. 11 to get from 4 balls. Both the batters trying their level best, trying hard to get a one big shot, but Mufid is not really giving opportunity for the batters to swing their arm. 11 required, 4 balls remaining. This time again went for the big shot. Again the ball which is missing the bat. Again there's going to be leg by. One more addition. 10 required, 3 balls remaining. 10 runs required for the victory.
10 required from 3 balls. Now it's a last opportunity in this particular delivery. They need to get one big shot. Sujan, can he able to deliver one big shot here? Mufid. Balls 1+1. Looks like that. Yes, it is 1+1. The match is not yet over. 8 runs required. 3 balls remaining. Match which is not yet over. 8 required from 3 balls. ಎಂಟು ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮೂರು ಚೆಂಡಿಗೆ 8 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ to become the champion. SFC Benjanapadavu, can they be able to do that? And Mufid bowling 4 times in this over. Right arm round the wicket to the right hand batsman. Bowled him, cleaned him up. No, looks like he's gone. Yes, he's gone. They bowled out. Bhavish back into pavilion now. Last 2 deliveries. 8 runs required for the victory. Beaten by the pace, fastest and quicker. Ashwath is a young talented player. He can surprise everyone. Wait and see. 8 required, 2 balls remaining. So here is the announcement. If Ashwath will going to hit a 6, he will going to get 2,000 rupees from Praveen Baba. So announcement here for Ashwath. Can he able to get the 6 here? Coming down the track, but good catch. Absolutely. Oh my goodness, he drops the catch. He drops the catch. They're coming back for the second, and Sujan sacrificing his wicket. So last ball, 7 for the tie. 7 for the win, 6 for the tie. So if match will go into ended in a tie, the champions will be decided by tossing the coin. 6 will go into tie the match. Unless bowler will not going to do any mistake of bowling wides and no balls, then it's going to be the last opportunity for the team. SFC Benjanapadavu. Coming down the track, looks like JKC Kalai become the JKC Kalai become the champion by defeating SFC Benjanapadavu by 6 valuable runs. Congratulations for JKC Kalai for winning this prestigious Benjanapadavu Premier League 2023, and they deserve this victory with that performed in this throughout the tournament. And congratulations even for SFC Benjanapadavu is not enough to defeat the very strong opposition. KFC Kalai have become the champion. Congratulations for both the teams, for the winners and the runner-up. And that's it for the day number
ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದಂತಹ ಶ್ರೀತಾ ಮಜೀದ್ ಕಲಾಯಿ ವಿನಾಯಕ ರೋಡ್ಲೆನ್ಸ್ನ ಮಾಲಕರು ಇವರನ್ನು ಕೂಡ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಜನಾರ್ದನ ಬಾರಿಂಜೆ ಇವರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದ ಪರವಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಶರೀಫ್ ಇವರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದ ಪರವಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ, ಅದೇ ರೀತಿ ಮನೋಜ್ ಕುಂದಾರ್ ಇವರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದ ಪರವಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸಂತೋಷ್ ಕುಲಾಲ್ ಬೆಂಜನಪದವು ಇವರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಪರವಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ, ಪ್ರವೀಣ್ ಬಾಬಾ ಬೆಂಜನಪದವು ಇವರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಪರವಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದಂತಹ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು ಆದಂತಹ ರಮೇಶ್ ಬಿ ಧರ್ಮದರ್ಶಿಗಳು ಭದ್ರಕಾಳಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೆಂಜನಪದವು ಇವರಿಗೆ ಸಂದೀಪ್ ಬಿ ಬೆಂಜನಪದ ಇವರು ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸಂದೀಪ್ ಬಿ ಇವರಿಗೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅಮುಂಜೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ನ ಸದಸ್ಯರಾದಂತಹ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ತಂತ್ರಿ ಬೆಂಜನಪದವು ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಸಂತೋಷ್ ಎಚ್ ಇವರು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸಂತೋಷ್ ಎಚ್ ಇವರಿಗೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸದಾ ಸಹಕಾರವನ್ನ ನೀಡುತ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರೇಮ್ಜಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಇವರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದ ಪರವಾಗಿ ಇವರಿಗೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಸುರೇಶ್ ಬಿ ಶಾಲೇನ್ ಇವರನ್ನ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪ್ರೇಮ್ಜಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಿಜನಪದ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸುರೇಶ್ ಬಿಂಜನಪದವು ಇವರಿಗೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈಶ್ವರ ಬಿಲ್ಚಡ ಇವರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಗೌರವದ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಹರೀಶ್ ಎಂ ಇವರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಸದಾ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನ ನೀಡುತ್ತಾ ಬಂದಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರು ಆದಂತಹ ಮಜೀದ್ ಕಲೈ ಇವರಿಗೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನ ಶರತ್ ಇವರು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. SKS ಶಾಮಿಯಾನ ಇದರ ಮಾಲಕರಾದಂತಹ ಶರೀಫ್ ಇವರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನ ಯೋಗೀಶ್ ಅವರು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ.
ಶರೀಫ್ ಇವರಿಗೆ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಬಾಬಾ ಇವರನ್ನು ಕೂಡ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನಿತ್ತು ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಚಂದ್ರಾಸ್ ಚಂದ ಇವರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಚಂದ್ರಾಸ್ ಇವರಿಗೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸಂತೋಷ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ಸನತಿ ಇವರು ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನಿತ್ತು ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸನತಿ ಇವರಿಗೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಜನಾರ್ದನ ಬಾರಿಂಜೆ ಇವರಿಗೆ ಸಚಿನ್ ಇವರು ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನಿತ್ತು ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮನೋಜ್ ಕುಂದರ್ ಇವರಿಗೆ ಭರತಿ ಇವರು ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನಿತ್ತು ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಭರತ್ ಇವರಿಗೆ. ಈ ಒಂದು ದಿನದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ನೇರ ಪ್ರಸಾರವಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಸುಶಾನ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಯತಿರಾಜ್ ಬೆದ್ರಾ ಮೀಡಿಯಾದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ನೇರ ಪ್ರಸಾರವನ್ನ ದೇಶ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೂತು ನೋಡುವಂತಹ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಸುಶಾನ್ ಯತಿರಾಜ್ ಇವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸುಶಾನ್ ಮತ್ತು ಯತಿರಾಜ್ ದೇಶ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ರಸದೌತಣವನ್ನ ನೀಡಲು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿರುವಂತಹ ಸುಶಾನ್ ಮತ್ತು ಯತಿರಾಜ್ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಸನವನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇವರಿಗೆ ಮನೋಜ್ ಇವರು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಯತಿರಾಜ್ ಇವರನ್ನ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಪರವಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾ ಇವರಿಗೆ ಮನೋಜ್ ಬೆಂಜನಪದವು ಇವರು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮನೋಜ್ ಇವರಿಗೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸುಶಾನ್ ಬೆಂಜನಪದವು ಇವರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಪರವಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾ ಇವರಿಗೆ ನವೀನ್ ಇವರು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನ ಇತ್ತು ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಒಂದು ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣಾ ಇದರ ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸತೀಶ್ ಅವರು ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಒಂದು ಬೆದ್ರಾ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನೇರ ಪ್ರಸಾರವಾಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಯನ್ನ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಬಹಳ ಸೊಗಸಾಗಿ ನೀಡಿದಂತಹ ಗೋಪಿ ಇವರನ್ನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇವರು ನಮ್ಮ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬಹಳ ಸೊಗಸಾಗಿ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ವಾಗ್ಝರಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದಂತಹ ಗೋಪಿ ಇವರಿಗೆ ಪ್ರೇಮ್ಜಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನಿತ್ತು ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ವಾಗ್ಝರಿಯನ್ನ ನೀಡಿದಂತಹ ಗೋಪಿ ಇವರನ್ನ ಪ್ರೇಮ್ಜಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ರಂಜಿಸಿದಂತಹ ಸತೀಶ್, ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಯನ್ನ ನೀಡಿದಂತಹ ಸತೀಶ್ ಅವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಸಣ್ಣ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ಇವರನ್ನ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನಿತ್ತು ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಬಾಬಾ ಇವರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬೆದ್ರಾ ಮೀಡಿಯಾದ ಮೂಲಕ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವಾಗ್ಝರಿಯ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ವಾಕ್ ಚಾತುರ್ಯನ್ನ ನೀಡಿದಂತಹ ಸತೀಶ್ ಇವರಿಗೆ
ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಎಂಪೈರಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದಂತಹ ಅನ್ಸರ್ ಇವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಗೌರವವನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನೆರವೇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತೀರ್ಪುಗಾರನ ತೀರ್ಪು ಅತ್ಯಂತ ಅಗತ್ಯ. ಈ ಒಂದು ತೀರ್ಪುಗಾರನ ತೀರ್ಪನ್ನಿತ್ತು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದಂತಹ ಅನ್ಸಾರ್ ಇವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಗೌರವವನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದನ್ನ ರಮೇಶ್ ಬಿ ಬೆಂಜನಪದವಿ ಇವರು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅನ್ಸಾರ್ ಇವರಿಗೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೋರ್ವ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದಂತ ಸಮಾದ್ ಇವರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಸಣ್ಣ ಗೌರವವನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದನ್ನ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ತಂತ್ರಿಯವರು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿನದ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಿದಂತಹ ಬೆದ್ರಾ ಮೀಡಿಯಾದ ಮಾಲಕರಾದಂತಹ ಇರ್ಫಾನ್ ಇವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಸಣ್ಣ ಗೌರವವನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದನ್ನ ಮಜೀದ್ ಇವರು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದೇಶ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ರಸದೌತ ನೀಡಲು ಸಹಕಾರವನ್ನ ಮಾಡಿದಂತಹ ಬೆದ್ರಾ ಮೀಡಿಯಾದ ಮಾಲಕ ಇರ್ಫಾನ್ ತಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ 2 ದಿನದ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಇದರ ಮಾಲಕರಾದಂತಹ ರೋಹಿತ್ ಅವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಸಣ್ಣ ಗೌರವವನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬಹಳ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೌಂಡ್ಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದಂತಹ ರೋಹಿತ್ ಇವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದನ್ನ ಸಂತೋಷ್ ಕೊಳ್ಳೇಲಿ ಇವರು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸನತ್ ಇವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಒಂದು ಬೆದ್ರಾ ಮೀಡಿಯಾದ ಮೂಲಕ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದಂತ ಮಿಸ್ಟರ್ ಶನತ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಯತಿರಾಜ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಸುಶಾನ್ ಇದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ವಹಿಸಿ ಇಂದಿನ ದಿನದ ನೇರ ಪ್ರಸಾರವನ್ನ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದಂತ ಸನತ್ ಇವರು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇವರನ್ನು ಈ ಒಂದು ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದ ಪರವಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇವರಿಗೆ ಹರೀಶ್ ಇವರು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನಿತ್ತು ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಭರತ್ರಾಜ್ರವರೇ. ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಒಂದು ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ನೀಡಿದಂಥ ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದಂಥ ಭರತ್ರಾಜ್ ಅವರು ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಇವರು ನೆನಪಿನ ಫಲಕವನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಭರತ್ರಾಜ್ ಅವರಿಗೆ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಲೆ ಬರಲಿ. ಭರತ್ರಾಜ್ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ತೆರೆ ಮರೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಬಹಳ ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್
ದ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಜಾಬ್. ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಬೇಕು, ತಾಳ್ಮೆ ಬೇಕು. ಆ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಅಷ್ಟು ಯೋಗೀಶ್, ಸಚಿನ್ ಹಾಗೂ ಶರತ್ ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕು. ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದಂತ 3 ಸ್ಕೋರರ್ಗಳು ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕು. ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. So begin for our scorer, done a great job for the success of this cricket tournament. So thank you very much and for your contribution for the success of this cricket tournament. And we are straight away into the individual prize department. And first of all, I would like to congratulate 2 teams which is qualified for the final. And being the host of this cricket tournament, SFC Benjanapadavu, first of all, big hand for SFC Benjanapadavu for organizing such a wonderful cricket tournament in just 2 days of excitement day of cricket. And thank you very much, Benjanapadavu, SFC cricketers, Shivaji Nagar, Benjanapadavu for this wonderful cricket tournament in the last 2 days. Now we are into the individual department. First of all, it's a man of the match. Man of the match goes to any guess? Yes? Zaid. Yes, absolutely. The Zaid is the one who is responsible for the victory in the final of this prestigious cricket tournament. May I request Majid. I request Majid to present this man of the match award for Zaid for his outstanding performance in the big final. Majid of JKC Kalai. ಚಪ್ಪಲೆ ಬರಲಿ. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಆಲ್ರೌಂಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ ವಿಜಯವನ್ನು ದೊರಕಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತ ಜಾಹಿದ್ ಇವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಇದೀಗ ಮುಂದಿನ ಹಂತವಾಗಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಬೌಲರ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್. ಬೆಸ್ಟ್ ಬೌಲರ್ ಆಫ್ ದ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್. ಎನಿ ಗೆಸ್? Yes, once again the same. So Zaid once again becomes the best bowler of the tournament. I request Premji Shetty to present this best bowler award for Zaid. He's got a wonderful tournament from the ball. So he's deserved this best bowler award. And Premji Shetty is presenting this best bowler award for Zaid. Consecutive 2 individual trophies for Zaid. Congratulations Zaid for your wonderful performance. And now we are coming to the one more important department of cricket, the best batsman of the tournament. Best batsman of the tournament, which goes to any guess? Yes, man who coming in a difficult condition, changing the complexion of the match. Yes, letter which is start from yes. It's absolutely Sujan of SFC. Sujan of SFC Benjanapadavu becomes the best batsman of the tournament. I request Janardhan Amuje to present this best batsman award for Sujan as a wonderful striker of the ball. He is the one responsible for his team in the final. Now we are coming to one of the most important part of this cricket tournament. Of course, everyone's dream is to become the man of the series of prestigious tournament. But only one can get this, who can contribute from the bat, contribute from the ball, and even contribute in the fielding department. One man who has been outstanding in the 3 departments, and he is the one once again. Any guess? Absolutely, the last letter Z. Zaid again. He is a man of the series. Manoj Kundar. I request Manoj Kundar to present this man of the series for Zaid NM for this fantastic performance. Zaid of JKC Kalai will going to get a very attractive man of the series. Congratulations, Zaid is dominating in this tournament and dominating all the
the major department of this individual prizes. He's a man of the match, he's the best bowler, now he's a man of the series. Congratulations again for Zaid for your outstanding performance in this BPL 2023, the season 5. Now let's welcome, because at one time it's very difficult for team SFC to qualify for the playoff round, but at last they managed to qualify. Not only they qualified to eliminator, they won the eliminator round, they won the qualifier round, and they came into the final. And a warm welcome for all the players of SFC. They're the runner-up of prestigious BPL 2023. May I request all the players of team SFC to please come to the stage to collect your very attractive runner-up trophy of this prestigious BPL 2023. ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರು ಈ ಒಂದು ರನ್ನರ್ ಆಫ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ವಿತರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ರನ್ನರ್ ಆಫ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ನಗದು ಬಹುಮಾನ ಕೂಡ ವಿತರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 20,000 20,000 ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಫಾರ್ ದ ರನ್ನರ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಗ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ SFC Benjanapadavu. They become the runner off. Congratulations for runner off of this prestigious BPL 2023. Mix. Thank you. Congratulations for the runner-up for your outstanding performance in this tournament. And thank you very much and each and every chief guest for presenting this runner-up trophy. And with that trophy, the 20,000 cash prize which is won by team SFC Benjanapadavu. Now it's a time to call the champion of this prestigious BPL 2023, which is goes to one and only the team which has performed very well throughout the tournament, JKC Kalai. May I request one nimisha, just a minute. ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿತರಿಸುವ ಮುಂಚೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಣ್ಣ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆ ನೀಡಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಈಗಲೇ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಆಗಿ ಸಹಕರಿಸಿದಂಥ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆತ್ಮೀಯರು ಸಂಘಟಕರು ಆದಂಥ ರವಿ ಇವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕು. ಮಾಲಕರು ರವಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇದೀಗ ಎಸ್ ದ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಫ್ BPL trophy, champion of JKC. Champion here is the JKC Kulai of this BPL Trophy 2023. Their declaration, JKC Kalai are the champion of this prestigious tournament.
40,000 cash prize along with a very attractive winner of this prestigious tournament. Everybody know Chris Cale is a champion. Beanie a champion, Bounty a champion, Marshall is a champion, Bunty is a champion, Folland is a champion, Lara is a champion, Gale is a champion. Don't forget Michael Jordan, Obama a champion, Mandela a champion, Serena a champion, Wendy a champion, Shelly a champion, 958 Bolt a champion. Champion, 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 champion. Everybody knows it, Bravo a champion. Champion, 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 champion. Everybody know Chris Cale is a champion. Champion, we are real champions. Champion, we are real champions. Champion, we are real champions. Don't vex if your name not call. We have to leave everybody some ball. We love soca and dancehall. We love cricket and football. Come and dance in a my name we call. Champion, champion, every journey and every yard man. Champion, champion, every BC and every Bajan. Champion, champion, every journey and every yard man. Champion, champion, Beanie a champion, Bounty a champion, Marshall is a champion. Thank you. Is a champion, Folland is a champion, Lara is a champion, Gale is a champion. Don't forget Mike. So thank you very much. Congratulations, JKC Kalai, for lifting this prestigious BPL Trophy 2023. This very attractive trophy, which is donated by Praveen Baba. Big hand for Praveen Baba for donating this very attractive BPL Trophy, the Champions Trophy. Thank you very much, Praveen Baba, for your contribution for the success of this cricket tournament. Meanwhile, I request ರವಿ ಕಲ್ಪನೆ, ದಯಮಾಡಿ ರವಿ ಕಲ್ಪನೆ ಅವರು ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ